So hey guys, what's up? Welcome back to the channel and the world of unpredictability that is PUBG Mobile Esports। एंड आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल में जो है योगी गेमर। एंड आज का दिन है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ऑल ऑफ यू व्हाट्सअप, क्या हाल चाल? हेलो बजी बज, की हाल चाल? मेक मी मॉड। उफ, इतना स्पैम। जिस दिन तुम स्पैम नहीं करोगे ना उस दिन चीजें सही रहेगी। बाकी यस, हेलो गाइस, हेलो हेलो। लास्ट वीडियो का लिंक हाँ मिल जाएगा है। अभी रुक जा, मेल पे भेजना, वो लिंक चल पड़ा ना? ओ सॉर्टेड, रुक जा, चैनल लिंक तूने ले लिया ना? एक मिनट, महादेव की बता रहा हूँ, महादेव। गाइस कैसे हो? हेलो अंकित भाई, क्या हाल चाल? हंसा भाई ब्रो, व्हेन इज पीएल फाइनल्स? 19 तारीख को मेरे भाई। हेल बॉय गेमिंग, हेलो ब्रो, व्हाट्सअप। एंड जो भी नए लोगों, गाइस अभी हम स्ट्रीम करेंगे आपका पीएमएसएल एंड आफ्टर दैट हम स्ट्रीम करने वाले हैं पीएमपीएल साउथ एशिया। सो आज की स्ट्रीम बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड। मेरी स्टोरी देखी भाई? अभी तक तो नहीं देखी ब्रो, आज हम थोड़े से अलग ही व्यस्त है, और चीजें चल रही है। हेलो उदय भाई, क्या हाल चाल मेरे भाई? कृदेव कृदेव कृदेव। मेरे को मेल करना है ना ब्रो? ये बस 1 मिनट के अंदर फॉरवर्ड। हेलो 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 पार्थ सारथी भाई, क्या हाल चाल मेरे दोस्त? हेलो 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 डीआरएस एसटी, लेट्स गो भाई। साउल भाई, गॉडमैन भाई, आयुष भाई, हैप्पी न्यू ईयर। ओ विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू गाइस। क्या जल्दी आ जाओ फुल पॉजिटिविटी के साथ, हैप्पी न्यू ईयर एक बार स्पैम कर दो जल्दी से सारे के सारे लौंडे अपने, गलत अपने लौंडे। हाँ, आईडी तेरी, आईडी तेरी मेल आईडी तूने मेरे को भेज रखी है कब की? एक बार फिर से भेजेगा इस पे प्लीज। लिंक तूने ले लिया खुद ही? और कुछ चाहिए बता। हेलो भाई, एलिमेंट्रिक्स के प्लेयर्स पुराने वाली है क्या ब्रो? एलिमेंट्रिक्स के प्लेयर आई गेस नए हैं, बाकी व्हाट इज ऑडियंस नोज बेटर, प्लीज बता दीजिए। क्या लगता है पीएल से कौन कौन से दो टीम जा सकते हैं ब्रो? कोई भी जा सकते हैं पीएल, या फिर कोई भी टूर्नामेंट अभी के टाइम पे। शॉर्ट टूर्नामेंट में आप गेस नहीं कर सकते ब्रो, अनएक्सपेक्टेड चीजें ही शॉर्ट टूर्नामेंट पे देखने को मिलती है, सो कुछ भी हो सकता है। हेलो भाई, हेलो अर्जुन शाह भाई, क्या हाल चाल मेरे भाई? क्या हाल चाल? एंड गाइस, जिन लोगों को नहीं पता, आज के दिन पे हमारे दो क्लैशेस है, दैट इज पीएमपीएल साउथ एशिया। पीएमपीएल साउथ एशिया का मैच रहने वाला है, लाइक जिसकी सारी की सारी टीम्स आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है, जो आपकी आज खेलेगी मैचेस, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के सामने देख सकते हो। एंड सेकंडली गाइस, हमारा होने वाला है यहाँ पर पीएमएसएल 2023, जिसकी सबसे पहले हम पीएमएसएल की ही स्ट्रीम कर रहे हैं, जिन लोगों को नहीं पता है। तो पीएमएसएल की सबसे पहले स्ट्रीम होगी, ये हमारी स्ट्रीम पीएमएसएल की है, जहाँ पे टीम्स आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है, ये टीम्स पार्ट करने वाली है। देन जिसके बाद 5:30 बजे से पीएमपीएल साउथ एशिया के मैचेस होंगे, देन हम शिफ्ट कर लेंगे कंप्लीटली टू साउथ एशिया। वेल इनफ। एंड काफी सारे लोग बोल रहे थे पीएमएसएल करो, मैंने ट्राई करा है कि मैं दोनों चीजें कवर कर पाऊँ। कुछ मैचेस आपके हो सकते हैं पीएमएसएल का मिस हो, तो उसकी जगह पे हम पीएल देखेंगे। ठीक है गाइज, एक बार जल्दी से अपनी कंफर्मेशंस बताइए चैट के अंदर। एलिमेंट्रिक्स वाले पीएमपीएल सीजन 0 एलिमिनेट हो गए थे ब्रो। की हाल चलेगी ब्रो? मर्क्यूरी भाई एकदम बढ़िया, हैप्पी न्यू ईयर 2020 80। अयोगी भाई, लव फ्रॉम नेपाल। पीएल फाइनल्स कब से? पीएल फाइनल, थैंक यू सो मच मेरी जान, लव यू 1 2 3 4 जी वो भाई। एंड पीएल फाइनल जो होगा आपका ग्रैंड फाइनल्स, दैट इज फ्रॉम 19th ऑफ अप्रैल। की हाल चलेगी ब्रो? मर्क्यूरी भाई एकदम बढ़िया, आप सुनाइए यार, कैसे हो? क्या हाल चाल सभी के? एकदम बढ़िया, क्या चल रहा है? मस्त लाइफ में क्या चल रही है चीजें, प्लीज एक बार बताना हमें। बाकी यस, लेट्स मूव इनटू स्ट्रीम। ओ फक, डन। ठीक है, डन हो गया ना? हेलो, ठीक है, मैं फोन कट कर रहा हूँ, ठीक है गाइज। आज गाना नहीं बचा, बाबा पहाड़ी का चैनल गाइज हैक हो गया है, सो वी नीड आवर हेल्प बाय द वे। चैनल इज हैक्ड। बाबा पहाड़ी का जो हमारा चैनल था जिसके हम गाने बजाते थे रिसेंटली, वो हैक हो चुका है। इट्स नॉट अ गुड थिंग गाइज, इट्स नॉट अ गुड थिंग। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, पाव पहाड़ी का मैं आने वाले अभी शायद लिंक दे दूं रीट्वीट करने के लिए, तो आप सभी लोगों को जाके इसको रीट्वीट करना है। ठीक है, अभी जनता हमारी ऐड ऑन होने दो, देन मैं जैसे ही होगा सीन मैं आपको बता दूंगा। एंड बाय द वे, हमारी स्ट्रीम, यस इंग्लिश की स्ट्रीम
ग्रैंड फाइनल्स डे। गाइस देयर इज अ टाइमर। ओ भाई इतना बड़ा टाइमर लग चुका है, तो थोड़ी अब बातचीत कर लेते हैं, मुझे नहीं पता था इतना बड़ा टाइमर लगे। चलो बॉयज, गाइस थोड़ी सी चिटम चैट कर लेते हैं। बाय द वे यस, अब मैं आ रहा हूँ चैट के अंदर, 2 मिनट रुकना। सो गाइस चैनल हैक हो गया अपने भाई का। हेलो हेलो गाइस, क्या हाल चाल? हैप्पी न्यू ईयर ब्रो, लव फ्रॉम, लव यू टू हमजा भाई। हैप्पी न्यू ईयर योगी भाई, हैप्पी न्यू ईयर सेम टू यू शीतल छेत्री भाई। बिग फैन योगी भाई, शाउट आउट टू स्वान, शाउट आउट टू यू स्वान मेरे भाई। हेलो योगी, हेलो शुभम गेमर, क्या हाल चाल ब्रो? आपके अकॉर्डिंग इंडियन रीजन में कौन सी टीम पीएमपीएल ऐसे टीम को टक्कर दे सकती है? सारी टीम्स गाइस, सारी की सारी टेम्स दे सकती है, बट वो ये टाइम लगेगा थोड़ा सा। फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बात करूं, लाइक जो नया मेटा आया हुआ है, नया पॉइंट्स टेबल, मेटा इक्वल टू नया पॉइंट्स टेबल न्यूज जोन वाली थिंग। जो ग्लोबल टीम्स है वो ऑलरेडी 1 साल आगे है, कुछ महीने आगे जो खेल चुकी है, तो कहीं ना कहीं उनको +1 रहेगा। प्रैक्टिकली खेलना बाहर से देखने में बहुत फर्क होता है। जब टीम्स खेलती है तभी आपको पता लगता है कि क्या चीजें हैं, क्या चीजें कैसी नहीं। मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा। हे योगी भाई पहचाना? यस मेरे भाई पहचान लिया। फ्रॉम आप राजस्थान से हो? हेलो 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 शुभम भाई, क्या हाल चाल? हैप्पी न्यू ईयर योगी भाई, एकदम बढ़िया। किस चीज का न्यू ईयर? बबलू भाई न्यू ईयर है लाइक, जिन लोगों को नहीं पता है, न्यू ईयर 2023 सब बोलते हैं, बट एक न्यू ईयर ऐसा होता है जो रियल जो बोलते हैं लोग, पता होगा। लाइक एक रियल न्यू ईयर रहता है, नया साल। अभी 2080 चल रहा है लाइक। मेरे को एक वर्डिंग कैसे बताऊं, मैं आपको कैसे समझाऊं, मेरे को समझाने में नहीं हो रहा। कब स्टार्ट होगा ब्रो? थोड़ी देर में फ्लिक भाई। वीपी इनकमिंग, यस। अच्छा ओके, नेपाली न्यू ईयर है। सो गाइस आज के दिन पे बाय द वे, व्हाट आर योर रिव्यूज फॉर द टीम्स? लाइक ये सारी की सारी टीम्स है जो आपकी screen के सामने आ रही है and खेलने वाली है, लाइक फेज, हेल, वेम्पायर। बट जितना मैंने एक सिनारियो देखा है इन टीम्स के बारे में, मैं आपको एक चीजें बता देता हूँ। की पीक लेट्स गो गाइस, लेट्स गो। गाइस शॉर्ट टूर्नामेंट में आप बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बता नहीं सकते क्या चीज होगा नहीं होगा। बट द टीम्स दैट दे आर द कंसिस्टेंट, जो पूरे होल ऑफ द टूर्नामेंट हमको देखने को मिला है, दे आर द टीम फेज, हेल एंड वेम्पायर। तो ये टीम्स ऐसी है जो पूरे होल ईयर कंसिस्टेंट हमको देखने को मिली है। हेलो भाई क्या हाल चाल? हेलो योगी भाई, हेलो अजीत भाई, व्हाट्सअप? ट्विस्ट टीम है क्या ब्रो? ट्विस्टेड माइंड ब्रो? नहीं वो नहीं है। बीटीआर पीजीवी, लेट्स गो। एंड गाइस बेगेटॉन की परफॉर्मेंस बिल्कुल इतनी सही नहीं रही है, बॉक्स का भी परफॉर्मेंस इतना अप्स एंड डाउन्स का रहा है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इवोस पर्सिया को, आपने देखा होगा एक वीक में काफी अच्छा खेला है, बाकी 2 वीक वाज नॉट गुड, जिसमें लक्सी सक्सी आपके फेवरेट अगर मैं बात करूं है। रिलीजियस न्यू ईयर है ना योगी भाई? यस हेलो ब्रो, लेकिन टीम सीक्रेट का गंदा डाउनफॉल आया है। टीम सीक्रेट तो आउट हो चुकी है ब्रो, टीम सीक्रेट क्वालिफाई नहीं हुई है। जो टीम ग्रीन पे है वही टीम क्वालिफाई हुई है। दिस इज द कंसिस्टेंट टीम जो आपको हो सकता है अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले। वीकेंड टाइम इज वन ऑफ देम, बट लास्ट वीक उनका कुछ खास ज्यादा गया नहीं है अच्छा। बूम ने काफी अच्छा खेला है। यूडो अलायंस वाज द कंसिस्टेंट टीम, बस उनका लास्ट वीक यहाँ पे अच्छा नहीं गया, बाकी 2 वीक वाज डिसेंट। अल्टर ईगो लाइमेक्स के लास्ट के 2 वीक काफी अच्छे गए। 7-9 इनकंसिस्टेंट रही है, बट ओवरऑल अ डिसेंट टीम। पॉइंट डिसेंट, द सेवियर। अगर आप मेरे से पूछोगे ना यहाँ पे टॉप 2 टीम्स के बारे में, अगर आप मेरे से पूछते हो, आई मैं सच में बताऊं किस टीम के लिए जाने वाला हूँ। ये जो टॉप 3 टीम है, एंड बूम, शायद बूम कुछ कर सके। लाइक शाइन लाइक डायमंड भी काफी बढ़िया टीम है। बूम ये टीम मुझे ऐसा लगता है 5 टीम है कि इनमें से हो सकता है कि
डे वन पे कुछ सीन देखने को मिले। बाकी आपके कमेंट पढ़ता हूँ, बीटीआर फॉर द विन, बट भाई बीटीआर का भी परफॉर्मेंस चल नहीं रहा है ऑनेस्टली सेइंग। पर्सिया की परफॉर्मेंस भी अप डाउन है, एक वीक बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, दैन एक वीक अच्छा गया, दैन दूसरे वीक उनका डाउनफॉल। सो ये सभी चीज़ें ऐसे ही चल रही है। हेलो फ्लिक्स हेल बॉय, क्या हाल चाल मेरे भाई? आज पीएम पे लाइव करोगे और नहीं? ब्रो करेंगे, तभी तो टाइटल में पीएमपीएल साउथ एशिया मेंशन है। पीएमपीएल साउथ एशिया 5:30 आपका स्टार्ट होने वाला है। किसका हैप्पी न्यू ईयर है ब्रो? ब्रो हमारा हैप्पी न्यू ईयर रिलीज। तुम ब्रो टीम सीक्रेट गंदा यस। कैसे हो चच्चा? अरे अरे बढ़िया बढ़िया, लव फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच डी डायरिसिस भाई। 2020 में बीटीआर आरआरक्यू टीएस ये लोग से डरते थे सब, बट अभी जो है काफ़ी सारी चीज़ें ब्रो चेंज हो चुकी है। अभी तक तो यही सीन है। मैं स्टार्ट 3 बजे से होगा यस मोस्टली। नेपाली कैलेंडर से न्यू ईयर है यस, 3 बजे स्टार्ट होगा यस। नॉट रिलीजियस ऑफिशियल कैलेंडर ऑफ नेपाल। 3 बजे स्टार्ट होगा ब्रो। आरआरक्यू वीपी आरआरक्यू और वॉइन, वीपी आरआरक्यू और वॉइन देखते ब्रो। मेरे को भी लग रहा है पुनीत भाई कि थाईलैंड डोमिनेशन शायद डे वन पे आपको देखने को। साउथ एशिया में कौन टीम जाएगा ब्रो? जो #1 रहेगा साउथ एशिया में, सिंपल सी बात है, आपको #1 रहना है मतलब #1 और PMWY वाला सीन है। $3 मिलियन को बैटल करने का सीन है कि #1 आना है बस। ये भी वही सीन है, PMSL से भी 2 स्लॉट है, बट #1 आना है साउथ एशिया में ब्रो। #1 इज द की। #1 आओगे तो सीन बनेगा, बाकी अगर #1 नहीं आओगे तो सीन नहीं बनेगा। भाई साउथ एशिया आईएचसी हार्ड टीम ब्रो, आईएचसी हार्ड टीम है बट इनकंसिस्टेंट काफी ज्यादा है। सही में आपका प्रिडिक्शन है क्या 4MV लीग विनर का कर्स तोड़ेगा? कंसिस्टेंट है वो, बट देखो बट कंपटीशन बहुत है ब्रो। जो आपके टूर्नामेंट में, अभी फिर से बोलूंगा, जो आपके टूर्नामेंट शॉर्ट टूर्नामेंट है वहाँ पे कुछ भी पॉसिबिलिटीज चीजें हो सकती है जो आपने सोची नहीं होगी, हो तूने सोची ना होगी वो वाली चीज हो सकती है, किसी ने सोची ना होगी। रेगम ग्रेडेड आकॉस होगा टर्की में। देख डार्क हॉर्स भी आप बोल सकते हो, यहाँ पे भी काफी सारी टीम जिनको आप बोल रहे ना डार्क हॉर्स क्या पता निकल के रहा है। पर्सिया अगेन चोक इन फाइनल 3 ऑन प्लेसमेंट। यस आयोगी, चलो ब्रो मैं चलता हूँ, कुछ खा के आता हूँ, फिर मिलते हैं 3 बजे। ओके ब्रो। विश टीम विनर प्रिडिक्शन प्लीज फ्रॉम पीएमपीएल। विश टीम विनर प्रिडिक्शन प्लीज फ्रॉम पीएमपीएल ब्रो। आज मैच स्टार्ट होने दो, कुछ देखने दो मैच के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, देन उसके बाद बातचीत करेंगे, टेंशन ना लो, समझ रहे हो। बाय द वे गाइस, मैच अभी थोड़ी देर के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। अभी काउंटडाउन आई गेस ऑन है, काउंटडाउन इज ऑन। मैं काउंटडाउन देखो कितना बचा है हमारा। हमारा काउंटडाउन बचा है, हो जा रिफ्रेश हो जा। अरे स्ट्रीम को क्या हो गया? हेलो, which can be used as a bridge or cover. हमको नहीं चाहिए प्लीज। चलो गाइस स्ट्रीम ही खोल देते हैं, चलो आ जाओ। ऑफ कर लेते हैं। चलो ठीक है बॉयज, लेट्स गो। आएगी, चलो ब्रो मैं चलता हूँ, कुछ खा के आता हूँ। ठीक है भाई ब्रो, याद हूँ मैं, यस इंडियन भाई याद हो। विश टीम विनर प्रिडिक्शन प्लीज फ्रॉम पीएमपीएल ब्रो। याद हूँ मैं, यस पीएमपीएल ब्रो। देखो आज के मैचेस चलते हैं, क्या सीन होता है क्या नहीं होता है ब्रो। याद हूँ मैं, यस यस ब्रो याद हो। विच रीजन ब्रो? ये आपका भी पीएमएसएल हो रहा है, एंड पीएमएसएल के बाद हम करेंगे पीएमपीएल साउथ एशिया। तो यस, पीएमएसएल एंड पीएमपीएल साउथ एशिया तरीके से टीम हमारी ऑन। तू ही तू जन्नत मेरी, तू ही दिल का सकून।
हेलो भाई, हाउ आर यू? समय भाई एकदम बढ़िया, आप सुनाइए, आप कैसे हो? टीटू के कंसिस्टेंट इस पेम्पल, टीटू के को भाई रियली अप्रिशिएट भाई, परफॉर्मेंस देख के दिल छू गया। टीटू के तो वैसे भी जिन लोगों को पता है, जो हमारे साथ पुराने बंदे, हमने टीटू को हमेशा से बोला ही है। अभी देख के परफॉर्मेंस और ज़्यादा दिल खुश हो गया। एंड फाइनल्स गाइज आज से है, डे 1 स्टार्ट होगा, सो मिल के सपोर्ट करेंगे। सो बी एक्टिव, स्टे ट्यून्ड। साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, यस ब्रो, आज साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया दोनों स्ट्रीम हो रही है टुडे। पीएमएसएल ब्रो, दोनों दोनों वी आर गोइंग टू स्ट्रीम पीएमएसएल एंड पीएमपीएल टू। भाई आपका फेस दिखाओ ब्रो। चला है, सीन चला हुआ है बैकएंड पे, पहले हमको वॉइस पे फोकस करना है। अब मैं सोच रहा हूँ डिस्कॉर्ड माइक लेना है ग्रो, शायद एंड ऑफ द मंथ हम माइक पे इन्वेस्ट कर दे। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा फिर से रेवेन्यू कट हो चुका। लॉल, चलो कोई नई बात नहीं है, बट हाँ। ला 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 ला। हाँ हाँ हाँ, साउथ एशिया, यस भाई, बस भाई लड़का हूँ लड़की नहीं, और संदेश ओपी, यस सीएनवी बाय संदेश भाई, ओपी इन द चैट, ओपी सॉन्ग, ओके भाई। भाई तो गाइज हमारे भाई का चैनल हैक हो गया है, मेरे पास जैसे लिंक आता है मैं आपको फॉरवर्ड करता हूँ। ब्रो पबजी मोबाइल थाईलैंड ने स्विच करो, टाइम बहुत कम लगेगा। पबजी मोबाइल मतलब पबजी मोबाइल थाईलैंड में स्विच करो, टाइम क्यों? वहां पे जल्दी चलती है क्या स्ट्रीम? पबजी मोबाइल थाईलैंड में जल्दी चलती है क्या स्ट्रीम? रुको, पबजी मोबाइल थाईलैंड में इंग्लिश होगा क्या? थाईलैंड हम लैंग्वेज में तो देखेंगे नहीं बाय द वे। इंग्लिश है क्या पबजी मोबाइल थाईलैंड पे? इंग्लिश क्यों? यहाँ पे इंडोनेशियन ही होगा भाई, इसमें क्यों थाईलैंड पे क्यों जाए हम? क्या रीजन है थाईलैंड में? थाईलैंड रीजन ब्रो? नो ब्रो। चित्तरा दी छतरी ते उड़गी। Hi Team YouTube, my Gmail and YouTube channel with 126k subs has been hacked. Spam link were being forwarded on disabled. Kindly help me to account and as short of. Guys, let's go. We got the link. आप लोगों को guys कुछ नहीं करना है, हमारी हेल्प करनी है। So, जो लिंक है आपको अपने ट्विटर, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है, जाके शेयर करना है, जाके शेयर करिएगा। मैं यहाँ पे दे देता हूँ। दिस इज द लिंक जो आपके पास आने वाला है। ट्विटर अगर आपके पास बना हुआ है, तो इस ट्विटर को जाके रीट्वीट कर देना, लाइव पे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो ट्विटर गाइज लिंक तो रीट्वीट कर लेना। भाई का चैनल हमारा हैक हो गया, बाबा पहाड़ी, आप हमारे गाने सुनते होंगे, का चैनल हैक हो गया, सो ये लिंक। चलो भाई, गाइज लिंक आप लोगों को मिल चुका है, इस पर क्लिक करो एंड जाके इसको रीट्वीट कर देना। यूट्यूब इंडिया को टैग कर देना, या विल हेल्प। थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग।
छोड़ेंगे हम अगर। लेट्स गो फॉर 100 लाइक, लेट्स गो बॉयज, 100 लाइक करा दो। ये कौन सा मैच चालू है पबजी का ब्रो? इट्स अ PMSL ब्रो। राइजन भाई हमारी स्क्रीन के सामने। भाई मैच कब स्टार्ट होगा ब्रो? बस आपकी स्क्रीन के सामने काउंटडाउन आ रहा है, राइजन भाई आ रहे हैं। पत्रिका पत्रिका। बस टुडे DRS फाइनली बैक ऑन फायर। लेट्स सी गाइस क्या होता है। वेट करो, वेट एंड वॉच। खोल के भाई, फायर फ्लक्स ई स्पोर्ट्स। ओहो रूल्स भाई, लेट मी ओपन द माइक। Happy 5th anniversary PUBG Mobile र हजुर नबिर्सिनु होला 5th anniversary को इभेन्ट आउँदैछ, हजुर स्योर खेल्नु होला। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड भाई फ्रॉम निग्मा गैलेक्सी गाइस। कितने मैचेस होंगे टोटल ब्रो? टोटल होंगे आपके 6 मैचेस, 6 मैचेस, 6 मैचेस। आई वांट टू विश पबजी मोबाइल इज 5th बर्थडे। क्या बात है। आई होप दैट पबजी मोबाइल विल बी इवन मोर क्राउडेड and more exciting, and the events will be tougher. And for all of you, don't forget to the event will be fun together. Yes, bye bye. Hello, assalamu alaikum. My name is Happy. I have been 5 years and तो चलो मिलते हैं भाई, पहला हाफिज। hey, everyone here is jumper from the team. Guys सारे विश कर रहे हैं, पबजी मोबाइल की 5th एनिवर्सरी है। रूज इज द बेस्ट एजुलो साउथ एशिया। लैन है क्या? यस मेरे भाई, ये लैन हो रहा है। देन साउथ एशिया जो होगा वो लैन नहीं है, पहले बता दो। कैसे हो शारिक भाई? एकदम बढ़िया। हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल सभी के? फर्स्ट मैच चिकन कौन निकालेगा योगी भाई? फर्स्ट मैच अयोगी भाई निकालेंगे चिकन भाई। फर्स्ट मैच नो वन, ओनली अयोगी भाई। अयोगी भाई निकाल रहे फर्स्ट मैच। ठीक है, फर्स्ट मैच ओनली गोज टू अयोगी, नो वन एल्स, नो वन एल्स, ओनली अयोगी भाई। By the way guys, we have 7 minutes for the grand finals of PMSL, जहाँ पे ह्यूज प्राइस पूल है। इस बार आपको पता है इतना PMPL का हाइप नहीं है जितना इस बार PMSL का हाइप है साउथ ईस्ट एशियन सीजन के अंदर। ऐसे प्रोबेबली विल बी लैन। नहीं मेरे भाई, ऐसे कहाँ से लैन होगा? ऐसे नहीं हो रहा, साउथ एशिया नहीं हो रहा लैन। इसके बाद साउथ एशिया के मैचेस 5:30 है, देन विल शिफ्ट टू साउथ एशिया। ठीक है, साउथ एशिया को हम स्ट्रीम करेंगे। Happy New Year, Navi bhai. Wish you a very happy New Year to all of you. सऊदी लीग की वॉच पार्टी करेगा एजे? क्रिप्टो खेल रहा उधर, मार भी बहुत रहा है। सऊदी लीग का वॉच पार्टी का परमिशन कहाँ से मिलेगा? परमिशन दिला तो पाजी कर लेंगे। कौन जीतेगा PMSL होगी भाई? देखो भाई, आज से कंपटीशन चालू हो ही रहा है। विजुअल्स आपकी स्क्रीन के सामने आ ही रहे हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हियर वी गो, द लैंड इज हियर। आपकी स्क्रीन के सामने गाइस एंट्रीज आ रही है। लो भाई, लो पाजी। क्यू कायरुल होस्ट फॉर द डे। लाइव गाइस, साउथ ईस्ट एशिया से लैंड लाइव आ चुका है, सबको बुला लीजिए। हैप्पी न्यू ईयर भंडारी भाई, विश यू द सेम मेरे भाई। बहुत सारी खुशियां आपको, अच्छे से एंजॉय करिए, अच्छा खाइए, अच्छा पिए, थोड़ा मस्त फुल फुल सेट हो जाइए। ऐसी लैन हो सकता है, लोग कह रहे हैं मजा आ जाएगा अगर लैन होगा तो। फाइनल है क्या? ऑब्वियसली ब्रो, इट्स द ग्रैंड फाइनल्स डे 1। टाइटल पढ़ लो। आवाज खोल ले। ओ हो हो। I would like to invite Damn Good.
would like to join us for the first interview of the एक्सूट है भाई। अच्छा ये एक्सूट है भाई। पब हमें क्या, मैं तो बीजेएमआई वाला हूँ, मुझे क्या। आवाज बढ़ा दिया भाई, स्ट्रीम की वॉइस खोल दिया भाई। अरे ये गीक फैम के। अरे अरे होस्ट और प्लेयर दोनों शर्मा रहे हैं। साउंड खोल दिया मेरे भाई, साउंड खोल दिया है। अगर मैं ज्यादा बढ़ाऊंगा मेरी वॉइस नहीं आएगी। So let us know how will the team adjust the mentality for the सऊदी लीग देखी नहीं मेरे भाई, सऊदी लीग नहीं देखी। स्ट्रीम की वॉइस खोल दिया मेरे भाई। ब्रो 2x करो, एक बार ही करूंगा, इसके बाद 2x नहीं करूंगा वरना स्ट्रीम लैग करती। ऑलरेडी 2x ही है। Alright, so what he mentioned just now was that they are By very the way guys, prepared ये for the grand PMGC वाइब finals. भी There's देगा a lot आपको of लैन अरीना, क्योंकि preparations. सेम They've reset मैनेजमेंट their है, सेम mentality and ऑर्गेनाइजर्स है adjust everything for एंड the सेम upcoming grand वेन्यू है। finals. सो So आपको एक PMGC moving वाली on, वाइब, apart from that, टेम्पलेट्स so after काउंटडाउन watching का the official जो इस बार trailer, का right, Dam, PMGC हुआ है I वही believe सेम your वाइब आ रहा friendship with है। Yuhai is quite well known ब्रो among the ब्रो ब्रो community. ये आपका Can you एक्स share सूट है, with us सुनने में why आया है। Yuhai सो is so special द to you? एक्स सूट Yuhai sebenarnya bukan spesial dekat saya ya, sebab dia kan pernah main dengan kami waktu FPM, and then dia dengan teammate saya yang lain pun biasa, and then dia dekat dengan semua player GEEK, and then yeah. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर दुबई, हैप्पी न्यू ईयर किसका है? Close with each हैप्पी न्यू ईयर other, they हमारा play है ब्रो, हमारा streams, हैप्पी न्यू ईयर। tournaments together, so there's a lot of friendship and bonding between them. And for you Confusing. guys that haven't watched the trailer, don't forget to watch it. It's one of the best trailer I've ever watched, and don't miss it out. So final question, Dam. तो As गाइस we सबको know लिंक शेयर that you कर have a दीजिए, quote, सबको बुला लीजिए never क्योंकि underestimate your opponent, right? So after the league ends, साउथ can एशिया you let us know एंड PMPL who do साउथ you think एशिया is आप the सभी को strongest पता in है, इट्स अ PMSL बिग so बिग far? वन जो होने वाला है, जो रहने वाला है। सो For बहुत ज्यादा me, मजा आने वाला है। semua तो team स्टे ट्यून्ड power, फॉर but साउथ एशिया। 2x कर दिया मेरे भाई, 2x मैं yang ऑलरेडी कर paling चुका power हूँ। tu I think 2x FaZe, ऑलरेडी है, because ज्यादा now 2x नहीं करते क्योंकि dorang स्ट्रीम लैग करेगी बार बार। top 1, पीएल के then फाइनल्स कब से? firepower 19 pun तारीख से ब्रो, better 19th lah. ऑफ अप्रैल से पीएल के फाइनल्स है। Alright, so what he answered just now is that FaZe Clan is one of the strongest teams. They are on top of the table and they have very good He played firepower. so good in Damn PMGC. good. Good luck, all They the should best on kind the of get upcoming you. matches. Good last luck day on your grand 3x finals. winner Good luck, chicken GEEK dinner SLATE, सिर्फ and VP निकाल सकता है। thank you so much for Thank joining. you. Why Thank there you, is Yoodo. only one slot for PMPL SA, even though in PMGC in top 5 there is 3 South Asian and China have 2 slots and Japan, Turkey, Pakistan have 1 slot for their own. आशिम भाई हर एक कंट्री PMPL से एक ही स्लॉट है। देयर इज नो लाइक कोई एक्स्ट्रा स्लॉटिंग नहीं हुई है। इवन दो अगर आप साउथ मतलब ईस्ट एशिया भी देखते हो जहाँ पे PMPL हुआ है, इंडोनेशिया से भी एक टीम गई है। तो हर एक रीजन Alright, से एक settle एक with टीम ही GEEK जाती है SLATE, and now रीजनल्स we का have जो मेन another स्लॉट team, रहता है। and it's from एंड सेकेंडली यस Indonesia, आप one बोल of the सकते हो इस biggest बार teams out PEL there, के स्लॉट को and it's इंक्रीज करा है। BIGETRON, Red Villains, क्या and पता उसका कुछ can I वेरियस have जो भी Yuhai? रीजन हो I would like सकते to हैं, वी invite डोंट नो, Yuhai. Will you ऑफिशियल्स नो do the बेटर। honor for the first interview बाकी for the हर grand एक finals? PMPL ग्लोबली एक टीम है। गाइस बाकी BTR Alright, हियर वी hello. गो। Hello, everyone. Yuhai on your All screen, smiles Yuhai and boy। happiness from you. Alright, so since last week there are a lot of videos about BTR going around about. So can you share with क्रिप्टो us के the डोमिनेशन moment सऊदी and the लीग में first thing देखी in mind नहीं when भाई, you देखी नहीं है पर BTR देख लेंगे managed जल्दी। to तो वो बुलशिट qualify ये for the क्यों? grand finals? हैप्पी न्यू ईयर बांग्लादेश, First हैप्पी thing न्यू in ईयर mind ब्रो। when जहां we नोवा qualified to the final, I feel नहीं वहां really वाचिंग नहीं। grateful. ओके ब्रो, I didn't thought that we can qualify. BTR आ I गई just BTR यस। I just pray यस that my PL team can फाइनल्स qualify. कब से? PL And फाइनल्स yeah, ब्रो we 19th of qualify. April। I'm so freaking grateful. Alright, grateful is the keyword right there. So after the league phase ended, you guys have some free time to spend. What are you guys doing during those free time? During those free time, we do a lot of things. We play scrim पारी together. We watch आगी पारी। our previous tournament, what our mistake on the league also. You have boy And yeah, naughty we naughty। prepare for the grand final. When PL finals start Alright, 9। so Hi on bro, top of hello that, just blue now sky Damgood blogger said in that you guys have very good Nepal। chemistry What's because up? you guys क्या play हाल scrims चाल? and सब tournaments बढ़िया? together. So any words to him? By the way, Good it's a luck 2 minute for and हमारा QEON. मैच बहुत ही जल्दी will गाइस beat you स्टार्ट guys. हो जाएंगे। Oh, you will beat them 2 up. मिनट की Okay, बात है। okay. So कास्टिंग last पैनल question, do you have आएगा, any देन थोड़ा words सा to इंट्रोड्यूस your एंड फर्स्ट supporters मैच out there? हमारा हो जाएगा स्टार्ट। To our fans, all the fans, thank you for keep supporting us. Don't forget to pray for us. We hope that in this क्या grand बोल रहे final हो we भाई? can do our best. देखो So कुछ we समझ can आ रहा है तो हमें भी बताया जाए। make इवोस things का proud. डोमिनेशन Thank you so हो much. जाए, बस यही Alright, thank you चाहता so हूँ। देखो much, भाई होता है कि Yuhai. नहीं Good होता है। luck for इवोस the grand परसिया डे 1 finals. आपकी स्क्रीन And के we're सामने back थोड़ी to the ही देर में casters. स्टार्ट भी Bye हो bye. See you जाएगा। again. लो भाई PMSL ऑन योर स्क्रीन बॉयज। PMSL हो गया स्टार्ट। तो भाई इंट्रो भाई ट्रेलर बड़ा तगड़ा बनाया भाई इस बार। भाई 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 फ्रेंचाइज वाली फील आ रही है भाई इस बार, पूरी फुल फ्रेंचाइज फील भाई।
अरे अरे अरे, इस बार तो फुल फील दिए भाई, पूरा ट्रेलर वज्जी हो रखी गाइस, फुल बूम बाम। वेम्पायर की वर्शिप भी इतनी ज्यादा नहीं है, सिर्फ इंडोनेशिया से वर्शिप आती है 100, नेपाल की भी आती है डिजर्व मोस्ट। आने वाले टाइम पे देखो क्या सीन होता है। बाय द वे हियर वी गो, टीम इवोस पर्सिया, जिसको देखने के लिए आप काफी सारे लोग एक्साइटेड। ओके, वोइन अच्छी टीम है, बूम ये भी काफी अच्छी टीम है, टक्कर दे सकते हैं शॉर्ट टूर्नामेंट के अंदर, कुछ भी पॉसिबिलिटीज बन। मुझे लगता है सुख ने 4M लीव किया, 4M एरा खत्म, सेम बीटीआर एरा खत्म, लक्सी बोल सकते हो यार। बीटीआर का लास्ट मैच में ऐसा सीन हो गया था, आउट हो सकती थी and बंदे ऐसी टीम को सपोर्ट कर रहे थे जो उसके टक्कर, लाइक वो टीम अच्छी खेल जाती तो बीटीआर बाहर हो जाती। वेम्पायर और हेल विल बी विनर, देखते हैं भाई। गीक फेज, हाय हाय मेला, अरे मेला मिल्ला, बेकन, वेम्पायर आ जाओ वाले, वेम्पायर वाले बोल रहे लौंडे आ जाओ बे, देख लेंगे अब, वो सब आ जाओ, सबको देख लेंगे। सैम, हेल, फुल ट्रेलर बाजी है बे, फुल ट्रेलर बाजी हो रही। शाइन लाइक डायमंड भी अच्छा खेली है, अच्छा था इनका वीक। बॉक्स बॉक्स की परफॉर्मेंस थोड़ी ऊपर नीचे हुई, बट होप सो बकल अप हो जाए। लो भाई, क्वालिफाइड टीम्स आपकी स्क्रीन के सामने जो आज के दिन पे खेलने वाली है। पबजी मोबाइल सुपर लीग 14, 15, 16 फ्राइडे सैटरडे संडे, एंड हियर वी गो, ऑल द टीम्स आर ऑन योर स्क्रीन, मैच इज अबाउट टू स्टार्ट, लेट्स गो बॉयज। किस टीम को सपोर्ट करने वाले हो पीएमएसएल 2023 में? टीम्स आ चुकी है, लैन इवेंट है गाइस, लैन एनवायरनमेंट, प्लेयर्स सारे चिल कॉन्फिडेंट लग रहे हैं प्लेयर। अभी देखेंगे कॉन्फिडेंस सारा सिनारियो क्या होता है मैच में। लिक्विड भाई हमारे काफी ज्यादा चिल भाई, ठीक है भाई ठीक है। फेस का लोगो सक्सेस है, ओके भाई। पहला बेस्ट ट्रांसफर फेस को नया स्पीड है, ओके आयुष भाई। बट पीएमपीएल ऐसे में 3 कंट्री एंड हियर वी गो, हर एक टीम फुल मोटिवेटेड, डे 1 मैच 1, लेट्स गो लेट्स गो, अल्टर ईगो लाइव मैक्स। आशिम भाई ऑफिशियल्स को नोज बेटर, बट आने वाले टाइम पे हो सकता है चीज आपको देखने को मिले। पीएमएसएल फाइनल्स कितने दिन का है? पीएमएसएल फाइनल्स ब्रो 3 दिन का है, लाइक पीएमपीएल साउथ एशिया उतना ही रहेगा। हैवी प्रोडक्शन है भाई, लगता है सेम भाई, वीएसपीओ ही संभाल रहा है, एंड सेम आई गेस अगर मैं गलत ना हूँ, सेम ही वेन्यू भी है जहाँ पे पीएमजेसी का भी हुआ था, तो समझ सकते हो चीज। पहला और नूजी ने इन्फिनिटी लीव कर दिया, मतलब इन्फिनिटी इतनी अच्छी टीम क्यों छोड़ी? फर्स्ट ऑफ ऑल मेला ने लूज नहीं करा है, वो लीव नहीं करा है, वो उस पे गया है ट्रांसफर पे, लोन पे। Which team are you supporting? Bro, I am supporting today Vampire, no doubt. Vampire, and Bacon. Vampire, Bacon, boom. These are the teams that I am supporting today. वीएसपीओ है प्रोडक्शन हाउस, भाई वीएसपीओ तो आपको पता है ना गाइस, वीएसपीओ का नाम ही काफी है वीएसपीओ जहां पे आ जाए समझ जाओ गाइस। हाउ मेनी टीम्स क्वालिफाई फॉर पीएमडब्ल्यूआई फ्रॉम दिस टूर्नामेंट? 2 टीम्स एनवीएक्स ड्राइवन, 2 टीम पीएमएसएल से क्वालिफाई करेगी। क्या हाल चाल भाई? एकदम बढ़िया। बीटीआर परसिवा, विसन भाई ओल्ड बीटीआर ऑफ परसिवा, नहीं नहीं भाई, ओल्ड बीटीआर है। लक्सी एंड जक्सी ने लीव करा है, उन्होंने इवोस को ज्वाइन करा है, माइक्रोबॉय था पहले, इवोस को करा है। इज पीएमपीएल ऐसे फाइनल लैन इवेंट? नहीं मेरे भाई, पीएमपीएल ऐसे फाइनल लैन नहीं है, बट पीएमएसएल लैन है। इट्स वेम्पायर, यस। बाय द वे गाइस, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो पीएमएसएल पे? बताना एक बार नीचे चैट करके, जो भी लोग नए हैं जिनको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। हम शाम को पीएमपीएल साउथ एशिया स्ट्रीम करेंगे, देन कंप्लीटली मूव कर लेंगे साउथ। हाउ मेनी टीम क्वालिफाई फॉर पीएमडब्ल्यूआई फ्रॉम दिस टूर्नामेंट? बता चुका हूँ ब्रो, 2 स्लॉट है, ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। वेम्पायर सब कंफ्यूज देगा, अरे अरे ज्वाइन हो गया वापस A7 पे, ओके ब्रो। 2 स्लॉट इन पीएमडब्ल्यूआई फ्रॉम पीएमएसएल, यस। इस पीएमपीएल ऐसे नहीं ब्रो, नहीं लैन फाइनल्स नहीं है, बाकी आगे देखो क्या होता है। एसएससी का पता नहीं है कितने दिन चलेगा पीएमएसएल, 3 दिन ब्रो। साउथ एशिया एंड पीएमएसएल, अफ्रीका एंड लैटम, 4 टूर्नामेंट के क्लैशेस है। देख रहे हो गाइस अग्रेशन, मिला ले भाई शर्म आ गया भाई।
बाय द गाइस, अगर आप चैनल के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आज राइजन एंड यू है बेंच है बीटीआर में। ओ यू है एंड राइजन बेंच। पीपी इन्फिनिटी में आरआरक्यू वीएसपी हो। यस भाई, बीटीआर राइजन को लेना चाहिए था। तो गाइज कमेंट करके बताओ जल्दी से। वेम्पायर भी आ चुकी है लॉबी के अंदर। हियर वी गो। नूजी, टोनी, ओए हेलो, टोनी खेल रहा आज। टोनी खेल रहा ब्रो आज। टोनी खेल रहा भाई, टोनी खेल रहा। परसिवा एनवीपी को के इन्फिनिटी में बियर 11 और कौन है आर ब्रो, सेम टीम है, बस नूजी गया है इन्फिनिटी से। सिर्फ नूजी गया है, बाकी मैला तो लोन पे है ना पीएमएसएल के लिए। सिर्फ लाइक लोन के लिए इन्फिनिटी के प्लेयर्स इधर उधर हुए। बाकी हाँ, एक चीज बता दूं, आपका नूजी जो है वो ऑफिशियली लीव करके गया है। बाकी रेस्ट ऑफ द टीम्स आर सेम। मिसकंजप्शन मत लेना भाई। देखो अग्रेशन तो है टोनी भाई का। ट्विस्टेड माइंड टॉप पर है। क्रिप्टो ने 17 किल्स किया है 7 मैचेस में। #1 है ये भाई। पीएल में जो टीम क्वालिफाई होंगी वो किस में खेलेंगी फिर? ब्रो वो इसी में खेलेंगी, पीएमडब्ल्यूआई। ये सारी टीम्स चल रही है, बैटल चल रही है पीएमडब्ल्यूआई। हेल की टीम आ रही है भाई। सभी टीम का गाइज इंट्रोडक्शन हो रहा है। लाइक हर एक टीम एक एक बार आ रही है ना, तो ये इंट्रोडक्शन हो रहा है एंड देन ट्रेलर बाजी दिखा। ग्रैंड फाइनल्स डे 1। तो भाई वैसे पीएमएसएल इक्वल टू डीबीएस। पीएमएसएल नहीं है ये, डीबीएस है, डीबीएस। डीबीएस कंपटीशन है। ओहो हो, गेट स्लो, नाइस नाइस भाई। अग्रेशन तो सब में ही भरा पड़ा है। ओ भाई, पाउडर ही गिरा दिया भाई का पूरा। अरमा इज नॉट एग्री। हेल प्ले स्मार्ट पोजीशन गेम। ओके, प्राइस पुल क्या है? प्राइस पुल ब्रो 2.5-3 लाख $US का प्राइस पुल है। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा होता है। 2.5-3 लाख कर लो आप कन्वर्ट करके, बहुत होता है भाई। अब तक पूरे पीएमएसएल में अलग लेवल पे खेली है, आज देखते हैं। यस बॉक्स, मिस्टर डूम, बॉक्स गेमिंग, यस फेज इस क्लैन, चिल बंदे बिल्कुल। मेला इन्फिनिटी मिला। फेस के बंदों की एंट्री, फेस की ये मैच तुमने देखा है लाइव? अगर मैं गलत याद आ रहा है, देखा है। ओहो नाइस, क्या स्पॉटिंग है भाई। बॉक्स गेमिंग भाई, पीएल में जो टीम क्वालिफाई है वो किसमें खेलेगी फिर? तो वो पीएमडब्ल्यूआई में खेलने वाली है सब। तो हर एक टूर्नामेंट से टीम डब्ल्यूआई जाएगी, बात खत्म। यहाँ से 2 टीम जाने वाली है जो टूर्नामेंट, वो कोई भी टीम हो सकती है, पता लग जाए। नेक्स्ट डिफॉल्टर, हेलो ब्रो, क्या हाल चाल? पबजी मोबाइल शॉटगन लीग। फ्रोजन भाई, एग्जैक्टली, गॉट इट। मेला नीला हो गई भाई, इंट्रोडक्शन आएगी। चलो गाइज, फाइनली इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म। मतलब मैच हमारा जल्दी स्टार्ट होने वाला है भाई। पल ग्रैंड फाइनल्स कब है? पीएल ग्रैंड फाइनल्स 19th ब्रो। 19 पबजी मोबाइल शॉटगन लीग। यस, हेलो क्रिप्टो फैंस, यस्टरडे सऊदी लीग स्क्रिम्स और ऑफिशियल प्रिडिक्ट टॉप 3 पीएमएसएल। ब्रो मैंने तो बोल दिया जिन टीम को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। दैट इज अब की वेम्पायर है, एक बूम है, और एक मैंने कौन सी टीम बोली बता देना गाइस। बाय द वे गाइस, ये ग्रैंड फाइनल्स चल रहा है आपकी स्क्रीन के सामने। 14 to 16 पॉइंट्स टेबल जो नए वाला है वही रहेगा। फर्स्ट को 10, सेकंड को 6, थर्ड को 5, 4, 1, 0 एंड एलिमिनेशन पॉइंट 1 है। टोटल प्राइस पुल गाइस 2.5 लाख, मतलब 50 लाख डॉलर है। 2,50,000। तो एक बार कन्वर्ट करके बताना 2000, 2,50,000 $US कितना होता है आपके रीजनल्स में।
भाई हेल एंड डीएक्स ऑलरेडी गोइंग टू पी, तो उनका जो स्लॉट है लाइक तो नेक्स्ट डिजर्विंग टीम को मिल। फॉर एन एग्जांपल अगर हेल टॉप पे आती है, बूम टॉप पे आती है, जो ऑलरेडी पीएमडब्ल्यूआई के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, रैंक के अकॉर्डिंग जो प्राइस पूल है वो उनको उतना ही मिलेगा, बट जो आपका पीएमडब्ल्यूआई का स्लॉट है वो नेक्स्ट डिजर्व पास हो जाएगा। इस बॉक्स क्वालिफाइड, यस बॉक्स इज प्लेइंग, बट हेल एंड डीएक्स ऑलरेडी, यस पबजी से बैन करना चाहिए शॉटगन को। डार्क हॉर्स उस परसिया, देखो भाई क्या सीन होता है। तो गाइस हियर वी गो, द बोनस पॉइंट्स का ओवरऑल सीन आपको देखने को मिल रहा होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 11th, 10th, 11th, 12th, आई डोंट थिंक मुझे अब इंट्रोडक्शन देने की बोनस पॉइंट के लिए। आप सभी लोगों को फेमिलियर होंगे किस तरीके से बोनस वर्क करता है, किस तरीके से ये पॉइंट्स मिलते हैं, कहाँ पे इसको परफॉर्म करना पड़ता है, क्यों मिलता है। आपने हमारे साथ पीएल देख लिया है, बंदो पीएमपीएल में बोनस आ चुके हैं, मैं सारी चीज़ें ऑलरेडी एलैबोरेट कर चुका हूँ, तो आई थिंक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बंगाली बैटमैन बोले 2 करोड़ प्लस होता है, एंड यस गाइस 2 करोड़ प्लस इज द ह्यूज अमाउंट। अगर आप देखते हो 2.5 लाख US डॉलर, सो आपने देखा होगा में इतना प्राइस पुल नहीं था जो आपके पीएम पेन लीग्स। टीबीएस को बैन नहीं, फिर से ड्रॉप वेपन कर दे पबजी वाले, अरे अरे थानोस चाय पी ले। लो भाई पार्टिसिपेंट टीम भी आ गई। आई लाइक द स्टाइल हेल प्ले मिड सर्कल एंड मूव, यस यस हेल इज टू गुड, बट लेट्स सी ये अब क्या होता है, क्योंकि ग्रैंड फाइनल्स की परफॉर्मेंस भाई भाई पीएमपीएल प्राइस पूल का क्यों है कि मेन टूर्नामेंट अब पीएमएसएल हो गया ना। अब पीएमपीएल्स का इतना वेटेज नहीं है, पहले पीएमपीएल प्राइमरी टूर्नामेंट था, बट अब नाउ पीएमएसएल इज द प्राइमरी टूर्नामेंट एंड सेकेंडरी टूर्नामेंट विल गो पीएमपीएल। भाई निगमा का रॉफ गाली बहुत दिया, डीबीएस मेटा सही नहीं है। क्या? ये क्या चल रहा है ब्रो, इट्स अ पीएमएसएल ब्रो, फ्रेंचाइज लीग, फर्स्ट फ्रेंचाइज लीग फ्रॉम इंट्रोड्यूस ग्लोबल सीन। तो हियर वी गो गाइस, इनिशियल फाइनल्स डे 1 रैंकिंग जो टीम्स को मिली है अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस, जो बोनस पॉइंट्स है। अगर आप देख रहे होंगे फेस को यहाँ पर इनिशियल पॉइंट्स मतलब बोन हेड स्टार्ट पॉइंट मिला है 20, हेल 27, देन वीपी 20 एंड बीटीआर को सबसे कम है क्योंकि वो 16th रैंक पे ओवर करी थी। ओवरऑल अगर आपने देखा होगा रैंकिंग के अकॉर्डिंग ही बोनस पॉइंट्स या इनिशियल पॉइंट्स दिए जाते हैं। आरआरक्यू 22, Shine Like Diamond 21, Bacon 20, Boom 19, Yoodo 19, Alter Limax 18, Sam9 18, VOIN 16, The Savior 16, EVOS 16, Fox 10, and B. So these are the top 16 teams with the bonus points. Like PL भी जब होगा ऐसे ही आपको bonus points देखने को मिलेंगे. Higher the rank, higher the bonus point you. PL में तो 25 पॉइंट मिलने वाले हैं टॉप टीम। स्टार्ट नहीं हुआ क्या अभी तक ब्रो, बस जस्ट अब स्टार्ट होने वाला है, आज पहला दिन था, थोड़े डिलेज हो जाते हैं। टीम समरी हेल वर्सेस फेस की एवरेज एलिमिनेशंस दोनों की सेम, एवरेज डैमेज ज़्यादा है फेस का। टॉप 5 रेट अगर आप देखते हो हेल का ज़्यादा, एवरेज थ्रोएबल यूज जो करे फेस के ज़्यादा है, इट्स 22 एंड 20 विद द हेल। लीग स्टेज की टीम समरी आ रही है भाई। पीएल का है 19 को, पीएमडब्ल्यूआई का 24 करोड़ का है, यस भाई 19 अप्रैल है पीएल। वेम्पायर का अग्रेशन को कौन रोकेगा, देखो भाई आज क्या होता है, हेड टू हेड प्लेयर मोर मैन विद हेड हेल गेट्स लो, एवरेज एलिमिनेशन 1.4 हेल का ज़्यादा, एवरेज डैमेज हेल का ज़्यादा, ग्रेनेड एलिमिनेशंस पे 2 नंबर कम एंड टीम कंट्रीब्यूशन पे 1% कम गेट्स लो। Overall stat, overall the key player from the defense, different and various teams like FaZe Clan and Getslow from Hale. ब्रो पीएमपीएल टर्की में क्या ही कंपटीशन हो रहा है ब्रो, कंपटीशन तो भाई हर एक रीजन पे अलग ही लगेगा आपको। अभी यहाँ देखोगे आप बोलोगे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यस कंपटीशन तो हर एक रीजन का ही अलग है। देखो आगे क्या, लक्सी जक्सी कर लेना पीएमडब्ल्यूआई के लिए। देखो भाई हाँ हाँ, फर्स्ट मैच स्टार्ट होने देते हैं। मुझे नहीं पता था इतना डिले होता है भाई, अगर इतना डिले ही स्टार्ट कर
भाई टर्की 3 टीम्स क्या खेलती है इस पर, टर्की में होगा या पीएम? यस ब्रो, टर्की में इस बार पीएमजीसी, बाय द वे टर्की द कंट्री जहाँ पे पीएमजीसी होने वाला है इस बार का लाइव। पीएमडब्ल्यूआई तो सऊदी होने वाला था बट वो वहीं पे होगा। यस काशिम भाई, इस बार टर्की में ही होगा। यूआई फ्रॉम गीक फैमिली, यूआई फ्रॉम गीक फैमिली, मलेशिया से है यूआई बट इंडोनेशिया में खेलता है। बीटीआर इज प्लेइंग टू लाइक एंड कॉन्ट्रैक्ट भी हो रखा है उसका। आज गेम जल्दी है क्या ब्रो? पीएमपीएल साउथ एशिया तो शाम को ही होगा बट अभी पीएमएसएल चल रहा है। धोनी के बिग फैन सर। लो भाई, ऑल द टाइमिंग्स, पहला मैच बूम्बा में शैनॉक, मतलब मिस नहीं करने वाला मैप है, अनप्रिडिक्टेबल मैप हमारा शैनॉक। देखते हैं पहला ही मैप, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुआ है हमारा शैनॉक के साथ। आय हाय, बट इफ गीक फैम क्वालिफाइड अगेन, नथिंग, अगर होगी तो हो गई, फिर क्या करेंगे। हाँ, गीक फैम ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है ब्रो पीएमडब्ल्यूआई के लिए। लॉल, गीक फैम इज ऑलरेडी क्वालिफाइड गाइस, मलेशिया से पीएमपीएल से ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी। लो भाई, मैच होने वाला स्टार्ट, बुला लीजिए सबको। टॉप शैनॉक परफॉर्मर्स ऑफ योर्स, जो भी है आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं। वेम्पायर, बूम, ऑल्टर ईगो, लाइमैक्स एंड हेल। एलिमिनेशंस सबसे ज्यादा, लाइक ओवरऑल अगर आप देखते हो सब कुछ मिला के, डैमेज, सर्वाइवल को मिला के आपकी वेम्पायर टॉप पे है, लेकिन सबसे ज्यादा एलिमिनेशन बूम के है शैनॉक के अंदर, ये अपने आप में एक बड़े नंबर है। देन ऑल्टर ईगो, लाइमैक्स 51 एंड हेल के 54 एलिमिनेशन है। हाईएस्ट डैमेज अगर आप देखते हो यहाँ पे ऑल्टर ईगो लाइमैक्स का है। ऑल्टर ईगो लाइमैक्स आप प्रेफर करती हो तो ना थर्ड आइलैंड पे, थर्ड आइलैंड की टीम यहाँ पे हाईएस्ट डैमेज एंड ऑलमोस्ट डिसेंट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड #3 शानो की परफॉर्मर, तो बात होगी गाइस। चलो गाइस, मैच इज अबाउट टू स्टार्ट विद इन फ्यू मिनट्स। वॉइस हम उठा देते हैं। आ जाओ गाइस, सबको बुला लीजिए। भाई बीटीआर के बारे में बोलो। यूआई इतना अच्छा खेला पीएमजीसी में और मलेशिया पर बीटीआर में ऐसा क्यों? बीटीआर starting to question about TBS. Is it supposed to be there still? Because already it feels like, you know what, just give it back into the airdrop or, you know, the box again. But when it comes to our predictions here today, by this is SA4 going to be MV and interesting. ST. Okay bro, when PL Grand Finals start 19th of April. अयोगी bro, इधर point का क्या सीन है? पर kill first point and say no bro, इधर zone का global पे कहीं भी सीन। By the way guys, cast your predictions on your screen. आपकी क्या prediction है? Chat के अंदर जल्दी से करके बताइए। First match का chicken dinner according to you कौन लेके जाने वाला है आपके according? तो एक बार comment करके बता दो। What's his strategy of doing substitutions? Because Boom was the most substituted team inside of the league, and all he says was like it's a secret. Bro, Mongolian player can play the from substitution still Nepali continues teams. in for Boom Mongolian in player this can grand play finals, but it looks like we have a little bit of a difference खेल here. सकते हैं, but language barrier GEEK रहेगा and Yoodo Alliance. What's your thought? खेलने में तो Yoodo खेल सकते हैं। Alliance? There is a rule on PUBG Mobile I mean, for Yoodo Alliance, I do see a bit कि of कुछ प्लेयर उस रीजन के होने चाहिए, कुछ प्लेयर आप ऐड ऑन करें। because एक they might be not up there all पर्टिकुलर the time, रीजन but at मेंशन least they इस consist रीजन के themselves in प्लेयर the जाके खेल middle सकते हैं। pack almost every single तो week. हैंडबुक देखना So आपको मिल जाएगा। I do have trust in them getting themselves at least a better performance. Guys, ये जो caster है ना down to 3 more days, because they never यही drop. caster But the problem with them is best caster never इसकी। pushing those performances अच्छा, तारीफ up in the करते हैं। last minute. So Point I want to summary see if they can बताओ भाई। actually Point accept summary those same है। challenge coming from Yoodo Alliance to just फर्स्ट have मैच अभी this स्टार्ट win होना है when it एंड अभी comes लाइव to a रैंकिंग आई very जाएगी। few days short of आपको इशू नहीं होगा। Yeah, Stay and for tuned, myself, stay it's going to be GEEK We'll get SLATE the points instead. So for me, we all know that GEEK SLATE has good performances. They've shown it before. Even Vampire in get PMG. first chicken. देखते हैं भाई। Before this, Happy New whereby Year they to top all their भाई। group. Happy New Year Yuva, I wish you the same. During I the wish you the league same in man। बहुत PMSL, सारा प्यार। there were a lot of things happening for GEEK SLATE. Started players PMPLC burned championship नहीं out, होगी tired. That's why we saw some substitutions that we wouldn't have expected. Obviously We bro, even C got that championship wasn't को cut feeling down well करा है ना inside the PMSL। days. So with What a this question। few days rest, 4 days to be exact, hopefully they'll be able to recharge themselves and be prepared for the grand final. This is where we should be able to see the best out of GEEK SLATE.
I think today will be probably the best day we get to see the best of the best for the teams because पहला चिकन we डिनर saw how मुंबई many इंडियंस like लेगा example अरे one of the मुंबई numbers इंडियंस or क्या one of the इंडियन names का that आज I मैच want तो to put नहीं up क्या down नहीं there is आज the मुंबई का GEEK, मैच right? The Xaviers. We haven't seen the best of them yet. We've seen slightly a best of PERSIJA पोस्ट EVOS. अरे 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 क्या नाम है आपका विद्स and भाई second week for 30 PERSIJA सेकंड विद्स EVOS. But आपकी it's सोच just भी being 30 सेकंड वाली है भाई sort आगे of देखो shut down entirely when it comes to the like ending of the the league effort they are itself. I putting do bro want I to see think if they appreciate just trying to कि downplay जैसा भी it, कर to रहा है save एफर्ट their तो दे रहा है strength when it एटलीस्ट comes to the घर पे grand बैठ के finals. Because कमेंट तो this नहीं is कर रहा है where वो you place all तो your एफर्ट को best cards अप्रिशिएट out करो there. Even though it's just day one of all 3 days of the grand finals, you're going to walk down to until 16th गुड लक ऑल प्लेयर April. गुड लक टू ऑल But ऑफ यू you have to चलो have a भाई great start. It's going हियर to वी set गो a tone प्लेयर्स for the ऑन योर entire स्क्रीन वेम्पायर के डेक से स्टार्ट करा है कास्टर्स सिपिया हो गया एसटीई हो यूडो अलायंस कोई नहीं बताता हूँ रुक जा ऐसे बोल रहा भाई बोले कोई नहीं बताता हूँ Persia Taiwan. I am supporting Nepali teams, but good luck to all the teams. जी बाबा जी ये क्या था भाई कैमरा भी शर्मा गया कैमरा भी हैक लैग मार गया तो 30 सेक वीडियो चलो और कास्टर के नाम बता दो इंग्लिश कास्टर्स के नाम बता दो और इंडोनेशिया पे चलो आ जाओ और कास्टर भी चलो किसी 2 कास्टर का नाम बता दो इंडोनेशिया पे प्लीज अगर आपने ये चीज लिख दी है तो आ जाओ ईस्ट और वेस्ट वेम्पायर इज बेस्ट दे गोना डोमिनेट देखो फेज भी बैठी है देख रहे हो गुस्सा देख रहे हो आप मोरमैन का गुस्सा देख रहे हो मोर बना के मारेगा मोरमैन अभी देखना भाई क्या बात है पीएल वाली आत्मा आ गई भाई सब में पीएल की तरह कंसंट्रेशन भाई कितने ओ भाई ये भी सही है कर दो भाई स्टार्ट VSPO लेट्स गो टू क्लाउड इंग्लिश कास्टर टॉप 2 प्रिडिक्शंस बता चुका ब्रो हो गया मैच स्टार्ट आई गेस Jol and Blank are the best casters. Winter is कास्टर से प्यार हो गया कि भाई ओके भाई मॉड वाले स्पैम करने वालों को टाइम आउट दे दो प्लीज मिल जाएगा ज्यादा टेंशन ना लो आज पुनीत भाई हमारे फुल एक्टिव बाजी में है तो चलो भाई भाई फुल चिल प्लेयर भाई फुल भाई पीएमजीसी के अगर पीएमजीसी से कंपेयर कर दो पीएमजीसी पे कितना सीरियस माहौल होता था याद है पीएमजीसी का माहौल भाई इतना चैन नहीं होता था पीएमजीसी के टाइम पे तो सब वही ऐसा लगता है सन्नाटा छाया हुआ कुछ होने वाला है भाई हर एक मैच का मूवमेंट 8982 जॉन एलन एंड ब्लैंक आर भाई क्या बात है कैमरा रुक गया एंगल इवोस में आते ही लक्सी जक्सी पे शर्मा गया कैमरा हमारा चलो भाई काउंटडाउन लग गया मैच स्टार्ट होने के लिए मैच स्टार्ट होने के लिए गाइस आपके 58 57 56 55 54 लेट्स गो बॉयज 300 लोग देख रहे हैं अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो सो फर्स्टली मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फर्स्टली वी आर गोइंग टू स्ट्रीम PMSL 2023 आफ्टर दैट वी विल शिफ्ट टू PMPL साउथ एशिया जो 5:30 बजे से आपके मैचेस स्टार्ट हो जाएंगे तो स्टे ट्यून्ड सारे मैचेस कवर करेंगे PMSL के कुछ मैचेस मिस होंगे प्रायोरिटी पे हमारा PMPL साउथ एशिया ही रहेगा मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ स्टार्टिंग पे ही PMPL की वॉच पार्टी ब्रो मैंग भाई PMPL की वॉच पार्टी होगी बट 5:30 बजे स्टार्ट होगा लेट्स गो एक साथ काउंट डाउन करनी है हमारे साथ ठीक है 10 में जब आएंगे सारी ऑडियंस चैट हमारे साथ एक साथ काउंट डाउन करेंगे लेट्स गो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Let's go PMSL Grand Finals Match 1 Day 1 on your screen. वॉइस हमने उठा दी है ज्यादा उठाना होगा आप बता देना. Game start. Shanok is the first match, the unpredictable match.
teams Flying drop back out करना into start Sauna. कर Are चुके you guys ready? Buckle up because there's gonna be your finals in मेरे को day voice नहीं 1, the सुनता है first ever desktop match voice of बता the देना playoff ठीक है itself. बढ़ाना है At least let's this time go we're having guys a good PL start finals with that 19 से type है of flight path coming ये up from स्पोर्ट्स top देखने की up आदत to मेरी the side of डाउनफॉल का cow just कारण on the है left side अरे of अरे it. अरे But नहीं it's always about the circle now. The flight path make the players reach everywhere is within their reach. You can drop whatever they fancy, whatever they want to go. Let's It's go within Mumbai. their reach for those vehicles. Let's- It's pretty much distributable for the player to drop all over the map. We want some drop clashes, but the problem is, did they drop themselves where the circle will be at? Especially if the circle comprises of Vulture Islands, that's going to be a tough start for them. Yeah. Always like this, time where will it इस go टीम ने rhythm बहुत ज़्यादा that the impress teams करा will है need लीग to स्टेजेस के actually अंदर unlock. जैसा मैं That's हमेशा happened से that बोलता हूँ way. शॉर्ट So टूर्नामेंट anticipated एक circle, but I'm also डिफरेंट looking चीज at है Sahmi. Look, अभी look कंपेयर at मत करना so we have and here VOIN we and go GEEK first Slate clash on in your the screen same guys compound. GEEK Bantai, on the versus other hand, VOIN or Camp on your Charlie screen is empty. साहमी के अंदर ये So टीम दिख रही है that's आपको vacant, but चाइल्ड somehow डायमंड काफी it ज्यादा seems to पास be है attractive for RRQ these two के teams. यहाँ पे भी हो सकता है Just कि अर्ली anticipating आपको the चीजें circle देखने right को now, मिले and if it's ऑल्टर like रिवल three IMAX फर्स्ट islands, जोन अभी well, क्लोज ही नहीं हुआ है it's going to काफी be a ज्यादा big पॉइंट headache. निकाले But थर्ड let's start आइलैंड the की big टीम head ने out of हैशटैग Sami. थर्ड रैंक पे चल रही है लेट्स गो कौन अगर आप देखते हो मेन आइलैंड को यहाँ पे उसने फेवर करा काफी सेंट्रलाइज सर्कल आप बोल सकते हो बट सेकंड शिफ्ट मैटर करेगा कि वाटर शोज वाले शिफ्ट्स हमको देखने को मिलते हैं मैक्सिमम हमने प्रोबेबिलिटी पे देखा है वाटर शोज की जो शिफ्ट्स वो वाटर शोज तरफ ज्यादा प्रेफर करते हैं ओके मीनवाइल First contact being made, but nothing being knocked क्या out. चल रही है just राकेश yet. भाई एकदम बढ़िया Looking at वीरे GEEK, they do realize they need those weaponries up, they need those gears up. तो They're फर्स्ट taking ऑफ ऑल their गाइस ये time, आपका पहला ही slowly, मैच है cautiously एंड जो भी taking पॉइंट्स all आपके the स्क्रीन के side सामने आ रहे हैं राइट हैंड all the साइड side दे आर builders, द बोन while फॉर VOIN हेड doing स्टार्ट the पॉइंट same. But ऑन the द problem बेसिस is, ऑफ do लीग they परफॉर्मेंस try to disengage? रैंकिंग के अकॉर्डिंग मिले They want to go and 28 commit पॉइंट to फेज this के fight. हेल के Because speaking 27 of these two वीपी teams, के especially GEEK 23 Slate, they have more टिल to prove बीटीआर आप and अपनी more स्क्रीन के सामने देख drive सकते हो than दीज VOIN आर द due टीम to their द रैंकिंग अभी तक performance कोई मैच back नहीं in the खेला गया league है ये was पहला ही not मैच so है जो आपकी great. स्क्रीन So this is सामने where they हो रहा want है to push themselves up. Yeah, and they only have 1 point difference between points. माइक्रो भाई को so अगले catching up is पीएमजीसी not gonna be that में hard to बच्चा them. हो जाएगा माइक्रो VOIN भाई की still शादी हो गई looking to है find poor performance from week number 1, getting a second place spot and holding on to their number spot for एसएससी लाइन होगा majority अफनान of भाई the रूमर्स है week. पता नहीं And if they're ऑफिशियली able जब to तक नहीं really आता find क्या their ही form बताएं again, based out of that week, then well, they will be a strong contender for that number 1 न्यू spot. पॉइंट सिस्टम The points, of course, they're not too far apart. Like FaZe Clan and बट QEON फर्स्ट एंड 21 सेकंड सर्कल point, वन and then एलिमेंट ग्लोबल में कहीं 4 भी टू points with एलिमिनेशन का पॉइंट Vampire, सिस्टम है 1 point between Vampire and ग्लोबल RRQ, अगर आप and it कोई just भी goes देख रहे हो and टूर्नामेंट goes down. नॉट टॉकिंग अबाउट द So we पीएल can सिर्फ expect पीएल that के अंदर ही one फर्स्ट और सेकंड game सर्कल पे could डबल really ग्लोबल के shuffle अंदर the सिंगल charts. पॉइंट I agree. Every single game is a dime right now. Speaking of GEEK, they're starting off with this bonus point at 15, while VOIN starting off around 16. There's going to be 1 point difference. This is what we talked about back then, Cloud. The bonus point, the initial points coming up from those league will not impact as much as the previous few seasons due to being cut off to 50% of it as a start. So it's within one map राजेंद्र for दास these भाई guys. They इस मैच can के just बाद याद change, दिलाना turn the मुझे tide over. For FaZe, maybe it's a bit more comfortable on the side of a top 5 up there. But those down there, talking about especially Box and BTR, they have to have this. They have to force those fights. They're halfway or just half क्वालिटी points शेख भाई difference, फुल or क्वालिटी make it like यही है 8 to फुल जो like हाईएस्ट what, 10 क्वालिटी है points जो different between क्वालिटी हमको 14 to 16. हाईएस्ट So क्वालिटी they है probably वही will try क्वालिटी to force those fights early on. On the side of GEEK Slate and VOIN, they're just 1 point difference as a फुल start. क्वालिटी Now, this definitely going to अरे give वो आपको फुल extra मिल advantage. वॉल्यूम for प्लस those करो actually प्रवीण start भाई to gain those elimination, but they cannot extend this fight too long. आई थिंक इतना Yeah, well, सफिशिएंट हो because the circle is like way on the right, so they need to cross through the usual choke points that we normally talk about. So in order for them to do that, and also not to take maximum damage from the blue, we need to finish this fast. So far, both teams don't seem to be letting go of Sami. पॉइंट्स में And फर्क क्यों है this is ब्रो of course the first लीग में game, अच्छा so they खेला want उसके अच्छे to make पॉइंट their वॉइन spam मार्जिन point करके inside of Sami so that they can पहले मेरे को लग this रहा area बिक्का in पाजी the हमारे following sandbox पाजी इज tomorrow. अबाउट But now VOIN is going to push it onto GEEK उससे पहले Slate. मेरे को ऐसी फील आ रही है कि Members of मिक्का GEEK पाजी Slate नॉक होंगे या are at Mika with his nade. If it lands onto one VOIN, GEEK Slate can push. Well, they're not willing because tomorrow is still going to be another semi fight for these two teams. Whoever defeated right now, they will have to give away Sami as a start for tomorrow. So it's definitely a lot of statement just by winning this sort of a fight. For VOIN, they are definitely
wanting to go for. There's no way they're going to bow out from this fight, seeing as for GEEK SLATE, how they reposition themselves. And Zilin, the one that actually be the anchor for them, will be the one that actually getting those off angles and work out through those flanks. But will they spot Zilin at this point? It's not actually giving away his position. Here comes the first contact. Mika prep up his nade, hoping it will land on a 4. This will definitely not VOIN wanting themselves clustered up. It's a very dangerous game they're playing. Bro, इससे ज़्यादा मैं बढ़ाने नहीं वाला. They cluster up, that nade could take down 2 at once. So it's going to be a risk there. But now we see a good spread here between these two, though. Moderator जो भी available है, will be broken as the zone will arrive onto them. That nade from Mika will not land onto anyone, but it's getting closer and closer to Lapar. He doesn't know where Lapar is at. Talking about overstanding, the Blues are definitely shrinks now, burning them alive, but at least it's still the first stage. So they can take their time still. Hopefully they do have enough health utilities, which I see none on the top of Mika right now. He got nothing, not even a bandage on him. Now I'm waiting for these guys. Did they even have enough resources to last this fight long? But here comes the DBS jumping straight out the window, down to the wall and the ground. But VOIN, bit of a trading to do 1-2-1 for the trades. A base team are running dry, nothing on the side with those first 8 and bandages. Now they have to worry themselves if they're being burnt off, even though it's the first stage, but it will hurt as much. Oh, Lapar, he checked his corner, so he know damn good is there. Alva will be the one to knock him down. They go up to the second floor. Zilin, low opportunities. What can he do about it? GEEK SLATE has to go down and look at the taunt coming in from VOIN. They want Sami for themselves. What a hit! Why? It's going to be a mental hit game movement definitely for these guys. Bye, will try to PMSL. shake up GEEK SLATE. They lost the entirety of it. I just hope why the pieces back together, have it another go for the next map. देखना पड़ेगा आगे भाई और drop clashes करवा दो. GEEK SLATE at 14, sorry, at 16 spot. We need more drop clashes, guys. एक और Shannock होना चाहिए था. मजा आता. Nothing out of a valley from those standoff. First game है, yes bro. It's a first game. आरा ना लिख के day one, match one. He'll spot it RQ. They heard the audio queue. They know definitely okay, RQ is running to the side. Guys, but are they closing in the Most probably distance? centralize. Now Tiger open up with those welcoming grenades out. Definitely giving away his position. How do Tiger and the rest of it will respond to this entirely? Because right now, Hale's the one that actually on the lower grounds. RQ do have the high grounds. If Tiger actually didn't pop those nade up, they definitely have no clue that the rest of Hale is actually भाई यहाँ पे ना रीजन का कंपटीशन चल रहा है पता है मैं एक बैंटर्स देख भी रहा हूँ I don't know स्क्रिप्टेड है कि क्या है रीजन का बैंट वो आ रहा है मीनवाइल एंड लाइक डायमंड देखकर ये रीजन फाइट हो रही है पर इंडोनेशिया के जो बंदे वो बोल रहे हैं कि वी आर द बेस्ट थाईलैंड बोल रहा है जैसे बोल रहा है कि हम डोमिनेट समझ रहे हो जैसे इंडोनेशिया थाईलैंड मलेशिया यहाँ पे इस लेवल का कंपटीशन be a worthwhile fight for them because they numbers anyway, and we're still at stage number 2, meaning that since they're on the main peninsula, there's still a lot more options for them to take. Bacon time, I do scouting. By the way, guys, ये land भी हो रहा है. याद है ना अभी पीछे जैसे land में probability that they will just leave this. After land वाला moment ना हो जाए, but that was the craze. भाई adrenaline rush. Players के high हो रखे हैं. This is what I love about the Titans. You realize end scene है भाई end scene. PMSL end scene. We are in this guys एक और they know where they stand. They have the discipline to pull back and fall back and go for a retreat, reassess, regroup, have another go. That's the thing about the Titans. They are disciplined enough to know their strengths and weaknesses. How we witnessed coming up from GEEK SLATE just now, they were forcing the fight too long. Even though they lost a couple of men early on, they still. अरे नहीं वो अपना लक्सी ने वेंटर भी दिया था ना रयूगा भाई कि हमारी टीम बेस्ट इंडोनेशिया कुछ सीन है और मैं मीम भी देख रहा था इंडोनेशिया की इतनी टीम आई कुछ ना कुछ तो बेंटर चल रहा है कुछ ना कुछ तो है इनकी कम्युनिटी में अपना ही चलवाता है देखो हम ज्यादा अपडेटेड नहीं रहते तो मैं चीजें देख रहा था. I think it's probably going to be PERSIJA. Yes, PERSIJA EVOS. But I don't know if they have any clue there's going to be vampires this side coming from PERSIJA. Feels like now they do. They heard the audio queue, yeah. But Newsy just going to go back with the rest of the team, I guess. Yeah, he's not going to take that fight because from his position, low ground to high ground, without teammates together with him, so he will be at a disadvantage. Plus, he does play the support role, so he needs to play a bigger role of being into better positions to be able to support teammates, not to take South Asia, yes. fight Already by इसके बाद South Asia 5-5 so that's a good call there by South Asia पे. I mean, I'm liking how Newsy has how
what's the right word for it, has done this evolution for himself from a main fragger to a support, and he executes both roles very well. I agree. I mean, like, one of the main reasons we're talking about vampires and one of our predictions here today because of Nizi and Tony. Okay, I do want to see how they work things out when it comes to the grand finals. अच्छा We do have a couple guys, of ये banter start हुआ था पता है Indonesian Indonesian and Malaysian teams are not that good ऐसा कुछ सीन हुआ था फिर लक्सी और जक्सी ने एक banter पे दिया था कि we are good ऐसा कुछ सीन था मेरे को सुनने में आया था मैंने लक्सी का एक इंटरव्यू भी देखा था कुछ ये banterबाजी भी चली हुई है इनकी कम्युनिटी पे अगर Indonesian टीम जीत जाती ना PMSL वो भी एक अलग aggression आपको देखने को मिलेगा they have to cross by none, but the net circuit will be right on top of bomb. There's so many roads down there. It's not just that. There's so many teams already parked themselves in the center. One of it is going to be BTR. Nova कहाँ है bro? Nova 19 taking को themselves at the junction and not going to move anywhere zone the savior They got BTR themselves a solid compound to work with, and it's right on top of bomb as well. Just like how I mentioned, coming from north. It's a clear pathway for Boom for now. This isn't a great start for them, but Alter Ego, the navigation towards the circle will ripple up those coming from the north. Well, Razy will be rippled by Winnie then. It's going to be an easy knockdown by Winnie. Be an elimination secured here for Box Gaming. It's going to be first split for them. And for Boom, at least the rest of them are in the circle. I guess what Razy was trying to do is that he was trying to kind of like scout out or maybe to realize that he needed a little bit more loot. Now Capone spots out Hexas, 50% of health left. Hexas knocked down from afar by Lev. It's going to be Capone trying to finish off the job there. Problem is, it's too far from them. They're actually trying to spot out the other players of Boom. So many vegetations in between. You're going to hate those trees sometimes. You notice that you can see their feet, you can see the silhouette moving. The tree is just in the way. Rabies is in the watchtower, a bit too far apart from the rest of the Axe. And I'm surprised how DS taking so much confidence into this first map now. Just all men by themselves so far coming from Rabies. He's probably just scouting out the perimeters, but it's a BTR में कौन-कौन है Ryzen कहाँ है सुनने में आया Ryzen और UI को bench किया है देखो आगे potato but Alter Ego's got a box after they pick a fight against Boom. This is what I mentioned before. Alter Ego will ripple up those come up from the north. Boom, no for भाई Rosemary कुछ alive रहना बहुत जरूरी है अगर Alter Ego coming just recently haven't got a clue there's going to be box gaping this side. But on the side of Potato, it's still within a reach for him to actually save Octo. It's going to be less than 5 meters apart. But Winnie, who will save him now? Nobody's nearby. Yeah, they don't have an opening yet. If Boss Gaming just try to pick up Winnie, then they could be shot down. Because right now, Alter Ego is over Winnie, taking a hostage. Octa is down, but he should be in a good position for his teammate to pick him up. Just trying his luck to end Octa, but unconnected. At the same time, we can see that Newsy. Let's see why PERSIJA, EVOS, we knew they were close by each other the last time we saw them. Back on side of Bacon time, SLD and Vampires. We do have Chuanji coming in strong, but Straps! He got stabbed from behind. It's gonna be Gosu and the rest of SLD. PERSIJA makes so much work on the flank side as well. Straps being finished off by Gosu within reach. He can be revived, but the Blizzard is not gonna give any mercy to this team. Tony K trying to wrap things up and going forward and finishing it as rush as he can. But Tony K, he still can actually do so much work. Damage done on the side of SLD. One by one, limb by limb, taken off by the side of Tony K. Even though they've got finished off Stripes and Newsy early Tony K भाई ने game ऐसे पलट दी भाई. And Tony K, how can they wrap things up? Bond squeezing in as the last few circles, but Ravenclaw, he has to make the push. He has to force his fight to make sure that he can actually advance into the safe zone. Well, Quanji, last man, and he's kind of low, but he still managed to get a knockdown to Ravenclaw, and he has a first aid. Should be able to heal himself back in time, but oh no! Wait! Tony K opened the chat, भाई. ये बंदा अलग है भाई. And Tony K ये took down बंदा two अलग है. from ये SLD, बंदा and he had different to है. just finish up the job. That was wow from Tony K. Great timing. But now can Capone pull off another great timing for Boss Gaming? Here comes the rest of Alter Ego. Boss Gaming, they're being boxed left, right, center. They were gatekeeping them before, but Alter Ego advanced forward way faster than they do. And now you rip what you sow. The rest of Box is nowhere to be found. Down to only Shuno's left. How can they actually pass across Alter Ego? There's also teams chasing the tails out of it
from behind his back. VOIN on the other hand, from GEEK SLATE now into DX's hand. There'll be Gatekeep and VOIN slowly losing man. We're talking about down to only one last player left there, and he's barely making it alive out of the blue zone. They don't have enough resources. They barely got himself bandages and first more aids, and more बना रहे and भाई. he has to pass across the पहला भाई entire FaZe अलग route of finishes the निकाल act. रही है. This FaZe is already a top पे चल रही है. victory FaZe for कितने Alba. finishes लोगे? Still VOIN, trying to fight himself BTs out there, उनके but बाद only से one first aid and the that's Savior, it. Lambo Lamborghini. will finish off, but it's out of VOIN, but that's going to be maybe the last play finish off finally. And over down, we're down to only 14 to 12. Make it even for the teams. Low भाई. Well, make that 11. Now that Pmpl has been eliminated by Mela, so it's going to be facing with their second elimination point, but they lost one player. Live ranking is glitched. Right now, they need to reset. They need to move quickly as the rest of FaZe Clan waiting for them to come in. Because होगा 7-9 guys is कुछ close technical by, issues so आ they जाते हैं. gotta technical reposition issues होते themselves to रहते be हैं. कोई prepared दिक्कत की for बात that. नहीं है. 11 टीम्स लाइव है अभी आपकी Comes स्क्रीन के Mela. सामने. We saw पहला the मैच है best आज के of दिन Mela का. wants a bit of victory for शहनाज his का honor. He is टीम्स one of आपकी the top स्क्रीन के सामने आ रही terminators गाइस सारी की right सारी. now. PERSIJA, EVOS, Kill Luxy feed पे taking a EVOS, fight PERSIJA, the Savior, against the Frankie, Axe right now. knocked A bit and finished. messy on The that Savior को side. full भी टिकट So रखी है. scrappy when it Meanwhile, comes to this Ultra map Regular because of Max, the circle Sam9, itself. FaZe, FaZe trying to Edges, play आगे around टीम the है hills पुश there, कर रहे हैं. going for the slope of a hill that's around the latches just to see Ultra if Regular there's Max anybody coming up go from the ho side. ho But ho ho Potato nice. caught by the hands of Potato Sam9. थोड़ा A सा shooting from थोड़ा सा afar, coming backhand पे from जाएगी. flank Ultra entirely. Ego And there's Five always लेना the entry पड़ेगा. fragger Box for Sam9, but they रेड लिया. lost that Sam9 early का. on. Potato रोजमेरी being भाई knocked फुल down फीड as well, फीड coming रीडिंग from चल रही होगी उनकी Alta तरफ से भी. Ego. स्पॉट Here किया प्लेयर. comes Rosemary. Rosemary, Beast Mary, Rose, all the names you can think of. But we can think of Rabbits as well as he gets knocked down by the blue. D-Duck is inside of the zone, so he is all alone here. Probably the last man Okay for guys, D best Savior. friends on your Yes, he's screen. the last BTR man. ऊपर. But look at the team surrounding him. PERSIJA. He's definitely not going to move for now. Praying for the circle to be on Duke. top of him. Duke. Down to prey time now for this guys. Circle's already harder as it is. Hill, a bit segregated. They'll be chased by the side of Yoodo Alliance from the back line. They have to be extra careful. One man knocked down, nowhere near to try to save Tiger. But now they're trying to do the job. Hopefully not being ambushed by Yoodo Alliance and Bacon Tom at the same time. We do have another contender coming up from the top as well. They don't have enough space here for Hill to share this compound with the rest of the teams. Very limited amount of structures in between. With Venturas caught PERSIJA, EVOS. This is great for Hill. And the team's actually inside of the circle already. But FaZe is only Venturas taking on the back line. Alter Ego now going for the rush. Shino's in danger. Oh, Junos running for his life, hoping the Alter Ego can spot him out. He managed to get away, so it's going to be a good run there for Junos. रोजमेरी यार ऐसा बंदा है जो कहीं ना कहीं से फिनिशेस निकाल ही लेता भाई. ये बंदा बहुत ही अलग है भाई. I'm not too sure where he's going to toss that nade, but it's हो okay. सकता है आने But वाले टाइम पे आपको Junos किसी बड़ी now टीम से caught दिखाई दे. in the crossfire of multiple teams. Luckily, he still survives. Still managed to set himself, and he's going to stay put here. The only question right now for Shinos is where to hide. There's nowhere to hide. Left, right, center. There's somebody shooting you. Satar dropping a Kirby on Venturas. After Venturas being gatekeeping in that angle the longest time. Finally shutting down on FaZe's one of the torn at the back. RIQ have to think about how to hide out just to see on Hill, but they definitely find themselves an angle to corner up Hill on the different side entirely. Gasler is way up there, nowhere near to see that, but RIQ just drop just a huge nade onto the side of Hill, and Yoodo Alliance as well. And this is just RIQ sweeping the floor, please. Oh yeah, that's a great nade, but more nade to get 2 knockdowns. Amazing indeed. Yoodo Alliance right the circle, unfortunately eliminated at 9th place without any elimination points. Alter Ego stopping RQ from coming in. But the nade hero being knocked down. The Peko as well, leaving Asa alone. Down to only Tiger to make the play for the entirety of Hill right now. Alter Ego trying to take advantage from the sideline, but the Blues are closing in. They have to get into it. D-Duck being spotted out by Alter Ego. You're trying to pick any sort of elimination they can get, but Asa is just right around the corner. If Potato keeps this going, he can actually shoot down the entirety of RIQ just within his reach. But Rosemary just gonna give his attention fully to the side of Hill, and now scouting out and just want to finish off what? Going forward, pushing in, but Asa is trying to stall for the
team. He's the last member for RQ, but the blue तो zone इसमें is points just add नहीं हुए burning by the him way, alive. eliminations दिखा रहे हैं Barely ना, वो add make it होंगे out. next He ranking tried में to push दिखेंगे। slowly इन्होंने forward to the points side add of on more, नहीं करे but meanwhile। can he reach that safe and sound? Looks like the answer is no, as finally be taken out. And that is going to be number 8 with 3 elimination points for RRQ. The Eagle managed to slip into the circle. And now they are pretty much on the clear. The teams on the other side. But in the blink of an eye, now we are left with 6 teams. रेड फेस बाय थोड़ा सा देख के मुझे एक और लग रहा है एक और बनने वाला है। How far this game can get. Bacon time finish off one more player. Finally out is going to be BTR Satar, but PERSIJA EVOS भाई बॉक्स का ये still बंदा going to देखो go यार, for the वो hunt. उसको They got देखो himself ulti. He क्या got मस्त 10 लेट रखा है भाई, eliminations फिगर right कंट्रोल now भाई। with one knock, with full squad still alive. Indonesian teams coming out so strong when it comes to Sunhawk. They got 3 teams alive right now out of all the remaining team of 6. Redfish dropping and Nate only BTR OP versus could be against PERSIJA BTR side. on your He got screen, himself guys. those elevation to work around. Hardly be spotted by any of those teams, but Saxy get a glimpse on Fnatic. He'll be knocked first, one by one. They're chipping away Alter Ego players, but Octa giving the pressure up. So never mind BTR and the rest of them just got finished by PERSIJA within a flash. Oh, that was lucky there by Hill. 1 2 The 3 ball भाई, hit in 1 the 2 head. 3 PERSIJA। Again, the Rosemary will not miss his shot. He'll take down 2. And it's now 5 elimination points for Rosemary. At the same time, Yoodo on Boss Gaming. He was CJ was Esports the whole time, but they didn't know he's there. मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। But Rosemary and the rest of Alter Ego Triangle being shut down. The triangle formation will have a loophole there once Rosemary being knocked. Internal But damage can मिलने they वाला है। finish the job? Box का last She बंदा knows बचा just now, just led by PERSIJA EVOS. He wants to get a glimpse, a dose on the back line. किसको भी He's taking the trigger discipline at work. And Sheena slowly crawling and proning. Just going towards the other Play side zone of से गया PERSIJA Luxy। EVOS. Well, play zone finish off Luxy, but Peter got Bacon। caught off guard. Ooh। Bacon time just slammed the haggard of Alter आइस Ego. भाई एक ही Nice स्क्रीन में angle there from Bacon time by Boss Gaming. Yoodo took out Luxy from behind. Yoodo, if only PERSIJA was, they knew he was there from the start, but now it's a little too late, and it's down to Zaxi the last match. Yoodo's been pressured, and Yoodo's नहीं taken हुआ, out by नहीं हुआ, Zaxi. नहीं That's a हुआ, revenge नहीं by his twin brother. #3 आई है PERSIJA। Oh, this is going to be Bacon's time game Box out of eliminatory nowhere. hashtag Bacon's four just के been अंदर, quiet, and now Bacon, they have the most Alt member. Rival Will IMAX। they survive? As Octa taking touch Octa, out of Octa the भाई, equation, Octa, down to 2 Octa, players of Bacon। Bacon's time. Eyes and noise. Octa versus 2v1. Bacon। Can It's a 2v1, Octa बहुत nudge प्यारा them? नेट। Oh, that was so close पत्थर ने to बचा the लिया block. भाई। It's just saving the heck out of Octa. Ooh, but look at this. Already 15 eliminations. Octa as well. If you can pull off a clutch here, this is going to be an amazing first round for MSL Grand Finals. Octa now fighting for his life. Bacon time. भाई They ने know angle बना exactly लिया where भाई। it आइस भाई is, हमारे getting नहीं as मान रहे close आज। as possible. आइस भाई Point, मान and ही Octa's नहीं gonna रहे। show himself. आइस Just भाई gonna लेट climb up लेट the tiger, ओह but Octa knocked down to ice. One more to go. Could this be a choo-choo? Oh, and it's भाई ऐसा a confidence reload! चाहिए And भाई। it's down to the last magazine! It's running dry! Noise trying to just reset himself! He managed to do so! This is not great! Go down to the DBS fight! DBS? 1v1! Octa! You DBS gotta have to versus do this. DBS. Noise just spotted out Octa. Noise So just versus within Octa one for the winner tree winner between chicken them. dinner. Let's It's go, down boys. to the DBS game for both players here. And Octa, he's running low in those sprays. You just have to switch it up. Here we Down go. to the DBS Here we go. game. Here we No! go! And he did it! Oh! Octa! खोल Play लिया so भाई। much! Carry his back! OP boy, Alter Ego IMAX, OP in the chat and anti to team Bacon bye. Oh ho 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 ho. And guys, अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो so make sure to hit the like and subscribe to the channel. अब हमारा सेकंड मैच होगा इसके बाद एंड कंपटीशन आपने देख ही लिया है किस तरीके का चल रहा है भाई साहब. I want a VOIN versus Boom once again. Guys, VOIN versus GEEK हमको चाहिए once again. Oh. ऑक्टा भाई 8 एलिमिनेशन भाई. स्वैग तो है भाई का. भाई वो आइस जो नॉक दिया उफ. के बाद जो गया है भाई. भाई ऑक्टा भाई ओपी यार. बेकन का होना चाहिए था यार. लिटरली बेकन का था सब कुछ बट खींच के ऐसे ले गया बेकन से. भाई रुको जरा सबर करो वाली. PL फाइनल 19th को भाई. एंड गाइस 816 लोग देख रहे हैं. अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. बाय द वे हमारा सेकंड मैच
स्टार्ट होने वाला है बहुत ही जल्दी। हाय हाय मजा आ गया। पीएल नहीं है ब्रो 19th को, फर्स्ट मैच डोमिनेशन इंडो। ब्रो वो छोड़ो यार, इस मैच में हमको क्या मूवमेंट देखने को मिले भाई। वॉइन और वॉइन का अग्रेशन, रॉक क्लैश शामी में टीम को जो वाइप करा गीक को, देन हमको देखने को मिलता है यहाँ पे लास्ट में जो भाई ने यहाँ पे करके दिखाया हुआ है भाई। तुम्मा टोनी के ने क्या शाइन लाइक डायमंड को वाइप करा है। ये तो गाइस जस्ट अ फर्स्ट मैच था, इट्स जस्ट अ फर्स्ट मैच। टोनी के हो गया, हमारे को देखने को मिला पर्सिया का परफॉर्मेंस, बीटीआर 1 2 3 करी उन्होंने। थर्ड वन ओक्टा ने जो खेला, अल्टर ईगो लाइमैक्स ने, एंड द लास्ट वन भाई बहुत प्यारा भाई। आदि आदिल तू पागल है क्या? यस ब्रो मैं पागल हूँ। 1v3 नहीं 1v5 देखो जाके, हम बहुत बड़े पागल है। इंडो डोमिनेशन वीपी शॉक, अरे अरे नहीं नहीं भाई टेंशन ना लो, जस्ट फर्स्ट मैच ब्रो, शॉर्ट टूर्नामेंट है, ऑब्वियसली हर एक पॉइंट मैटर करेगा। हाय 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 हाय। बट ऊपर से यार बोनस पॉइंट भी देखो यार, शॉर्ट टूर्नामेंट पे अगर आपको 28 पॉइंट का बोनस लीड मिल जाता है, वैसे फेस को कन्वर्ट करना चाहिए उसको। 20 तारीख अभी तो करेंगे ब्रो, अभी तो करेंगे वो। बाय द वे यस, अभी इट्स जस्ट अ फर्स्ट मैच, अभी जर्नी मेरे बाकी है। ओवरले हटाओ, लो भाई ओवरले, याद मैंने बोला था करवाने के लिए आप लोगों के लिए, तो गाइस इसको भी हटा देता हूँ। कौन से कैंसिल, कैंसिल कैसे करेंगे, काम अभी है नहीं। लो गाइस, रैंकिंग्स आपकी स्क्रीन के सामने, यहाँ से निकाले हैं आपके 27 पॉइंट अल्टर ईगो लाइमैक्स ने, जो काफी ज्यादा उनको हेल्प करने वाले हैं। आफ्टर दैट आपको दिखने वाली है बेकन विद 14, पर्सिया काफी अच्छे 13 पॉइंट उठाए हैं, देन बॉक्स, द सेवियर, हेल, आरआरक्यू, वाइन, फेज, वीपी, शाइन लाइक डायमंड, बीटीआर। इवन दो इतना सर्वाइव करने के बावजूद दे हैव ओनली 2 पॉइंट गाइस, 2 पॉइंट। उन्होंने कुछ फिनिशेस अगर आपने देखे होंगे, हाय 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 निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपको बहुत ऊपर आना है गाइस। तो भाई एंड यूडो अलायंस, बूम, सैम एंड गीक तो सबसे पहले वाइप होगी भाई। बीटीआर को एकदम क्या बोलूं, और राइजन भाई को नहीं खिलाएंगे तो, अरे नहीं नहीं नहीं। टीम डिसीजन लो भाई। ओवरऑल रैंकिंग बहुत जल्दी, बहुत अच्छा लगा। ऑल्ट्रिगो लाइमैक्स फर्स्ट रैंक पे है, बेकन सेकंड पे, थर्ड पे हेल ही है, एंड फेज आ गई है गाइस। ये मैच अच्छा नहीं हुआ है तो वो आ चुके फोर्थ पे, #1 से। इमेजिन करो फेज के पास 28 पॉइंट का लीड था, पर्सिया की एंट्री हो चुकी है #5 के अंदर, देन आरआरक्यू, वीपीई, शाइन लाइक डायमंड, द सेवियर, वॉइन, यूडू, बॉक्स, यूडू, बूम, बॉक्स, सैम9, गीक एंड बीटीआर। बीटीआर अगेन ज्यादा पॉइंट नहीं लिए उन्होंने, 8 पॉइंट उनके पास ऑलरेडी थे, तो 10 पॉइंट अभी उनके आए हैं इन टोटल। बेटर हुआ क्या भाई, इंडो वाली सीरीज ले गए शायद, अरे नहीं नहीं भाई ऐसा कुछ। पीटी गेम ओवर, यस लेंजी भाई गेम ओवर तो अभी होगा, अगला मैच रुको जरा सबर करो। ऑक्टा भाई 8 एलिमिनेशन फर्स्ट मैच पे, टॉप परफॉर्मर। एंड गाइस स्टैट झूठ नहीं बोलते, हमने मैच स्टार्ट होने से पहले स्टैट देखे थे। अल्टर ईगो लाइमैक्स टीम के शैनॉक #3 पे अच्छा चल रहा था उनका। दे प्रूव्ड वंस अगेन कि व्हाई दे आर बेस्ट, लाइक उनका सबसे ज्यादा डैमेज था पूरे शैनॉक के अंदर लीग स्टेज पे। they proved once again कि like we have a strong map, अल्टर ईगो लाइमैक्स का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैप शैनॉक आ रहा है पूरे सिनारियो के अंदर। मीनवाइल गाइस हमारा जो सेकंड मैप है वो आपका रहने वाला है इरेंगल का, एंड बस अभी कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है, रेडी हो जाओ सेकंड मैच के लिए। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं। भाई डीआरएस ने क्या ही पेला था एई को पीएमजीसी। अल्टर ईगो लाइमैक्स का यस फॉर्म नहीं था पीएमजीसी। टॉप इरेंगल परफॉर्मर्स गाइस, हेल, फेज, शाइन लाइक डायमंड एंड यूडू। देखते ये स्टैट कितना ज्यादा इन टीम्स के लिए अभी सुटेबल रहते हैं। हमका अल्टर ईगो लाइमैक्स देखा हमने, काफी सुटेबल लाइक काफी प्रेफर करा है। देखते हैं वो पॉइंट्स 123 हेल के सबसे ज्यादा पॉइंट, फेज, देन शाइन लाइक डायमंड, देन यूडो अलायंस। एलिमिनेशन की बात करें 198, बहुत ह्यूज एलिमिनेशन है।
हेल का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मैप इरेंगल। फेज 190, अनलैक डायमंड 158, एलिमिनेशन 150 एंड डैमेज अगर आप देखो सबसे ज्यादा फेस का है ओवरऑल डैमेज। एंड ओवरऑल अगर आप बात करो लाइक एलिमिनेशन की तो सबसे ज्यादा हेल के पास। एवरेज सर्वाइवल शाइन लाइक डायमंड का सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा लॉबी के अंदर सर्वाइव करा है एवरेज कम्युलेटिवली। इंडिया की कौन सी टीम है? इंडिया की टीम नहीं ब्रो, इंडिया की टीम नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया की टीम है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड की टीम तो ऑलरेडी बाहर हो चुकी है जेनेसिस। इनमें से कितनी टीम्स आएगी? 2 टीम्स। गॉड एक्सजिन भाई 2 टीम जाने वाली। सारी टीम इंडिया की है। नहीं। बाय द वे गाइस, प्रेडिक्शंस कास्टर की चालू है। आपकी क्या प्रेडिक्शन इस मैच के लिए रहने वाली है, एक बार नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। एंड आई एम गोइंग विद वेम्पायर फॉर दिस मैच। वेम्पायर और बेकन, आई गेस बेकन वेम्पायर, दिस विल बी द 2 टीम्स जिसके हम जाने वाले। बाकी देखते हैं क्या सीन होता है। लगन लागी तुम लगन। कितनी देर बाद है नेक्स्ट मैच ब्रो? बस विद इन 2-3 मिनट गिन के कर लो, तो काउंट डाउन टाइमर लगा लो 2-3 मिनट बाद। घड़ी 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 घड़ी। गीक विल गेट, अरे गीक, चलो ठीक है भाई, गीक लेगी चिकन डिनर भाई। भाई अगी भाई को सिल्वर प्ले बटन दिलाओ यार। अरे अरे क्या बात बोलती भाई, दिलाओ यार। करा भाई, थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट भाई। आप भी ऐसे सब करते रहो, बहुत जल्दी आ। एंड योर टॉप 3 रीसेंट बेस्ट परफॉर्मेंस पे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ भाई। मेरे 3 टीम, वेम्पायर, बेकन एंड बूम। 3 टीम। हु इज द बेस्ट? इट्स मी आई गेस। जब तक वीपीई नहीं खेलेगा वीपी के मैच खराब ही जाएंगे। यार स्टोन भाई तो आन बान शान है भाई फायर की। बट पीएमजीसी पे भी आपने देखा होगा, जब वीपी का डाउनफॉल आता है तभी स्टन आता है, वहां से उठाता है स्टोन्ड भाई। सब्सक्राइब कर लिया, थैंक यू सो मच अजित भाई, थैंक यू सो मच। एंड गाइज अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, हमारी जर्नी का पार्ट बनना 1 लाख की, जो कि हमारी बहुत जल्दी हो जाएगी इस साल। अगर आप लोगों ने सपोर्ट करा, प्यार दिखाया तो कर सकते हैं इस साल ही। हर रिलीजन से 2 टीम जाएगी क्या भाई? नहीं मेरे भाई, स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं डिसाइडेड। पीएमपीएल रीजनल से #1 ही टीम है, बाकी चैंपियनशिप में पीएमएसएल से 2 टीम है। ये प्लॉट ट्विस्ट था, एक प्लॉट ट्विस्ट। अब देखते हैं कितने ट्विस्ट करता है क्राफ्टन या पबजी मोबाइल। लव यू टू सोए बाय, लव यू टू भाई, लव यू टू, लव यू टू वीरे भाई। चलो भाई मैच स्टार्ट कर दो जल्दी से। भाई पीएमपीएल अरेबिया होगा मई में, होगा ब्रो, बहुत लेट है अभी तो। मई होगा, मई मई में। मई में हम देख रहे होंगे, तैयारियां हो रही होगी हमारे सेकंड पीएमपीएल स्प्लिट की। जिन लोगों को नहीं पता है, जुलाई से पहले इस बार 2 पीएमपीएल हो रहे हैं, स्प्रिंग एंड फॉल। जो पहले एंड में होता था, इस बार पहले ही करवा रहे हैं, तो इस बार फन है। लास्ट डे पर कमबैक का आया था वीपी का पीएनजी। भाई यहाँ पे कमबैक चाहिए ब्रो, स्टार्टिंग से ही। पीएमजीसी पे भी स्टार्टिंग से ही था, बट यहाँ भी चाहिए। हमें भी 3 चिकन लिए थे वीपी ने लास्ट डे पे। हाँ लास्ट डे पे 90 कुछ पॉइंट निकाले थे एक ही दिन के अंदर, 6 मैचेस में आई गेस। इट्स मी आई गेस।
आई जस्ट वांटेड कि गाइस मैच जल्दी से हमारा स्टार्ट हो जाए, प्लीज ऑफिशियल्स हमारे साथ मजाक न किया जाए। चलो भाई मजाक नहीं हुआ है और मैच, अरे अरे ये क्या होता है गाइस? थैंक यू सो मच अभी चौहान भाई फॉर द 40 रुपी का शगुन फॉर हमारे पेटीएम के लिए, 40 रुपी शगुन पेटीएम के लिए। थैंक यू सो मच अभी चौहान भाई। अगर आप स्ट्रीम को देख रहे हो तो बहुत सारा प्यार। वीपी प्रेशर में ज्यादा अच्छा खेलती है, बहुत मारते हैं प्रेशर भाई, वो टीम भाई और कुछ है भाई, प्रेशर में खेलने वाली टीम अलग होती है। वीपी कर कहाँ यार, सच में वीपी कर लेगी। लेट्स गो वीपी, लेट्स गो, दिस मैच इज योर्स भाई। ये मैच का हमारा दावा है वीपी एंड बेकन की। भाई एक बार ओपिनियन दे दो पबजी मोबाइल के इकोसिस्टम पर, बहुत कम नई टीम्स और अच्छी टीम्स निकाल रही। ब्रो अभी का जो इकोसिस्टम है वो कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है एज कम्पेयर टू, अगर आप देखते हो सिर्फ तुर्की में नया टैलेंट दिख। तो गाइज थैंक यू सो मच पुनीत द सुपरस्टार टू जॉइनिंग द अयोगी आर्मी। बट आप तो पहले से पार्ट थे, बट फिर से पार्ट कैसे बने? चलो छोड़ो, आपकी आईपीएल टीम बताओ। आईपीएल टीम मेरी कौन सी आईपीएल टीम है भाई? व्हाट इज लक्सी टीम नेम? पर्सिया, इवोस पर्सिया, पीजे पीजे करके टीम। अब पर्सिया इवोस जाएगी पीएमडब्ल्यूआई, मार्क माय वर्ड। ओके भाई मार्क कर लिया आपका वर्ड। यार ये मेंबरशिप वाली जब बंदे ज्वाइन करते हैं इसकी अलग खुशी होती है। अभी भाई अगर आप स्ट्रीम को देख रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी का जो इकोसिस्टम है थोड़ा सा, अगर आप देखते हो बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। तो अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन फॉर द ऑफिशियल टूर्नामेंट्स, अगर आप देख, अब जो अपॉर्चुनिटीज है अंडरडॉग्स के पास, नई टीम के पास सिर्फ एक या दो अपॉर्चुनिटी रहती है, डेट इज जहाँ से आपको पता है इक्का दुक्का टीम्स ही निकल गया, पीएमसीयू एंड पीएम। तो नई टीम्स के लिए यस अभी भाई अब बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है, बहुत ज़्यादा टफ है नई टीम्स आगे आना, आगे शाइन कर पाना। अगर मैं देखूँ वाइज भी है, सेकेंडली एक चीज़ हमको क्या देखने को मिलती है, जो स्लॉट्स लाइक बेस्ट टीम टॉप 10 टॉप 12 को नेक्स्ट एमपीएल के लिए स्लॉट मिल को पता है। अब बचते हैं वहाँ पे 8-9 स्लॉट, वो किसको मिलते हैं? टीम को मिलते हैं, बट वहाँ भी कंपटीशन रहता है क्योंकि वहाँ पे भी टीम टीम्स खेलती हैं, जो एक्सपीरियंस टीम होती है स्लॉट नहीं मिले होते वो भी कंपटीशन का पार्ट लेती है। कंपटीशन इससे और ज़्यादा बढ़ जाता है लाइक अंडरडॉग टीम। अब अंडरडॉग टीम के लिए यही है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू पे, आपको डैम हार्ड ट्राई हार्ड, मतलब बोलते हैं ना कि सर चोटी से पांव चोटी का जो वो लगा देना पड़ेगा आपको तब क्वालिफाई करना। थिंक इकोसिस्टम जो है टफ है, आपने मेरे से व्यू मांगा था एंड दिस इज द ओवरऑल सिनारियो। जैसे अगर आप भी पबजी मोबाइल स्पोर्ट्स के अंदर हो, अभी चाह रहे हो कि अगर आपको एंट्री डालनी है पबजी मोबाइल स्पोर्ट्स, नाउ इट्स टफ, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता बट टफ यस। लव यू ब्रो इंडिया, मैं हमेशा बन रहता हूँ पबजी, बाकी वर्ल्ड में बेस्ट तो बेस्ट टीम बन जा रही है, या बहुत पीछे चली गई है वर्ल्ड लेवल पे। कोई नहीं ब्रो, जब आएगा तो पकल हो जाएगा। स्पॉन्सर डिवाइस पे खेल रहे हैं अपने अपने पर्सनल डिवाइसेस है। वही बात है, नए टैलेंट नहीं दिख रहा, वही सेम पुराने हर जगह। यस यस यस। बाकी इसमें आपके व्यूज क्या गाइस, जो न्यू इकोसिस्टम अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, पहले आपको न्यू टैलेंट्स थोड़े ज्यादा दिख जाते थे कि दो स्प्लिट्स में दो बार आपके पीएमएनसी पीएमसीज होते थे, अब एक ही स्प्लिट है तो ज्यादा है नहीं। आपके इसमें क्या व्यूज है न्यू टैलेंट को लेके कि किस तरीके से टैलेंट आ सकता है? मैं आप भी अपने व्यूज पे कमेंट करें। ट्रू D2E का अकाउंट बैन, पता नहीं ब्रो, इस बारे में नहीं पता। ल्यू चैलेंज विपिन क्वालिफाइड भाई, बीटीआर की पुरानी टीम याद आती है। बीटीआर अब वो याद ही कर सकते हो भाई, अब वो एरा था वो जा चुका है बीटीआर का। लक्सी आउट फ्रॉम द टीम, फर्स्टली माइक्रो बाय देन लक्सी, नाउ ओनली द राइजन जो भी टीम के अंदर बचा। एंड आई थिंक अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट भी, अगर टीम अच्छा नहीं खेल पाई, अगर उसको कंटिन्यू करना है स्पोर्ट्स टीम के साथ अच्छा नहीं जम रहा और कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाए, मे बी वो भी किसी दूसरी और टीम पे जाएगा। सो बीटीआर फिर कंप्लीटली आप बोल सकते हो वो खत्म हो जाएगा। बट आई समथिंग अबाउट द टीम बीटीआर एंड इवो। गेंद्र भाई चीज़ें काफ़ी चेंज हो चुकी है फ्रॉम स्टार्टिंग टू नाउ, जब चीज़ें बीटीआर लेवल पे चीज़ें
क्या किया जा रहा है? गीक फैम के बंदे भाई लास्ट मैच का भाई गुस्सा देख रहे हो भाई का? बाय द वे क्वालिटी फुल है भाई, फुल क्वालिटी ओपी है भाई। पाई के ईगल जो है वो किस ईगल है क्या? यस आई गेस यस, नहीं में आया था मुझे, बाकी मुझे इसके बारे में पता नहीं, मैं सुन लो भाई हेडफोन्स लगा लिए। EVOS पर्सिया जक्सी जहां जाएगा वहां जक्सी भी। प्राइम राइजन, चलो भाई फुल एनर्जी एंड द पॉजिटिविटी के साथ फर्स्ट मैच का बैंटर हमने देखा था, काफी तगड़े वाला जो ड्रॉप क्लैश हुआ था। आई वांट गीक एंड अभी हो जाए मजा आ जाएगा, गीक और एक और बार गीक पेल दे इस बार, गीक का रिएक्शन देखना है भाई। क्या बोलते हो गाइस? भाई यहाँ पे गैंगस्टाबाजी चल रही है भाई, गैंगस्टाबाजी। प्राइस कितना है? $2.5 लाख कन्वर्ट कर लेना, $2.5 लाख कितना होता है भैया? एरा गया है BTR का, पर मेमोरीज, यस मेमोरीज तो यार स्टे फॉरएवर, मेमोरीज स्टे फॉरएवर, मेमोरीज को कौन मिटा सकता है? उन्होंने हिस्ट्री बनाई है ब्रो, हिस्ट्री साथ में। ऑल्टर ईगो भाई, ऑल्टर ईगो ने पेल दिया भाई लास्ट मैच। चलो भाई, बाय द वे गाइस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारे भाई जिनके हम गाने बजाते थे स्टार्टिंग में, आपको पता होगा बाबा पहाड़ी, आपने सुने होंगे, तो भाई का चैनल हो चुका है हैक। सो ये उनका ट्विटर, नया ट्विटर भी बनाना पड़ा है क्योंकि उसी ईमेल आईडी से लिंक थे सारे अकाउंट्स वगैरह, बैंकिंग बुंकिंग सब कुछ वही अकाउंट था जो हैक हुआ है। तो ये ट्विटर है, नया ट्विटर बनाना पड़ा, देन यूट्यूब को टैग करके। सो आप भी गाइस रीट्वीट कर लेना, ट्वीट अगर आप ट्विटर के अंदर हो तो रीट्वीट करके एक बार यूट्यूब इंडिया को, सपोर्ट टीम सबको टैग कर देना कि जल्दी से जल्दी भाई का अकाउंट वापस आ सके एंड हम आपको गाने सुना सके। तभी आज की जो हमारी एंडिंग है विदाउट गानों के साथ हुई है। प्रो इंडिया के रॉक टीम लेवल पर आने के लिए लेवल तो नहीं ब्रो, आपको अपना रीजनल्स निकालना पड़ता है। मैं आपको एक बेसिक सा फंडा बताता हूँ, मैं स्टार्ट ऑन दो। चलो भाई फर्स्ट मैच आपकी स्क्रीन Map here. वॉइस In उठा the दिया है, map of Erangel मैं will आपको be the फंडा समझाता हूँ। kings of Erangel. Even the There kings is of the एक cheekiest ना two is it अपने going to be माइंड big में and अब एक some or स्ट्रक्चर DX बनाओ, start to fight. बाय You द do फ्लैग have पाथ the आ रहा flight है, path प्रमोट cutting करेंगे across तब from तक एक Primos स्ट्रक्चर path बनाओ। to shooting range. It's सबसे a bit पहले आता है far आपका to those who want to drop रीजनल्स, themselves in Mills रीजनल्स of में होते power. हैं But PMPL। I feel like we अब मैं might इंडियन actually do have पर्सपेक्टिव से बताऊं, Medusa अगर गेम होता तो वहाँ पे intersection BMPS of a circle again, रीजनल की just बात करूं right भी। on the northwest of अब shelter. That रीजनल्स looking के थ्रू square ना shelter, that चैंपियनशिप्स Medusa में जाते हैं। intersection. अब And that's going to एक be a रीजन है tough one फॉर एन because you don't एग्जांपल, have आपको मैं PvE रीजन this लेता हूँ time. साउथ We'd love एशिया। to drop into realm and top. I also have साउथ to keep an एशिया eye में out if मल्टीपल there's any रीजन्स sort of हैं, contenders नेपाल, who want to drop themselves in Milta. बांग्लादेश, PK, I'm looking at the military श्रीलंका, base. We did have the question अनदर whether रीजन वाइल्ड कार्ड any वगैरह ऐड team ऑन is going to कर, take मंगोलिया ऐड कर दिया है ना। military base. So जितने Yoodo भी Alliance रीजन को मिला obviously के फिर because एक they normally drop in चैंपियनशिप। Novos, they're going to go अभी मैं there. बात करूँ They have साउथ एशिया में, पहले इंडिया भी पार्ट था, inside बट military ड्यू टू base, द so पता they're going आपको to take बैन हुआ over था, the गेम team आया तो इनबिल्ड एक दूसरा area. गेम आया, But तो whether इंडिया they're going रीजन to एक maintain that or पर्टिकुलरली not अलग for रीजन the हो next चुका round, this is flight dependent. है, समझना It's चीज। yet to be इंडिया रीजन seen. का अलग So सीन है, we're going अलग to रीजन keep है, focus उनका on अलग this अपना for now. टूर्नामेंट, BTR लाइक जापान dropping इनको, straight inside military जापान base. का They're going to drop PMGL on the फ्रेंचाइज हो। left side, which has some भाई गीक के small बंदों के साथ comp क्यों हो to रहा है do. ये गलत? Probably playing a little bit भाई safer दुख हो रहा है because we मुझे saw गीक के Yoodo लिए, Alliance नहीं flying there as well. But the circle this time, भाई किस्मत okay, खराब है, circle on the left. देख क्या ये And he got himself a water net, but Snipes happened to be having a bit of a go time with Rabies. Rabies. Snipes भाई को pistols away. पिस्टल I का mean, like सहारा, Snipes close enough being knocked down. It was so 5 close, bandage। barely make it out alive. And lucky enough, Rabies don't have any sort of weaponries on him, so भाई it's going to be safe for Snipe the for savior now. के But the Rabies rest भाई of आगे। DX and GEEK SLATE, this is going to be the battle of the scout coming up from both teams. Yeah, that was lucky there by क्या बोलूं Snipes भाई, because कुछ भी बोल रहा। plus of course GEEK लास्ट रिस्क की they were the आवाज first team to कम be कर। eliminated, कोई no बोला points ज्यादा करो, previously, so अब इससे and कम नहीं Snipes कर played रहा। that. So if this was another early elimination personally for him, that's going to be hard. But Rabis, he got RL, so he's pretty confident, and he knew from the audio cue that it's only a pistol. So he's probably trying to take advantage, and Snipes trying to just away. But again, Rabis knows it's just a pistol. But damn by good the to give savior him cover fire from afar. Hopefully Rabis goes away. Damn good coming in to get back up. And Snipes, he should be safe. तो गाइस ये हम कहाँ पे थे? I feel हम like आपको both टूर्नामेंट teams actually स्ट्रक्चर समझा stalling रहे for थे। time, गाइस just to रीजनल्स होते see हैं if लाइक there's जैसे इंडिया में any of their BMPS था, teammates
manage to get any यहाँ पे weapons on PMPL them होता है, and then just PMPL start के to थ्रू shoot टीम्स against these इस guys. टूर्नामेंट पे आती है Damn जो good, आपने that's पूछा kind था of यहाँ पे आने के लिए ambitious क्या होता है taps ये and चैंपियनशिप sprays just done with those फॉर एग्जांपल AVM. मैंने The बोला recoil साउथ is एशिया में अलग-अलग crazy, रीजन just है so hard to तो एक pinpoint साउथ and एशिया just चैंपियनशिप हो जाएगी shoot जहाँ पे with सारे that रीजन्स को distance. मर्ज But करके lucky enough, टूर्नामेंट both खेला teams जाएगा decided to देन part with उनकी for टीम्स PX आगे फिर and Unit क्वालिफिकेशन Line, so रन it's gonna be safe इस for बार तो both right PMWI now. के लिए भी I'm not sure चांसेस for the मिल next रहे few हैं seconds because they might चैंपियनशिप want to के have थ्रू it another go, इस सी चैंपियनशिप especially DX Ray is यहाँ से भी definitely आ रही है desperate for those आगे eliminations. और He रीजन्स wants की to go for the kills, स्पेसिफिकेशंस नहीं but he है बट couldn't आने get वाले it, so टाइम he पे will try बहुत to सारी go for चीजें another चेंज हो round. रही है स्लॉट VOIN, on the क्राइटेरिया other hand, स्ट्रक्चर realized the आपको नई last चीजें map they देखने were को extending their fight in the Blizzard too much. I'm not sure if they want to play the same game here. Yeah, I'm pretty sure they would have wished that in that round, like the circle was more on them because time was stalled because of GEEK SLATE. But they still लेकिन got इस 4 टीम से मेरे को at the काफी other उम्मीद है day, इस मैच की so can't really लेकिन complain about that. But because the वेम्पायर circle में was स्टोन kind नहीं of खेल tough रहा for था कुछ them, and the This is time the main was key. stalled by GEEK SLATE, and hence that's what's happened. So they'll be looking to see whether they can make up for Primorsk that previous round this Primorsk time around. With Primorsk VOIN being Primorsk normally dropping into the areas of built-up power, so it's going to be quite a for them to travel, and because the circle's on the left on top of the RRQ flight path, full take a while for them to come apartments back in. A bit of a quiet before the storm here. Like enough, we don't really have a lot of hot drops coming in. I'm not sure about the SMB side because we do have BTI and Yoodo Alliance. SSC से भी स्लॉट होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ना हो यार मेरे को And they have to cross like those after bridges. party I'm not sure showdown भी if anybody want to आफ्टर पार्टी शोडाउन होगा तो ऐसा ना हो कि रीजनल्स पे स्लॉट आफ्टर पार्टी शोडाउन को दे जा रहे हैं तो इसमें कोई ऑफिशियल कंफर्म क्या पता हर एक रीजन से तो मिल ही रहे चैंपियनशिप को तो साउथ एशिया से भी मिलना चाहिए not so great in the last map. I mean, like they tried to force a fight, but they caught themselves in a triangle where a lot of crossfire happening and just happened to be crashing into different teams after one compound to the other. Liquid compound hopping, तो फिर ये liquid है guys. Then for a BTR. Guys, Ryzen and UI is not playing. Majority of this SMB. I'm Ryzen not का sure where काफी Yoodo अच्छा Alliance सीन is था right but now. I don't know Did they why he's actually not start to playing. migrate himself across that bridge already or not? We have to wait and see. FaZe spreading out, taking their own loot. Yes, Kashim I bhai feel वो like it's gonna मैंने be बोला ना हिस्ट्री बनाई है probably starting off second, maybe third stage. We get to see some open fires down there. Yeah, I guess it's standard though. But let's see if that the PERSIJA record is broken because the record right now for longest wait for the first blood is at stage 3, and if it goes past by there, then we're going to see a new record in this round. The Yoodo Alliance. Last match का banter याद है VOIN versus GEEK Pam. Because of the flight path, naturally they couldn't Lol, drop straight into Novo, and strategy was like, okay, drop there, get a vehicle, go into Novo, and bounce back into the circle. And, that could take them some time, but it's okay because they should be on the clear. PMPL ऐसे आज रहेगा 5-5:30 बजे से है वो 5:30 बजे होगा मतलब फर्स्ट मैच 6 बजे स्टार्ट होगा. Is very low because of the flight path, so we might not even see VOIN be interested to do that. So we'll shift to PMPL ऐसे 6 बजे. Thank you so much Harry 999 for joining the membership and जब भी हमें membership देखते यार दिल जाता है मैं हर कि membership की like जो आप support करते हो ना membership के ये वाली खुशी ही अलग है. अब तो मैंने बोलना छोड़ दिया वैसे हमारा एक था कि फुल की 100 members हमारी स्क्रीन के सामने हो. टचवुड अभी तक 20 प्लस हमारे हो चुके हैं तो जल्दी हम करेंगे उस टच गोल को बहुत ही जल्दी भाई गिरने वाले थोड़ी देर में. Always alone for Winnie. I don't know why Box really always going a lot of places alone by himself out there. G92 playing from any team bro I don't know. So they're in the circle and he's leading the pack. PMWI में इंडियन टीम में कोई till now there is no confirmation. By the way game ही नहीं है तो टीम कहाँ से होगी? Boom took the preemptive shot just to के लिए गेम होना चाहिए. This compound so don't come close. बस लेकिन गेम ही नहीं है आप कैसे बोलते हैं? Their other checkpoint is going to be there's a little bit of elevation of high ground somewhere in the middle of so mostly अगर official को watching now and it's not too bad because it's in the middle of the circle. आपको पता है very likely they'll get the next phase of it 100% pretty much and they can pretty much for now. hyped up तो रहेगा ban के बाद directly. I mean like yeah we always do this yes but sometimes he's the last one surviving anyways. Feels sad for him because every single time you have to go through everything is alone. कैसे हो गए भाई सौगात भाई एकदम बढ़िया आप सुनाइए. For you to bear the responsibility when the एक मैच में इतने पॉइंट्स कैसे हो गए ब्रो जिन लोगों को नहीं पता अब तो आई थिंक आपको आदत हो जानी चाहिए यार हमारे साथ स्ट्रीक हमने कितनी बार इलैबोरेट करा आपको बोनस पॉइंट और हेड स्टार्ट पॉइंट
But we haven't seen the best of already. that. Now, 28 that, when it point comes FaZe to को बिना his match खेले मिल gameplay, गए. he's more At start about and bonus. getting those angles This is right. of the league. If he got himself the most And comfortable BTR angle के there पास is, he can सबसे actually lowest just pinpoint 8 and points just थे. spray it Last out match and में उन्होंने never 2 whiff. points. But the problem Total is they he have always 10 got points. himself in a triangle or got himself in a crossfire. देख रहे हो BTR That's the अभी case. आपको The दिख navigation, when it comes to team cooperation about where to go next and how to get into it, that's the biggest difference. If you watch the entirety of the league of PMSL hello down to the overseas final day, is कैसे हो भाई मेरे? that's what By the way guys, making the 562 Thai लोग teams a bit better than the others. अंदर But some not make gonna shit lie, right? like When and subscribe. 7-9 was at their lowest point, but Why when no the other Karen? members of 7-9 they aren't really performing, you would see that really show up. So, oh wow. Oh okay, ha I had ha to ha pause that ha thought भाई for a क्या moment because जोर usually बना है भाई ये all the मजा circle आएगा before in the league, and it's gonna be crazy how many teams are gonna fight with each other in this kind of circle. This is a bizarre circle. Honestly, look at how little space there is. There's no land for this guy to भाई even जोन stand एक on. तरफ है भाई Coming up from Jogapur, there's nobody else, but there are definitely going to be a couple of teams coming up from the north, slowly Crazy cutting zone. across those main peninsula. But coming up from the southern part, that's going to be insanely माइक्रोवेव crowded. स्ट्रीम EVOS Speaking of PERSIJA land, जिसमें that's लक्सी not है enough बट बाय द land वे for उनका लाइनअप anybody. बड़ा 6 ओह होगी teams बस still there, and Box and DS have to share the same place even. And this is not great. As Sheena's getting on Frankie first. I was Sheena's waiting. getting on 2 down. T-Dog gets 1 with those DBS working. And Box, they have to flee. This is not great for Box at all. They even have FaZe coming in as a third party. This is going from the pan to the fire. Box nowhere to have a place here. Well, because the circle looks like our first blood didn't need to wait that long. They're going to take the advantage over Vampire Esports, just driving past the beach. And we have the other members of FaZe Clan having a good angle, and that's going to be 2 downs. And FaZe Clan, right now they're going to take भाई advantage of it. 3 बंदे गाड़ी में यही हो रहा था मैं नहीं 3 बंदे वेम्पायर के एक ही गाड़ी के I अंदर think so. FaZe ने स्पॉट करा Highly. BTR military base से I don't think Yoodo there's one more player, but Arik look caught पकड़ा off guard player with BTR knock and finish trying होगा to cross the bridge. And the moment they cross over, it's going to be them waiting at the other. And Yoodo Alliance and BTR, they know for a fact there's going to be hello. each other by the end of the day. But this is what I worry about BTR and some of the Thai teams, right? Some of the Indonesian teams and Malaysian teams, they love to overextend themselves so much in the blue zone. And it's a lose-lose for both teams right now. The moment they step out from this blue zone, भाई G9 Wilders का how कुछ crowded ओके it भाई was ओके back ओके ओके there. VP is overrated The moment they step into अरे that शुभम zone, भाई it's going to be the ऐसा end. है क्या And provided if Yeah, they bro. have enough utilities until then, it's great. If it's not, what's worth fighting? And maybe those couple of points will contribute towards your overall ranking. But is it going to still be worth it enough for these guys to just stay themselves, मूवमेंट overstay देख के here याद for आती है these fights? इन्फिनिटी ने Well, जब ब्रिज कैम करा था exactly what BTR ने anticipated. जो Like ब्रिज if they कैम were to करा come था into the circle now, then there'll be a lot of other teams waiting for them. So instead, might as well take the 4 points, and maybe there's points that they'll be happy with, considering that the current situation is as such. So they try to take advantage of you. लैंड में नूजी अच्छा नहीं खेलता हाँ ये मैंने कहीं सुना था I don't know sending 2 out at किसी ने मेरे साथ स्टैट शेयर करे थे मेरी बात हो रही थी अभी waiting at the bridge just to किसी see ने if बताया they था can कि get like more out of किसी the का Alliance, ऑनलाइन and the परफॉर्मेंस moment इज the डैम two फार that's बेटर been देन sent out, लाइक जो भी found a खेला spot, एनीवे ऐसा clear, बताया किसी the ने other two बट were इससे पहले moving. नूजी ने खेला अच्छा वो भी लाइन ही हुआ था एक स्टेज में अच्छा खेल ही रहा And था I think this is one of किसी the को best दिक्कत नहीं है ब्रो sort हो of जाएगा pet चिल or crate in the middle of the playing field out there. अबे They can यार utilize VP maybe के बंदे अगर exactly सरवाइव know कर जाते हैं अब exactly सिंगल timing बंदा क्या ही about करेगा भाई इस people. पॉइंट Now, पे lucky enough, we don't बहुत गलत have सीन है another bizarre because still got 20% of water in it. But Vampires, we do have one last play. There's going to be Ravenclaw. But Alter Ego start to close in. I don't see anywhere Ravenclaw can survive this. He's been compressed from north and south. And there's nowhere else for him to go because if you move on the right side, it's going to be N as well. PERSIJA, EVOS PERSIJA, kicking on RRQ, a box Laving. Finished. Spotted out from of our Bacon Time players. But Lynx will be spotted out by the rest of RRQ. Asai is already in the building. But Lynx, this is a bit of a dangerous game he's playing. He's just in the middle of nowhere right now. Trying to find space, and space is limited with this kind of circle. And looks like he's just doing BTR late rotation VOIN knowing that where his opponents are at. But VOIN, knowing where मैं तो BTR सोच रहा हूँ is VOIN at, किसी one टीम of को them got वाइप तो taken करे down. भाई VOIN तो with VOIN the और first GEEK का point in क्लैश this करवा round, दो they want गाइस to open up their account, गाइस VOIN और especially GEEK का taking out क्लैश another करवा दो huge और बार फिर से team from the रोटेशन same क्लैश region. मांगता है It's gonna भाई be BT. VOIN So let's spending go time in the blue, rotating in, and like what we discussed earlier on,
the circle. It's going to be tough because the amount of land is limited, not 100%. Hence, areas to move in, areas to park themselves is a bit more lesser than your देखो भाई सऊदी लीग का ब्रो परमिशन नाइट लव भाई परमिशन दिला दो कर लेंगे परमिशन excluding Alter Ego, the rest of them are playing this very late rotations, including VOIN and BTR. But BTR was smart. They knew for a fact, you know what, if you go straight across, just cut across from the southern side, they know there will be so many teams. They're taking a bit of a longer rotation just so they have enough. With only one first aid, I don't know about Shaman and Yoodo Alliance. This is too much for them. EVOS PERSIJA bro, EVOS PERSIJA करके टीम है जिसने लक्ष्य से खेल रहे हैं EVOS PERSIJA, not BTR. One player in the center there between these two. By the way, Liquid knocked and finished है 70 Genfus and Swafil ही बचे हुए हैं के टाइम पे तीन प्लेयर है टीम BTR Yoodo Alliance साथ निभाया जा रहा है फुल भाईचारा साथ VOIN. But the next phase, definitely they need to move. So this is going to be a challenge for Yoodo Alliance, playing without Olio in the lineup. VP का हमारी रोटेशन पे सेकंड सर्कल पे रोटेशन यार वाटर शोर से पूरा रोटेशन दे रहे थे फेस के होल्ड कर रहे थे तो स्प्रेज दिए एंड एक ही गाड़ी पे तीन बंदे थे एंड गाड़ी फटी एंड प्लेयर भी फटे तीनों के तीनों साथ में लास्ट बंदा बचा एक रेव बचा है लास्ट बंदा रेव खेल रहा है बाय द वे स्टोन की जगह जिनको नहीं पता स्टोन नहीं खेल रहा है पता नहीं क्यों नहीं खेल रहा बट सब्स्टिट्यूट में मे बी ऐड ऑन हो गया रेव दिख रहा है आपको अल्टर को लाइव में सिचुएशन डिफरेंट होती है यार अगर चार बंदे होते वीपी के मैच अच्छा जा सकता था उनका ऑब्वियसली देखो ना just move up north all the way. Whoever's down there, look at how many teams still not inside. FaZe might be gatekeeping this site because there's VOIN, GEEK, SLATE, Hill, Bacon, Diamond, BTR. There's 6 teams not inside yet, but Bacon trying to get there and rushing into it. But they might match, clash with best match BTR हो when सकता they never है. get themselves into the circle. Right now, looking at the circle, Boom Esports is in a good position, but BTR clashing with Bacon time, and now they might lose a player. 9 knocked by BTR. Genfus will take him down. Genfus just need to be a bit of a reload there. Bacon time, the rest of them just enter inside. A BTR, you know what? Bacon time, they just leave that भाई मैंने बोला था बेकन और वीपी अच्छा परफॉर्म करेंगे already got finished off, but they're trying to get across these haystacks. But there's Yoodo Alliance on the other end. Ice is a bit more cautious, making his stab, but FaZe got a bit of a splat with Mika running him down, and that's gonna be Vampires. Oh man, speaking of the Vampires in the grand finals. Goes our prediction for this round, but Hail Esports 7-9 as Hail Esports defending the ground pretty well. Dep on the other side tries to get a knockdown revenge, but not able to do so. Managed to get away. Flash and Sky only. Compound still with 9. Everyone with their own needs. Flash is going to toss it for sure, but then again. Okay, भाई लीग में से PMW का स्लॉट मिलेगा ओके भाई वेरी बुरी रहा That's going to be the backline. They have to make it fast because there's more team coming in here. They need to flush out here as soon as they can. Sam9 trying to force himself in. Well, Tiger taking the back line. He's taking a backstabbing dab with those DBS. And they got off guard. Long and low, you now panicking whether to go back in the back line and save them or just go forward. Sky's waiting at the other end. He can actually clutch 2v1 there. Close enough. But man, low usage of help. Managed to flee by and slip back into the warehouse. But Tiger slowly compressing them on the other end. This is a dangerous game for Sam9. But Sky now knocked down. The DBS wins. Loyu won against the DBS. That was a good defense by the unfortunately heavy casualty. But yet they still won against Hail Esports and managed to take home those points. 7-9 still survived, but FaZe Clan is भाई shit भाई एंटी by the way nice one यार किसने मारा लून ने मारा लूयू ने मारा है बहुत बढ़िया भाई Loyu and Onzen and the rest of them. Loyu last. आप बोल सकते थर्ड पार्टी एक एलिमिनेशन सामने. Now Loon, can he actually pick up Loyu? But he doesn't have time here. A moment cooking up another nade. Speaking of DBS, here comes another. Onzen again. Can those and work out quite right for Sam9 once more. Onzen running dry with his clip on that DBS, but Onzen's they're trying to clear the corners here.
trying to play the safer game. A bit hesitant we can see, but look out from That's behind. good. Moment coming in, a double pick anti-7 on in the two chat, guys. different बहुत angles. बढ़िया भाई. What a clean up That from FaZe Clan. Halo वाला clutch Pretty much was Pmwi got a insane taste भाई. of their own medicine दो with बंदे पेल FaZe दिए भाई ने Clan यार. doing pretty Last much the में same 1v2 thing जो किया. on Pmwi, taking them out. Fourth And party हो जाए that बस. Meanwhile, compound, Bacon and just Yoodo look at Alliance. so many teams Screen के want that सामने. area. It's still within the FaZe, circle. FaZe Clan in it BTR. now. Boom. Still Boom. good position. BTR joining RRQ, this team PERSIJA, too. But for the rest of them on the northern and side, we GEEK. got There is RRQ, VOIN. PERSIJA, EVOS, SLD. They need to cross VOIN the eliminate road. क्यों हुई Fox है? Gaming stopping you guys from coming into the circle. They got a glimpse of Yoodo Alliance. Finish off Canny from afar. That's like 200 meters apart of a shot coming out from the side of Box Gaming. Shamil now a bit alert, a bit more cautious, a bit paranoid for the fact he has to be. He has to नहीं भाई be carrying Infinity this के पास alone slot by ही नहीं है himself. PMSL का. तभी He तो only मेला has यहाँ पे 1 खेल rहा है. DBS in his लोग hand. पे. While By the way guys, trying 700 लोग देख रहे हैं. अगर running आप stream के down अंदर this नए हो clip so from make sure to hit the like and subscribe to the channel. PMSL का grand finals हो रहा है guys. Live event आपकी screen के सामने. It's a day 1 match number 2 and secondly हम Pmpl South Asia भी live करने वाले हैं. तो अगर आप channel के अंदर नए हो so make sure to hit the like and subscribe to the channel. ऐसी watch parties and competition आपको region का tournaments का आपको हमेशा से देखने के लिए We मिलता see रहेगा. So Shamil like will and use subscribe his to the channel. vehicle or he'll just stay put and try to crawl himself. Ultra Ross The मेरी distance is knock. just too far. Forced to use the Damn vehicle. That will rude. give information to the other opponents. As Fox Gaming tries to take him down, he still managed to get himself into the circle. Nope, yet he's still on the outside of it. Bacon time on the other side. Winning, not letting him go. Pmwi is in trouble. Dominating across the board right now. Box Gaming with 9 eliminations. They want to go for more, but winning that space is going to be devastating. But GEEK got ambushed by Alter Ego. Octa again trying to finish off Mika, but he needs to be a bit of a reload there. But that's going to be stalling for the side of GEEK SLATE. They cannot save Mika. It's just too deep into Alter Ego's place. So Alter Ego on the other end, they know for a fact they need to get into the circle. They're going to leave this आज आप elevation. full थक जाओगे. They मैं have इसी to बात just please themselves with बहुत those थका one हुआ हूँ elevation but to फिर get भी out of लगे GEEK हुए कोई SLATE. दिक्कत नहीं. But Alter Ego, they don't not done yet. They want to go for more. They're eager to go for more. They want to get themselves those adrenaline rush, just like how they did in Sunhawk. Box, on the other hand, they are taking a lot of eliminations, but they're nowhere near getting those covers. Okay. Oh, still in the same compound that GEEK SLATE wants to take away from FaZe Clan. And Four now man down war to Mika. बनाने That's वाला an opening for FaZe Clan. Momo with the nade. Silent. Zillin is still Silent. there. Right. Highlights of Yeah. the Zillin. Silent. Oh, he sees it clearly. Zillin. 50% of health left. Still help giving cover from the other side. Molly will buy time for GEEK SLATE, but Molly's to the other end. As Momo is moving in with the DBS. Box. So many teams cutting across. There's Molly burning on Mormon barbecued. But at the same time, so many teams cutting across this warehouse right now. Everyone wants to be part of this warehouse. FaZe, they know for a fact they cannot stay indoors. They have to pull back and see at the flank and the outdoors. But Box compressing on the other side. GEEK and FaZe, they're trying to have a bit of a tug of war here. But the one winning will be Box Gaming if they're trying to push. But lucky enough for Box, they are a bit attracted to the other side of the compound. They're attracted towards the other side of the angle entirely. They're not focusing on this side. Where GEEK and इनमें आगे देखिए also BT FaZe कर रही है having a change PERSIJA of को. name. Trying to flush each other out where we see GEEK Lin coming ने up यहाँ from पे behind. trade निकाला Big है. ambush with Multiple this knocks ball. RRQ It's and not finish में almost निकाल चुकी है. entirety of his EVOS HP PERSIJA का down. snipe But भाई GEEK, ये they करेंगे. need to have to Karabi, regroup and try to Bacon. push on one different angle entirely. Can Cannot like go Diamond को indoors. finish But we मिला do है. have indoors fight here on top of hospital. RQ trying to just get away from PERSIJA EVOS' grasp. Ooh. Gotta get away. Oh, but they still have the circle. Okay, but this fight still has to end at some point. As Arakasa Oh. being naded down. Nicely Nice done by Redface. Redface, taking him down. PERSIJA got the upper hand now with Mort being on the upper floor all alone. Redface with a nade toss on the third floor. It will connect onto Mort. आगे finish. Mort is now down to 50% Mort. health. Needs to reset, needs well to number. reload with the DBS. Mort is the last guy. He don't In have एक time. He knock doesn't पड़ा है. have time right now Red because face. Alter Ego start to step in here. Looking at the Nice circle, support. they can just cut across and be the housekeeping team. But they're taking a bit of a pullback for Alter Ego, repositioning ये themselves Lynx to see काफी what's तगड़ा going on player है. Yes, inside Red because Face is they're not also done good yet. player, bro. Voldemort Valdemar will actually revive try दे रहे. ओए हाय क्या be safe, क्या but then प्यारा one नीड करा red Red face, Face that ने भाई. was a perfect बहुत बढ़िया golden वाइप nade. करी टीम. Finish पर्सिया off the 4 entirety एलिमिनेशन of निकाल RQ, चुकी है इस but मैच के they अंदर. are लास्ट मैच not भी काफी done. डिसेंट गया था Waiting पर्सिया का. outside is gonna be अगर आपने Alter देखा Ego. हो तो. And on the one coming up from the south, we're not done with GEEK versus FaZe yet. Oh yeah, not Luxy at गया, but एक all. भाई अभी The भी बचा circle हुआ is है. not in this Luxy. warehouse, so these two teams need to finish this fast. And now मेला Mela भाई is trying ये to क्या be चल रही है भाई. a little bit sneaky here, using the smoke to FPP his लगा के. advantage.
has no clear vision of where Snipes is at. With the audio cue now helping him to determine where it is. He open Snipes at the lower ground. It's going to be a 1v1 fight here. Snipes with the Bison on his own, staying into the smoke. It does connect BTR. onto his opponent, but not enough to take him down. Zen from the other side, shot down by Mika. That's going to be a perfect angle. Off angle coming up from Mika. Nice need to reload moment. Just get a one tap with those EVS. And that's done. Done and dusted for one player. Slowly picking them off one by one. FaZe Mela start to work out those shotguns and मैंने मोर moment. बना दिया। लो भाई गीक भी यहाँ पे वाइप हुई है। फेज काफी अच्छा दो टीम को डिफेंड करा, बहुत ज़्यादा बढ़िया। एंड BTR एलिमिनेट करा बॉक्स को, बट ऑल्सो एक कैजुअलिटी भी ली है। एक प्लेयर यहाँ पे ऑलरेडी पहले decent there. That's pretty good for Box. In fact, that will push them up in 10-4-7 दोनों ही के दोनों गन पावर BTR not बहुत stopping ज़्यादा as well प्यारा with लगता 5 है। eliminations so Especially far, but only 70 का। 2 players left. Bacon time. 1 elimination this round. परसिया Number 7. एंड शाइन लाइक PERSIJA डायमंड EVOS, इनका सबसे great अच्छा मेरा hospital मैप compound है being held शाइन down लाइक by डायमंड them. का। And they seem to be interested. Meanwhile Alter Ego Limax एक साइड पे शाइन लाइक डायमंड एंड मिड में आपको दिखने वाली है टीम परसिया। They are unharmed. They are not being spotted out yet. And nobody trying to challenge them in the center of this sort of a circle. And circle will गाइस shrink अच्छी टीमें less लाइव है Alter Ego than Limax, 40 FaZe, seconds. परसिया, PERSIJA शाइन लाइक EVOS still डायमंड, holding बूम those एंड compound, BTR still holding to a काफी ज्यादा secure इंपॉर्टेंट lead. मैच है They सारी won टीम्स this के लिए, fight बट before. They उनमें got टीम्स into के लिए quite a ज्यादा number of इंपॉर्टेंट मैच opportunities है still, but कि जो nowhere टीम near बॉटम पे about चल रही है those ज्यादा से knowledge. ज्यादा If the पॉइंट other निकाले, side of the team क्योंकि got जो themselves टॉप those की टीम है points to उनके work, पास PERSIJA EVOS ज्यादा have to अच्छे lead. बोनस Molly's पॉइंट is gonna ऑलरेडी be थे the ऑन द बेसिस ऑफ लीग capacity परफॉर्मेंस। for you to flush यहाँ out पे any उनका गोल teams रहेगा। out मीनवाइल there. BTR एंड BTR FaZe on जोन the के other अंदर hand आना है। keep FaZe BTR at के bay. पास They एंट्रीज deny the ऑलरेडी हो entrance रखी into है। the zone, while BTR is not in the safe boat मोरमैन either. एंड The मेला minute they're out पिछली from दो this टीम से crate, काफी it's अच्छे gonna be फिनिशेस dumb. ऑलरेडी They'll वो be निकाल चुके exposed हैं। so आगे much. है उनके There's all these different BTR teams out there. फोकस कर रहे हैं Here we go. धीरे धीरे Looks like आगे the fight is रेस going तक to जाने happen का ट्राई। anytime soon. FaZe Clan and मोरमैन भाई जा भी BTR just रहे next to each वो other. करा जैनफोस भाई Considering that 70 भाई circle दे moved away, एग्जैक्टली नो meaning कि that यहाँ पे this टीम fight फेज है। might इन्होंने happen किल now. किक पड़ा होगा, अब Just उन्होंने बैक waiting टू बैक दो for टीम time to वाइप pass करी है। by, and the fight might be inevitable because Them what's going to 9 wait for and them the to be second one Boom. is So they Peak. gotta take out each other first before they focus on to Boom Esports. And Momo want to go for the rush. Trying to get one By the way, UI and Ryzen are benched, guys. Into those vehicles, Mela. force them out and try to run them down. He got one. This is it. बहुत Mela प्यारा, makes बहुत such प्यारा। a risky move, but it won straight to one. Both teams in a losing Danforce spot OPR. right now because Moment got But Mela का killed move by बहुत बढ़िया था। Danforce. BTR win those spot, but they're left with only Danforce 2 बहुत players. प्यारा। But टाइम they है, have to lead टाइम है here. थोड़ा सा। We're looking at Meanwhile, Boom Alter Ego eyeing out Limax towards this full side, clean and करके Alter रखा Ego हुआ spot है। out रोजमेरी भाई BTR ने as रोजमेरी भाई ये well. फिनिशेस We do निकालने have वाले, कुछ 4 भी लानी है Indonesian रोजमेरी भाई teams निकालने। allowing 1 Vietnam left. Ask बहुत LB, बढ़िया। where are they? Rosemary trying to finish off the others coming up from the other end, which can be BTR. Boom in the center. Still inside of those circles. They got one of the most solid compound to work with. Yeah, it's just that Good now match for the circle Boom. needs to be split between Question the mark? two, between the road, and it's going to be thing where the circle will go. If it goes either side, then EVOS it's easy to move. PERSIJA. But not gonna lie, totally. Boom, that Alter Ego Esports, they Limax. are By in the a way, very top good 5 के position. अंदर आ It's चुके just Alter that Ego Limax. they've been Once again, a comfortable consistent with the goal. They got a performance. compound, so no elimination points just yet. But Alter Ego may get some. Here comes the rush. Going Lin for गया। different angles, but Repface just so well outplayed them with those Lexi भाई, containers. लक्सी भाई आराम He got से himself आराम those से elevation. defender He रख can see what's happening down Slow there. way. A potato trying to toss the net. Repface trying to just avoid it, but not avoidable for those coming up from Repface. Those sprays of the EMP and with the M4 as well. Working such a clean setup by himself. Repface just outplayed these guys around the corners. Okay, speaking about the Red Face, still at the corner where Fnatic is held hostage. But even if he wants to finish off Fnatic to secure that point, Octa is there to get a Rosemary, and because they know exactly they'll throw all Dr. Ryzen needed, yes मेरे भाई, needed तो है, but wait करो. Finally, wait. Hexas, Rosemary, okay, another fight's happening. That's going to be Boom Esports coming from behind. सिचुएशन का मौका देख के Can फायदा Octa उठाने की again फुल for the ट्राई side of Boom आ रही है Alter Alter Ego Ego. Limax को पहले वाइप करेगी then Octa still EVOS holding on PERSIJA to के that ऊपर प्रेशर बनाएगी last tin बहुत of बढ़िया lifeline. And Octa just trying to make sure he can cover himself in those smokes right now. They can barely visualize it. Octa भाई But last this match nade पे will clutch finish निकाला things था off. अगर आपको Octa याद हो inside of those हाय हाय vehicles, tips but and that's tricks कर the रहे थे nade. Octa भाई And but नहीं नेट से Repface गई almost टीम got Alter Ego never mind. Limax Repface finish off Fnatic with Boom. Hexos coming from EVOS Boom. PERSIJA. On a different side, The 4v4v3 fight and like Diamond एक तरफ EVOS PERSIJA Boom एक तरफ guys क्या लग रहा है किसका चिकन आने वाला है let's go boys shine like Diamond Boom PERSIJA किस
किसका चिकन आने वाला है आपके रिस्पेक्टिव में, आपके अकॉर्डिंग एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दो। Yeah, boom. They are refreshed here. They haven't taken any fights, so now they'll be focusing on this final moment, moving in, taking the high ground against PERSIJA. Look at this, PERSIJA well defended. The high ground onto the hill. It's going to be a tough spot for them while needing to deal with SLD on the left. That's why we can see that red face is trying to cover with the smoke from SLD. And SLD, they are still on the outside circle as well, but they have a place to play with. SLD pressing PERSIJA EVOS. अरे लिंक्स भाई ही किस्मत थी ब्रो की यार। नहीं लिंक्स and Lengths managed to secure his angle so well against Boom. There's no way Boom can pick out. The only one that can actually bring them down is going to be Dose Nate. But Pmwi find a loose end. Finish off Lengths straight away and just tighten up on his side. SLD slowly compressing that side as well. लो भाई शैनलाइक डायमंड फिनिश निकाल लिया भाई यार। लेट से फिनिश निकाला यम्मी ने। Finish off that with the Nate coming from शैनलाइक डायमंड एंड बूम here we go। दो टीम आपकी स्क्रीन के सामने, कोई बोल रहा है बूम का चिकन, कोई बोल रहा है पर्सिया का चिकन। देखो भाई किसका चिकन आता है, कमेंट करके बताते रहो। मुझे लग रहा है शायद बूम का चिकन शायद से on and off angle, the furthest away, but the rest of Pmwi too near to the side of SLD. अब तो भाई नहीं, अब तो नहीं है। Oh, and Hexas as well. Nice played. Taking advantage of the Boom Esports, but Boom will not go down without a fight. And gets one for himself. Yummy will need to retreat behind. Bomb it in the vehicle, probably going to move away. SLD drops in with the DBS, tries to knock down someone. If only he can connect us. Yummy, nice. Angle shot by Parjin, beautiful to him. Down to Parabit. To Parabit all alone. This is going to be Parjin, going to be the anchor for the team. Down to last player. बहुत प्यारा शैनलाइक डायमंड, बहुत प्यारा, बहुत ही ज्यादा प्यारा गाइस। शैनलाइक डायमंड ने बहुत प्यारा निकाला, एक बार ओपी कर देना। एंड एंटी टू टीम बूम, पर्सिया और ट्रिगोलाइमैक्स, बहुत बढ़िया ट्राई, बहुत बढ़िया ट्राई। ओहो जो कंपाउंड वाले बंदे को गिराया, बस वहीं से उम्मीदें बूम बम। एंड गाइस 900 लोग देख रहे हो, अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो तो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आप स्ट्रीम के अंदर हो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को गाइस फास्ट। 900 लोग देख रहे हो ऑलमोस्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। जी गाइस जी डॉक्टर राइजन बहुत पुराना बात है टीम सीक्रेट का, वो भी लेजेंडरी। जी गाइस जी कर दो चैट के अंदर, लाइक वैलो में जी करते हैं, वैसे जी कर दो। री-एलिमिनेशन MVP फॉर पैराजिन फ्रॉम शैनलाइक डायमंड, बहुत बढ़िया रख दिया बूम। मगर भाई कोई दिक्कत नहीं, दूसरा ही मैच है अभी, और मैचेस और होने भाई। इतना कैमरा कॉन्शियस है भाई, कैमरा कॉन्शियस भाई इज कैमरा कॉन्शियस। जी हाँ, टीम्स टू वॉच शैनलाइक डायमंड, पर्सिया, बूम एंड बॉक्स। क्या बात है। यूटिलिटीज यूसेज देखो भाई, पर्सिया एंड शैनलाइक डायमंड का 34 स्मोक्स, 22 नेड्स, एक मॉली, 39 स्मोक्स, 17 नेड्स, 3 मॉली, 21 स्मोक्स बाय बूम, बॉक्स 21। एंड अगर आप ट्रैवल डिस्टेंस देखो तो 10,907, 10,000 10,000 पर्सिया शैनलाइक डायमंड का दोनों का, या पीछे से घूम के आई शैनलाइक डायमंड और पर्सिया, देन बूम एंड बॉक्स। ब्रो साउथ एशिया कब स्टार्ट होगा ब्रो? फर्स्ट मैच आपका 6 बजे से स्टार्ट होगा, 5:30 6 बजे, 5:30 आई गेस द टाइमिंग फॉर द फर्स्ट मैच जो स्टार्ट होने की। अभी मैच स्टार्ट नहीं होने वाला, अभी तो वही चीज़ें चलेगी, ऊपर नीचे आगे पीछे, टेंशन ना लो। हम ये जो अगला PMSL का मैच है हमारा लास्ट मैच होगा, उसके बाद हम PMPL साउथ एशिया के लिए पूरा शिफ्ट कर देंगे। भाई किसी को सपोर्ट करूँ, सबकी टीम फेवरेट है, कोई दिक्कत नहीं ब्रो। बाय द वे PMPL साउथ एशिया ब्रो 5:30 बजे से फर्स्ट मैच लाइव हो जाएगा, तो वी हैव 1 आवर, सो 1 आवर में हमारा एक मैच निपट जाएगा। तो इस मैच के बाद अपन शिफ्ट करेंगे, क्योंकि एक मैच बाद यहाँ पे पूरा 1 घंटे का वैसे भी टाइम आउट लगना ही है। 1 घंटे का इसमें ब्रेक होता है बाय द वे, जिनको नहीं पता है, ड्यू टू द रमदान। सो बस तो अब यहाँ ब्रेक होगा, उसके बाद साउथ एशिया में कंप्लीट।
लगन लगी तुमसे मन की लगन। Bro, why you have Ryzen not there? I think ask BTR management को। घड़ी घड़ी घूमे दिल तुझे ढूंढे। ऑल्सो गाइज एक और चीज, हमारे भाई का चैनल हो चुका है हैक। रीट्वीट कर देना है प्लीज ट्विटर पे जाके। बाबा पाड़ी जिनके हम गाने बजाते थे, और आपने देखा होगा आज इंटर पे हमारा गाना भी नहीं बजा है, तो भाई का चैनल हैक हो गया है। सो जाके जरूर जल्दी से जाके रीट्वीट कर देना है ट्विटर पे जाके। एंड जो वो ईमेल था, मतलब पूरा एक्सेस ही जा चुका है, जीमेल वगैरह सब कुछ ऑल गॉन। उसी जीमेल से काफी सारे चीजें अटैच थी, लाइक सारा पर्सनल चीज, इवन दो ट्विटर भी बनाया था उसी, तो उनका ओल्ड ट्विटर भी जा चुका है, तो ये नया ट्विटर बनाया है उन्होंने। तो कम्प्लीटली डिलीट है। अभी यूट्यूब टीम के साथ बातचीत चल रही है, फॉर्म वगैरह फिल कर दिया है, होप सो जल्दी से चैनल आ जाएगा। सो गाइज एक बार जल्दी से आप जाके रीट्वीट कर देना ट्विटर पे अगर आपका ट्विटर का अकाउंट है। एंड आप भी टैग कर देना अपनी तरफ से यूट्यूब को, टीम यूट्यूब को, यूट्यूब सपोर्ट को, यूट्यूब इंडिया को, सबको टैग कर देना। मीनवाइल ओवरऑल रैंकिंग आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है। ऑल्टर ईगो द कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वंस अगेन, एंड #1 पे चाइल्ड लाइक डायमंड ज्यादा पीछे नहीं है, 43 पॉइंट। पर्सिया थर्ड रैंक पे आ चुकी है, बहुत बढ़िया। फेज क्लैन इस मैच से पॉइंट निकाले, बहुत अच्छी चीज है। बेकन 36 पॉइंट, हिल 33, 34। लास्ट मैच टॉप 3 टू #6। बूम, बॉक्स, RRQ, बीपी इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे लास्ट दो मैचेस से, शायद 2-3 पॉइंट ही निकाले। द सेवियर, Sam9, वॉइन, BTR, यूडू एंड गीक, दीज आर द टीम्स जो आपको दिखने वाली है #1 टू #16। जो #2 टीम्स होगी वो डायरेक्टली विल गो टू द PMWI 2023। इट्स ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय द वे। रीट्वीट कर दिया होगी भाई, बहुत ज्यादा बढ़िया भाई, रीट्वीट कर दीजिए गाइस। भाई चलो पर्सिया कंसिस्टेंट सपोर्ट, यस यस भाई यस। भाई जिन लोगों ने नहीं करा है एक बार आप लोग भी रीट्वीट मार देना। I have added the link tagging the so sorry, you have having to deal with, first we need to get रीट्वीट कर दिया भाई। ओके ब्रो, ओके ओके ओके, 8 रीट्वीट आ चुके। इनिशियल पॉइंट, यस ब्रो, इनिशियल पॉइंट इक्वल टू बोनस पॉइंट हेड स्टार्ट। जो PL के लोग देख रहे हैं उनको पता होगा, जो जैसे मिलते हैं बोनस। तो टॉप परफॉर्मर आपकी स्क्रीन के सामने, लेवी भाई बॉक्स के 5 एलिमिनेशन, रेड फोएस 5 एलिमिनेशन, मेला भाई 4 एलिमिनेशन, मोर हमारे भाई है 4 एलिमिनेशन, मोर भाई। तुझे कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। हैशटैग बेस पॉइंट ऑन 3 वीक्स परफॉर्मेंस। पर्सिया प्लेसमेंट में चोक करती है भाई। इतना अच्छा तो खेल रहे भाई, 2 ही मैचेस हुए अभी, वेट करो भाई। 2 मैचेस में क्या ही जज करोगे भाई, जज तो करना ही नहीं चाहिए। एशियन टीम्स का ट्रेनर होता है यार, तुम भी यार जीजी करते हो भाई। मोर भाई, मोर बना दो भाई, मोर बना देगा, मोर मैन हमारा मोर बना देगा, देखना लास्ट मैच में। मोर मैन भाई ने अभी मोर बनाया है अभी फिर से मोर बनाएंगे। पहला लुकिंग लाइक
तो ये चलो भाई, थर्ड मैच हमारा आपकी स्क्रीन के सामने। 2 मैच हो चुके हैं, अल्टर ईगो लाइव मैक्स एंड शाइन लाइक डायमंड 2 चिकन निकाल चुकी है, मतलब दोनों टीम एक 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 मैच में। अगला मैच हमारा गाइस रेंगल का रहने वाला है एंड इसके बाद हम स्विच करेंगे पीएमपीएल साउथ एशिया के लिए, क्योंकि 5:30 बजे से पीएमपीएल साउथ एशिया स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द लास्ट मैच फॉर पीएमएसएल। बुला लीजिए सबको, कंपटीशन आप देख ही रहे होंगे कितना ज्यादा हार्ड है। आई वांट ड्रॉप क्लैश ऑफ वॉइन एंड गीक वंस अगेन, बेंटर देखने का मजा आएगा। हेलो, हाँ मैंने पहचान लिया। क्या बोल रहा है? स्लॉट है। बता दूंगा अभी तो। आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या बात कर रहे हो भाई? मेला भाई पराठा बना दो। आएगी भाई, इसमें से 4 टीम हेली स्पोर्ट्स, द सेवियर, गीक स्पोर्ट्स एंड बूम स्पोर्ट्स, ये ऑलरेडी स्लॉट कंफर्म है पीएमडब्ल्यूआई के। अगर इनमें से कोई विनर हो तो टाइटन अनीश भाई, जो टीम ऑलरेडी पीएमडब्ल्यूआई के लिए क्वालिफाई हो चुकी है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होता है, लाइक फिर से अगर वो #1 और #2 आ जाती है इनमें से टीम जो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है, तो प्राइस पूल रैंक के अकॉर्डिंग उतना ही मिलेगा जो डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, बट जो स्लॉट डिस्ट्रीब्यूशन है फॉर पीएमडब्ल्यूआई वो नेक्स्ट डिजर्विंग टीम को मिल जाती है। फॉर एन एग्जांपल, हेल #1 पे आती है एंड इवोस पर्सिया #2 रैंक पे। एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सो हेल तो ऑलरेडी क्वालिफाई है, बट उनको जो प्राइस पूल मिलेगा वो रैंक के अकॉर्डिंग मिलता है, #1 के अकॉर्डिंग उतना ही मिलेगा, बट जो उनका स्लॉट है वो लाइक ट्रांसफर हो जाएगा नेक्स्ट डिजर्विंग टीम पर्सिया, क्योंकि ऑलरेडी क्वालिफाई नहीं है। एग्जाम्पल दिया। टोटल कितना मैच होगा भाई? ब्रो ये हमें लास्ट मैच पीएमएसएल का कर रहे हैं, देन हम पीएमपीएल साउथ एशिया के लिए शिफ्ट कर लेंगे इस मैच के बाद, फिर ग्रैंड फाइनल्स तो वहां पे करेंगे। तुम्हें कोई और देखे है। कौन कौन सी टीम कंफर्म्ड है? ऊपर नाम बताया ना भाई ने, हेल, द सेवियर, गीक, बूम एंड जेनेसिस। कितना मैच होगा टोटल पीएमएसएल ग्रैंड फाइनल्स में? पर डे 6 मैचेस, 6 into 3 18 मैच टोटल इन टोटल। संडे को फाइनल है। ऑल्टर ईगो लाइमैक्स। तो गाइस ये ऑल्टर ईगो लाइमैक्स आपको पता है क्या मचा रही है? आपके मुंह में घी शक्कर अगर बात सच हो, ठीक है भाई, घी शक्कर से काम नहीं चलता है यहाँ पे ब्रो, यहाँ काम चलता है सुपर चैट से। बीआरयू किधर है? बीआरयू ब्रो, बीआरयू क्वालिफाई ही नहीं हुई, बीआरयू क्वालिफाई ही नहीं हो पाई, ये बीआरयू यहाँ पे नहीं दिख रही है। वेम्पायर को डायरेक्ट स्लॉट क्यों नहीं दिया? वेम्पायर को डायरेक्ट स्लॉट क्यों नहीं दिया? वेम्पायर को कौन सा डायरेक्ट स्लॉट? अरे अरे ऐसे थोड़ा ना डायरेक्ट स्लॉट देते, क्यों देंगे भाई किसी को भी डायरेक्ट स्लॉट? भाई क्वालिफाई करो, डायरेक्ट स्लॉट क्यों देंगे भाई?
अगर आज वेम्पायर को दे देंगे, कल बोलेंगे कि तुम ऑल्टर ईगो एमएक्स को स्लॉट दो। क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा भाई। भाई योर फेवरेट टीम नॉन चाइनीज? गुड क्वेश्चन। S2G। बुरीराम में वैसे भी चेंजेस हो चुके हैं बहुत सारे भाई, उनके 2 प्लेयर तो वैसे भी हेल में आ चुके हैं। ओनली टाइगर वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर थे जो भी आरयू में, तो आपको PMGC पे देखा होगा, नोट अनडाउटेडली देखा होगा, आ चुके हैं। मैच कब स्टार्ट होगा? इंटरव्यू सेशन के जस्ट बाद मैच स्टार्ट हो जाना चाहिए अर्जेंटली। भाई पिछले साल की विनर का PMWI की इस बार पर इस बार, अच्छा इसलिए बोल रहे हो? देखो ऑफिशियल है, कुछ भी कर सकता है। क्या पता वेट कर रहा हो यहाँ से वेम्पायर, क्या पता क्वालिफाई कर ले, स्लॉट बच जाएगा ना, वो कहीं और दे सकते हैं। तो सऊदी लीग से PMWI के स्लॉट है? नो आइडिया, मुझे लिटरली इसके सबसे कोई आइडिया नहीं है। ऐसा ना हो कि होस्ट कंट्री का स्लॉट जो है सऊदी लीग के थ्रू जा रहा हो, मुझे नहीं पता, बट ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया फॉर दिस। इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, सो आई एम आउट। विश यू वेरी बेस्ट। लो भाई चलो। वेम्पायर हैशटैग 2 आई थी 4 पॉइंट की लीड से PMPL आइलैंड हिल, दैट्स व्हाई द हिल इज क्वालिफाइड PM। राइट है अनिश भाई, एग्जैक्टली। शाइन लाइक डायमंड की पर चर्चा चल रही है भाई। क्या क्या जतन करते हैं हमें क्या पता। हमको भी याद कर लो, गेमर ओनली फैन ड्रॉप लो भाई। क्लास डिजिटल एथलीट के डोमिनेशन याद है, PMWL वाला मोस्ट अग्रेसिव S2G पे है ना। PMGC वाले बोल रहे हैं ना आप? क्लास डिजिटल, PMGC क्लास डिजिटल। ओके, लैम्बोर्गिनी आउट एंड चुगा भाई आ चुके हैं। लैम्बोर्गिनी आउट कर दिया, बिग वन, बिग सब्स्टिट्यूट। सेवियर चैंपियन टीम फॉर वियतनाम। करके PMGC में थोड़ी सी चीजें ऊपर नीचे रही वियतनाम के लिए। वियतनाम से अगर हम बात करें द सेवियर के लिए, क्लैश ऑफ रीजन्स कब होगा? क्लैश ऑफ साउथ एशिया चैंपियनशिप बोल रहे हो ना, वो आपका 27 अप्रैल डेट है, बट बोल रहे कि इसमें कुछ रूमर्स है डेट चेंज आगे पीछे। भाई ये अपनी मस्ती में प्लेयर सारे भाई। अरे ये वॉइन के ये बंदे है ना? अरे अरे ये तो वॉइन है। ये तो वॉइन है शायद। RRQ। लो भाई मैच आपका स्टार्ट होने वाला है 1 मिनट 35 सेकंड के अंदर। एंड क्या टाइमिंग बैठी है गाइस हमारी, सच बता रहा हूँ कि हमारा काउंटडाउन भी चालू हो जाएगा PMPL साउथ एशिया का। जैसे ही ये मैच खत्म होगा वहां की स्ट्रीम स्टार्ट हो जाएगी एंड डायरेक्टली हम वापस स्विच करेंगे PMPL साउथ एशिया। तो यस गाइस लेट्स गो। भाई PL फाइनल्स कब से है ब्रो? PL फाइनल्स 19th ऑफ अप्रैल से है। 19th अप्रैल को आई डोंट थिंक कि फ्राइडे है या उस दिन आपका थर्सडे, थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो रहा है। अय्यूब भाई मुझे पता है तुम्हें बारे वाले फैन हो BTR के, मैं बहुत पहले से जानता हूँ तुम्हें। मोहम्मद भाई
अभी we are now currently we are more of Luxy fan, Ryzen fan. We are more of fan of like Micro Boy. 4 बंदों के फैन है. तो currently पगड़ा भारी है EVOS परसिया पे. So we are supporting EVOS परसिया. खेल भी अच्छा रही है एंड काफी अच्छा #3 पे परसिया आ चुकी है. लो भाई हमेशा से यार ये परसिया के ऊपर आके ही क्यों ये ऐसे लैग मारता है, मुझे कोई बताएगा? Why always EVOS परसिया lagging? Let's go boys, last match of PMSL from our side. इसको सपोर्ट करने वाले हो एक बार नीचे कमेंट करके जल्दी से बताओ which team you are supporting with the full energy and the intensity. आने दो. गेम स्टार्ट. मैच नंबर 3 इरेंगल आपकी स्क्रीन के सामने. सो इस मैच में फिर से गाइस मुझे लगता है ऐसा बेकन एंड वेम्पायर अच्छा कर लेगी, बट वेम्पायर में जब तक स्टोन नहीं आता आई डोंट थिंक कुछ चीजें होने वाली है. स्टोन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. बुरीराम को इनवाइट नहीं मिला. पीएमपीएल थाईलैंड में टॉप 3 इनवाइट. #4 आई बुरीराम ने बेकन और बुरीराम. लेट्स गो बॉयज विद द फुल एनर्जी एंड इंटेंसिटी. बताओ कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो. लास्ट मैच है. विच टीम आर यू आर सपोर्टिंग गाइस? विच टीम यू आर सपोर्टिंग? लेट्स गो. फ्लाइट पाथ मिलिट्री के ऊपर से, रूइंस के ऊपर से डायरेक्टली जार्की की साइड को टीम्स ने ड्रॉप आउट लेना भी स्टार्ट कर दिया है. बीटीआर को कोई ज्यादा बीटी हो गई नहीं, वेम्पायर को कोई ज्यादा बीटी होनी नहीं चाहिए. वोइन भी अपने ड्रॉप पे मजे से जाएगी. खेल की टीम के साथ थोड़ा ऊपर नीचे ना हो जाए बस, बाकी सब ऑल गुड सीन. Dropping into military base. अपनी जारी यूडो अलायंस नोवो looking at दिक्कत का सीन नहीं होना चाहिए. जोन की करवटें एंड जोन के शिफ्ट्स कहां जाएंगे. चलो भाई ये फाइनल है ऑब्वियसली भाई. आज मैं बोलूंगा फाइनल है. कोई भी पूछेगा फाइनल यस ब्रो टाइटल पढ़ लो. Because BTR they gate cap Yoodo Alliance at the bridge. Yoodo Alliance might want to do the same against. Thank you so much EON boy, love you too. लो भाई जोन तो अपना बेकन वाला, ये बेकन क्या बोल रहा हूँ वाला जोन है, स्पीकर वाला. तो इनको का जोन आ गया गाइस. क्रिस्टियन माइंड क्वालिफाई है क्या पीएमडब्ल्यूआई के लिए? क्यों, किस बेसिस पे? टीम भाई किस बेसिस? इस बेसिस पे मुझे भी बता दो कि अगर मुझे नहीं पता, मुझे पता नहीं है अरेबिया रीजन का क्या चल रहा है. It's a bit too far from the but I initial think circle PMPL just खेलना now. पड़ेगा ना क्वालिफाई. Vampires on the other hand split themselves into 2 different places for the compounds looting, and they know for a fact they're not have been great right now. So do they want to force the fight? The Access have been very quiet. Now this is a team that used to be the #1, not just in Southeast Asia, and also coming up from the best of Vietnam. But right now we are looking at the Baton being passed over towards the side of SLD. Who's happened to be the best Vietnam team, the entirety of PMSL so far. उनकी मर्जी भाई. मैनेजमेंट को ज्यादा पता है टीम के बारे में कि तुमको पता है भाई. ऑडियंस so this round could change. उनको खिलाना होगा, खिला लेंगे तो ना लो भाई. for PERSIJA EVOS. ऑडियंस के बोलने से चलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे? The cutoff is there for now. This round only. We'll take a couple more rounds for the other teams to actually catch up onto Algo. But Algo so far so good. I also want to point out that what's running in my mind is that for BTR, there's still a bad news for them because voting slot भी होगा. voting चालू हो they don't चुकी do है this by the way. all the in time, game but they did app it sometimes against ग्लोबल Team वर्जन Secret, के अंदर like चालू हो चुकी है वोटिंग. they आप जाके capped भी at the वोट कर bridge, सकते not हो. allowing टिकट्स Team मिलती Secret है. to pass by. आप Yes, they अपने win some, फेवरेट they टीम को lose वोट कर some, सकते but the fact they still did that. So for BTR, लास्ट टाइम मेरे को याद आ रहा है आपकी डैड है गाइस फ्रॉम साउथ leverage, एशिया it's गई still थी going to be पीएमडब्ल्यूआई a शोडाउन risk इवेंट के लिए, they अगर आप have सबको to take याद हो. well. That's just how dropping to military bases at the end of the day. But be aware of like the possibility of GEEK SLATE might still want to take advantage of that because the circle still comprises some percentage of that lighthouse, and that can be a good situation for GEEK SLATE to be in. I mean, but BTI is a team that we take एक चीज बताओ, साउथ एशिया की स्ट्रीम कितने बजे एंड होती है भाई? opportunity for them, but because they will not back out from any fights, right?
BTR so far, when it comes to firepower and strategy-wise, feels like something is lacking. If you compare with all the Indonesian teams out there, I'm surprised BTR being pushed down. This is their downfall. Thank you so much, only fan top. Bye. Thank you so much for the 44 rupees super chat. Love you, Yogi. Bye. Love you 2, 3, 4, 5, 6, Mary John. Thank you so much for the support. Thank you so much. But it has not been working by far. I just wish they know लेकिन भाई इज्जत रखनी है थोड़ी सी हमारी प्लीज क्वालिटी बढ़ाओ ब्रो ऑलरेडी टॉप है देखो ना मैं आपको दिखा देता हूँ माउस हिला के ये देखो ना एचडी सेटिंग दिख रही है आपको ऑलरेडी टॉप है ब्रो यही क्वालिटी है Yeah, I guess PL देख के गंदी आदत हो गई है ना थोड़ी सी ज़्यादा क्वालिटी में देखने की they themselves are big names. Stars on the lineup. PL से अगर शिफ्ट करोगे ना कोई और स्ट्रीम पे आपको क्वालिटी अच्छी लगेगी so a lot of attention would have been given to PL them देख लोगे and इसलिए perhaps a lot of थोड़ा even like from the fans, the supporters as well. समझो चीजों को Naturally, some fans will be very critical, some fans will be very supportive, so there's naturally a balance there. And for BTR having a big fan base, I'm pretty sure that they would have gotten a lot of feedback, whether it's good or bad. So, like what you say, right? It is down to the coaches, the managers. BGMI leaks तो मेरे पास नहीं मिलती, leaks तो मैं कुछ भी नहीं देता हूँ भाई. जान पहचान है नहीं leaks वाली की कोई आपको leaks दे. So, as far as I know, there are some players who would disable their social media when during the tournament day because they don't want to be distracted by, especially the negative comments of the fans if they don't perform. क्वालिटी ऑटो पे है ही नहीं मेरे भाई. We can do better. क्वालिटी ऑटो पे क्यों होगी भाई ये देखो क्वालिटी ऑटो पे है ही नहीं. अच्छा ऑटो पे थी फिर भी यही है ना क्वालिटी लो भाई आपके सामने कर दिया. When it comes to esports as a whole, esports is all about a mental game. If your mental is being swayed plus those negativity coming from the comments PL का stream 19th को bro. So if you're really a big fan of the team, keep supporting them in a positive, good vibe because they needed that. Some of them are far away from their home country. Some of them missing their family. Some of them even missing their children because some of them actually get married. In case games don't have a family, they do have. So these guys don't compare PL scenario with the global to have their mental don't ever compare those chीजों those small things are actually quite big impact for these guys will actually be helpful and it's not easy to be a pro player. Speaking about being away, right? Even crypto twisted man performance yesterday. देखा नहीं Alzheimer's. They are obviously in KL. क्यों बना देंगे टेंशन में. अभी मैंने देखा नहीं honestly बता रहा हूँ मैंने देखा नहीं. Break between is like 4 days, and in that 4 days, it's not like they're like chilling doing right. They still practice, they still do stuff, even though in that break, even though in the home country. Thank you so much Sohi Gaming for joining the Ayogi army and the membership and thank you so much for the support. So they haven't been आज अलग ही प्यार दिख रहा है guys हमारी जनता का. Thank you so much for the support Sohi Gaming भाई. Hope in the chat. And I do agree. दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया. ये membership कोई हमारी आती है ना भाई अलग खुशी होती है इस membership. Chat की super chat की खुशी अलग है membership members वालों की हमारी खुशी अलग. Sacrifice made, time, dedication. They don't even have enough time to go and hang out with their friends because they have to train themselves, especially during this season. PL के bro 18 same 18 मैचेस जैसे यहाँ पे 18 है वहाँ पे भी 18 मैचेस 3 दिन ही है ना पता नहीं है देखना पड़ेगा मुझे 19 20 21 को है कि 22 तक है मुझे डेट देख 19 से तो कंफर्म स्टार्ट है बट एंडिंग डेट 21 या 22 है मेरे को देखना पड़ेगा. They love these big buildings, they love these big warehouses, they love these big museums. Big fan sir, me too big fan of you. Sohi bhai, meanwhile RRQ का big fan हो गया. The scouts are being shut down entirely off. No eyes anymore coming from the side of RRQ. DJ Mike कब से unbanned हो रहा है? हो गया bro, जाके देखो. Restore हो चुका है unbanned. Restore से देखो जाके. And the circle happened to be shrinking at the same time. Ooh, areas of farm. And what interests me actually is look at Yoodo Alliance and BTR. They are still on the military base island. And it seems like Yoodo Alliance, they are waiting for the presence of BTR. And still with this kind of circle, Yoodo Alliance will still have the advantage. Now, BTR said the option of going left is just a matter of gathering information, whether it's clear. But if not, if they choose to go on the right, then it's going to be Yoodo Alliance that will be happy to try to take it. VP again, last day performance, dekho. But I have a feeling when it comes to the circuit itself, we ended up on Medusa intersection. It's going to be a tough one. We mentioned multiple times. It's going to be open street, a lot of them.
And instead of PERSIJA EVOS, they cannot be complacent. एक बार चीज होगी बार-बार करना वो चीजें भाई समझ रहे हो अगर कर रही है तो वो अलग चीज है. Thank you so much सोई गेमिंग for the once again for the 44 rupees super chat. एक shout out दे दो सर इंस्टा पे तो दे आपने. Big shout out to you सोई गेमिंग. Shout out guys. वैसे shout out आपको हमसे से नहीं मतलब आपको हमको shout out देने चाहिए बट कोई दिक्कत नहीं है. Big shout out to you सोई गेमिंग मेरे भाई. बहुत सारा प्यार आपको. Adeo, thank you so much for the super chat and the support. But FaZe has been popping up quite a number recently. Yeah, previously from one of the members of EVOS, I must say. So himself and Coach Sinyo, original members of EVOS, joining up with the legendary Luxy Zaxi. He's the only one from the original EVOS lineup that actually made the transfer over. So considering the only one, then obviously it's because he merits himself and that's why he's here. And he's proving it so far. Doing well, at least for today. We can see that he's the one leading the charge for PERSIJA EVOS. Then he's up 5 elimination points in the previous round. भाई नहीं आया है बीजे में. अरे मैं मजाक कर रहा हूँ 22 जी. बस मजाक में बोला. आप सीरियस देखने भी चले गए क्या? अरे not one again bro. नूजी भाई नहीं. But to go in or not, he's making such an opening for the team as well. Godless versus Action, who is the most composed in 1v1. देखो आज आपको पता लग जाएगा. आज पक्का Godless और Action का 1v1 होने वाला है. बस वो जीतेगा वही composed है. देख लेना आज पक्का होगा South Asia पे. यार क्या कर रही है VP भाई? He's going in alone as a solo, just coming out 1-3 formation on side of GEEK SLATE, but there's so many teams nearby as well. Passing across is going to be Yoodo Alliance and Hill. Hopefully they're not listening to those shotguns right now and those fires, but Tony K managed to trade for one. It's going to be their main frag, damn good on the ground. Ooh, okay, but at least it's a long distance shot. Vampire Esports don't seem to be interested to crash in, so it's more like a warning shot and also to just wear down their utilities and healing items, forced to use at least one first that long range shot. So as long as they can wear one down, who knows, in the long term, if they face against each other, they would have the utility advantage at least. And looking over at the circle, BT the left bridge into the circle, they are A-OK. Yoodo Alliance on the right, A-OK as well. So no team sacrifice as of now. Yep. BTR did actually take the left rotation. That was smart, but they're spreading out far away from each other. 2-2 formation. Coming in very late, PERSIJA EVOS from the north, but REQ in between. There's going to be a crossfire on the north very soon. अरे रुको जरा सब्र करो. भाई जाना पड़ेगा प्ले स्टोर पे क्योंकि 1 लव बीजे. अरे नहीं वो 20 हुई. ओहो अलग ही चल रही है. No, taking on those guns out. They are rushing in and same 9 in a swift. Finished off in the hands of Alter Ego. Oh, without a single point this round. IMAX. At least in the previous round, they got a couple of points, but not at all. Being the first team to go out, and they went out to Alter Ego. भाई ये टीम अलग मचा रही है भाई. Alter Ego IMAX impressed a lot. 50 point plus 3 point जोड़ दो 53 point Alter Ego IMAX के. मैच के स्टार्टिंग पे ही एक टीम वाइप कर दी है. Sam 9. लास्ट मैच काफी अच्छा डिफेंड कर रहा था अगर आपको याद हो अगेंस्ट द हेल. We mentioned about these two teams. We cannot stress enough how aggressive Variant these two can Solar get. QEON I always want to see कि Boom bro versus Alter अगे Ego भाई at the शादी end, कब कर रहे हो because नागिन if डांस it's 2 teams left by the end, I want to see these two ही having a go for once to see who's बहुत जल्द better at शादी it कर रहे when it comes to teamwork. But on the other hand, we do have Boom आपके charged मैसेज by का विच कर रहा QEON था. instead of DX. Now DX they don't have Lamborghini as a main and opening fragger for the team. I want to see this lineup to work by Nick. जब आप बोलोगे बस उसके कुछ टाइम बाद गाइस. Dropping a nade right onto of Pmw. That's going to be his first personal action inside the PMSL Grand Finals, and a good one there with that knockdown to Pmw. Boom. Are they going to go in for it? Razy's going in. Okay. Pmw used as a stage by Xavier. Xavier still with a high ground. But remember, now Pmw threw a splat, and it's going to be given to Chua as a grenade elimination. ये पोजीशन ही बीटी है भाई. How do they want to go for this? Will they go for a different route entirely? Where is BRU? Bro, BRU qualify नहीं कर पाई. BRU Infinity qualify नहीं कर पाई तो उनके प्लेयर अच्छे थे तो लोन पे ले लिया जो qualify कर गई थी या फिर जिनको franchise PUBG Mobile partner slot था Southeast. Potato Heels of Pachinki taken over by the side of DX for now. And they're still inside of circle, nowhere near being closed in by the blue zone, but they know for a fact they're at the rim of the circle. They cannot stay comfortable there. PERSIJA EVOS taking on the northern side, have DX's glimpse on the other end,
but do they want to take advantage of it? We are trying to look for what is DS shooting right now. But FaZe just knocking on Yoodo Alliance's door. Here goes. Knocking on Yoodo Alliance's door. Team में कौन सा favorite player है आपका His team is still on the other compound, but for his teammates to come by, it's going to be quite a distance. Tony. So they need to really time it right. As Momo tosses it into the second floor, they look at the stairway. It's going to be A-okay for now, but he's running out of now. He's forced to use the smoke to buy time. Speaking of vampires, at least they got himself a circle this time, right on top of the farm at the shoreline. Got himself quite a compound, but on the side of FaZe and Yoodo Alliance, this rush. Thank you so much, Anubai, for the constant support and the Australian 2.99 super chat. भाई PMPL ऐसे live होगा या नहीं होगा? करेंगे Anubai. बस इस मैच के बाद PMPL साउथ एशिया शिफ्ट हो रहे हैं. 5:30 बजे से मैच स्टार्ट होते हैं. तो ये हमारा लास्ट मैच है PMSL का. हम completely shift. In a flash, Yoodo Alliance, they will fight back and they will try to get FaZe out of this places, but Venturas is just too far. Now Kenny trying to cut the corners out. They need to clear those corners right with those DBS in play. They are at a risk, but Mela knock. A bit of a trade done. Onzo's coming into a sort of look, but Alter Ego fighting VOIN on a different corner. But Yoodo Alliance, they need to finish this closely, fast as they can. VOIN and Alter Ego is just so nearby. Remember they're done there, they're going to go on the top of FaZe and Yoodo Alliance. The last player remaining. Can he pull a clutch? Oh, can he actually do it? But now focusing on the Halo Esports with Get Slow. Trying to finish out the members of and Hale is also eliminated, guys. अनु भाई आप आए हो, बसड़ लेके आए हो आप. 2 टीम एलिमिनेट करवा के अर्ली स्टेज पे, तीसरी होने वाली है. ओ भाई अनु भाई की सुपर चैट बहुत सारी बसड़ लेके आई है. While we're looking at vampires, start the step suicide of BTR. Is eliminated, Hale eliminated, BTR is about to eliminate. Different side at the same time, but they are just too open. They got themselves the smoke. Tony K got himself the shack, but the back line, nobody's actually guarding over that side. They are shots to the side of Empires and BTR left, right, and center. Speaking of the other teams out there, they definitely are busy themselves out there. But Satan knocked out on Tony K. This is detrimental for Empires. Full shotgun बाजी भाई, अभी तो आपको कम दिख रही होगी. Nobody covering their backs now. नहीं Tony K all alone, and now he's bleeding out. Definitely finish off Tony K. Vampires, but they're still going to go in for it. They know that how precious Tony K alive is. Ravenclaw will be the one, but Ravenclaw will need to evade those nades are not done yet. We can see BTR just tossing it onto Vampire. Nice. A crossfire coming in. Swabs. One knockdown. That will stop BTR. बच नहीं पाएगा इस टूर्नी पे. Thank you so much Anu bhai for the another super chat. अगर live होगा तो कल देखेंगे सुबह time difference. अरे yes Anu bhai. I can understand. काफी ज़्यादा फर्क है टाइम का, बहुत ही ज़्यादा. Yes मैं स्ट्रीम करूँगा कल सुबह, देखना आप स्ट्रीम को रीस्ट्रीम हो जाएगा फुल तरीके. लाइक कल आपको पर स्ट्रीम देखने को मिलेगी 6-7 घंटे की. PMSL भी होगा एंड उसमें PMPL भी होगा सब. बट लाइव देखोगे ज़्यादा मजा आएगा आपको. ट्राई करना अगर 1-2 मैचेस देख सको स्टार्टिंग के, पहला दूसरा. But for Yoodo Alliance, it's okay for them to not to have a move first. For Voldemort and RRQ, this is going to be the last play of RRQ. Like it or not, you have to take this fight. Okay, I'm waiting to see if you pull the trigger onto Lynx, but probably miss his opening. But now it's going to be a second chance for him. Lynx still doesn't know that Lin bhai पीछे देखो पीछे. The blue. When will he pull the trigger? Okay, now he has a clear sight. Cut knock finish. Lin bhai knock finish. Shoots out to Lynx. Lynx gets knocked down. And barely make it in, and got himself an extra bonus point, and then finish off the job. But this definitely will give away his position. Voldemort needs to heal himself in case PERSIJA now coming in. Zuxi with a vehicle, rushing straight, and a flying car flipping over with that DBS. One shot, and didn't make it. Did he make it on time to save? Yes. No. अरे भाई ज़क्सी भाई tried their best भाई, tried hard कर दिया भाई, try hard कर दिया. ओहो अल्ट्रा ईगल IMAX BTR potato down, 70 down. BTR one now as well. They're trading it back, but deals. भाई तो VP के लौंडे निकाल दे नॉक्स. मैं पहले ही बता दूं आपको, BTR के नॉक्स आए अपने VP के बंदों ने निकाला. But the Molly were burning them off quite alive. Here comes Rosemary and Fnatic trying to flush out survival in this very small shack. Where to hide and where to go. Lucky enough, he got himself a couple of smokes to just stall
They needs to get out, but Fnatic and the rest, they're tunneling their vision, not aware. The flanks is too bare out in the open. Vampires take advantage of it, taking this as a third party in. भाई मजा आ रहा है यार. Yes. अभी देखो अभी तो QEON और बढ़ेगा. But speaking about shots, who needs a shot? लक्सी भाई ने full try hard कर दिया. But यार वो बंदे ने zone के बाहर से क्या पीटी दिया भाई. Next level में तो 4-man होती है. Gosu. It's now Hexas. Hexas is currently eliminated. Kind of like Diamond once again proving. Boom entirely. Next is a big hit, like visiting Alter Ego with भाई, the rush. Rosemary क्या ही बोलूं, Alter Ego Live X भी गई है. GEEK SLATE going in as a hunch and just follow their intuition चाहिए भाई, यही आना है सबको, यही चाहिए. Alter Ego, but they बहुत are बढ़िया. just digging their own grave here. They are in the center of attention now. They are in the center of the circle, but Vampires get themselves a Thanksgiving Day because it's a free eliminations for them. They're not even needed to budge out of their compound, out of their comfort zone. But GEEK SLATE up and down. Only smoke is buying time for them to reset. Hopefully they'll be able to do it before the smoke goes away. Vampire Esports on the other side, just pinning down Salt. But at least the good news is that they are within the circle. Vampire Esports would be a little bit more interested with what's happening behind them. That's going to be Yoodo Alliance creeping in onto Vampire Esports. GEEK, lucky enough, the smokes will actually try to be used as much to revive their teammate and got himself a couple of boxes to loot up, but will be enough. Yoodo Alliance wants to go into a sort of GEEK. The one that popping up the smoke will attract all the attention surrounding them. Yoodo Alliance sharing the same compound with PERSIJA EVOS, if I'm not mistaken. Bonus point add नहीं हुए, हो गए bro, already added है. ये third match में they try to shut down BTR, but at the same time GEEK smoke is just too obvious. They need to know what's happening inside, but Shrap started running low of his ammunition. He's running dry. Ravenclaw open up the space a bit more for the side of Empires, guarding over the back line, but Snipes spotted out Newsy from that distance with that car. 98k, sniping away from afar. Oh, here we go! As Flex goes in, takes out one member of PERSIJA, and the circle moves up north, meaning that these two teams will need to manage the road after Zuxi gets away. Luxi still left behind, popping up a smoke. Grenade elimination, Kapaji, Luxi भाई बच्चे हैं, damage दिया है, but बचना पड़ेगा. Hard pick लेके बैठ. Okay, Zuxi भाई. एक तरफ Luxi, एक तरफ Zuxi. But Luxi coming up from a different angle. The twins. पूरी position can they do work for the team here? So much effort putting into it. PERSIJA EVOS, Luxi running dry on this bullet. But he still got himself those AK amp to work with. Giving a pressure instead of Kenny, but didn't clip Annie and instead. Thank you so much, OnlyFan Top Boy, for joining the Ayogi army. Thank you so much, bro. There's no way for his shots to come across and come through that. Okay, EVOS पर्सिया अब मुश्किल है यहाँ से जाना. लक्सी भाई अपने शैक के अंदर है, अब तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल. एक और नॉक भाई इस गेम में सच बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा डैमेज वैम्पायर का निकलने वाला है. नॉक्स निकाल लेना, गिनती में बोल रहा हूँ मैं, कितने ही नॉक्स निकाले. बाय द वे OnlyFan भाई, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग द आयोगी आर्मी. बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट करते हैं चैनल को, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. ऐसे सपोर्ट करते रहना. थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट. एक और नॉक आएगा क्या? Shrub is just going to tap away, managed to get a knockdown. Bacon time, getting 5 elimination points at the same time. Slate, one knockdown. This nade from Yoodo Alliance could prove costly for GEEK SLATE. Side of Yoodo Alliance not so great either. I'm not sure if any of them got the Molly's work. Yeah, Zilin didn't actually have a Molly, and Zilin got himself a Kobe. Now all they need to do is just flush a dose in a very small shack, and that Molly can do a lot of work there. But Yoodo Alliance trying to just close इस एरिया में ना कोई बंदा देखेगा इतनी पेटियां मिलेगी ना भाई, कितनी टीम वाइप हुई है. Alter Ego Live में Yoodo Alliance giving pressure on side of Zilin. They missed those mollies, they missed those nades, but here comes another pressure of wave to just let GEEK out of their comfort zone. Bots coming on from behind. GEEK SLATE being hammed down here in between these two teams. Oh, but there's Esports still not letting go. Yoodo Alliance, but the counter fight coming from the outside. There's going to be Boss Gaming. They can see Esports, but GEEK SLATE nevertheless still eliminated at number 7 with 5 eliminated points thanks to Yoodo Alliance. But now look at the circle. They are all playing by the rim of it, meaning they want dominance in this area.
Down to 5 teams with Empire. How many Holding teams knocked will qualify down to with 2 PMWI players from remaining. PMSL? Nuzi Top 2 decided teams to go in after to the grand smoke finals. and try to save Strap. Bye. But the problem is the smoke didn't cover Straps right now. Level Only 1 a helmet. rock in between them. With Empire's Nuzi scatter all the information that's going on the outside. Ravenclaw will be giving the support fire from the back line. But Box, they are hungry and thirsty for blood. Splitting into 2-2 formation. With Car 8, BD28 and those rivals gunning down on Yoodo Alliance and Vampire at the same time. Speaking of another team, we do have SLD on the other end and Bacon taking the center of the circle. These are the northern teams that Jakshi coming up from आपकी the EVOS north, PERSIJA से खेल untouched, रहा है unharmed, but Yoodo Alliance starts to crack. बढ़िया. That's going to be Nuzi cracking the code into the smoke. You can always depend on Nuzi and his nades here, and they're not stopping those nades. At the same time, PERSIJA takes down Winnie somewhere else, and that's going to be पांच टीमें guys आपकी busy अलग time है. for Boss Gaming on the other end. And Another like nade from Diamond, Nuzi, Beacon, not stopping Box, yet, but Nuzi and probably Beacon. out of nades. Yes, he only has one nade left, so he's going to save that for later. He's Pmpl ऐसे अभी तक तो hashtag 1 टीम ही जाएगी. South Asia जो चैंपियन होगा. Two Hashtag 1 teams ग्रैंड in फाइनल circle, स्टार्ट है बस now थोड़ी three देर of them on the outside. Pmpl साउथ एशिया की तरफ ही. But तो स्टे ट्यून्ड गाइस. capitalizing the अगला circle मैच is हमारे gonna be Pmpl SLD साउथ right एशिया now, के रहेंगे. taking over बाकी अगर आप 50% स्ट्रीम के of अंदर it. नए हो We're so make sure to hit the spreading like out and subscribe to the channel on guys. the Let's go. northeast of it. While Bacon holding on the other side. Box and the others, including Empires here, nowhere near inside, but they got himself 5 elimination for Box again. Bacon, they have the center, yes, but they're leaving out with only 3 players. SLD, they have a chance to get a back-to-back chicken here, Cloud. Oh yeah, a good possibility here for SLD. As long as they can maintain the position, they could do it. But now their challenge is to take out the other teams as Nuzi wants to take out Yoodo Alliance. Break coming in from Ice, hitting onto Boss Gaming as Capone goes down. Ice. Bacon, some ice. Do have himself some Bacon ने शुरू से hold करके रखा है ये को. Luckily zone They only got पे himself favor one कर रहा है. elimination, but they can gain Unlike more Diamond, by this. क्या But रहा? never mind. Return fire on the Please side wake of 9 noise of Bacon time. They were in panic mode because right now it's not just only SLD firing against side of Bacon time. The others as well. They have to make sure they covers all the angle. Plays the finish of Yoodo Alliance. Down to the last player. Shinos on the other hand. Still holding to those shacks. Shamil, the last player of Yoodo Alliance, barely hanging on to his dear life. As Nuzi keep the pressure on their side. They go in for the rush. It's bloody but never mind. Got another knock, but before he can finish off. The rest of Vampires can get back up to their feet, but the blue zone is not helping. He doesn't have to carry those burdens and carry his teammate. Get into the zone back on his feet. Oh, he's still trying that, but SLD not making it easy for them. SLD putting focus onto Vampire Esports. SLD still in a good position, but now Boss Gaming in a Box. tough one as Last Jonas बंदा is बचा left all Box का alone अगर inside मैं the गलत shacks. नहीं हूँ तो yes The Bacon last time guy will है not कि want to इस let last him guy. go. The good Box news का is that last they are बंदा in the बचा, Shine Like circle, Diamond but का the बंदा next revive होगा. इस circle पूरी might not 1v1 favor them. Right now, 2v2 we'll man है. know for sure wherever the circle go, and it still goes to SLD. Inside of SLD, there's going to be one small hill that dividing them from Bacon. भाई Shine Like Can't Diamond is see playing what's damn happening good on भाई. the Last other week end, इनका but काफी they अच्छा can गया था. carry with their उस audio मोमेंटम cue. को कैरी आउट Inside of करा भाई Box और ये Gaming रैंगल इनके is मैचेस being में पॉइंट boxed निकालने by के लिए that फेमस shack, है and ये. Bacon's all Top matter of almost time right now. top They want to 3 go तो in for the rush. आने The ही वाले हैं Vampires, ये. they still got themselves those elevations, They are but proving they are कि in an they are open the area. kings of the SLD Wrangles spreading out भाई. into 3-1 लास्ट मैच में formation. निकाला था. इस With, मैच I भी think काफी there's अच्छे gonna be चांसेस है PERSIJA, इवन दो maybe the बेकन other आ players चुकी है. going in हैशटैग for 2 the flank for सॉरी their हैशटैग off अभी angles 4 के in अंदर है. case somebody stands up. Trongzin is the man they have to rely on to be the anchor for SLD in case. How many somebody teams will coming up qualify? from Bro, from off angle that they didn't Samuru bhai, realize. hashtag Bacon 2 time right now, MS barricading 14. himself with those Dacias, those vehicles. But for how much longer? Vampires for Ravenclaw and Nuzi working as a duo. They lasted quite a long time within themselves. Oh yeah, they had to fight multiple teams to get ऐसे वाला into देखोगे this यस मेरे भाई देखेंगे spot बोला ना right ऐसे now. वाला अभी शिफ्ट Let's कर रहे हैं see, ना इस hopefully मैच it's going to be worth it for them to get that chicken मैच dinner. के बाद 4 वी आर elimination शिफ्टिंग टू ऐसे एक बार ओवरऑल रैंकिंग देख लेंगे Vampire एंड Esports. ऐसे Nuzi keeping eye on to Bacon time. But the needs to move is going to be Vampire Esports. It's Bacon me, I time guess. might still have some room. पूछेगा Oh, कौन है बेस्ट Ah, that's why they're popping Yeah, out the yeah. smoke. They're starting to plan their move. But Junos is still alive. And remember, Junos backstab PERSIJA EVOS inside of Sandhawk. He could do it again. In this case, the first one to move will actually the one who will be shot down first. And the one that actually have to move will be the one that actually being comprised of the blue zone. That's going to be the case of Bacon time, but they're shutting down on Box. That's a clever remark coming up from Bacon. So they know for a fact the only one that can backstab them is going to be Box Gaming. But Bacon, it's not done yet. They are forced to fight against Vampire. I feel like this is going to be SLD back-to-back chicken dinner. They have a 4. They outnumber these guys. They are not
within the reach of vacant time as well due to the heals in between them. Yeah, it's actually looking good for SLD now, considering like how much control they have within this safe area right now. Ravenclaw close to get eliminated. The zone wouldn't land onto him first before he heals up. Okay, he managed to heal up. He has full first aid. Right now, Ravenclaw, because he's the last man, he will stay put. He will stay low for now, allowing vacant time and SLD to fight against each other. They still have a shot here for like Diamond, as long as the Blueson didn't actually close on his side first. first. But like, you know, it feels like going that way now. Ravenclaw will be discovered by Bacon time. But the problem is, can he cut across? But Bacon right now tunneling their vision to the side of SLD. Singers for the side of SLD, but Throngsin knows exactly where the last member of Vampire is. He wants to go for the rush with those vehicles, and he's planning to go for it. He can. I think he's just finding an angle there by climbing into the vehicle, but can't seem to get it. But right now, they are lining up with each other, creating a barricade just to a little bit more defense for the side of SLD. Ravenclaw still survive somehow. Bacon time being taken out by Quad, and this could be an opening for SLD on the Bacon time. 4, 2, 3. Raise random spray on Bacon time. Hello. SLD and again back-to-back chicken. Shine like diamond, bye. ये टीम नहीं मान रही भाई, ये टीम बिल्कुल भी नहीं मान रही। लास्ट जो आपका लीग हुआ था, उसका चिकन इसने ही निकाला था। चैनॉक में नहीं आया, फिर से चिकन निकाला, फिर से चिकन निकाला। भाई ये टीम अपनी दावेदारी पेश कर रही है। गाइस जीजी कर देगा शाइन लाइक डायमंड के लिए चैट के अंदर। एंड एंटीट्यूड टीम बेकन एंड वेम्पायर, बहुत ही अच्छा गेम प्ले एंड बॉक्स भी काफी कंसिस्टेंट खेलते हुए जा ही रही है। रैंकिंग हमारे पास आ जाएगी, एक बार मैं आपको ओवरऑल रैंकिंग दिखा दूं, देन पीएमपीएल साउथ एशिया पे अपन शिफ्ट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, जीजी 4 एलिमिनेशन कुआन जी, रियली शाइनिंग लाइक डायमंड। यस यार ब्रो आपकी सबसे फेवरेट टीम एंड फेवरेट प्लेयर कौन से रीजन की बात करो? एंड थैंक यू सो मच तरुण नाग भाई फॉर द लाइक ज्वाइनिंग ब्रो मेंबरशिप। थैंक यू सो मच तरुण नाग भाई फॉर द 44 रुपीज सुपर चैट। भाई कैसे हो? पीएल फाइनलिस्ट नेम बताओ। भाई एकदम बढ़िया, आप सुनाए आप कैसे? पीएल फाइनलिस्ट के नेम्स बताने तो एक बार आप ना हमारा पोस्ट देख लेना इंस्टाग्राम पे, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो तरुण नाग भाई, वो ज्यादा बेटर रहेगा। भाई कैन यू अनमॉड मी बिकॉज सम टाइम बाय मिस्टेक आई हाइड पीपल। ओके ब्रो अनु भाई, और अनु भाई इज द फर्स्ट वन जो बोल रहे मॉड से मुझे हटा सकते हो। चलो कोई नहीं, ठीक है अनु भाई, हमने हटा दिया। बाय द वे तरुण नाग भाई, हमारा टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, प्लीज टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना हमारा। बाय द वे मैं आपको टीम बता देता हूँ जो मुझे नाम याद आ रहे हैं। पाई, WBG, TJB, टियनबा, 4AM, नोवा, TC, इसके साथ साथ लाइक और भी टीम्स है, लाइक 15 टीम्स है। एक बार हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, आपको सारी टीम्स पता लग जाएगी। अनु भाई ओपी, यस अनु भाई ओपी। सात्विक भाई ब्रो आपकी सबसे फेवरेट टीम फॉर इन ऑल रीजन के लिए ब्रो टाइम लगेगा 2 मिनट रुको, मुझे अभी शिफ्ट करना है साउथ एशिया के लिए, जल्दी से साउथ एशिया शिफ्ट करना है, साउथ एशिया पे जल्दी चलेंगे भाई। आपकी सबसे थैंक यू भाई, यस थैंक यू, वेलकम अनु भाई, वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट यार दैट यू आर डूइंग। एंड तरुण भाई थैंक यू सो मच फॉर द सुपर चैट। एंड पैट्रिक भाई थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीशन ऑफ 1 मंथ एनिवर्सरी ऑफ और अयोगी आर्मी ज्वाइन करने के लिए। पैट्रिक भाई अगर आप देख रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। वी वांट पीएमपीएल साउथ एशिया। विकास भाई लगा रहा हूँ, बस ओवरऑल स्टैंडिंग का वेट कर रहा हूँ यार, एक बार ओवरऑल स्टैंडिंग दिखा देते देन वी आर मूविंग टू पीएमपीएल साउथ एशिया। आजा भाई ओवरऑल स्टैंडिंग आजा। पीएमपीएल मयंक अग्रवाल जा रहे हैं, एक बार ओवरऑल स्टैंडिंग देख ले, मतलब 2 मिनट का खेल है, बस 2 मिनट में ओवरऑल स्टैंडिंग आ जाएगी, बस 2 मिनट। थैंक यू सो मच तरुण नाग भाई फॉर ज्वाइनिंग द अयोगी आर्मी। भाई क्या आज तो तुमने दिल खुश कर दिया गाइस, सभी लोगों ने तुम हमारा दिल खुश कर दिया, बहुत ही प्यारा दिल खुश कर दिया आप लोगों ने हमारा। चलो भाई एक बार ओवरऑल दिखा दो भाई जल्दी से प्लीज, ओवरऑल स्टैंडिंग गाइज।
लो भाई, और रोस्ट मैच रैंकिंग्स आ गई गाइस आपकी स्क्रीन के सामने। टेलीग्राम लिंक दे दो भाई, टेलीग्राम लिंक मॉडरेटर प्लीज टेलीग्राम लिंक स्पैम कर दो एंड गाइस ज्वाइन कर लो, उस पर सारी चीजें हमारी अपडेटेड है, बोनस रैंकिंग, बोनस पॉइंट, सारी चीज। तरुण भाई आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी मैं आपको बताता हूँ मैच के बाद। अभी मेरे को पीएमपीएल साउथ एशिया शिफ्ट करना है, थोड़ा सा मेरे को टाइम दो। टेलीग्राम दे दो ना पुनीत भैया। चलो भाई, जल्दी से आजा। ओवरऑल रैंकिंग फर्स्ट। आज ग्रैंड फाइनल्स वाली वाइब नहीं आ रही भाई। लो आ गया, पुनीत भाई ने दे दिया हमारा लिंक। लो भाई, ओवरऑल रैंकिंग आपकी स्क्रीन के सामने। फर्स्ट नंबर पे शाइन लाइक डायमंड, इवन दो इतने बोनस पॉइंट नहीं थे फिर भी बहुत बढ़िया बकल अप। देन अल्ट्रिगो लाइमैक्स, कंसिस्टेंट टीम्स है दोनों। बेकन कंसिस्टेंट 2, #2 आई है। पर्सिया #3 #4, ज्यादा फर्क नहीं है 6 पॉइंट का। फेज के मैचेस ये वाला मैच फिर से अच्छे नहीं गए, 3 में से उनका एक मैच अच्छा गया डिसेंट, जहां उन्होंने नंबर निकाले। बॉक्स पॉइंट्स निकालते जा रही है। वीपी की अगर बात करेंगे, ये मैच डिसेंट था उनका। देन हेल की टीम, बूम, यूडू, द सेवियर, RRQ, GEEK, BTR, VOIN and SM9, these are the overall ranking after the match number 3। एंड इसके बाद जो भी मैचेस है गाइस हम शिफ्ट कर रहे हैं पीएमपीएल साउथ एशिया के अंदर, क्योंकि यहाँ पे 1 घंटे का ब्रेक होता है। आप लोगों को अगर नहीं पता, सो देयर इज 1 आवर ब्रेक, कंप्लीटली 1 आवर का ब्रेक रहता है। तो वी आर शिफ्टिंग पीएमपीएल साउथ एशिया भाई। चलो quite dicey. It ओ भाई, आज फिक्सेस भाई है हमारे। हेलो फिक्सेस भाई, कैसे हो गाइस? आज की स्ट्रीम इंग्लिश वाली मजे आने वाली, मतलब फिक्सेस भाई यार। teams like DRS who kind of achieved a lot of laurels Let's in go. the global stage as well. So can't really rule them out. Then we've got the previous champions, the Fixes high by voltage. OP. They haven't had performed up to their level, to be honest, throughout the league stages. But maybe we're just hoping this time might be a new beginning for them. Maybe because high voltage, they were not able to win those 4v4 fights. चलो गाइस, एसटी को सपोर्ट करो। चलो बॉयज, लेट्स गो। मैच नंबर 1 ऑफ ग्रैंड फाइनल्स आपकी स्क्रीन के सामने। पीएमपीएल साउथ एशिया, सबको बुला लीजिए, लिंक को स्प्रेड कर दीजिए। पीएमपीएल साउथ एशिया फुल बूम बाम, फर्स्ट मैच आपकी स्क्रीन के सामने। लेट्स गो। So NB Esports is also one of the team that do tend to perform really good in the map of Miramar. So maybe this can be the game for NB Esports. फिक्सिस भाई को शाउट, अरे फिक्सिस भाई को शाउट आउट देना। फिक्सिस भाई को बोलो हमको शाउट आउट दे भाई। फिक्सिस भाई ओपी बाय द वे। Into the deserty lands to find out who comes out as the winner of the first game of our grand चलो भाई, लेट्स गो। PMPL फर्स्ट मैच आपकी स्क्रीन के सामने। मिरामार का गाइस पहला मैच है। टॉप 16 टीम्स ग्रैंड फाइनल्स की बैटल कर रही है। बाय द वे वो मेरी तरफ से इशू नहीं था जो रुका था। दैट goes to the scenarios जो है, जो हमने स्टार्टिंग से भी देखे। यहाँ कितने बोनस पॉइंट्स थे अभी देखो, रैंकिंग आएगी। Yeah, definitely. In the city of Los Leones, where the players are 5-8, and NB Esports tend to go, even for the players of City Esports, sometimes they engage in early drop collisions. 2x करो भाई, लैग करता है। 2x करने में इशू नहीं है, old love stories, लैगिंग करता है, maybe the grand finals also, but in Senna, definitely they will go up against each other. All right, and so since Shadow has said it, it's kind of set in stone that we're going to see that action brewing up in Sandhawk. But for now, I mean, they kind of made sure that they avoid each other in the past, but these are the grand finals, right? This is where every single match, every single finish really matters. Your favorite team from India, your favorite team? ट्रेंडिंग शॉट्स भाई बहुत सारी फेवरेट टीम्स है, बहुत सारी। लाइक अगर आप देखते हो अभी तो बैन हो गया सीन, पहले लाइक एक्सो हो गई आपकी, एक्सो how really come off. So I think a lot of teams would be inside the circle. 7C would enjoy the sweet time. बहुत सारी टीम्स है गाइस, अभी तो कहीं टीम के नाम भी याद नहीं आ रहे, बट देयर आर लॉट ऑफ टीम्स। बहुत अच्छी लगती है, बट एक बार गेम आ जाए। मीनवाइल फर्स्ट जोन, ये वाले जोन हमको काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। लाइक हासिएंडा ओरिएंटेड सर्कल्स आप बोल सकते हो, बट सेकंड सर्कल का भी हार्ड शिफ्ट आएगा। तो देखो करवटे कहाँ जाती है, मैप को बेनिफिट करता है या फिर वो T2 को बेनिफिट करता है या फिर वो लियो को बेनिफिट करता है, ये देखने वाला सीन रहेगा। फर्स्ट सर्कल आपकी स्क्रीन के सामने। But Skylight's segregation that comes in from their side भाई is not helping their at case. my And word both this DE time विनर। they're ओके, regrouped, अनु भाई ने they'll बोल दिया play DE as के a चिकन unit डिनर है। because चलो if भाई they're फिर देखते हैं going to DE। get picked one by one, Skylight's gaming, I think grand finals 4 won't be looking MV so very good for them. ओके, देखते हैं अप्रोच क्या रहती है। 4 MV की आई है SITM 4 MV right, and Skylight's gaming PRZ been in a dip ever since. I'm just waiting when Uzdel are well they वाला going to make shit their अपना comeback स्प्लिट on the big जो stages, हर एक but टीम certainly लेती they है। have the potential. They've done wonders, even represented the region in the GC. So
it's all about awakening the inner demons tonight. But we could see quite a lot of a spread going on for Dead Eyes. As you can see, on top, Slayer, Precious, and True Love. They're kind of way apart from each other. They're gonna cover a lot of ground. SITM, They're gonna Desert. get a lot of loot done. But what matters is they really need to maybe just close in and take control of water treatment. Because DRS, they're certainly gonna enjoy themselves with the position that they have around Hacienda. भाई So ISC का मुर्गा that's going to be really crucial if DRS and Stalwart just lock on heads against each other right from the very start. Because to be honest, Shadow, with the new point systems that have been added into this PMPL lately, this has been like the Achilles heels for a lot of teams. They took a lot of time to adapt. But हेलो I'm pretty शाकिब भाई, sure क्या हाल at this चाल? stage, they know how to approach the circles. I think yes, they have adapted, but at the same time, few of the teams were not able to एक मिनट find रुको the गाइस, मैं perfect अपने balance between the placement टेलीग्राम points पे and the जनता को elimination बता दूं points. कि So yes, there is a साउथ एशिया major लाइव shift in the point आ जाइए। structure, but still you need to have the perfect balance because few teams couldn't qualify for the grand finals because of the lack of placement points. They had elimination points, but placement points were completely missing, because of which they couldn't qualify for. I hope this time the teams are going to focus on the placement points as well. The first few circles, I think till the third circle, there will be a dull moment in the game. Stalwart Esports, talking about this team also, they had a very good, very consistent run. The entire 3 weeks they were on the top, not on the top, on top second position. They were sitting in the overall इस leaderboard. टेलीग्राम पे So हमने yes, लिंक भी दे already दिया है, Stalwart सो Esports आ is जाएंगे जल्दी looking से। fantastic and prepared for the भैया grand फिक्सेस और finals. ओशन की कास्टिंग में they अलग ही certainly फीलिंग are. आती है। I mean, भाई this is भाई one of those teams that ओपी we भाई really ओपी। love to see and watch, right? Every single thing they do is nothing short of magic. And with Nizet coming in, even IC over there, one of the फिक्सेस भाई कास्ट कर consistent रहे हैं क्या? players, यस we just भाई, hope that भाई आज action कास्ट कर रहे हैं, अच्छा लगा gets देखे। into मैं his तो अभी own जस्ट groove स्ट्रीम खोला tonight. एंड फिक्सेस And भाई को top, देखा, well, आज he's तो one of मजा my आने वाला है favorite गाइस। players. बट हमको And वॉइस नहीं आता है I इशू। know the kind of cover that he gives, and even when it comes down to रिजल्ट भाई being the सैन one मार्टी। leading the charge, he's also ये there. टीम He's गाइस done काफी that in the वंडर्स कर past, सकती and है, that is इन्होंने one of the करके भी reasons दिखाया why है न्यू प्लेयर Stalwart एडिशन के Esports are the बावजूद hot डोमिनेटिंग द favorites लीग to win स्टेज। the देखते grand गाइस finals. But आज if के दिन you've पे got क्या a team सिनारियोज like आगे देखने को NB मिलते हैं। Esports, मीनवाइल एनबी now स्पोर्ट्स इनकी NB has फाइटिंग also, वाज have had इनसेन। their जब good जब हमने days and स्ट्रीम्स their देखी है, bad, इनकी but फाइटिंग वाला सीन eventually हमेशा से इनसेन they've हमको देखने को done मिला है, pretty nice. जो कि So एक tell me नेक्स्ट लेवल something चीज more रही है about स्टार्टिंग this से। team. Well, enemy esports week number 1, I think it was Miramar only where they got टीम विद maximum चिकन डिनर finish शुड points. They गेट had a 5 very पोजीशन। good run for the start of week number 1, भाई but I think the other 5 teams 0 read the strategies, so there was a big fall from their side. But week number 3, the way this team has picked themselves up, the improvement in their gameplay has been हैकर जैसे showcased. मार Week यार। number 3, अरे they अरे were यार ये annihilating टीम the entire lobby. So many क्या finish बोले points, भाई, ये placement टीम points है ना were coming for the ओपी। players of NB esports, especially the guy Mondo बढ़ा from दिया their भाई। side. But Akaze is the one who needs to control his aggression because he's usually the first one to be taken out from the lobby. If he controls his aggression, I think NB esports are already looking very strong. Yeah, I think NB certainly are. Mondo, as you said, is one संदेश of भाई those भाई players to संदेश really भाई ने watch क्या out for. बकलब करवाया बे टीम And को, बहुत मजा, now बहुत ज्यादा talking मजा आ about गया। watching out on each समा other, बांध so दिया T2K संदेश भाई ने, Esports पूरा and समा Dead बांध दिया। Eyes, I believe they're wary of their surroundings. Gotta be careful, but T2K might just get a little sandwich because they also have DRS in the far off fray. That is something that they really क्रियोरपी need का to be पार्ट नहीं है अभी watchful एसटी for. का, And these shots क्रियनपी being का taken, अभी I'm नहीं pretty खेल रहे, sure 4 Dead मैन Eye लाइनअप guys का पार्ट must नहीं। have स्टैंड heard बाय them पे है in कोई the far असिस्टेंट distance, and कोच they're की aware हेल्प, that there's a मतलब team. असिस्टेंट So कोचिंग कर it's रहे हैं। better that you do not यस mess 4 मैन around का with भी जो them, मेन लाइनअप at है वो least आपके from over there. सामने ही So है। they've kind of That what is I can action, see or what I top, can perceive what Mir, T2K Esports and are doing is PC. they're still not really looking good in terms of their loot right now. I'm kind of wondering if it's a really nice idea to be holding on to the central spot so early into the game where you barely got much to fight with. But I think maybe they're banking on that one fight, Shadow, where they take down a team and they get the loot. As long as they do that, I don't think I have anything to complain about. 4MV, You have one thing to complain about, the DBS meta. Hey, I first hate match. the way these players are Guys, exploiting the entire chances DBS बहुत meta. कम है, Even short in the final tournament है, circles, there is a player holding the समझ रहे हो? DBS, clutching out a 1v4 happening through just DBS. Definitely not my favorite thing to witness, but what about you, Fixes? Do you like the recent DBS meta? I mean, I did like it in the start. This is also finals. But then eventually I Yes. was like,
I mean, you're gonna do the same thing over Grand and finals, over bro. again. Top one And then team at a go point to it got boring, PMWI right? To be honest, 2023. because hey, to be honest, if you it's so much money on the line, then you might as well do or have your best shot at winning a fight. And if DBS gives you that chance, then take it with open arms. So for the players, I have nothing to complain. But as a कितने days का टूर्नामेंट है? 3 bro, short who's टूर्नामेंट. expecting खत्म 3 दिन में कहानी खत्म. संडे फाइनल है आज. फ्राइडे सैटरडे संडे. But a lot of those beautiful sprays going along, and then those SMGs coming into play, because there was a time when we saw a lot of SMGs really running the यो show, भाई right? ये टीम Something भी had to change. स्टार्टिंग में अगर the जोन DBs. मिल जाए तो Hence the छूटती नहीं shotguns है. really इनका came into play. And बहुत initially अच्छा है. when they had come in, we काफी सारी टीम्स ऐसी है skeptical जिनसे इस about जोन के how अकॉर्डिंग it's really आप gonna इसका pan out. सिनेरियो देख To सकते be हो. honest, like यो हो on गई. your mobile devices, it's lot very of teams. difficult यो to aim. And these players, of course, took their time. You know, they've been grinding in the training grounds. They've been practicing in a lot हो of सकता है. scrimmages and have Yes, perfected exactly. the art of controlling DBS. And I think that sort of led मैंने them आपको to बोला था take का those शिफ्ट close मैटर combat करेगा situation. एंड We've जोन seen a lot रहा of है. those CQB battles just What a going on treat around. meant. And yeah, that's sort of been the go-to case. But we do have a player knocked out, भसड़ हुई I है. believe. Dio Let's Gaming नीमा are in भाई ने contention over here यहाँ पे already. उड़ाया And है you can see प्लेयर को. Nima has already opened up his accounts. And one of the players of Leo Esports has taken the fall. Yes, Slipknot from the side of Leo Esports has already been eliminated. Talking about Leo Esports, this team is also one of the most unpredictable नहीं दिखाए team बोनस पॉइंट. in कोई the नहीं ब्रो, lobby. इसके बाद देख Sometimes लेंगे they ना. fare ओवरऑल off रैंकिंग जो really आएगी वो well, सीन देख get a लेंगे. chicken बोनस dinner for पॉइंट नहीं है, कोई themselves, इशू नहीं. हम थोड़ा सा लेट पे कर get रहे हैं. the पीएमएसएल देख elimination रहे हैं. point, but sometimes they are usually the first one to be So taken among out from these the lobby. 16, So only Leo one team Esports, will they go to need to PMW. work on the Yes, consistency, Yunus and with the भाई. loss of एक already टीम. one player, One team. things Meanwhile, are Sky not Bhai looking को so फाड़ा very कार good. से. On the other side, we have the players of I8 I8. Sky Sky has been taken out, has been knocked out because of a vehicle explosion. And PMPL wonder what is Android पे हो रहा happening, नहीं who मेरे has भाई. knocked him out. iPhone I पे. hope his teammates are Sponsored in the वाला close scene. proximity to go for the crucial revival. You know, all these teams, they're starting to close in, right? I mean, we've seen how brutal the second circle can be, and that's where we get to see a lot of those early fights emerging. And this is something I have loved ever since the change has been made. Delta भाई DRS भाई, let's go रूल्स भाई. अरे रूल्स भाई का नाम नहीं है, रूल्स भाई स्क्रीन पे. रूल्स भाई करो आज कुछ वंडर्स. वी वांट मतलब आज के दिन पे टॉप #1 और टॉप 3 तो एटलीस्ट चाहिए भाई. T2K DRS SG टॉप 5 ST ये टीम मजा आ जाएगा भाई. लियो गाइस, आपको क्या लगता है अगर आप PMPL फॉलो करते हो, आपके हिसाब से कौन सी टीम आपके अकॉर्डिंग डार्क हॉर्स लगती है आपको कि डार्क हॉर्स हो सकती है? डार्क हॉर्स spotted ऐसी टीम जिसके बारे में अभी ज्यादा बातें नहीं हो रही है, बट लाइक एकदम से आएगी एंड सबको फाड़ के निकल जाएगी. आपको क्या लग रहा है कौन सी टीम होगी? had he had a bolt action, I could have seen आर रहमान भाई PMPL खत्म हो गया just ना, being splattered open. आगे तो PMWI क्वालीफाई हो चुकी है ना चैंपियन में. But for अब Kessie, SAC में दिखेगी he's साउथ got to एशिया take his sweet चैंपियनशिप. time, right? He knows साउथ now एशिया where the वर्सेस players of क्या होगा. DRS are. I mean, all these players do know. मिलाप They're होगा kind of उनका. aware of बाय द each वे अगर आप other's स्ट्रीम के अंदर positioning, नए हो where they're गाइस, gonna सो be मेक at श्योर a टू हिट certain द लाइक point. एंड सब्सक्राइब टू द The चैनल. map has, बहुत ज्यादा खुशी Hita होगी, सो थोड़ी सी sort of खुशी दे closing in. दीजिए, The खुशी distance बांट wants दीजिए. to play 1-2 with his teammate Rules over there, who's got a little bit of a high ground advantage. And for Mavericks, now even if they get Kessie knocked out over there, it's still not going to be a huge problem because of the distance that remains between these two teams. But you can still deplete the resources of the opponent because in a map like Miramar, the management of the resources is HV, also okay, very bro. important. You can damage the armor of the opponent. मैं That is सोचा going to reward ओवरऑल you in the स्टैंडिंग later चल रहा circles. मतलब. But right now, GE and IA, they are also going up against each other, and Sky has been taken down. And looks like Leo Esports, they are looking for some more action with the players of Stalwart Esports because one guy from the side of Stalwart has been knocked out. All right. So we've got Illuminate even falling down. Stalwart. यूनुस भाई ऐसा नहीं होता भाई, हर एक रीजन से एक ही स्लॉट है. जो आप बोल रहे हो इमोशन के लिए वो ठीक है, बट हर एक रीजन से एक ही स्लॉट है. For medical TRC, ट्रेन टू किल they're getting a HV few knocks here and there as well. डार्क हॉर्स, QB is ट्रेन टू taking a किल को little bit डार्क of हॉर्स damage, बोलते and there you can see ST True Love ST getting that confirmation, getting that ST defeat over 77 there, बोनस ST. and he gets a few points on board. So it's really crucial, really imperative for all these teams to start getting those अरे यार flags out T2 का ये left, जोन right. देख के मेरे को ना Try T2 to के try to गाने वाला यार deplete, all T2 the का एक मोमेंट याद आ गया था. numbers as much as as it's possible.
before we head into those final circles. do you But remember that moment? as कौन सा predicted, moment you know, याद as कर अगर आप anticipated, पूछे? I really thought the circle was going to go around water treatment, and T2K had the same exact idea. Now, for a team For like Dark Horse. T2K, you know, taking on that central spot is going to really help them. But hold on, you've got 4MTRZ just spreading around the players of Mabtex. Baron is in a whole world of trouble. He cannot be saved. And Madcat did try to run him over, but that was not the case. But eventually would just end up with getting his finish over there. So Wally's got that little bit of a high ground. It's a little bit of a spread going on. So भाई इंडियन if टीम्स का somehow क्या होगा ब्रो? 4MTRZ इंडियन can टीम just isolate तो गेम ही Kessie, नहीं है तो then क्या बोल things might not be merry enough for Mabtex anymore. Official The area which the players of TRZ are holding right now, it offers so many ridges that they can find good cover, good flank angles onto the players of Mabtex Esports. But the good thing is Mabtex Esports, they have a compound to their name. At the same time, they are already inside the circle. They can try and gatekeep the players of TRZ if it requires, but at the same time DRS is also in the close proximity, so there could be a possibility of a third party happening in this situation. But SKC still looking for a knock onto the plus of TRZ with those mini shots, but for now TRZ, they are safe, but no, they are showing directly on the doorstep of Mabtex Esports, and Leo with a grenade was looking for a knock, but no connection whatsoever. But with that, TRZ and Leo, Mabtex Esports, a 1v3 situation already going up. Oh, certainly. And Mamba has been dealt with, but the Degree ball bhai. comes out. Leo needs to back himself a little bit. Tries to reposition as 4MTRZ did knock on the doors, but haven't been greeted warmly. But instead, a few of those grenades and those molotovs have been coming across, and Mamba is just yelling, screaming for help. But seems like it's not going to come in soon. As Mabtex, they've done a decent job in holding off onto their horses over here. As Madcat, he gets spotted out. Yes, indeed he does, as the grenade just gets flung over at his direction. And there you go. Leo succeeding in getting a beautiful knock, and Mabtex have been dealing with this threat really well. Just trying to snuff out the danger. The final man remains, and at a certain point, he's got to make that push, and there you go. Alright, 4MTRZ doing their jobs. for medical TRZ, I think they have been eliminated over here. TRZ and I8 early elimination. And, I8 didn't alright, so expect they it. चलो decided कोई नहीं, just to a make match that, number 1. kind of a Hope so hasty जल्दी push, buckle up करेगा. for which Meanwhile, Mabtex 4MV was and so well Seal prepared, काफी but important next fight. round we head East on to down, number 5. Doc We've got reviews. Seal going up against Medical by Sanchez already on his knees. बहुत As important है Doc लोग. 922 तो was charging in when the DBS strikes. Hell-wrapped fury in the hearts of the players, and Seal somehow they're trying to keep themselves alive, and indeed have done so. Not just eliminated that, but have eliminated on the earlier stage Vibes of the game. pretty early into the game. And there goes my prediction. Leo Esports, they have also been eliminated. Already, we are left with only 12 Hi bro, teams कैसे and विष्णु भाई 43 एकदम बढ़िया. players. 4 teams have been eliminated. Okay, So, okay. आने a वाले few teams guys, it's just a definitely match got number 1 totaling by up the their way. very first think game you of the should grand wait finals, which they for didn't another expect. matches. 4MV is 18 matches definitely one total है, of those 17 names. matches No के बाद one और बचेंगे. expected 4MV to be eliminated this early in the game, तो but right किसी now भी we have conclusion another पे fight मत brewing पहुंचना up between early the players of stage पे. IHC and High Voltage, but the split that is coming from the side of IHC, they can easily go for the flank angles and maybe try and backstab the players of High Voltage. High Voltage need to check all the corners. They have to be very aware of the surroundings. Otherwise, IHC might capitalize, especially with Godless. This is a guy who has clutched so many times. Godless Vibes के performance has been पास so spoon impressive नहीं था. 4M already throughout the league 76 stages. So yes, points. IHC is also one of the Yeah, strong bro. team. You know, to be honest, I mean, IHC have sort of been a little erratic. They've had those days where they've been impressive. You know, they just go on with those high fragging Vibes games, disadvantage में थी. ठीक है भाई, Vibes disadvantage में थी. Yeah. And in the grand finals is where we see the But real the IHC, scene and is Demo, he's been rankings. one of my First match favorites. के There बाद was, क्या किसका कितना this, gap है वो देखने one वाला tournament scene that है. I was casting where he went on to almost get a 1v4 for his team, and now they're in real close contention. High Voltage, who are in fact just taking a few pot shots at the players of Sitim. So QB, he's not peaked out of Bro, his ये teams को bonus windows point yet. नहीं मिला है क्या? Not Bro wanna be देखने a दो part all of in this one battle. PK भाई. Let's, मैं just match wanna के बाद ही let बताऊंगा the क्योंकि मैंने circle थोड़ा start, match late closing start in a करा था little और bit. अभी कुछ And all these live teams, ranking you know, that points are की है kind नहीं. of, तो after the matches just बताता हूँ around the आपको. edges of the zone, they'll have to figure a way to contest T2K on their territory, because T2K, they've got a really unique split, right? It's a 3-1 split where Jane is holding all that push coming in from the mountains up top on from the northern side.
But getting into this fight, IHC and HV in real close proximity of each other as a grenade gets flung over आइए at नेपाली Alex's bro, direction, आइए and there नेपाल you वाले go. Jiggle hits वाले the आइए। mark, gets the knock. Now the big question is whether or not High Voltage are going to be capitalizing. Assassin wanting to just close in on the gap. Alex still struggling. Wants to get to his teammate real soon, but here comes the push coming in. Godless needs to defend, and he does so. Beautiful knock and a good trade coming in the form of Assassin over there. Godless heads out as you've got Probeen in real close proximity. Demo trying to provide cover from the sidelines as Zyol is shifted onto his DBS, and we know when a player goes on DBS, what really follows suit. As Probeen, he's just burning in lava, needs to drop and roll but has no time, needs to also patch himself up, but how does he do in such close situations as again the wrath of DBS strikes and Zyol gets one more to his name, and just like that, High Voltage, they are in a whole world of trouble. Oh, so they certainly are. And Deadeyes, they do a perfect third party, and Jiggle couldn't do pretty much anything in that situation. With that High Voltage, again, a game not going in their favor. But on the other side, we have the players of NB Esports already looking good. 4 defeat points. Yes, they did lose on to one of their players. And Valley dropped out. Confirmation point already coming in. DRS are still looking for the players of Maptex Esports, but Maptex, they don't have the numbers in this situation. What they are going to do, and NB Esports, they have their own troubles as Mondo knocked himself out by jumping from a vehicle. Yeah, I think that vehicle must be getting really shot at. Another point would have exploded hadn't Mondo just jumped ship. Could have been otherwise. But भाई imagine करो NB Sports winning the PMPL South Asia 2020. Also really happy about it. And True Love in a whole world of trouble, just caught in a fire. Okay, Alex, bye. Okay, Alex, bye. They did manage to lose out on 2 of their players. बहुत They've been बढ़िया. knocked out, but should not be a lot of trouble because they're safe inside the circle. Xavier, And meanwhile this is where, DRS, you know, they're really racking up a lot of रॉक points. के साथ 7 बीटी defeats SG ने already, यहाँ पे गेंटे भाई को and नॉक we'll get निकाला all the है players, मिनी back से on foot. फील्ड So अगर I आपने think, पढ़ा होगा IHC has had a really DRS good ने start बीटी in करा है the यहाँ पे shadow. Oh, they certainly are having a very good start. They have managed to get the entire eastern periphery. PMSL हो गया क्या खत्म? यस ब्रो, under their PMSL में favor, ब्रेक but है, on the अभी other ब्रेक side, चला, we have उनके the 3 players of मैचेस हुए. DRS on the अभी northern हम front. लाइक At the same time, we PMPL have the साउथ players एशिया of Raw कंटिन्यू कर रहे officials हैं. who are surviving रैंकिंग आपकी with स्क्रीन के just सामने, a सिचुएशन single आपकी player. So स्क्रीन के yes, सामने. DRS, फिफ्थ सर्कल इज they have अबाउट टू stepped up क्लोज. their gameplay. They have rotations that are coming from their side are looking in their favor. They are डेल्टा bringing बाई the 4 early मैन aggression, स्ट्रांग, 4 defeat 4 points already in एलिमिनेशन. their favor. DRS Strategic DRS is out of the picture. Now the aggressive DRS is coming for the grand finals, but Zordi needs to be a bit cautious because all the 4 players might spot him. If not the players of DRS, Skylis also is in the close proximity. So Zordi from Raw, he has to be very careful. He has to hide and earn those placement points. Oh, he certainly I has see to. 7 kills already with Really 3 lot of man alive. options, Yup, but, yup, T2K yup. This now is the seem to guys. be यही चीज निकालनी है. sharing जितने ज्यादा a fair एलिमिनेशन share of रहेंगे water उतना ज्यादा treatment over बेनिफिट there टीम्स को रहने with वाला है. two ओके, players of जोन Maptex. अब होने वाला है Sort of क्लोज managed to escape क्लोज from क्लोज the clutches क्लोज there. And now we can see the battle and ensuing between these 2 teams. T2K, they're going with one simple policy. Hold till the circle is on you. And now it's the moment of truth. As the circle ओके, go a little west. No, it still stands सिनारियोज आपकी strong स्क्रीन के सामने. inside of water treatment now. This is where the other teams that are kind of playing around the edges, they'll have to move in. And this is where T2K are finally going to get truly tested. Now, they've got a really nice spread, to be honest. But for a team like IHC, to kind of IHC's breach 4-man through the lineup. defenses, what they've got IHC to is a do 4-man is, lineup. try to get at least a knock or 2. That's not where the trouble ends, right? They have to push right from the open. And Suyog seems to have spotted out Demo, trying to make a few movements here and there. As you could see, Killer, he was trying to make a move towards the water treatments, but has been dealt with a lot of bullets and has been kept at bay at least for now. So DRS would be wanting to get their players back on their feet and then would rethink their decision of trying to breach in through water treatments. This compound is not so easy because T2K, they do
have the numbers. At the same time, Zordy has been spotted on, and with that, the play zone is going to take him down before Rules does from the side of DRS. Now, Raw officials, they have been eliminated. DRS, all the 4 players alive. Yes, Gyante has been knocked down, but easy revival coming in. Now, this is the moment when all the teams will try and breach into the IC win this match. देखो भाई T2K. IC How अगर they're जीतता है able तो to अलग सीन हो defend जाएगा. it, माफिया that is going निंजा to be a very testing game for the players of नॉक्ड T2K. है. If माफिया they're able निंजा to की मौली defend से it, नॉक हुआ है. maybe टॉप this can संदेश be their भाई chicken को dinner. At नो the same फियर time, एनबी Pmwi Esports, all the मल्टीपल top फाइट्स performing team ऑनगोइंग. of सील League players SITM are के getting early साथ elimination this time. जोन पे जगह The बनानी bottom है teams तो are stepping फाइट up. होना मैंडेटरी ISC, है yes, एजिस they की do have the साइड से. numbers, but टीम्स Farpex धीरे धीरे आगे कैसे? बढ़ना स्टार्ट कर He चुकी है. has जैसे a vague IHC आगे बढ़ idea गई है. where the players of TRZ could be. IHC, I'm sorry. Yeah, he certainly does. Now, IHC, they've closed in just around the silos. And, Mabitex, they've got a lot on their plate, to be honest. The smokes have been laid out, but they've got to watch out to their right. Because if they, show a little bit of room also, they're going to have their heads popped. And IHC, they're being relentless, right? They've been trying. They've shown that tenacity. They want to contest this place, and once you get into a hot DRS, form, SI team, you've IHC, got nothing to really SG, fear. Mab and ST. But Jane could be one of those players, could be one of the thorns in their paths at right now, because if he just Top peeks नहीं out मान from the रहा door मिनी. and gets a knock or two भाई before कहाँ मानते IHC हैं? decide आज तक to माने top push in भाई. on तो भाई Mabitech's किलर भाई भी doors, नहीं मान रहे. No things fear could not. go really alright for them. But DRS, they've been doing a good job. They've been trying to not let Skylet's Gaming come close in. But Stalwart, they've got a lot of trouble for themselves as well. Because, to be honest, they've lost out on action. So you've got your front liner kind of out already, out of the server pretty early on. And that's going to hurt them when they want to make Guys, यहाँ पे moves, कुछ right? याद So आ they've रहा है gotta आपको कुछ take a हुआ little है bit of a कुछ back टाइम foot there. पहले. Would have to rethink, याद आ रहा है reconsider the guys. strategy. याद आ Would रहा have है. to try and make it to the top 3 at the very least, because, well, Stalwart does have that little bit of cushion, but you cannot take that for granted, right? With with the way these teams are performing right now, AJ, he's got nowhere to run, nowhere to hide. Just behind his bursted vehicle. How long can he survive? ओ भाई all PMGC team. I बात doubt तो है भाई. he can survive for very long because भाई, he's ठीक way है. too far away from his teammates. Even if there are DRS knock next comes move. in, I don't think there is a chance of a revival coming in anytime soon. But yes, like you said, DRS, they are looking fantastic, but the circle has shifted in the favor of the players of T2K. At the same time, Stalwart Esports, this is the moment when they'll try and inch closer to the players of T2K. Yes, Stalwart, they don't have the numbers, but Sitim is also trying to have that dominant control from the southern side. And Sitim Esports, this is also one of the most unpredictable team. They were able to get 2 or 3 chicken dinners for themselves in the week number 3. So yes, Sitim Esports with the numbers advantage, they can turn things around in their favor. But for now, Skylar's Gaming, not a good start. They lost on to No Fear and Mafia Ninja. Now, Nima and AJ are the only 2 players remaining. Yes, Nima is already on the periphery of the circle, but AJ is in the crosshairs of DRS. Finally, DRS, a team that we've been long waiting. When do we get to see the PMGC DRS? Feels like we've got a little bit of a teaser from what we're going to expect out of them in the grand finals. Now, AJ, he's completely pinned. Delta has no intention of letting him live, right? He's just going to patch himself up, try to survive for as long as possible. But him getting shot at, still none of those bullets really connecting. And DRS have the luxury of that high ground advantage they're enjoying from quite some time. They've gotten that northern map control. It's going to really help them out, because all these teams are going to fight out. The fight is definitely going to break in the next couple of minutes. As now, Sitim, they've got to deal with not just T2K, but also IHC. And then you've got Top, causing also all sort of problems for them. I'm pretty sure they were quick enough to spot that buggy in the nearby distance, and hence do apprehend a threat coming in their direction anytime soon. Oh yes, they can. Stalwart Esports, they don't have their numbers. I'm pretty sure they were quick enough to spot that buggy in the nearby distance, and hence do apprehend a threat coming in their direction anytime soon. Official का issue yes, they can. Stalwart Esports, they don't have their official का issue numbers. T2K, this is the moment when मैं NP लगा रहा हूँ 2 मिनट रुको
अटक गई, बहुत बढ़िया। थिंकिङ कि कोही रिभाइभल दिन नजिकै छ कि जो भनेर चल रही है बट अपन सानो उस पे फ्रेम दिखा छ रहे, जहाँबाट फंस कोहीको गया वो, फंस मुभमेन्ट गया, भयो भने क्लियरली फंस गया देखिन वाला सकिन्थ्यो बट स्ट्रीम। लुक एट द ट्रेबल जुन 3टा + 1 4 लागेको छ एक एलिमिनेसन निकाल्नको लागि जुन सक्सेसफुल पनि भएन। ओभरअलमा टप 7मा गेम कन्भर्टेड थियो, टिटीको अगेन्स्टमा नक निकालेको छ, आइएसले पुश गर्न चान्स अगाडिपट्टि अलमोस्ट ओपन पुश बन्द हुन्छ, गोल्डलेस यता डाउन रहेका छन्, टिटीकोसँग अपरेन्ट अभियसली बनिसकेको छ भने डीआरएसको लागि पनि उता नक देख्न सकिन्छ। स्टलबर्टको टप जो बचेका थिए उनी पनि नक भए, सायद टिटीकोले इजिली डिफेन्ड गर्नेछ यो फाइट। शटगनको साथमा आउन चाहन्थे बट टिटीके यस कम्फर्टेबल त्यता भिक्ट्री निकालिसकेको छ। गाइस लास्ट मोमेंट है, लेट्स गो बॉयज। DRS, SITM, T2K, ST eliminated, IHC, MAB and SG, these are the teams on your screen. एन्ड यहाँ देख्न सक्छौं जोल एकजना जो बचेका थिए उनी थोरै अनयुजुअल सिचुएसनमा फस्न सक्ने चान्सेस रहेको छ। पछाडीबाट म्यापटेक्स, अगाडिबाट T2K, उनी बस्न सक्ने चान्सेस एकदमै कम छ। प्लेयरको भागमा आइडिया Happy New Year नेपाल, Happy New Year, Happy New Year। एन्ड टिम IHC पनि राम्रो एलिमिनेसन काउन्ट रहे तापनि उनीहरूले सर्भाइभल वाइज पोइन्ट निकाल्न भने चाहिँ सहज रहेन टिमको लागि। अब फेरि पनि च्यालेन्ज टिम T2K को लागि सकिसकेको छैन। SITM एकदमै क्लोज बाइ पनि रहेको छ, जसले नम्बर जोगाएर राखेको थियो। निमा अझै चुपचाप बसेका छन्, उनले आफ्नो पोजिसन वाइजमा केही चेन्जेस त ल्याउनु पर्ने हुन्छ जोनको एन्ट्री बनाउनको लागि, बट रिस्क एकदमै धेरै रहेको छ। उनी स्पट हुन सक्ने चान्सेस एकदमै बढ्दो रूपमा रहेको छ। स्मोक युज गरौँ झनै एटेन्सन पाइएला भने डर, विदाउट स्मोक जाउँ ओपनमा टॉप पे ऐसी बात में भाई अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको मैं सच बता रहा हूं, आपको एक चीज बताने वाला हूं। कंट्रीब्यूशन दिनको लागि T2K को देखो अगला लागि रहन पुगेको थियो भने T2K को प्लेयरको पोजिसनको बारेमा SITM लाई आइडिया भइसकेको छ। शट दिनको लागि रेडी देखिए, मेबी रिगले स्पट गरे कि त्यहाँ यस रिच साइडमा शट्स आइसकेको छ। भनेपछि डोबु त्यति कम्फर्टेबल त रहने भएन T2K को प्लेयरलाई हन्ट गर्नको लागि। केही हदसम्म त्यही सहायता लिनु पर्ने हुन्छ भने 9 स्टेज DRS कितने मैंने 4 मैंने DRS 13 प्लेयर अझै सर्भाइभ हो सकता है। DRS का चिकन है शायद से, पता नहीं, बाकी देखो आगे देखिएको छन् प्लेयर अगाडिपट्टि छ भनेर बट खासै केही गर्न मिलेन, उल्टै पछाडिबाट टेक डाउन भएको छन्। कोल्याब सर्कल या जे पनि हुन सक्छ, सायद नम्बर अलिकति फैलाएर राखेको भएर टिटीकेलाई भन्दा पनि DRS एडभान्टेज हुन सक्छ। T2K सन्देश परे त्यसपछि T2K रेस्पोन्सिबिलिटी रहेको थियो, उनीले आइएससीसँग राम्रो काम त गरेको थियो अभियसली, बट यहाँ अब त्यो ठाउँबाट निस्किने कसरी त भन्ने चुनौती बनिरहेको छ। T2K को लास्ट म्यान स्ट्यान्डिङ अब त त्यहाँ रिग रहेका छन्, रिगको साइडमा कम्प्लिट क्रस डोबली लगाइरहेको छन्। देखे पनि आगे बढ़ना है, अगाडि मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ, हिल गर्न उनले पक्कै पनि भ्याउने छैनन् त्यो बिचमा उता जेन डाउन भयो लास्ट गाय जो भी बचे हुए जो कि ऑलरेडी स्पॉटेड है, डिनाइ गर्न सक्छन् किल, एक किल भए पनि। यता निमा बसिरहेको छन् त्यो स्मोकको साइडमा, टप 5 मा आइसकेको छ गेम। त्यो बिचमा म्यापटेक्सको प्लेयर फिनिश भयो, रिगको सायद फर्स्ट एडले काम गर्ने छैन, यो टिम पनि यहाँबाट फिनिश भयो। निमा टप 3 मा आइसके, बट यो फाइट अब बनेको छ DRS भर्सेस SITM 4v4। I think 3 जना रहेको छ DRS सँग, माइ ब्याड। Like T2K को टीम को तर्फबाट फिनिश गरिएको थियो भने it's gonna be 3v4 को सिचुएसन। Ganche gonna be taken down, DRS को गेम्समा SITM हाबी बन्दैछ। ओके, डेजर्टलाई त डाउन फिनिश त गरिएको छ रुल्सको तर्फबाट। निमा अझै पनि चुपचाप छन्, उनी कुनै पनि यहाँ एग्रेसन देखाउन चाहिरहेको देखिएको छैन। रुल्सको पोजिसनको बारेमा आइडिया रहेको छ, रुल्स gonna be taken down with that throwable। अब त अन्तिम एकजना प्लेयर 1v3 को सिचुएसन SITM ने पहला ग्रैंड फाइनल्स का चिकन समझ लो निकाल ही दिया है, बहुत ज्यादा क्लोज है। एक बहुत प्यारा किलर वाइटी ने एक नॉक किया, Clear Whitey not in good situation. QB and anti DRS and hashtag 2 पे and here we go. Chicken dinner goes to team SITM. आधी टीम ने अपने इंटेंशंस शो कर दिए हैं। मंगोलियन टीम है गाइस एंड चिकन डिनर लेके गई है। मेन थिंग मेरे हिसाब से रहने वाली है पॉइंट्स टेबल। मैं एक बार इंग्लिश स्ट्रीम के अंदर वो कर लूँ क्योंकि इंग्लिश स्ट्रीम हो चुकी है। एक बार इंग्लिश स्ट्रीम में शिफ्ट कर रहा हूँ गाइस, 2 मिनट रुक जाओ। पॉइंट्स टेबल देखेंगे क्या सीन है क्या नहीं है। लो भाई, चिकन डिनर गोज टू SITM जो फर्स्ट मैच का हमारा है। अगर आप 600 लोग देख रहे हो, अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो, सो मेक श्योर टू द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओवरऑल रैंकिंग के अंदर #1 पे आ चुकी है आपकी टीम SITM। हो मतलब यहाँ पर बोनस पॉइंट वाला सीन मुझे दिख नहीं रहा है, कुछ है या नहीं है गाइस। बोनस पॉइंट्स वाला सीन है तो क्या है, नहीं है तो क्या नहीं है, अभी देखना पड़ेगा सीन क्या सीन है गाइस। जी एक बार एंटी कर दो सारी टीम्स के लिए। DRS एंटी, T2K एंटी, मैब एंटी OP कर दो एक बार। जी एंड गुड गेम टू टीम SITM, बहुत ज्यादा बढ़िया था। लेट्स गो बॉयज। 613 लोग देख रहे हो, अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो सो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय द वे हमारे पास अभी और लकीली और मैचेस भी बचे हुए हैं। लाइक होप सो कि हमको रैंकिंग्स टाइम से दिखाई जाए। रैंकिंग्स में बहुत टाइम लगता है यार।
2 मिनट रुको, लिक्विपीडिया खोल के रखता हूँ। लिक्विपीडिया सुपर लीग तो हमारा हो गया। लिक्विपीडिया ग्रैंड फाइनल्स का पॉइंट्स अपडेट होता रहता है ना टाइमली से। ग्रैंड फाइनल्स रुको, लिक्विपीडिया खोल लेंगे तो यहाँ से बढ़िया रहेगा। फाइनल्स डायरेक्टली फाइनल्स, फाइट फॉर फाइनल। खुल जा फाइनल का पेज। फाइनल का पेज नहीं बना है क्या? हेलो, एक बार ओवरऑल रैंकिंग दिख नहीं है भाई, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। 2 मिनट रुको। As the MVP of the match goes to टीटू के रिग पाजी। बहुत बढ़िया एंटी, 4 एलिमिनेशन टीटू के रिग पाजी ने निकाले, बहुत ज्यादा बढ़िया। अगर गेम आ जाए तो भी कौन इंडियन टीम्स PMW MS स्लॉट मिलेगा? जो अच्छा खेलेगा ब्रो, ऑफिस की बात यार, अब वो ऑफिशियल के हाथ में है कि वो कोई अगर गेम आ जाता है वो कैसा टूर्नामेंट लाते हैं, टूर्नामेंट बेसिस फिर आगे सिनारियोस को बनाते हैं, तो कंप्लीटली अप टू ऑफिशियल्स रहेगा। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द ओवरऑल सीन क्या है। रिकपाजी 4 एलिमिनेशन, डेजर्ट 4, टॉप भाई 2, गेंटे 2, किलर वाइटी 3 एलिमिनेशन। दिस इज द एलिमिनेशन लीडर बोर्ड। PMSL अरे नहीं ब्रो, वहाँ पे ब्रेक आ रहा है, वहाँ 1 घंटे का ब्रेक होता है और मैं ऑडियंस बिल्कुल वेरी नहीं कर रहा। अभी अपन मैच कंटिन्यू करेंगे जो होगा PMPL साउथ एशिया। अगर गेम आ जाए टाइम पे तो ऑफिशियल पे डिपेंड करता है यार, मैं कैसे बता। हाईएस्ट डैमेज टॉप की मिनी के साथ 810, क्या बात है। गेंटे भाई 670, 30 भाई रिकपाजी, रॉज भाई 628। हाईएस्ट असिस्ट गेंटे पाजी 2, रॉज 2, QB 0 0 0 0 0 0। हाईएस्ट हीलिंग जोन डेजर्ट AJ जोन। ठीक है भाई। और भाई इंडोनेशियन प्लेयर्स मुस्लिम लाइक नो PL goofy snake play। 2 kills 810 डैमेज। आई थिंक ही फिनिश हिज ऑलवेज। अरे अरे, हाँ यार ये तो सही बात है, 2 फिनिशेस के साथ अपना टॉप भाई के 810 का वो है लाइक डैमेज। बढ़िया भाई। हमें प्यार दे प्यार दे प्यार दे, थोड़ा प्यार। यार यहाँ पे ना ओवरऑल रैंकिंग आ जाए ना थोड़ी, मजा आ जाएगा, बट ओवरऑल रैंकिंग ही नहीं दिखाई जाती। गाइस SITM 20 पॉइंट्स, DRS IHC K, Skylights, Map, Seal, NB, these are the #1 to #8th रैंक है। बाकी एक बार मैं ओवरऑल स्टैंडिंग के लिए मैसेज कर लेता हूँ, क्या पता मुझे मिल जाए। ST 80 points may be okay। इस PUBG मोबाइल वर्किंग इन इंडिया विदाउट VPN? ब्रो मेरे को इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, हैवी नहीं। इंडियन टीम्स
मैं इंडियन टीम्स की बात नहीं कर रहा, सोलो। क्या बात कर रहे हो तुम चैट के अंदर, क्या चल रहा है भाई ये? कितने दिन का है ब्रो? 3 दिन का, फ्राइडे सैटरडे संडे। भाई पीएमएसएल में इतना ब्रेक क्यों होता है ब्रो? पीएमएसएल में ब्रेक इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे अभी आपको पता है जैसे रमजान चल रहे हैं, तो लाइक फास्ट वगैरह रहता है प्लेयर्स का, तो वो वहाँ पे अपना क्या बोलते हैं, इफ्तारी बोलते हैं शायद शाम को, मैं सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो, वहाँ पे सीन हो जाता है। चेक करो लिक्विपीडिया। ओके ब्रो, यार लिक्विपीडिया के साथ साथ मुझे लग रहा है यहीं पे आ जाएगी ओवरऑल रैंकिंग। बाय द वे मैं लिक्विपीडिया चेक कर रहा। सो गाइस हियर वी गो। 81 पॉइंट्स फॉर एसटीई, फॉर एमवीई आपकी है 78, T2K है आपकी 74, IHC 72, 70, 60, 58, 53, 50, 45, 44, 42, 41। दिस इज द ओवरऑल रैंकिंग गाइस। बट मैं एक बार ऑफिशियली भी कंफर्म करना चाहता हूँ ये सिनारियो, क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल #1 लिख के आया था SITM के ऊपर, तो मुझे एक चीज वो कंफर्म करनी है। तो गाइज आपके पर डे आपके 6 मैचेस होने हैं, 2 शैनॉक, 2 एरेंगल, 2 मिरामार। आपकी स्क्रीन के सामने डिटेल आ रही है। पहला मिरामार खत्म हो गया, अगला मैच आपका शैनॉक होने वाला है, एंड देन फिर एरेंगल मिरामार शैनॉक एरेंगल, इसी तरीके से आगे चलेगा। करेक्टेड प्रिडिक्शन अभी तक हुई नहीं है। तो गाइज आपकी क्या प्रिडिक्शन रहने वाली है इस मैच के लिए? एक बार कमेंट करके आप भी बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, आपकी इस मैच के लिए क्या प्रिडिक्शन रहने वाली है। बाय द वे देखो गाइज, इन्होंने फिर से ओवरऑल रैंकिंग नहीं दिखाई, इन्होंने ओवरऑल रैंकिंग दिखाई ही नहीं है। इतना खामोश हो गए होगी ब्रो। नहीं भाई, इंडियन टीम जैसे वेट कर रहा है और सब लोग खेल रहा है, अच्छा नहीं लग रहा ब्रो। कोई दिक्कत नहीं ब्रो, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, आने दो आने दो। चलो भाई, मैच नंबर 2 आपकी स्क्रीन के सामने इज अबाउट टू स्टार्ट। एक विकेट ही रख देते जो शैनक की जगह टाइटन। भाई अभी शैनक में मजा आ रहा है, कोई यहाँ पे हील बैटल वगैरह नहीं होती है, डैमेज इंक्रीज हो गया, फाइट पे फाइट होती है। आ जाओ भाई, डिडंट नोटिस इट वाज फिक्सेस। यस ब्रो, फिक्सेस भाई कास्टिंग कर रहे हैं आज के दिन पे। भाई आप इंडिया की टीम को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते भाई। यार एक चीज बताओ मुझे, गेम ही नहीं है, टूर्नामेंट ही नहीं हो रहा है, कैसे कैसे भाई बताओ? आदि ऑन ड्यूटी।
कैसे बताओ कैसे? गेम ही नहीं है, कुछ ऑफिशियल टूर्नामेंट्स नहीं, मैं मतलब कुछ गेम हो रही है, कैसे सपोर्ट करेंगे बताओ? जैसे अभी पीएमपीएल्स हो रहे हैं, हम पीएमपीएल्स वॉच पार्टी कर रहे हैं, हम पीएमएसएल देखा तो वहाँ पे टीम्स अच्छा खेल रही है, हम उसके रिस्पेक्टिव में सपोर्ट कर रहे हैं, जो अच्छा खेल रहा है, जो अपने फेवरेट्स है। अब ऑफिशियल टूर्नामेंट नहीं हो रहे, कैसे करेंगे बताओ? जहाँ पे हमको मौका मिलता है वहाँ पे हम हमेशा बात करते हैं, जहाँ पे मौका ही नहीं मिलता, अब गेम ही नहीं है, अब बताओ कैसे कैसे? जहाँ पे मौका मिलता है, जहाँ पे कुछ भी बात होती है, आप पूछते हो, हमेशा से तो मैंने रिप्लाई करा है, नहीं करा है तो आप बताओ। दिस भैया फंस गए मामन की लड़की के चक्कर में। अरे 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 अरे। चलो भाई, जोन आ चुका है भाई। आजकल मेन आइलैंड के जोन ज्यादा बनने लग चुके हैं, जो थर्ड आइलैंड के जोन होते थे ना, वो मेन आइलैंड पे ज्यादा बनना स्टार्ट हो चुके हैं। लो भाई, हम वॉइस उठा देते हैं। बाय द वे यार, मुझे एक चीज नहीं है, ओवरऑल स्टैंडिंग का सीन है कि ओवरऑल स्टैंडिंग दिखाई जाए तो ज्यादा बढ़िया ऑफिशियल के थ्रू। मीनवाइल ऐसा टीम के एक पेयर को हाई वोल्टेज, जैसा आप सभी को पता है, हाई वोल्टेज का घर है भाई ये। हाई वोल्टेज का घर डाला है गाइस, हाथ इनको 33 स्प्लिट को उतर लिया। पहले इनका बीटी रहता था ब्रिज वाले कंपाउंड्स के पास भी एक्सेस ले, यहाँ पे इनकी बीटी हुई थी, हमने पीएमपीएल के टाइम पे भी देखा है, लाइक ड्रॉप स्पॉटिंग के टाइम पे थोड़ी बहुत चीजें, बट चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। The players of certain esports are going to back away from this position. Okay, they do have the vehicle, so it's going to be a safe escape. I mean, you call it out too soon गेम because साउंड नहीं आ we रही, know टाइटन what भाई अब happens to आएगी। vehicles. All it needs is one good spray. मैंने ऑन कर दिया, देखो भाई मैं ऑलरेडी बता Jigger चुका हूँ, मुझे decided नहीं आती है वो। not waste his अगर आप मेरे ammunition को over बता there. दिया करो Still early स्टार्टिंग पे, phases of the game, सेटिंग they've just कंटिन्यू barely आगे पूरे। dropped, haven't got the best of loot. I mean, Jiggle, what does he have? Just a Kevlar and a Buril and a QBZ to work around with. So now they're gonna get back to looting, but that is not where the concerns end, right? They have to cross the bridge with a lot of those teams guarding these zones, and they have to get inside the circle somehow. And high voltage, I mean, we know what really happened with them in the past game, and they somehow have to recover from that. चलो भाई, Not the best of the 324 start, and, लोग now देख रहे हैं things गाइस, aren't really मेक श्योर looking टू sunny हिट for द them लाइक एंड सब्सक्राइब टू द either, चैनल। as Jane is in the एनबी wrong टीटू territories के as he's जेन trying to run पाजी, away. थोड़ा He's ध्यान from से, danger, थोड़ा but ध्यान how से। long he gets spotted down, and Monda, he's not gonna spare him at all. Nice, Still Jane does come nice. out with that one frag and goes dirty with that and gets that finish done. And जेन भाई का NB कॉन्फिडेंस Esports, भाई they're gonna बहुत get a बढ़िया, जो quick उन्होंने बन गया slap at बहुत their ज्यादा बढ़िया face. I mean, एंटी जेन they भाई, had 4 एनबी of के their बंदों ने players लाइक मैन and एडवांटेज still lost out on Mondo. मैन टीम And एडवांटेज था this is where the एनबी के question पास, एंड निकाला। marks are going to be दैट वाज द raised गुड वन। at what their intention is going to be, because Jane, he was quite suicidal. He knew that he had nowhere to run or hide. Might as well take a fight and get away with it. A cheeky one finish for both these teams, and certainly one that's quite hurtful for NB Esports. Well, Jane was not prepared for the players of NB Esports because very rarely NB Esports they move away from Paradise Resort. फर्स्ट but पे NB कौन है? Esports, they should फर्स्ट have पे been prepared ब्रो, about the position of मैं T2K मेरे को ना players, अभी कुछ especially समझ Jane. नहीं आ रहा है Because one time सिनारियोस, when NB Esports they तो मेरे को rotated थोड़ा सा early from कंफ्यूजन है, Paradise, थोड़ा सा they faced ओवरऑल पे Jane अगर आप and देखते हो Jane अकॉर्डिंग took टू down 2 or 3 या players एसटी from इज the side इन of टॉप, NB Esports. एंड इन्होंने So जो this अभी time, रैंकिंग this बताई है ओवरऑल रैंकिंग confirmation चिकन should डिनर लेने have के not बाद, come. उसके The knock, अकॉर्डिंगली I आपकी understand, टॉप पे इन्होंने but दिखाई थी where was the एसआईटीएम। backup? They should have been prepared about the वो position ओवरऑल of Jane. रैंकिंग होती है But बाय द now वे। T2K, they इन्होंने have फिर already lost एसआईटीएम one को वहाँ पे player. टॉप क्यों I8, रखा, they मेरे are को also वो in the समझ close नहीं आया, मेरे proximity. कंफ्यूजन है एक। आप So में से there is किसी a को chance of कंफ्यूजन मेरे क्लियर I8 कर सकता है also तो बता showing देना। up on the doorstep of T2K. If not, maybe from far off angle, they can try and pick individual players from the side of T2K. So How many T2K, they teams have qualify to for be very Pmwl cautious. They from don't SA have the tournament? perfect #1 resources bro, in their hands PMPL right winner। now. They have इसमें to go for the पूछने की second समझने team की route as बात है ही well. नहीं, हर एक PMPL से #1 टीम की जा रही है, कोई किसी PMPL से कोई 2 टीम नहीं गई है, किसी भी PMPL, कोई भी रीजन, सी रीजन क्यों, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम, #1 टीम, PMWI के लिए क्वालिफाई हुई है, तो हर एक रीजन का फर्स्ट टीम क्वालिफाई होगा PMW। चाहे आपके रीजन में जितना मर्जी कंपटीशन है, शायद 16 की 16 टीम्स आपकी ना PMWI जीतने वाली टीम्स है, बट जाएगी #1 जो #1। Some prey. Their
by proximity as for Miracle Vibes and Stalwart, they're about to lock horns against each other. Action, he's one with the nature, in the green, in the grasses, just waiting for one of the players of for Miracle Vibes to make a mistake. And I think that sort of has been the Achilles' heels for Miracle Vibes, because what they've been doing a lot is they've been quite impatient. I mean, I really applaud your gun skills. There's nobody second down there, because that's the kind of dominance that they had established in the first 2 weeks of the league stages. But in the third week, that's where teams really figured out. So have had a really nice defensive approach against them. वो And officials for को Miracle पता है Vibes हमने थोड़ा slots दिए भाई. realize that they just पाप cannot officials से be पूछना running क्यों around दो slot. trying to spot out उनको क्यों players पता है and क्यों नहीं है take भाई. their lives out for fun. So they've got to be a होगा little more reason उनका भी, tactical, but use their हमें तो brains कुछ a नहीं little bit पता. हमको more इतना पता है कि 2 if they slot need confirm है. to go on and win this entire thing. Now we've seen them playing from the past rosters, but as for Miracle Vibes, this is their first PMPL. So it's going to be interesting to see. और अभी तो आफ्टर पार्टी शोडाउन का भी कुछ सीन होने वाला है. अभी रुको जरा सबर करो. Starboard, they kind of sandwiched even the players of SEA coming, and if they kind of go on to take a fight over there, they're gonna let out on the gunshots. They're gonna give their position away. And teams like Sitem or maybe Dead Eyes, they could really capitalize on that. Even the players of SEAL Esports as well. They can gatekeep the plus of Sitem and Dead Eyes over there, because SEAL, the split that is coming from this side, might work in their favor as long as Tablet Esports doesn't join the fray. But looks like Dead Eye guys, they are getting picked off, like you predicted, by the plus of Sitem Esports. Few of the teams going for a very late rotation, other players of high voltage, but they have all the reasons. They need the points, so it's better to be safe rather than losing onto a few players. On the southern side, we have few teams going for late rotation, like the players of DRS, TRZ, and Raw officials are also placed on the periphery of the circle. So DRS, they need to be very cautious, especially from the side of Raw officials. जो कि अभी वो एंट्रीज डालने वाली है, और एचवी की टीम भी मेरे को लग रहा है आप यहीं से टैटमॉक के साइड से एंट्री डालेगी. इनवाइट क्लस्टर आप देख रहे हो, SIT M&D वो गेट कीप करने का ट्राई कर सकते हैं. Find themselves in a really good position where नहीं होना है, जो कि गेट कीप कर भी रहे हैं, एंड ऑब्वियसली उन्होंने स्पॉट कर भी लिया Dead Eye guys. नॉट अ गुड मैच फॉर Dead Eye guys, आई गेस. ऐसे टीम ने पूरा कंप्लीटली उनको पिन करके रखा है. लो भाई जहां पे पिन करा टूलअप सर को भी, नॉट अ गुड सिचुएशन फॉर Dead Eye guys. A single knock over there, and the next could be the other player. He's already taken quite the brunt over there. SIM took yes bro, SIT हमने फर्स्ट चिकन लिया है, एंड मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज यार चीजों को पता नहीं क्यों हो रहा है कंफ्यूज. Now what are the avenues for the players of Dead Eyes? And one good thing they did to Sanok was take away that healing battle tactic, which a lot of teams really relied upon. And since that is now out of the picture, bro, I8 कहाँ से हुई? I8 qualify कर the others I8 take those battles head on. And Sitem, they were kind of anticipating. Have had a really good start. And since they made a lot of noise, I think battle कर रहे हैं वो already उनका finish हो watchful. I8 already qualified to PMWI 2020. Now यहाँ से जो भी 16 टीम आपकी स्क्रीन के सामने आ रही है, after day number 3 जो होगा आपका Sunday, सारा मैचेस not going to be welcomed with any sort of violence, right? वो भी यहाँ से going to be all those PMWI bullets shredding their skin and turning it wide open as Kansha from Raw decides to deal with Slipknot from Who is winning PMPL has not had the best of starts, to be अभी तक फर्स्ट मैच ही हुआ है जिसमें SITM ने चिकन डिनर निकाला है. Last time also Slipknot was the guy from Leo Esports who was taken down pretty early in the game. In fact, he was the first one. This time Leo Esports, they are surviving with only a single player. Raw officials, Leo Esports, they were trying to come from the complete southern eastern side. That is where Raw officials came in, but looks like Sitem were not prepared for the players of SEA Esports, as QB has been taken down. Now Sitem, the remaining two players being one with the nature, and Dobu trying to lure the players of SEA Esports out of the cover with those vehicles. But he should be prepared. No, he's going for the revival. बहुत ज़्यादा बुरा लगा भाई के लिए. And Rogue is going to capitalize and get the completion point onto two players of Sitem. Sitem, they should have been prepared. This was a very brave coming from the side of the player. Zero by spotted है, at पिका भाई this ले point, when लेंगे. you don't even know the exact location of your opponent. Now Jiro, his position has been compromised. Becca has a vague idea where Jiro could be. Oh, but does not have those grenades. And as a result, decides to back off. Desert.
He's taking a flank over there, not at the highest grounds, and this could be a cause of concern. On the other side, we've got a battle ensuing between Medical Vibes and DRS. Both of them going head to head against each other. यहाँ पे गेट कीपिंग वाला सीन चला हुआ है इस मैच पे तगड़े वाला एक एसआई टीम डेड है गाइस ऐसे सील एसआई टीम एक दूसरे के गेट कीप कर रहे हैं भाई एजिस पे they're going to meet their makers. डेल्टा भाई नॉक निकाला ओ हो they have not a good one for Vibes finish निकाला है and Shanok में जितना आपके पास मैन लॉस रहेगा जितना आपके पास मैन लॉस रहेगा उतना आपको बीटी रह सकती है ब्रो शैनॉक में मैन एडवांटेज काफी ज्यादा मैटर both these teams realize that they need to go out from over here. SITM नेपाली टीम मंगोलियन ब्रो मंगोलियन fully Mongolian they are from PMSL and then make a dash inside the zone from wild card where they must be wondering what they could be doing, what they could do, and Jiro meets his demise over here as Sanchi and his teammates. They're gonna make an escape inside the circle. चलो मैं आपको एक और चीज बता The winners of the previous game now have been reduced to just that one last man standing. But the question over here, Shadow, is for how long? Raw, Baron, For Raw how के long? At the finish same time, निकाले जा GRS रहे and हैं 4MV, वैली they're ने भी also यहाँ going पर up निकाला against एक each फिनिश other. हेड Rulz with the शॉट grenade रॉ was के लिए नॉट अ गुड trying to सिचुएशन दो find some फिनिशेस हम ऑलरेडी connection, देख चुके but no ईस्ट भाई connection whatsoever. नेड करा East बम्प still safe. और Second गया है grenade डैमेज comes in, रूल्स but भाई East निकाल needs to सकते हैं catch up because he's down to और 40 ईस्ट HP, भाई but क्या somewhere बात है else, क्या बात है Delta comes भाई in and एक takes बंदा down कवर एक East बंदा over वाइट there. पे ठीक है Now भाई GRS, बहुत they बढ़िया have managed to get नॉक 2 एंड defeat ईस्ट भाई points onto the फिनिश plus of 4MV. What is Not a happening? good 4MV situation again losing for onto those team, frontal battles. 2 players taken out 4MV early in the guys game. ऑलरेडी From the लाइक looks of it, दो the remaining 2 एलिमिनेशंस players are वो ले also not चुकी looking है so very अभी good in थर्ड terms of the सर्कल है position. जो They भी are on the बन low लाइक ground क्लोज इन at the होने वाला mercy है of the blue. And DRS, they are already ahead of the players of दो प्लेयर 4MV. डीआरएस ने करके रखे And हुए they हैं do have a vague idea about the अय्यूब remaining भाई 2 players' अकॉर्डिंग टू position. यू क्या लगता है Certainly प्लेयर do. And at कम this से point, खेल रहे हैं और लैंड पे MV खेलने की टीम kind of out of options, right? They just have to patch themselves up, and DRS, they kind of going Titan on a by soiree, experience just trying to figure out where the players are. यार But, लैन eventually they एनवायरनमेंट decide ना that it's एक better to डिफरेंट try and get themselves एनवायरनमेंट into a good है जो spot मैंने inside the करा circle, and they will do लैन exactly का the same. एक So Skylight's gaming एनवायरनमेंट ही are अलग in है a prime position, वहाँ पे almost at the epicenter लाइक of the zone, जब and ऑडियंस then आएगी we've ना got जब even ऑडियंस के the सामने players of खेलोगे P2K in a really सारी promising चीजें होगी position, and वहाँ now वहाँ वो so प्रेशर one और एक thing ऑनलाइन follows the खेलने वाला other, प्रेशर right? So it was Sitem who वो sat back on, dealt with the अगर आप मेरे guys. से पूछोगे Eventually, when they made their move कहीं ना inside the कहीं circle, it was प्लेयर्स में Seal फर्क who पड़ता kind है of भाई sealed कई their प्लेयर fate. कईयों को नहीं भी And पड़ता now बट when कईयों को Seal पड़ता wanted to get in, it बाकी was वाइब Starwood जो बोलते हैं ना waiting. So एनवायरनमेंट Starwood वाइब kind एक of प्रेशर being the Giga Chad over रहता है here, एक they knew कहीं ना exactly कहीं what to कोने में do. All they had to do एंड was just जो fend उसको off रख this लेगा push समझ coming लो in from तो behind, परफॉर्मेंस ऊपर नीचे and होगी successfully have done so. So already 3 defeats और to their names, and they're मैं gonna be happy. एक And Tops is मेंटालिटी in a पर्पस से बोल pristine रहा हूँ लाइक form right. लाइक लैन आपने देखा नहीं है The ना आपने Western तो rotations आप are एक not बार लैन giving पे so जाना many कभी तो teams आपको seal. पता They have लगेगा कि also been लैन का reduced to just एनवायरनमेंट विद one-man ऑडियंस squad. That is going to be Sanchit. आपको पता लगेगा Yes, कि वहाँ the की players of फील क्या NV होती है Esports and वहाँ का Stalwarts, they are हीट still मूवमेंट जो keeping होते the हैं ना भाई western circle, western edge control of the circle. नेक्स्ट लेवल At the same time, from the southern end, we have the players of southern eastern end. We have the players of Maplex Esports in the close proximity of बाकी Skylight's आपके भी इसमें gaming. कुछ perspective Their and 4MV, they are आप still भी at the mercy of the blue, not having the numbers, and looks like DRS, they're just Chano, waiting for no the players skill. of 4MV. Yeah, and I think a battle has already broken down yet top again. 1v3 Once के more, भाई Medical Vibes do not have the best top of numbers, top and top DRS. notch चीजें दिखा All रहे they हैं by need the way to guys do 500 is लोग just देख रहे हैं if get you are new inside to the the circle. stream Now, make this sure is to where like the they're video finally going to be truly and tested. subscribe to the channel And one of their players, there you go, Refuse, gets taken down, courtesy to that blue zone that has been really haunting them, lacking a lot of meds. But now the big question for DRS is how are they going to enter अब एक बहुत बड़ा स्टैट inside है the मैं आपको circle? एग्जांपल Few of देता हूँ the लैन players have और एक successfully done ऑनलाइन so, उसका नूजी but जो है ना इन्फिनिटी का मीनवाइल रिव्यूज यहाँ what पे गिर lies के ahead नॉक हुआ for है them? That's उसका the big question, ऑनलाइन and जो स्टैट है ना जो ग्राफ है Team Seal, वो they've also इतना been eliminated, इंसेन and है ना at आप the देख के 14th बोलोगे spot, हर not मैच the पे best of एमवीपी बन रहा positions है to get ऑफिशियल out at, टूर्नामेंट की and बात कर रहा Sitem, हूँ बट the जब वो last लैन player पे आया था ना surviving for so long, I जब think it was नूजी तो deserved, आप उसका परफॉर्मेंस and एड देखना कि क्या could था not जब उसने खेला था be फर्स्ट alive to witness those final few moments as DRS ओके डीआरएस charge in, बेस्ट trying फ्रेंड्स to breach टॉम those एंड Starwood जेरीज Esports' defense. आईसी Gante has been spotted out, गेंटे and बहुत प्यारा IC
knock and बहुत ही प्यारा nade by Delta. from DRS. Now the battle is on between these two big teams, and to find out who
comes बहुत out as the इंपॉर्टेंट winner. फाइट है A very दोनों टीम्स pivotal के लिए fight, एंड control दोनों for that के certain एक ट्रेड्स area, आ चुके हैं. and गेंटा DRS भाई को making यहाँ पे sure किलर भाई that Gante रिवाइव दे comes रहे down to safety हैं. before they आईसी can go for भाई the rest. This is a very important रूल्स revival for भाई the धीरे धीरे DRS. प्रेशर निज़ेट Already बच्चे Lizard being one with the nature, spot एक और there, नॉक. but instantly Rolls was placed perfectly, takes down Lizard over there, not tops with a grenade or a molotov, might be looking for some opening. As Talbot, they have been reduced to only 2 men. TRS, this is their map. They shine the best in the map of Senok and Stalwart Esports. How they are going to deal in such an outnumbered fight. Killer with the vehicle is trying to lure the player out of the cover, and Tops, his position has been compromised. Killer with a close frontal battle, but he has been taken down by Action from the back lines, providing the perfect support. Action there at the same time. Gyante also goes down. What is happening to the plus of DRS? Their numbers are dwindling down. भाई And रूल्स Rose, भाई there बच्चे is no अकेले. chance that he can come and save his teammates. Yeah, there certainly isn't any. And DRS getting a little too eager, little too complacent, or kind of unaware of Action's position, and have had to deal with the results. And everybody just decided to push in on Tops, and Action had a free duck hunt going on for himself over there. And Stalwart somehow still, against all Nima odds, bhai, have managed to keep themselves alive. And क्या बात है courtesy नीमा भाई, back to back, Action and back Top. to back. Again, that partnership duo really DRS के doing बंदे wonders for them. confirm कर रहे With हैं. so much of Top noise, bye. I8 is now aware of the threat looming around them as Action gets spotted. A few pot shot at his direction. Takes a couple Best of duo in action, bullets action on and his top body piece though. मेरे भाई. Still has managed to keep himself alive. Kicking and running, but not for long. I do not know what he was trying to do NB. there. As Fistboy really capitalizes on that situation. Gets that knock delivered. But with 24 seconds left, पीटी होगा भाई. the zone to start closing in, should be a revival coming in for Action there. And back on his feet, as now the march inside the circle begins. Mabatex, T2K, they've got some really good spot inside the zone, and so have the players of IHC and High Voltage also. The battle between the northern and southern teams, and Pmwi, TRZ, and in that eastern areas, they've got those few compounds to really capitalize with. But QEON, TRZ, gotta see what can they do out of here as Tops finally finds out rules. By the way, guys, possession, it's the just second match hiding in जो the आपकी grass, स्क्रीन के सामने आ and रहा है. make sure that he's dealt with. And now we are left with only 10 teams, 26 plus remaining in the game. High Voltage keeping the northern control and the numbers in their favor. On the other side, the plus of T2K, their numbers are dwindling down as Rig is still bleeding. TRZ, they are still looking for some connection and opening onto the plus of Skylar's Gaming. But AJ, Mafia Ninja, being one with the nature, AJ, all he has is a little tree trunk cover, but looks like Nima was spotted down by Sandesh over there, and perfect spray comes in. He goes down, but easy revival should be coming in. At the same time, Matrix Esports, they are also doing a third party as Baron is going to take down the remaining players, the entirety of T2K Esports. And T2K this time, they have been eliminated at 10 spots, with only 2 eliminations to their name. Not a good start coming in, not good points coming in for the plus of T2K. Skylets, it's a blessing in disguise for them. Yeah, it certainly has been, right? Ever since the zone had formed out, we know that Skylar's Gaming, ever since even they were a part of DRS, had so much trouble in They are playing Sanhok, on that situation, quite guys, pertaining to the fact that the circle always went west, and they could not get बाहर themselves से लिखना चीजें बहुत inside the easy. zone. So this हर time, एक टीम के लिए बोलूंगा जो QEON 16 टीम्स वहां TRZ खेल रही है, being मतलब हम कोई भी really मैच aware of हर एक Skylar टीम के Gaming's लिए बोलूंगा. presence, are just gonna exchange a few grenades over there, and there you can see No Fear has to get that little bit of a fear instilled in his heart as those grenades just keep pouring in, and have been taking quite some damage over there as the exchange keeps on continuing, and eventually Mamba is gonna find that opening knock over there. AJ has been dealt Constructive with. criticism is good, guys. आप कर सकते हो constructive criticism देने में कोई दिक्कत नहीं, but hate वाला over there. सीन गलत Madcat हो goes जाता है. in with the push, and TRZ AJ gets driven over as now the push comes in as the shots are being fired, and one after the other, the players of Skylar Gaming, they're just falling down. But again, we get to see that Titan DBS भाई. in action. And there you see Mafia Ninja trying to keep the fort alive, trying to keep the defenses alive, as Mamba just spraying through. Now will shift on towards his UMP. And eventually, it was a little scrappy, but QEON TRZ still come back with that victory in that particular fight against QEON, in fact, against Skylar's Gaming, and have managed to eliminate, to annihilate them
as high टाइटन भाई voltage आपको सच बता रहा हूँ, real वहाँ के close बंदे ना सोशल मीडिया proximities पे अभी of एक्टिव होना स्टार्ट हुए, NP अगर आपने नोट Esports. करा होगा कुछ टाइम बाद, But वहाँ के indeed, they बंदों don't के have the सोशल मीडिया numbers and हैंडल्स sec चेक position करना has एक been compromised. A perfect अभी तो grenade लाइक जब could प्लेयर्स have been अच्छा a perfect खेलता देखता है grenade, लोग जाके but the देखते हैं, blue तब zone is जाके going to एक force हाइप Sek अप मिलता है, to उससे come पहले out. सोशल मीडिया पे वो And एक्टिव नहीं है, only उनका on उनका a काम है single बस of खेलने HP, से मतलब है। Praveen. Just one मंगोलियन bullet प्लेयर्स is देख लेना required, and जितने भी Jiggle बंदे, with that UMP45 is going to take down Sek. Easy वो खेलने से confirmation मतलब है coming भाई, in, leaving टीम चाहिए FaZe और all खेलना by है बस। himself in a 1v4 situation. He's trying to make a quick, safe escape and scuttle back to the safety somehow. But the question is, will he be कोई ऐसा allowed बंदा to देख do लो so? जो किसी Because we ऑर्ग have the players में of I8 नहीं, मतलब जो also ऑर्ग में in नहीं the है, close जो लाइक proximity. समझ लो So ऑर्ग this पे है, boy, his days are numbered. But at the same time, I8, they're busy with the players of TRZ जो स्ट्रीम as वगैरह Nova भी X करते हो, finds a डील perfect के knock वॉच onto आवर्स वगैरह Steel पूरे Shot. करने पड़ते हैं तो स्ट्रीम Let's see if करते we हैं। can get the confirmation because the players or the teammates of Steel Shot are in the close proximity. So revival should be coming तो in. खेलने से मतलब ओए Because ओए I8, आई8 they're not लेट्स pushing गो। onto the plus. At the same time, they have a vague idea about the plus of high voltage, एचवी and क्या Malik भाई, in the crosshairs of Ophies just survived. Just there. It was barely there. As Nova manages to get the better out of Steel Shot, as Viper भाई निकाल is लेना just भाई। charging in, showing no fear, no क्या ये mercy at all. Wants to get it all. Now, this boy, he's kind of stuck between a rock and a hard place. He's got a high voltage, he's got I8, he's got teams just floundering everywhere around him. Mamba gets spotted out. मॉडरेटर्स भी एक्टिव मिल रहा है ब्रो, सबको टाइम Wants to capitalize on the situation. मैसेज Sprays डिलीट हो गया, down देखो and जाके gets that finish. With आपको that भीड़ being said, देखो Kunio TRZ, they've टेंशन been ना dealt with as Sky finally land that killer blow on the players of NB. The last man being taken down, and it has all come down to these three teams over here. We've got Illuminate, we've got Mabitex, and High Voltage fighting out against each other for that chicken. So Sky and Viper getting really close and personal. Players of High Voltage, I can see Sky, he's got to get back into safety. He's got to get back into good covers. Just hiding behind that rock. Let's see how close can Jiggle get. One thing that Illuminate can really capitalize on is that high ground advantage. They have to themselves. Viper revealing a lot of his bodies out there. Will eventually get punished by Jiggle. But the trades are definitely not in order and certainly hurt the ways of I8 right now. Now Jiggle, he has to keep the enemy at the bay because his teammate Praveen might be going for the revival onto Malik. At the same time, I8, Nova X going for the rescue mission onto Viper has been dealt with. Now I8, they have been reduced to 2 men, but Woofies finds a perfect बहुत बढ़िया confirmation onto I8 and anti HV. Oh guys, oh GG to team I8 का है भाई. And here we go, chicken dinner goes to team I8 and hashtag 8 पे overall I8 अभी currently scenarios पे है. ओ भाई HV well tried यार, एरिन भाई well tried यार, एंटी टू टीम HV यार, बहुत ज्यादा बढ़िया. एंड गाइस 450 लोग देख रहे हो, अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो, सो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. जीजीज यार, भाई I8 वर्सेस I8 मजा आ जाएगा, अगर हो जाएगा तो लॉस लियोनिस के अंदर मेरा मार पे I8 वर्सेस I8. वेट कर लो साउथ एशिया चैंपियनशिप का. बाय द वे अब टॉप 12 टीम साउथ एशिया चैंपियनशिप के लिए भी जाने वाली है बाय द वे. एंड गाइस 2 मिनट रुको, मैं टाइटल वगैरह चेंज कर लूं, 1 मिनट टाइटल वगैरह चेंज कर लूं. आपके भाई को टाइटल वगैरह चेंज तो अपन को साउथ एशिया को पहले ही करना है. तो आपके सामने टाइटल चेंज 2 मिनट देना भाई. So guys, all sorted, all done.
और गाइस 306 लोग देख रहे हैं, अगर आप नए हो स्ट्रीम के अंदर तो 900 लाइक जल्दी करा दो एंड जल्दी से 1000 लाइक करवा देना। एंड सेकंडली गाइस थैंक यू सो मच फॉर द मेंबरशिप्स टुडे, पुनीत भाई, हैरी भाई, सोही भाई एंड द सुपर चैट्स फॉर अनूप भाई, तरुण भाई, पैट्रिक भाई। अगर आप स्ट्रीम देख रहे हो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट फॉर द टुडे। एंड अभी हमारे 4 मैचेस और बचे, इसी तरीके से ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। चलो भैया, भैया मेरे शादी के ऐसा कुछ गाना है ना। बाकी गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वी हैव 173 सब्सक्राइबर्स एंड आपको दिख रहा होगा 50.2 के बहुत ज्यादा क्लोज 25 सब्सक्राइबर्स चाहिए, तो सब्सक्राइब भी कर देना। हेलो एमचिन भाई, कैसे हो सब? मोह माया है, मोह माया तो है, मोह माया तो है, बट एक चीज बताओ, एसटी का क्या सीन हो रहा है? मतलब एसटी गेम को समझ रही है क्या डे 1 पे, जैसा हमेशा से करती है? एमचिन भाई एक बार बताइए। ये पीएमपीएल से कितने टीम जाएगी पीएमडब्ल्यूआई में? ये पीएमपीएल से कितनी ब्रो? एक #1 पीएमपीएल से एक ही टीम जानी है भाई। बाय द वे आई गॉट अ कॉल। हेलो भाई, पीएल है क्या का क्या ब्रो? पीएल 19 ऑफ अप्रैल, 1 टीम ओनली ब्रो। मुझे फील आ रहा है एसटी का एक चिकन आएगा एक मैच के बाद। ठीक है भाई, आई वी गो 5 एलिमिनेशन बाय बैरन भाई। देखो मैप की टीम ऐसी है, एंड मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैप की टीम हो गई आपकी, सील की टीम ऐसी है कि शॉर्ट टूर्नामेंट्स में जब ये मचाने में आएंगे तो फाड़ भी सकते हैं, एंड जब नहीं मचाने में आएंगे तो नहीं भी मचा सकते। ये सीन है इनका। दिस इज गोइंग टू बी अ मोर ऑफ अ मैथस्टिक। अरे बाय द वे गाइस, आप लोगों को जिनको नहीं पता है, एसटी की सारी ट्रेनिंग बार एमचिन भाई लाइव करवा रहे हैं। ट्रेनिंग ग्राउंड्स हो गए, क्या स्ट्रेटजीज है, सब कुछ तो समझ रहे हो। एमचिन ब्रो इज डूइंग ऑल द स्टफ्स बिहाइंड एसटी, जो भी सीन चल रहे हैं। तो अभी अगर एसटी अच्छा खेल रही है तो आई थिंक एमचिन भाई को बोलना चाहिए आपको उनके चैनल पे जाके। अगर एसटी अच्छा नहीं भी खेल रही है तो भी आपको एमचिन भाई को बोलना। यहाँ पे प्लेयर्स की कोई गलती नहीं, जैसा प्लेयर को बताया जा रहा है वैसे ही प्लेयर्स कर रहे हैं। द रियलिटी गाइस, एमचिन एमचिन ब्रो इज डूइंग द कोचिंग वगैरह दे रहे हैं एमचिन भाई सब कुछ एसटी के प्लेयर को, एंड इट्स नॉट अ जोक। नहीं कर रहा हूँ, ये रियलिटी है, रियलिटी। अगर एसटी बिल्कुल परफॉर्म ना करे, #1 ना आए, तो गलती पता किसकी रहेगी? एमचिन वाईटी चैनल आना है ना, जाके सेव कर लेना, एक बार जाके देख लेना एंड पूरा समझ जाओ बस। चलो भाई, मैच नंबर 3 जल्दी से स्टार्ट कर दो, बट ओवरऑल रैंकिंग तो दिखा दिया करो, या फिर मैंने ही नहीं देखी, पता नहीं, मैं बोल नहीं सकता, बट क्या पता, मैंने थोड़ी देर के लिए स्ट्रीम भी करी थी, क्या पता मैंने ही ना देखी होगा। एसटी विल क्वालिफाई फॉर पीएमडब्ल्यूआई ब्रो। रिजल्ट्स इताची अपडेट हो गया क्या? इताची लिक्विपीडिया पे अपडेट हो गया क्या रिजल्ट? हेलो, मैं दिखाता हूँ ब्रो, यहाँ पे नहीं दिखा रहे रिजल्ट्स ओवरऑल। मैं एक बार ओवरऑल रिफ्रेश कर लेता हूँ, अपडेट हो गया क्या लिक्विपीडिया? नहीं, लिक्विपीडिया पे भी अभी नहीं हुए। बाय द वे सब्सक्राइब गाइस, सब्सक्राइब कर लो। i8 क्रू 18, मैप 15, हाई वोल्टेज 12, TRZ 9, 8 6 4 4, ST DRS SITM NB TRZ। टाइम आउट मेंबर्स एट फर्स्ट एंड आई सेड पानीपुरी। अरे 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 विशाल भाई, क्यों यार हेट? वॉच PMSL ब्रो, रुको जरा। SSC में कितनी टीम जाएगी एक टाइम? ST #187 पॉइंट। ओहो ओहो हो, क्या कह रहे हो? फ्लैक्स हो रही है क्या? हमें बोनस पॉइंट के फ्लैक्स किए जा रहे हैं भाई लाइव पे। बट
मैन बिहाइंड द एसटी एम चाहिए तो फ्लैक्स भी फ्लैक्स मस्ट। बट अगर एसटी अच्छा नहीं खेलेगी फिर भी गाइस याद रखना, समझ गए? एसटी एसएम फ्रॉम चाल भाई यार मत करो यार हेट टू भूल भी रहा है, आप शांत रहो, आपका मैसेज डिलीट हो जाएगा, आप भी नहीं लिखोगे वहीं पे बात। डीआरएस ब्रो रैंकिंग्स दिखा रहा हूँ ब्रो, मैं विकिपीडिया का वेट कर रहा हूँ कि एक बार यहाँ पे लाइव अपडेट हूँ। अभी तक मैचेस अपडेट नहीं हुए, लास्ट मैच तक की रैंकिंग्स आ रही है। एसटी टॉप पे थी 81 78, टी2 के 74 72 70। भाई कंपटीशन तो है भाई। इस बार मैं सच बता रहा हूँ, साउथ एशिया पे ना मेरे को एक अलग ही वाइब आ रही है भाई। एक से एक अच्छी टीम साउथ एशिया पे है, बट मेरे को इस रीजन के लिए बुरा क्या लग रहा है कि क्वालिफिकेशन इतना टफ हो चुका है ना। रेस्ट ऑफ द ग्लोबल पे बहुत सारे रीजन्स भी है, बट साउथ एशिया के लिए बुरा लगता है भाई। इतनी टक्कर की टीम आ गई है, हर मतलब आप गिन के 5 से 7 टीम आपकी ऐसी होगी जिसको आप बोलोगे भाई यार ये तो पीएमडब्ल्यू है यार, पीएमजीसी वाली टीम। एंड जाना 1 2 3 टीम ने है, समझ रहे हो? सो वो एक अलग अलग स्ट्रेस भी होता होगा टीम को भाई। हैट्स ऑफ, बेस्ट रीजन साउथ एशिया, एवरीवन सी पीएमजी एंड ऑफ 5 डीआरएस। ब्रो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई मतलब साउथ एशिया में कंपटीशन भाई पूछो मत, लेवल अलग हो चुका भाई साउथ एशिया। गाइस फाइनली ओवरऑल रैंकिंग्स आई, फाइनली स्ट्रीम पे ओवरऑल रैंकिंग आई है। लो भाई 87 स्टॉलवर्ड इज इन टॉप, देन मिरेकल वाइव्स 78, देन टी2 के 76, मैप 75, डीआरएस 74, आईएचसी 73, एनबी स्पोर्ट्स 66, आई8 क्रू बोलो वो आपकी रहने वाली है यहाँ पे 63 पॉइंट पे। बट एक चीज देखो, गैप जो मेजर थिंग है, आईएचसी अगर आप देखते हो 6th रैंक के ऊपर है, और तो सेकंड रैंक है 78, सिर्फ फर्क है 5 पॉइंट का। #2 to #6, बट यहाँ पर गोल है कि आपको #1 ही आना है। पीएमडब्ल्यूआई के लिए गाइस पीएमपीएल से सिर्फ एक स्लॉट है जो इन्हीं में से कोई एक टीम लेके जाएगी जो कंसिस्टेंट खेलेगी। नीचे जितना जाएंगे गैप उतना बढ़ता जा रहा है। स्काईलाइस गेमिंग 56, 54, 53, 48, 45, 44, 34 एंड 28। जो टीम जितना नीचे है ना गाइस उनको उतना ही हार्ड वर्क करना है अगर उनको #1 आना है। एंड जो मिड की टीम है उनको तो हर एक मैच कंसिस्टेंट खेलने हैं। अब ऐसा होगा अगला मैच अगर 4 वाइव्स ने निकाल दिया वो ऊपर आ जाएगी, टी2 के नहीं करा वो नीचे, फिर टी2 के अगला मैच अच्छा खेलेगी वो ऊपर आ जाएगी, तो रेस ऊपर नीचे वाली चलती रहेगी मोस्ट प्रोबेबली। भाई देखो अभी थर्ड मैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, लेट्स गो बॉयज। कंपटीशन तो है बट द कंपटीशन ऑफ पीएल इज नेक्स्ट लेवल ब्रो, बहुत अलग चीज है। पीएल को कहाँ कंपेयर कर रहे हो? का पॉइंट उनका गेम ही अलग है एंड उनका पॉइंट्स मैकेनिज्म भी डिफरेंट है। इफ एनी टीम डजंट गेट #1 द ऑग गोज 50k to $50 डाउन एटलीस्ट। यप, इमेजिन गाइस कितना एक और इन्वेस्ट कर रही है, ये भी चीज देखो समझने वाली चीज है। क्योंकि देखो रीजनल्स में अब पैसा वगैरह सीन खत्म हो चुका, रीजनल्स में इतना पैसा वगैरह है नहीं। कुछ बोनस आपको लाइक समझ रहे हो, बोनस इन द सेंस की जो आपको पार्टिसिपेशन वो भी है नहीं। पीएमपीएल के प्राइजेस ऑलमोस्ट हाफ हो चुके हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन के सोचो कि वो कितना पैसा एक टीम के ऊपर लगा रही है एंड आपको पैसा मोटा कहाँ से आता है? पीएमडब्ल्यूआई ग्लोबल, पीएमडब्ल्यूआई पीएम से। अब कंपटीशन ही साउथ एशिया पे इतना हो गया, सो हर एक अगर आपको जीतना है आपको अच्छी टीम चाहिए, अच्छी टीम चाहिए तो अच्छा इन्वेस्ट करना है, अच्छा इन्वेस्ट मतलब अच्छा पैसा लगेगा एंड उसके बाद भी चीजें ना हो भाई 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 समझ रहे हो? अलग सीन भाई, अलग सीन। हाउ मेनी मैचेस लेफ्ट ब्रो? आपके अभी 4 मैचेस और बचे हैं, सो जल्दी से गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फास्ट। ब्रो केजीएफ 3 का अनाउंसमेंट टीजर देखा? नहीं भाई केजीएफ 3 का नहीं देखा, बट मेरे को केजीएफ 1 और 2 दोनों देखनी है पहले। एसटी गिव्स चांस टू अदर टीम्स वन एंड ओके भाई मेरी तरफ से हाइड मिलेगा, दिस इज द लास्ट वार्निंग टू यू। बी इन लिमिट्स ब्रो, इन लिमिट। बी इन लिमिट्स, बी इन लिमिट्स जो भी होता है बट लिमिट में रहो।
तू ही तुझ दिल में थे जगह तू थोड़ा सा अपना ले बना डे 3 टूर्नामेंट 3 days टूर्नामेंट यस भाई 3 दिन का टूर्नामेंट है अगातो भाई एंड हियर वी गो थर्ड मैच ऑन योर स्क्रीन बाय द वे पर डे 6 मैचेस है एंड थर्ड मैचेस आपकी स्क्रीन के सामने आ ही रहा है आ जाओ ओके टाइम चलो भाई आने दो थर्ड मैच आने दो चलो भाई मैच आपकी स्क्रीन के सामने फ्लाइट पाथ बंद चुका है टीम्स उतरने वाली है अपने अपने ड्रॉप्स के ऊपर लो भाई मैंसन के ऊपर से फ्लाइट पाथ फेरी की तरफ पूरा का पूरा काफी टीम्स उतरनी होने वाली है बट काफी सारी टीम्स I think they've kind of got to figure themselves out what they have to do as we can see the flight path trajectory. Let's go boys, किस टीम को सपोर्ट करे वो भी एक बार नीचे कमेंट करके बता देना हमको. One of those flight path trajectories where these players are going to be really टीम 2x करो आप बहुत पीछे 10 सेकंड ब्रो वो डिले भी होगा ना 10 सेकंड का flight path is already calling for long rotations for the players of IHC because they tend to go towards the side of Georgopol City, especially for, definitely IHC they are of a long journey, they need to resort to those vehicles if they again want to go towards Georgopol. But I just noticed we have they the are out of the picture, so there is no bridge camp happening. At least that is what the players of 4MV and I am hoping right now because always they used to go for the bridge camp. This is also one of the reasons that 4MV were not able to perform really well in the games because they used to engage in early fight with the players of Elementrix. But TRC again going for their home ground, that is towards the side of Primorsk, IHC towards the side of Minta Power. Oh, how can I forget? They do have a secondary drop location, and this time again we have an eastern circle. Okay, this time the rotations that are going to come from the western front are not going to be so easy. That is where we have the players of Leo Esports, Seal Esports, even the players of Skylights Gaming. On the other side, this can be a good game for the players of NB Esports. Guys अपनी फेवरेट टीम के क्योंकि आपके बूट कैंप में एक्शन और टॉप है does Lipovka offer enough resources? Maybe they can head over and loot the compounds of prison. भाई ये तो वही वाला जोन है भाई कौन सा जोन ये अपना इनको वाला over there the secondary loot and NB let's go we need beaker वाली idling skills भाई they're again heading towards the side of Sivoni. They can come from the northern front all the way from the coastline bro 4MB को क्या हो गया है कुछ नहीं bro it's just a day one किसी टीम को जज मत करना on the basis of like कुछ मैचेस की परफॉर्मेंस में day one भी अगर किसी टीम का डिसेंट नहीं जाता है ऊपर नीचे चीजें होती रहती है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है बट वो मैनेजेबल होता है डे 2 एंड डे 3 पे बट डे 2 भी अगर डाउन चले जाए देन डे 3 पे भी वो मैनेजेबल होता है वो करके वेम्पायर ने दिखाया था तो उस टाइप का गेम पड़ेगा वो अलग चीज है बट हैशटैग बनाना फिर दिक्कत हो जाएगी क्या डिपेंड करता है आपके बोनस पॉइंट्स भी बोनस पॉइंट अगर आपके पास लेस से आपके 2 दिन खराब जा रहे हैं ऊपर के टीम पॉइंट्स जोड़ रही है तो हैशटैग वन तो फिर छोटी दो कि 2 दिन में अगर नहीं कर पाए एक दिन में इतना पॉइंट लेना बहुत दिक्कत होगी अगर आप ऑलरेडी every single time we see one अगर बोनस पॉइंट अच्छे खासे अच्छा दिन नहीं गया तो बकअप करने के लिए आपके पास मौके रहेंगे from their side, right? And this is where it's going to be interesting to see what really happens. भाई सर्कल देखो यार देखा भाई बहुत बार देख रखा है एक बार फिर से देख लिया आपके बोलने भाई at least for now all the players still alive, everybody getting their job done, getting their loots done. And this is one of those games where it could just be either DRS or maybe the players of NB Esports with how eastern the circle is gone. We've seen in the past also, these circles kind of tend to have that shift towards mostly we've seen around the Lumberjack Hills. So a few players, a few teams might want to take control of that territory before things start getting really intense and hot. But as things are, Shadow, all these teams, not few of them, like anticipated, the hot favorites, haven't really been playing like favorites, have they? Because everybody has had their fair share of good moments and they suddenly just throw everything out.
and kind of get taken down. I mean, DRS, they were looking so good. They had that certain control to themselves up until the point they went up against Stalwart, and after getting those 2 early picks, we all saw what they did. But yes, दिक्कतें 4MV को हो रही है 2 मैचेस से काफी अच्छे पॉइंट्स नहीं निकाल पाए हैं वो. I think, I mean, the kind of research that we were doing, where I was asking about how these players have been performing so far. Bro, PMPL Turkey में SGGFF NSA next level खेल रही है. People watch, but timing क्या है all in bridge block them. पर night का timing है तो considering Elementrix are not playing, so I think for Medical Vibes are not gonna have that sort of an issue anymore. But maybe Kunio TRZ could decide to try and stop them. Do you think that's gonna happen? I doubt, because I was the one that was criticizing the most the strategy coming from the side of Elementrix going up against the players of 4MV, because that costed Elementrix the qualification for the grand finals. And I believe at this stage, on the very first day, going up against the top dogs in the lobby is not going to go in the favor of any of the teams. Rivalry at this stage is not going to benefit anyone. Maybe on the last day, towards the last final few games, अंदर काफी important मैच इनके लिए भी, अगर आप देखते हो 2 मैचेस कुछ ज्यादा decent नहीं गए हैं. But at this point, I don't think so. की एक double digit वाला points आया है, कुछ gap stage बने. But on the other side, I'm worried about the players of SLATE Esports, because they are in the city of Novorupnoi. Nova Order स्वागत नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करेंगे. In the city of Milta, then we have अरे PMSL थोड़ी ना रहा है, PMPL है. So the rotations are not going to be so very easy for the players of SLATE Esports. But again, Stalwart, knowing that they're Stalwart, they somehow tend to find a way every single time, right? And they've been in this situation, right? Ever since I've seen Stalwart playing, they were the ones. तो सारी चीजें एक तरफ, टॉप भाई का POV एक तरफ, टॉप ब्रो का POV, टॉप ब्रो की POV ऐसे ही होते हैं. At Novorupnoi, and make sure that you're prepared to meet your maker. So Stalwart, I think what's going to be crucial though is going to be the timing of when they make that entry inside the circle, because it's kind of getting clustered in by a lot of teams, especially when you're talking about those junction points where आपकी आवाज कम आ रहा है, थोड़ा loud बोलो. I think that being held by the players of DRS, then Illuminate, they've got control over farm. So Stalwart has to figure out which area they're gonna try and पहले टैप करके अपनी पोजीशन बताओ यार. वो तो मीम था भाई यार, वो अपनी वीडियो ब्लॉक होगी यार. शिट, वो मोमेंट निकालना था. Go from the left side and try and get in. गाइस यहाँ पे डैडा है गाइस को अपना टैप शॉट देके पूरी लॉबी को बताना चाहिए कि हम यहाँ पे हैं. अगर फाइट लेनी है तो हम यहाँ पे हैं, तो ऐसे फाइट लेना है. So there are a lot of options that Stalwart has मेरे 100 रुपए, but I think Stalwart's gonna opt for a rather late rotation, considering they would want to let either of DRS or I8 further get inside the circle, which is pretty much the case that's happening right now. Esports fanboy यार, once the circle 2 forms upon us, and then we'll see a lot of teams migrating to a little north over there as Trula. But spotted out Mafia Ninja in the far off fray, and this is one of those points where they could just kind of exchange a couple of bullets. बाकी अगर आप चाहते हो जल्दी से हम सेटअप ले, तो you can support us through Shaguns. हमारी Shaguns आ रही है guys. I think anyone is foolish enough over here to just give their bodies away. हमने माइक तो लेना है guys, आपको confirmation won't come in, the knock can come in, and Skyler's Gaming, they can't afford to deplete their resources, because all they have is a single force state and few grenades in their hands. So yes, Skyler's Gaming, they need to go for the secondary loot as well. At this point, they can't afford to engage in a long-range fight with the players of Deadeye guys. But talking about the rotations, few early rotations are also coming from the northern front. We have the players of T2K already in the close proximity to the players of Skyler's. At the same time, Matrix Esports. Matrix, they're looking so very comfortable because they drop in towards Lipovka. They already have the entire eastern coast in control under their favor. But the teams that are coming from the western side and trying to contest that potato hill could be the players of SEA and 4MV. We have seen time and time again in these kind of circles that majority of the teams try to contest that potato hill over there, and that is where we see the demise of so many players at the team in the circle again in the favor of T2K and SLATE Esports. No, this is one of those curveballs that I think teams weren't prepared for, and now you could see those migrations set in, right? What I'm really surprised, take a look, 2 players of Illuminate, Sky,
over there along with his teammate. Same He's zone, kind of trying to different sandwich different the players of paths. Stalwart. Right, If yeah. Woofies gets a little किसी और ahead मैच over में भी there, दिखा है but यार now this इसको is gonna all be a dent in their plan, right? different What है, they but decided देखो was आगे क्या maybe choke the players of Stalwart from north and क्या south, RZ and खुल then गया? maybe just take them down. But खाली में considering how the circle has shifted, अगर I think मैं they've आपको got एक to चीज make बताता हूँ, a अल्फा 7 run होती है, पता inside कहाँ the होती है अभी? zone अभी अल्फा 7 themselves, रोटेशन right? दे रही And होती this है is ऊपर where से। everything sort of यासना की shifts. ऊपर But वाली I जो hope हिलने वहाँ से Illuminate रोटेशन has enough सामने को आती on एंड यहाँ two पे of their डैड players आएगी who ना are कि outside the ऊपर circle या right फिर now. आसपास के यहाँ And पे yes, there you could see Woofies and his teammate, they have no अल्फा interest 7 की बात in trying to काफी contest टीम Stalwart over here. इस Now all सर्कल these पे teams स्टडी are कर kind of settling in, trying to get the HV center of the बढ़िया circle. Since it has gone a little northern side, that anticipation where we could see something happening happening around those lumberjack hills kind of goes folly out of the window, right? Now this is one of those maps where maybe teams like Mabitix हेलो could हेलो हेलो really रहमान भाई, क्या benefit. हाल चाल? योर But वॉइस इज सो लो। anything could हेलो हेलो, possibly क्या happen वॉइस because क्यों लो आ रही है मेरी? we've seen on multiple माइक खराब हो occasions गया क्या Skylights हमारा? Gaming हेलो हेलो, has been one of those teams that really massively धनुष नहीं है क्या इस benefits गेम में? from नहीं भाई, धनुष circles नहीं like this. नहीं यार, As मैंने now क्या किया? Mabitix, they've got a team right on their ग्लोबल है own. नहीं, There's देखो gonna आपका be the आइडिया players of Raw फाइट का Officials आइडिया as है they just एंड मैप ने यहाँ पे रॉ को क्या बात है, absolutely destroy them. क्यों भी आया You इन know, रॉ everybody एलिमिनेट? decided to push in from one side. नॉट अ All गुड they had to सिचुएशन do फॉर रॉ, क्योंकि was अगर आप just देखते हो ऑलरेडी get डॉन their चल रहे armies हैं एंड united and डॉक push ने in from two नॉक different दिया है directions. But hold on, have no time एंड to यहाँ breathe. पे पुश And now आया आईएचसी का मैप suddenly के ऊपर। decides to be a part of the party as Alex decides to close in. Joel, Okay. Yes, Wally having the grenade जोल भाई will have to वैली get को नॉक, taken down, and IHC need a little डेमो bit की of a respite, need a पोजीशन little bit of पोजी नून recuperation, है एंड once उससे that's done, पहले they're gonna गॉडलेस ने strike कैसे again, को and गिराया? so do they, लियो as Godless gets one also knockdown knocked. over there, and Leo showcasing his head, and it's gonna be AJ from a long distance that deals I with get it. But Wolves Baron disconnected. somehow क्या सही में? has kept his team alive in this battle. And these are the crucial revivals that Maptrix Esports and the players of IHC need to go in. Baron going for the revival onto his fallen teammate. Better revive one teammate. ओके बॉयज एसजी अगर आपको याद हो पीएल में यहाँ पे काफी थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ पार्टीज हुई थी, अगर आपको याद आ रहा होगा, हमने देखा था साथ में मैच, कुछ वैसी वाइब आ रही है। मैम ने रॉ को वाइप करा, आईएचसी का पुश आया है, मैप को दिक्कत दी, देन यहाँ पे एसजी भी आ चुके हैं, नो फियर एंड नीमा एक साइड पे, both these teams they don't have the IHC numbers 4-man to deal strong, with the wrath of Skylights Gaming. मैब 2-man. It is attracting all the teams. Nima with a grenade might be looking for some opening. No fear, Nima barging under the supervision of AJ बोला था and 4 Mafia MVST Ninja होगा, from yes. far lines, but somewhere else on the map we have the लेट्स players of गो SEA Esports बैक and एंड पे IE एक्शन भाई भी also थोड़ा going देख up रहे हैं कि against चल each क्या रहा है। other. स्काई भाई Trades are मीनवेल coming to सोललेस को यहाँ पे फिनिश I mean, किया। this is something quite unexpected. जोन from, काफी इंटरेस्टिंग है Skylights गाइस, Gaming, पुशिस just होना being the लाजमी ones, है आने वाले taking the टाइम पे, जैसे opportunity जैसे where टाइम they बढ़ेगा वैसे find, वैसे पुशिस आपको both देखने these, को teams पुशिस quite weakened देखने को down, ऐसे ही right? मिलते रहेंगे, बट आईएचसी के काफी अग्रेसिव अप्रोच। Decided to go with the push, but still have to Eight, all काफी of बढ़िया। their players in fact नीमा भाई। alive. But Skylights Gaming, so much being done to take control over this territory, this area. Of course, would want to take down the players of Mabitex, and Joel succeeds in taking down Leo over here. And now they know that Mabitex, they've been reduced to just a one-man team over here. And this is the perfect time where maybe Skylights Gaming or maybe someone from IHC kind of decides to go in. Oh, nice. Ninja with that SLK gets that knock, and now Thank you so much for the phone pay 11 रुपए का also want to सपोर्ट जिन्होंने join ये the भी party करा। over Thank you so here. much. Mabitex, they have been eliminated now. It is a battle, just fuming out between these two big teams, and somebody all in one PK. Yes, मिल गया शगुन, मिल गया bro. Thank you so much. आपने करा है, thank you so much. All in they one have PK. been very aggressive, but AJ, he knows how to defend, and we know one thing from Skylights Gaming, their defenses have been quite solid, and they can certainly just try and keep IHC at bay, and IHC taking that smart route, they decide to retrieve as for Miracle Vibes. They decide to strike down. What's going on, Shadow? So many teams are eyeing for this compound. Third parties, fourth parties are happening. IHC, they are out there in the open on the other side. Skylights Gaming, they do have a good compound, but few आवाज आ गई है गॉडलेस को, no fear. आवाज आ गई है कि भाई कोई तो फटा है। Come in the way the players are फिर भाई knocked by the net. SG versus vibes engagement होने को could be coming in. है यहाँ पे। Knock by angles बनाने का ट्राई कर रहे हैं। Meanwhile 3 players on one side utilities बनाने का ट्राई। Yes, Nima is going for the revival onto No Fear, a very crucial revival. At the same time, IHC,
this is the opportunity they can capitalize, but 4MV Apex again gets a knock onto Nima and confirmation onto No Fear. This is the moment Skylar's Gaming, they don't have the numbers in their favor, but Mafia Ninja is still keeping the hope alive as he takes down Apex over there. This is something that I'm still, you know, going over to what's going on. No, of course we know it's a very important compound, सील के सांचिर को नॉक दिया एंड जितना मैं गलत नहीं हूं तो यस एक ही बंदा बचा था एंड यहां पे एलिमिनेट लास्ट बंदा यहां पे मतलब गिर के तो नहीं रोज किलर भाई ने यहां पे नॉक दिया IHC they've taken the big round, they've got retreated, they realize so many teams are coming to fight in, and there you go, Nima also meeting his maker as for Medical Vibes. They haven't lost out on numbers yet. As Mafia Ninja and AJ, they really need to defend this compound with all their might. As Doc922 decides to push in, refuse from one angle, and there you have the TBS on display. Hello, आ गया इसी टीम से तो बच के रहना था. IHC on point. Beautiful knock with his DBS, gets it confirmed. As for एक casualty मिल गई. उन्होंने expect नहीं करा था IHC का बिल्कुल भी यहाँ पे 4MB ने. Valuable men. As now Skyland's थोड़ा time मिल गया SG को. You know they've got that you know first floor in their control still now, but now it's just getting swarmed in by so many teams over here, and the smoke, the moment it dissipates, this is where the battle again will just break out as IHC. They had gone for a little bit of a retreat, and so have the players of Medical Vibes now. Skyland's Gaming, how long can they hold on? Because you know, with just these two players remaining, and IHC, they're taking their sweet time. They do not have a lot of grenades to work out. In fact, nothing. And if they can set a perfect crossfire, as Alex has decided to push in, Mafia Ninja gets taken down, the other player gets spotted in the emergency room. And the wrath of DBS strikes again as Skyland's Gaming, they bite the dust. And guys, 442 लोग देख रहे हैं. अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो, so make sure to hit the like and subscribe to the channel. Meanwhile, STE and I8 आपकी स्क्रीन के सामने. I8 को early सील के साथ clashes का सीन हुआ था, अगर आपको याद होगा. And STE स्टेबल होने का ट्राई कर रही. दो ही प्लेयर है I8 के, और जिसमें से एक नॉक मॉली ऑलरेडी कर रखी है. टॉप थोड़ा सा बच के ब्रो. IC भाई हील करेंगे. एक ही बंदा बचा है. वाइपर भाई अपने I8 के. I8 Viper might be looking for a grenade. Knock onto the plus of Stalwart Esports, but can he find an opening? And looks like he won't be able to find any. At the same time, he has to go for the revival, and this is the moment of the shotgun is going to strike. Nice. I8 eliminated. STE, Newzed, early elimination, 3 men. Tops, IC and Action, 2 elimination है. बहुत ही प्यारा knock. Leo का. Yes, they did lose onto Newzed. But 3 players, 2 defeat points. I think it's by the way, guys, आपकी स्क्रीन के सामने सारी की सारी टीम्स आ रही है जो अभी लाइव है. IHC, NB, NDRS, 4-4-3 elimination. Esports losing out on one of their players pretty early. IHC ने दिमाग लगाया भाई. Decent job in recovering themselves. मैम ने एलिमिनेट करी रॉ, देन IHC ने बीटी करा मैप को. पीछे से IHC ने देखा बसड़ हो रही है, निकल जाओ. पीछे से आगे 4MB ने SG को पिंग करा, देन IHC आ गई. जब MP पुश करने लगी, IHC का नॉलेज नहीं था, उन्होंने उनको पिंग करा, देन उनको फॉल बैक करना. बहुत ही बढ़िया. But for Medical Vibes, now they're showing intent on trying to fight out against the players of IHC, Hello guys, but PMSL he's getting shot at Pmpl and now needs to find some cover, which he does eventually. But what does he do next with T2K right in front of him? Even IHC trying to get their players back alive, especially with Godless just lying down in the dust as Doc922 gets that finish over there. And now Apex, being the Apex Predator, spots out Zor, heals with him. And now for Medical Vibes, they've kind of spread out a lot, to be honest. And it's all about that fight ensuing in that southeastern territory. And now Apex is gonna be rescued. Doc922 is there. He's gonna take him along with him as Alex is just hiding in that shout of smoke. The moment the smoke dissipates, now that is where we've got to see what does Alex do in that particular moment. Dog, this guy never fails to impress me from the side of 4MB every single time. I don't know how he manages to land those perfect grenades right on the face of the enemy. This time again, he was able to bring down the numbers of IHC by taking down Zoil with those grenades. Talking about other teams having a good position inside the circle, other players of Yoodo Esports right in the epicenter. Top then we have the players mini of मिल DRS, गई but finally. the split, the Top segregation का that is सफल coming हो गया from the side of DRS. Top को मिनी मिल I गई, don't मतलब know, दिन I'm टॉप not भाई so का sure सफल हो it रहा is going to work in their favor, but maybe if it works, it works. Pmpl एक साल में 2 बार होता है.
the team that is a bit far away from the circle are the players of NB Esports. Now Deadeyes, they are prepared for the players of TRZ, and TRZ maybe they're also eyeing for this compound, and Precious Sir with the M416 spray is trying to keep the enemy at the bay. One player from the side of TRZ is surviving on a sliver of HP, and with that, Mad Cat has been knocked out, and Precious Sir gets an easy confirmation as well. Yeah, I mean, Deadeyes are off to a good start pretty early on, defending their fortress over here. As TRZ's Mamba is going to get pushed upon, as on top showing no mercy at all. Nothing going down there, as Deadeyes, they mean business. And Kunyo TRZ, you know, they've been the aggressors. We've seen them doing that multiple times. And last time, I think against Skylights Gaming, they might have succeeded, but not this time around. A Steel Shot, the loneliest players there in the server, gets deleted by Precious. And with that being said, Kunyo TRZ, they also have to say their goodbyes over here, as Mondo gets right off. Is he gonna successfully escape? That's a big question. Does not happen so, but the trades are definitely there. Sik manages to get it, but Mondo, he's got himself in a pretty safe position where he can get the rest back up. And now it's all down to NB Esports. They're trying to close in the gap. They're trying to go in and commit for the push as two players come marching in at his direction, and the slap from DBS comes in. FaZe gets himself into action as Apex, the final player surviving, will also fall, as NB Esports have done the unthinkable, have managed to absolutely abominate a reckoning force like for Miracle Vibes. Still TRZ West Bangalore, TRZ, yes. TRZ, NB, something unheard of, but this time they are turtling up their first few games in the Grand Finals. But T2K, well, they do have a good compound to their name. Up until now, T2K, they have been so very silent, not making any sort of noise. But Jane out there in the open, and Fist Boy is definitely going to punish him with his AUG. And now the knock is there. DBS पे debate कर लो सारे के सारे लौंडे, ठीक है? तुम DBS पे एक debate कर लो बहुत बढ़िया तरीके से. Because last time वो ज़्यादा बढ़िया है ना? DBS पे पूरी debate कर लो. Compound to their name. It's just that they were not able to defend it, and this time again, if T2K fails to defend this compound, oh, this game might not go in their favor. I'm kind of still over, I'm still kind of not over the, duel that we got to see. In fact, not a duel, it was 5 teams fighting for that one position. And guess what? That's not even part of the circle right now. And right now, I mean, the circle, the shifts have been quite odd, to be honest. I mean, ever since the changes have been made, the rotation timings and everything, it kind of feels like a new game all over. Right, it's a little freshy. It's kind of a little fresh approach, and DRS, they are the benefiters of. He was like a particular friend. I've got a decent control, and now I'm getting quite some knocks to their name. So Akaza, he's being dealt with. And you've got the players of Leo. This time they kind of not too overeager. They're kind of holding on to that squad house compound control that they have. As Toward, they decide to make a move towards the players of Deadeye. I8 team है नहीं bro, ये नेपाल की team है. Y8 अलग है, Y8 अलग है. Like that. Watch out for the players of Deadeye, as beautiful final shot connecting. And Kulov falls down on his knees. Hello Manigan bhai. Nice to see you. To stop the plus of Deadeye from their tracks. With that, Stelvert, they are also doing a third party as Tops find a beautiful knock on one player of Deadeye. How they are going to survive the situation is very doubtful. On the other side, we have the players of TRS also going up against the players of NB Esports towards the southern end, where trades are coming back and forth. Sitim QB has been knocked down. Yo Esports, up until now, they have managed to defend this compound so beautifully, finding trades here and there, but not able to get the confirmation. Yante is going to punish the plus of Sitim as 0 goes down. DE, Churulov Sir, confirmation coming in from the plus of Stalwart Esports. And look at the position of Deadeye, guys. All they have is a little shack. One grenade can take down on top Sir over there. And then we have only Precious Sir left. Stalwart Esports already looking to push towards the plus of Deadeye, trying to lure the players out with those vehicles, distract them. Moment distraction coming in, action comes in with a grenade, takes on one player, and the last player also gets bye-bye.
eliminated. ऑन पॉइंट ऑन पॉइंट ऑन पॉइंट। मुझे यहाँ पे ना PMPL ब्राजील का वाला मैच याद आता है। फ्लैमिंगो का कौन बंदा था, ए से नाम आता है जिसका, लास्ट मैच में क्या खूब किया था भाई। अगर आपको याद हो, हमने बीच में टॉक लाइक लाइव टॉक में देखा भी था मैच, जब हम कंटेंडर्स में देख रहे थे, हमने जब PMPL ब्राजील देखा था, अगर आपको याद होगा, क्या मजा आ गया था भाई वो देखने का। मीनवाइल लियो knocked has been knocked out. Now one of their primary objectives would be trying to get him back on his feet. Liquid by kind of deplete where so is much Alter of Ego those bro? resources, Alter so much of those smoke Ego grenades Climax deployed over there PMSL just to get one of their players back alive. And it's not like it's been a merry ride for Leo Esports so far, right? They've already lost out on Smokey V3, and now they have to somehow save Slipknot. They've managed to get him back, but now Slipknot needs to really escape. Barrage of grenades did come through. Liquid did manage to spot out action, but he's doing nothing to really reveal his position. Kind of that fear has stricken down on his mind side. It is Starwood in front of them, and you're not out to peak when you are against a team like Starwood. And at this point, you know, DRS still having such a prime position and now getting contested by the players of NB Esports who are kind of closing in on them. And T2K, they've been out of the zone for a while, but they will also have to figure a way to get inside the circle. And with DRS watching out for them, it's going to be such an arduous task. Well, DRS, they do have the majority of the real estate in the circle under their control. Your Esports, they do have to deal with the plus of Stalwart Esports in action with a grenade, is already looking for an opening. The smokes are being thrown. Stalwart, they have to transition themselves inside the circle. And how they're going to do so, yes, they do have the vehicles. Right, but which area can they hold on to? Because on the eastern side, we have the players of T2K towards the southern end. We have the players PMW of के लिए इसमें DRS से having टॉप the आना। यस ब्रो, majority PMW control. के लिए इसमें से Then we टॉप have the आना है। players चलो of भाई, Leo आईसी भाई, Esports. Stalwart लियो भाई आगे, Esports, they have to pick लियो this की टीम fight मतलब against आगे, Leo and try and एसटी की get टीम the पीछे, comfort लियो in फुल their बीटी name. कर सकती है, But Haidami, फुल he's बीटी, फुल prepared बीटी। with those grenades coming in, but no By the way, connection 3 मैंने whatsoever. Action down to sliver of HP. He needs टॉप to बाय स्पॉट patch himself हुए up as soon as जस्ट नाउ पे possible. Now, हैशटैग Leo 1 यस Esports, गाइस। they बाय have बाय to द वे defend गाइस, this 500 से compound. 15 लोग Otherwise, देख रहे हो। one अगर more आप स्ट्रीम bad के अंदर game नए हो, सो might मेक go श्योर टू in हिट द their favor, लाइक एंड because right now they सब्सक्राइब have टू द got चैनल। only 2 defeats. अभी 6 टीमें आपकी अलाइव है। DRS, T2K, ST, Leo, NBN, SITM एंड सारी अच्छी अच्छी रैंक पे टॉप को यहाँ पे फाड़ा है गाड़ी के उससे। IC का क्लूज इन हो गया है एंड बहुत प्यारा नेड यहाँ पे पुल इन हो रहा है, जिसमें IC को डैमेज गया है स्प्लैश। टॉप यहाँ पे नॉक्ड है, बहुत प्यारी मॉली एक्शन। IC पीछे 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 एंड एलिमिनेटेड एंड होल टीम वाइप्ड आउट। एंड यहाँ पे 8 एलिमिनेशन के साथ #6 रैंक पे ST ने एंड करा, बट एक डिसेंट पॉइंट लेके गई है। मीनवाइल लियो 5 एलिमिनेशन निकाल चुके हैं, टॉप 4 के अंदर आ गई है। DRS का एक और कंसिस्टेंट gonna get himself patched up pretty DRS soon. है 4 मैन। Not a lot of teams T2K once again, like first match अगर आपने देखा होगा, DRS T2K was the consistent team. Once again दोनों consistent team top 3 के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं, 3 and 4 के अंदर। So here we go, T2K and DRS on your screen. Where does the circle shift? Who does it favor? Which lap does it fall upon? As Rig is just getting sprayed through the smoke. Gets a little bit of a trim there, but not quite worrying enough, as this is not something that Leo were anticipating. Considering Liquid has been taken down, now they're in dire circumstances. Oh, certainly. Leo Esports at the same time, T2K might come in under heavy fire. Delta with a grenade, looking for some opening. Patrick but bhai, Sandesh takes hefty what's HP up? out of roll. Finally knocks him down. 2 players down from the side of DRS. DRS not looking good. Gyanta with that मत करो vehicle Patrick might भाई। try and find a better क्या position for फायदा? himself. At the same मैं time, खुद मेरे Killer को YT खुद is टाइम going आउट to देना get पड़ेगा over his आपको। position, but at the same time finds Green Sion limit. over there. Jane Please. also goes down. Uncalculated risk. Jane went in to revive his teammate. That costed Big Paji T2K already the spotted life है। of 2 players. Now यार भाई रिवाइव 2 देंगे players remaining भाई from को। the side of T2K. Remain DRS, strong. they have the numbers Green advantage. teams in their बची favor. है Gyanta लियो, goes out to the players of T2K Leo Esports over and there. DRS, And Leo तीनों with की those vehicles तीनों are नेपाल already रीजन की closing in the टीम। distance. Slipknot, he has to patch himself up as soon as possible as he's down to 10 HP. But Greg is also coming under heavy fire. The smokes are not helping Greg at this point, as Killer YT with that UMP45 is going to bring down Rig. Yeah, they are just spread out left, right, and center, and DRS. This is pretty much their game to lose. They still have Leo Esports still have managed to revive Liquid there, but they have got to deal with the mammoths that are DRS themselves. Rules not having the best of HPs, as Leo Esports have taken little control of Carry killer, the yes northern मेरे hills भाई। over here. And now a
trying to just choke in the place of DRS, which looks T2K really less Leo likely. But DRS, DRS T2K seems like Leo they've got too much DRS, on their plate. T2K Leo And if DRS. rules goes for that grenade, and if it DRS kind of घंटे ricochets भाई back, बहुत could just ज़्यादा take down बढ़िया. Sandesh and Rig, and that T2K exactly गई, does DRS happen over here. चिकन As लेके Rules जाने वाली succeeds क्या and वाला मैच. T2K तो go भाई biting the फिनिशर्स dust. निकाले Now रूज it's भाई को all मिलकर come उनको down to फिनिश this रिकबाजी 3v2 का situation. काफी बढ़िया. Fight लियो यहाँ Dami पे does 6 not have any एलिमिनेशंस meds, निकाल or चुकी in है. fact he did DRS in उनके fact आगे, 2 invest टीम into that बची है, final लियो one एंड that he had. Now DRS. बहुत in प्यारा this नॉक situation, दामी भाई ने they do दिया. have managed to deal ट्रेड पे with एक और kill नॉक. over here, but gets traded रूज off भाई instantly by actually know the Deante, liquid as Liquid remains to be position the final survivor. and So how long is the big question? here we As go. Rules Chicken has goes dealt to with team Slipknot, DRS. and तो DRS DRS का will गाइस have चिकन no डिनर trouble यहाँ पर आया है. securing the एंड एक और final बार win. DRS ने अपने स्टैट के अंदर ये ऐड ऑन कर दिया है कि जोन जब भी जाएगा कहाँ कहाँ पर, जब भी जोन बनेगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न साइड, तो हम हमेशा से यहाँ पे अच्छा एग्जीक्यूशन करके दिखाएंगे. सो हमेशा की तरह बहुत ही स्ट्रांग लाइक ये स्ट्रैट है DRS का इस जोन का, जो मैंने आपको बताया. एंड एक बार फिर से उन्होंने सबको रॉन्ग प्रूफ करके इस जोन को अपना जोन बनाया है. एंड अच्छे पॉइंट काफी निकाले. ओवरऑल रैंकिंग की बात करेंगे, DRS इस मैच के बाद आ चुकी है रैंक नंबर कितने पे जल्दी से आ जाओ भाई, इतना मत घुमाओ प्लीज. अरे हैं भाई दिखा दो, इतना लंबा पॉज रुक गया भाई. GG guys, yes, GG DRS and NT2 Leo, NT2K on the chat and NT2 STE2 बहुत बढ़िया खेला. एंड जो भी नए लोग स्ट्रीम के अंदर है, मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. भाई ये फंस गया क्या, पॉज हो गया क्या, क्या है भाई. चलो #1 ओवरऑल पे आ चुकी है DRS. ओह आफ्टर मैच नंबर 3 ये जो रेस है ना, #1 #2 #3 बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने वाली है. एंड टोटल 15 एलिमिनेशन, चिकन डिनर टोटल 25 पॉइंट. तो यस गाइस, ये जो जर्नी है और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है. सिनारियोज आप देख सकते हो लाइव जो आपकी स्क्रीन के सामने आ रहे हैं. मेरा भाई है किलर वाइट इंडियन भाई, शायद आपने इससे पहले भी बताया था, कजन कुछ बताया था अपने कजन वगैरह, मुझे याद आ रहा है कुछ. भाई एक इतना पॉज क्यों भाई, इतना पॉज क्यों. जी गाइस, एंटी टू ऑल द टीम्स एंड DRS #1 पे आ चुके हैं. कंपटीशन लेवल अब और बढ़ने वाला है. मतलब DRS, देन ST, देन वाइब्स, देन T2K, देन आपका मैप की टीम है. बहुत सारी कमबैक्स आपको देखने को मिले इस मैच से. लियो अच्छे पॉइंट लेके गई है. तो यस, वेट एंड वॉच आगे क्या क्या होने वाला है. जस्ट डे 1 एंड मैच नंबर 3. आपके 3 दिन ऐसे ही होने वाले हैं. 18 मैचेस है अभी आपके, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कितने मैचेस बचे आपके, 15 मैचेस और बचे हुए हैं टोटल. I told you DRS known as comeback. Yes bro, I know. मैं बोलता हूँ वेट करो, वेट एंड वॉच. मैं बोलूंगा 16 के 16 जो बंदे हैं, कोई भी टीम किसी की भी गेम पलट सकती है, या कोई भी टीम अपनी गेम पलट सकती है. मैं तो बड़ा वो बंदा हूँ कि मैं लास्ट बॉल तक और लास्ट मिनट तक मैं वेट करता हूँ. मैंने I8 का मूवमेंट देख रखा है एक बार, तो लास्ट मोमेंट तक मैं होप रखता हूँ भाई कि कुछ बढ़िया ही होगा, कोई भी टीम हो. #1 आया यहाँ इसलिए इतना टाइम लगाया. एंड गाइस प्लीज हेट वाला सीन चैट के अंदर मत करो यार, फालतू का टाइम आउट मिलेगा और क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, कुछ नहीं. मैं मैच नहीं देख पाऊंगा कि देखो मॉडरेटर भी यार कितने हद तक रहेंगे, मेरे को फिर वो भी मेरे को हेट वाला सीन भी होता है थोड़ा, वो देखना पड़ेगा. फिर मैं मैच ढंग से नहीं देख पाऊंगा, तो आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल पाएगा. सो वो आपके ऊपर, अगर आप हेट फैलाओगे तो देख लो.
बाकी आपके ऊपर है जो आपको सही लगे। आज नेपाल का न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर ओली भाई, सेम टू यू। बहुत सारी खुशियां, अच्छे से एंजॉय करो, विश यू द सेम, बहुत सारी खुशियां। ओ भाई घंटे भाई, हेलो, 8 एलिमिनेशन चिकन डिनर, बहुत बढ़िया। घंटे भाई ओपी इन द चैट। अरे भाई क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया। एसजीएक्स नसीब भाई आप सुनाइए ब्रो। अब शहनाओ क्या आएगा ऐसा गल्ला, अभी भी ब्रो। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर क्रशर भाई, क्या हाल चाल। DRS 25 पॉइंट, दैट वाज हैपेंस व्हेन यू हैव 50। अरे अरे पैट्रिक भाई मत करो यार, पैट्रिक भाई मत करो। अब मैं इसके बाद देख लिया आपको कुछ बोलते हुए तो हाइड रहेगा डायरेक्ट मेरी तरफ से। टॉप कंसिस्टेंसी, यस टॉप कंसिस्टेंसी, मैन बिहाइंड ST MC and YT। लेट्स गो बॉयज, #1 पे आ चुकी है DRS, बट पीछे पीछे देखो ST भी है। 2 पॉइंट का गैप है गाइस, ज्यादा गैप नहीं है। बाकी वाइब्स भी इतना पीछे नहीं है, एक अच्छा मैच और ये भी ऊपर आ सकती है। मतलब ये मैच वाइब्स का अच्छा, वाइब्स भी आ गई ऊपर, देन ST भी सेम, मैप टेक्स भी सेम, T2 के भी सेम। भाई कंपटीशन, भाई मैं सच बोल रहा हूँ, इस रीजन के लिए जस्टिस नहीं है भाई। मैं बोल रहा हूँ इस रीजन के लिए ये जस्टिस नहीं है गाइस। प्लीज देखो यार, कंपटीशन देखो, इट्स जस्ट डे 1 एंड मैच नंबर 3। इतना टफ कॉल ऑलरेडी हो रहा है। #1 टीम जाएगी PMWI के लिए। भाई कितनी बेस्ट टीम्स है जो आपको टॉप पॉइंट पे दिख रही है भाई। सच बता रहा हूँ, नॉट जस्टिस यार, जस्टिस फॉर ऐसे नीडेड भाई। हैप्पी न्यू ईयर लवसन भाई, हैप्पी न्यू ईयर भाई, से थैंक यू एंड विश यू द सेम लवसन भाई, विश यू द सेम। अभी ऐसा मैं न्यू ईयर ब्रो, हैप्पी मनी केन भाई, सेम टू यू मेरे भाई, सेम टू यू। ये गाइस भाई, बट जस्टिस चाहिए इस रीजन को गाइस, वी नीड सम जस्टिस गाइस। मतलब भाई सच बता रहा हूँ यार, कंपटीशन देखो एक बार। कैलाश गेमिंग 59, 57, लियो 56 ये मैच में पॉइंट्स लाए हैं। हाई वोल्टेज 53, कुन्यू TRZ 48, देन 47 सील, डेडा गाइस 39 एंड रॉ ऑफिशियल 28। इन टीम्स को काफी पॉइंट लेने पड़ेंगे, बट देखो गैप इतना मैं बोलूंगा अभी के टाइम पे, अभी ऐसा है जो आप कवर कर सकते हो अच्छा खेल के बैक टू बैक मैचेस। आप क्लोज आ जाओगे देन चीजें फिर वही रहेगी, जो अच्छा खेलेगा ऊपर नीचे होता रहेगा। बट अभी जो ये टीम है 9 से 69, अगर मैं बोलूँ 9th 10th, इवन दो लियो हाई वोल्टेज TRZ कर सकती है हाई वोल्टेज तक टीम्स। बाकी आगे देखो टीम्स के एग्जीक्यूशन क्या होते हैं। हम फुल एनर्जी के साथ गाइज, भाई तो हमारे को 6 घंटे स्ट्रीम करते हो चुके, फिर भी एनर्जी हमारी सेम है, बट आपकी एनर्जी भी ऐसी सेम रहनी चाहिए। तो लेट्स गो बॉयज, एंड आई एम हैप्पी दैट कि हमारे को ओवरऑल स्टैंडिंग दिखाएगी। सो अगर कोई भी टीम से देख रहा है, आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच। पूरा एनालिसिस हमको ही होगी। अरे अरे नहीं, बिल्कुल भी मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ। देखो ST का अगर डाउनफॉल आता है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, या फिर ST अच्छा खेलती है, मैन बिहाइंड ST इज एमचिन YT, दैट्स इट गाइस। अगर बुरा खेला है भर दो भाई एमचिन YT को, YT में जाके YT में एमचिन YT में जाके भर दीजिए। बाकी अच्छा खेले तो
यार भी दीजिए। अयुगी भाई को इनकाउंटर कर दिया था ना पुलिस। अरे अरे, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल नेपाली फैंस। टीआरएस असलामी भाई, सेम टू यू भाई, सेम टू यू मेरे भाई। तो आपने तो आज के सब कुछ मैच में एमवीपी रैंक में आया है। यस। हाँ भाई लोग, तुम कहाँ से हमारे एसटी और वाइव्स सपोर्टर्स देखे नहीं दे रहे? भाई जलवा तो है भाई, जलवा तो है भाई। इसमें ऐसे केच साथी कुछ तो लागत मैच। पीएमएसएल का क्या रहा है भाई? पीएमएसएल आई थिंक मैच हो गए होंगे, पीएमएसएल या हो रहा होगा। ब्रो कितने दिन का फाइनल है ब्रो? 3 दिन, मात्र 3 दिन, ओनली 3 days। तो गाइज नेक्स्ट मैचेस हमारे बचे हुए, फुल बूम बाम एंजॉय करेंगे। हमारे 3 मैचेस बचे हैं। शैनॉक आपको पता है कितना ही अलग सा मैप है, जहाँ पे आप चीजें जज नहीं कर सकते, जहाँ आप चीजें वो नहीं कर सकते। ऊपर नीचे वाला सीन आपको पता ही है। ओनली फैन स्टॉप है क्यों? वाइव्स वांट इन पीएमडब्ल्यू भाई। कंपटीशन देख रहे हो रजत भाई? मतलब हमको यहाँ से देख के ऐसा हो रहा है कि भाई क्या चल रहा है इस रीजन पे, वहां पे टीम्स का क्या हाल हो रहा होगा। भोजपुरी में कास्टिंग करो भाई। मेरे को आती नहीं, आती तो मैं जरूर करता, बट मैं किसी को लूंगा भोजपुरी, जिसको भोजपुरी आती हो आप में से लूंगा किसी को। मेरा माइक लेना दो बस मेरे को। मैंने आपको बोला है ना, मैंने आपको बहुत पहले बोल दिया था, एंड ऑफ द मंथ। मैच नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। लेट्स गो बॉयज। मेरा मारे इसके बाद होगा शैनो, फिर लास्ट में होगा आपका इरेंगे। चलो बॉयज, आपका फेवरेट मैप है, एनर्जी दिखाओ। ठीक है, फ्लाइट पाथ डिसेंट है, डिसेंट फ्लाइट पाथ है। काफी सारी Looks like टीम Scarlet Gaming, they have to go for a very long journey. They have to चलो भाई resort लेट्स to गो। those कौन सी टीम vehicles. को सपोर्ट If कर they're रहे हो again कमेंट heading करके towards their बताओ home जल्दी से। ground, that is going to एंड be the city वॉल्यूम of हमने उठा दिया है। area. जिस टीम को Matrix सपोर्ट कर रहे हो Esports, जल्दी से they are कमेंट going कर to दो एंड हर्ट स्पैम have कर दो much चैट के अंदर। trouble लेट्स in गो heading बॉयज। towards the side of Torre Emuda. ऐसे में Last time कंपटीशन in है, Lost इसका QEON मतलब is we आया have the नहीं players of है IEX कि City 5 टीम को Esports. पीएमडब्ल्यू This इनवाइट time करे। यस that time they ड्रैगन didn't भाई, go यही against तो सीन each है। other, but I कंपटीशन really भी तो want इतना them हो to चुका go है, against each other during the very बेस्ट टीम early ही जाएगी अब। stage, because hey, they already have a chicken dinner in their name. They can afford आयुष to भाई बहुत नेक्स्ट have लेवल the है कंपटीशन। initial fight, because they पहले are ऐसा होता था already 3-4 looking टीम होती good थी, in terms of अभी the 5-6 overall टीम्स ranking, है। the placement in the overall ranking. So और अभी I आप कुछ hope बोल they नहीं go सकते। up against each other. I mean, टूर्नामेंट to का be honest, at this point, I don't think that's gonna कितना happen. बोलोगे? To be 10-15% ही realistically आपने much, देखा है because you know, 100% में से। this is तो something आगे that we कौन सी also टीम did शॉर्ट touch upon, टूर्नामेंट है, right? Once the इसका Sanhok game दिन went अच्छा on, and मोमेंटम I या realized जोन वाला that, you सीन know, का not एग्जीक्यूशन taking अच्छा those निकल early जाए, क्या fights, पता। certainly coming वेट एंड in वॉच। and लेट्स गो बॉयज। बैक टू बैक कमेंट देख के अच्छा लगा। helping them, you know, इंग्लिश lands स्ट्रीम इज up in डिले their ब्रो, favor. प्ले So नेपाली। I really think they're gonna try and लोगों को avoid, अंडरस्टैंडिंग का सीन हो जाएगा you ब्रो। know, any sort of those early मैंने पहले भी battles लगाई right थी, in the थोड़ा very ऊपर नीचे हो जाता है सीन। first moments of the game. एज ए साउथ एशियन And फैन आई again, डोंट a रियली kind of a वांट। similar circle, but this time a little bit southernish tilted, right? So you could expect नासी भाई maybe some जो action अच्छा खेलेगा हो जाएगा, around that graveyard जो area, अच्छा or खेलेगा हो it जाएगा। just हमारे could हाथ be, में कुछ नहीं, हम you बोल know, ही सकते हैं। Hacienda del आप भी बोल Patron, or सकते maybe हो, San आपके Martin. व्यूज आपके And थॉट्स है, either इस पे ways, कुछ ठीक DRS नहीं है, and बट जो अच्छा Stalwarts, खेलेगा you हो know, जाएगा। बात both खत्म। these मीनवाइल big जोन बन teams just चुका है, standing beside each other सिमिलर kind काइंड of ऑफ जोन हम gets जो हमको myself शुरू a little था। warmed एंड up. मुझे You know, you would want बहुत to see तगड़ी them वाइब आ रही है। engage against ये जो each जोन other है, हो pretty सकता है early कि on, but एसटी या we वाटर know that ट्रीटमेंट या doesn't फिर really आईएनसी के happen पास जाए। most आई of the डोंट नो times. Now बाकी talking कहाँ about जाएगा, कहाँ Leo, नहीं जाएगा, Leo बट एक Esports, स्ट्रॉन्ग they वाइब आ रही है। did have a नेक्स्ट really जोन good की बात game कर in the रहा हूँ, last सेक्स जोन one, का जो and हर्षित था। this you know, particular way that they've been playing their rotation pattern is quite similar to Elementrix of the past. I don't know if Elementrix have changed their ways, but I pretty much remember Elementrix always dropping down and then taking control over those hills around Los Leones and trying to guard it with all their might. But SEA Esports, well, I mean, Shadow, they've kind of been invisible, right? We haven't seen much more of, you know, anything out of this particular team, just barring that one game in Sanhok where they were trying to keep the teams coming from boot camp at bay.
Well, SEA Esports, the way they started their journey, week number 1 was also not looking in their favor in the league plays. But by the end of week number 3, they were looking so very strong, especially in the map of Miramar. The way they were able to have those central controls for themselves, having good compound to their name. So SEA Esports, in terms of the firepower, yes, they have improved. Maybe it's just the pressure of the grand finals that all the teams are having on their shoulders, which is not, which is the reason that they are not able to perform up to हाँ our जी हाँ जी हाँ expectations, जी even हाँ the जी plus हाँ of जी 4MV, because the way 4MV बस यार are नासिर भाई getting इतना स्पैम early मत करो elimination, this is not भाई the will same 4MV will you we do saw in the PMWI league watch plays. party It's mostly just the yes pressure of the grand finals, I think. I think it's kind of also the run of form that they're having, right? Initially, the first 2 weeks, they were so predominant, and then teams kind of figured out how to play against them, right? And even now, we do not see 4MV trying to do anything different, right? We haven't seen them taking that मैंने जो defensive 19 approach where अप्रैल they के लिए just kind of play रोका circle to हुआ circle हूँ and 19 hold on. अप्रैल के लिए अच्छा And they've kind of उसके been लिए कोई नहीं ब्रो relying on कोई their नहीं natural chill 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 instinct. chill chill That is, they want to be the apex predators inside the lobby, and they've been trying to do that. They've been getting those early success, right? But certainly it's just too much on their plate to handle, and they kind of tend to succumb, like lose their players pretty early into the game. And if they can manage, even if they can manage to get 8 to 10 finishes every single game before getting taken down, that is still a-okay. I mean, that's still understandable with the new point standings. Really might help them in their endeavors, but does not बांग्लादेश का seem to टीम be the case है एनबी so है far. Agreed. Even for the plus of एनबी Stalwart है Esports, every single time अपनी Stalwart चार्जर्ड Esports, है they didn't care about the placement points. They always बांग्लादेश went for की the ही टीम है aggression, and this time Stalwart Esports, even they are being little cautious. They Mods are are not able to sleeping grab अरे those अरे नासिर भाई अब elimination अगर आप points करोगे तो like आपको टाइम आउट 10, मिलेगा 12, ठीक or है 14 eliminations, which they used to get in the league plays. So दे आर ए even सेकंड वर्ल्ड they बेस्ट are टीम है also ना being कि ब्रो little यस cautious. यस ब्रो On the other side, NB नो डाउट Esports, this डाउट है क्या team, आपको yes, the rotations that are coming from their side are always कोई point इसमें perfect. डाउट नहीं होना चाहिए Even in the map इज of द ग्लोबल चैंपियन I think यहाँ पे Erangel, they पूरे went for a late rotation टूर्नामेंट from होता है the पूरा टूर्नामेंट मतलब complete ग्लोबल की northern सारी टीम eastern बैठे side, but इक्वल still it लेवल is का working in their इक्वल favor. लेवल का फॉर्मेट जहाँ But पे सारी टीम the एक साथ chicken बैटल is the करती aggression that they brought in है जिसके towards the बाद start of week number 1 and end of week number फिर 3, से वो एक साथ that बैटल is करते हैं जो missing. जीतता At है the वो same ग्लोबल time, कहलाता है Mondo, मतलब what just वर्ल्ड happened to ग्लोबल Mondo? मतलब He was समझ the रहे हो one वर्ल्ड who का was सारा always सीन है वर्ल्ड bringing का in बेस्ट those टीम है bringing in those knocks from the opponent, getting those openings. But this time, he's the one taken out pretty early in the game. Every fight that NB Esports engage in, Mondo gets knocked down pretty fast. Yeah, I think maybe it's just too much pressure, especially at such higher stages. And this happens to the best of the players. And he was kind of the one guy that kind of brought in the heat to the roster, right? He kept them in contention, in those fights. So maybe, well, NB needs to rethink their strategy, and Mondo needs to take a little bit of a backseat there. Let the other players just aggress in, and him to try and get a few trades off and get himself in to the right position. PMWI में Because किसकी this बात is कर one रहे of those circles where Bro, the is- zone could क्या रे- literally end anywhere. And it's so difficult to predict, at rank में least ऐसा for नहीं me, हो because सकता, ऐसा possible the other आपको previous सारी team editions देखनी of the PMPLs we had, we sort of had those repetitive circles. But बहुत this कम time, होगा कि it आपको certainly सारी hasn't been the case, right? It's so difficult to kind of get an exact idea of where the circle's going to rotate and what's really going to happen. Because now, even looking at this particular circle, it's kind of really dicey, where it could either go a little south or maybe just stick around the Los Leones, or you never know, could take a last moment hard वाली कमेंट्री लगाओ अरे अरे ब्रो जरूर जरूर लगाएंगे बट अभी के लिए सीन ना लैंग्वेज बैरियर का थोड़ा हो जाएगा और फिर लोगों को समझ नहीं आता फिर बोलते हो चेंज करो बीच में मैं बीच में अभी लगाया था मैंने I think they can really get some valuable crucial results, because Stalwart is a team which kind of has that ability to either kind of just go on to the 5th gear, go all out, go bonkers, go mad, give us those moments. And then they also have those times where they could kind of go on to the 1st or 2nd gear, where they could just play zone to zone and wait for their opponents coming in. And it's kind of been one of those tournaments, right? It's quite usual that Stalwart, no matter what, they get a chicken dinner in the day. But guys, आज रसल को लेना चाहिए टीम पे. way too What do you think? रसल को ड्रॉप नहीं कर सकते, बट रसल चला ही नहीं इससे पहले. has to meet his early demise.
That is what happens if you stay out in the open in a map like Miramar with no cover at all. He had no idea the players of T2K were holding on to their compound. But now T2K, they have to be a bit cautious because maybe the players of SEA Esports might come in for a revenge. From the looks of it, right now SEA Esports are not looking for any sort of aggression. One early defeat point for the players of T2K Esports, but the problem is I think the players of T2K, they are thinking way too much. They're being so very cautious. Earlier T2K, they used to engage in so many fights, always going for the elimination point, but this time, yes, rotations are coming in point perfect like it used to come in the league plays, but this time they are being very cautious, not engaging in too many fights, which is kind of not working in their favor because A, they're not able to get the placement points, B, they're also not able to get those high fragging games also. Yeah, I mean, Steel have been pretty dull, right? And I think one game is all you need to get your morals boosted up. And there you go. There comes the shift. And this is going to completely favor the players of Leo. And Sour, तो भाई जोन कट गया क्या बात है बिल्कुल अपोजिट जोन लियो के पास लियो का एग्जीक्यूशन आना चाहिए भाई either with NB or maybe with DRS. Look at how the teams are just migrating inside the circle, just swarming in, making no delays there. Even High Voltage and Leo could knock ons against each other. A lot of fights about to ensue. Maybe even IHC and even Kunyor TRZ could go head-to-head against each other. Sitim and I8 also just beside each other. And look at Steel Shot. Right in the open. Still hiding. Will get that quick reload. But now he needs to escape from danger. Godless. He's been dealt with. But Seol has ensured that he has got that smoke so that he could at least try and get his teammate back alive. It's very important because Godless is definitely one of the standout player from the side of IHC. I think it's going to be an easy revival because Steel Shot was all by himself. After knocking down Godless with that buggy, he's already scuttling back to the safety. So IHC, they are safer now. But T2K, well, they have an enemy in the adjacent compound that is going to be the players of DRS. And Seog is definitely having an off angle. At the same time, Seog has to make sure that he don't expose himself, because if a knock comes in, it's not going to be an easy revival for him at all. And the numbers of T2K won't favor their case. This time DRS, they are very aggressive. At the same time, on the uphill, we have the players of Dead Eyes also. So there is a possibility of a third party happening. And if that happens, Jane on the rooftop is not looking safe. He kind of needs to watch out for his back, right? Watch your six is what they say in the army. But now, you know, DRS, I'm pretty sure they're aware of T2K's stronghold, right? Especially in circles like this, T2K kind of tend to do that. And like you said, Jane is quite exposed. And if he's not careful, then he might have to take a hit over there. But Rules, look at him, so eager to get that first knock. And it feels like, you know, just the moment they get that first player down, they're just going to pounce upon T2K and put them to their misery. But DRS, they've got to play it a little bit safe, you know, still at the top. They've got to kind of keep Starward from getting a lot of finishes to their names, get a lot of you know, those points into their pockets. But Illuminate and Sitim. Finally, the battle erupts and Nova has managed to get a trade off over there. Viper was really low there after getting knocked off, has been finished. So both these teams taking a few losses here and there, but I8 really have to reconsider the strategy as now दे दिया भाई टाइम आउट दे दिया चलो Starward, they're gonna be like, thank you sir for this beautiful zone. Oh, this is definitely their circle. At the same time, Aptex Esports can also look for a potential dominant control from the northern front because they are placed perfectly. At the same time, Scarlet's Gaming, they might breach into the compound of Stalwart Esports. I won't say that would be a wise decision, but they can keep themselves away. But all the commotion in the kiosk is going to happen on the southern side. From there, so many rotations are going to come in. We have the players of High Voltage. We have Leo Esports going for a split, 2v2 split that might not work in their favor. But right now, High Voltage and Seal Esports, they're locking horns with each other. And Sitim QB on the other side of the map finds a beautiful knock onto I8 Nova. Sanchar keeping the backlines checked.
providing the necessary cover from the backlines. At the same time, Probeen with a grenade is looking for some opening, but what's waiting on the other side is a shotgun in the hands of Becca. Shotgun and the demon of death over here. PL कब से है? PL bro 19 से. Oh nice. This is his first shot. Will have to take the fall over there as an assassin. He's not gonna show any mercy, but he's burning. Eventually, just could fall down, and indeed he does. Could not patch himself in the right nick of time, and Soulless is gonna enjoy himself at least some time over there to breathe, recuperate, and get themselves back into the fight as Jiggle has a little bit of an idea of what's really going on. Soulless, the solo member of his team. Does he retreat? Does he make a run for his life? Or does he try and save Sanchit? Indeed, those smokes kind of give it away that he does not want to be a part of this as Assassin. Wanted to get revived, gets picked off from elsewhere. And Soulless kind of closing in on the distance onto it. Sanchit, he definitely wants to take a fight in this one. Screw or IC? Oh, he has to take this fight. Both But Revival is are. of utmost priority right now because it's a 2v2 battle मैं now. तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता. Praveen and Jiggle, they're buying some time, being a little cautious, not making any unnecessary push. At the same time, we have the players of Leo Esports. Still high voltage, but Sanchit with a grenade. At the same time, Probeen is also ready with a grenade. But the question is, who is going to find the first knock? Who is going to find the first opening? And looks like Soulless has been taken down, leaving Sanchit all by himself. Now for Sanchit, it's a 1v2 situation, which can bring down to 1v1 if he lobs that grenade to the perfection. But looks like he's not going to have the perfect projectile right now. Last player standing. The UMP45 in a 1v2 situation. This is the moment when the players of high voltage can rush in towards SEA Esports, but they are giving time to Sanchit to go for the revival onto Soulless over there. This is the time for the aggression, high voltage. Yeah, I think they just don't want to take any chances there. Because already losing out on two of the players, this is something that wasn't really anticipated, especially when you're going up against a team like Team Seal, who haven't really been faring well. I mean, even for high voltage, they've also been chartering the rough waters, right? And this is all the pressure that's come down to really low on confidence over here. And it's all about who makes the first mistake now. Because it's kind of gotten down to a standstill. Both these teams just facing each other, just holding the angles right. And it's all about creating the crossfires, which both of them have done. And showing no intent whatsoever that either of them needs to push. And at a point, you're kind of out of resources. You kind of those out of those utils that you can use over there. But Sanchit seems to have one. Want to lob over. Does it make its mark? Does not. And now Jiggle, he's going to throw one off. Like, you know, you've given us one. We're going to gift it back to you. But Sanchit takes this long route. You know, just goes back. Decides that compound is not free from danger. But he's also getting shot from the left side. I think if I'm not wrong, maybe the place of Leo, but Jiggle just barely managed to survive. And this could have been absolutely disastrous, to be honest. Oh, it would have been, but somehow he survived it. Now he's just left with a single grenade to his name. And both these teams, they are not in a hurry to go up against each other, like you said. But rules by की भी mini चल रही है भाई. Notice करना का भी rules by भी mini से बहुत प्यारे knock निकालते हैं. Are not favoring the case of Bro, I am in Esports Conqueror as lobby. they have been brought down to a single player, and that is going to be dessert. And looks like he's also in the crosshairs. He has taken a hefty damage from the side of Degree, I believe, of TRZ. And not dessert, he has nowhere to go. On the other side, we have Stalwart Esports also locking horns with the players of Raw Officials. Raw Officials, they are not having the best of the time right now. One player already down, 2 games didn't go in their favor. And one of the standout player, Yeta Uta, has been already eliminated. Now, Raw Officials, they are surviving with only 3 players. And the way they are holding onto that little dip, they need to be very cautious of the grenades that might come in from the side of Stalwarts. Oh. Let's see what's going to happen at this point as, Mondo finally strikes terror. Claw gets knocked down, or in fact it is the players of Stalwart Tops doing the job. And another one falls. But yeah, it is in fact Mondo who did manage to get the knock. And now Mondo is just going to secure
what he started. His finishes over there as Space Boy decides to close in, but it was stopped from afar. So finds him in the receiving end and gets the job done as Zodi trying to fight. And this is where Stalwart really need to strike. Top, he has spotted out Sek, but decides against it as again Stalwart have lost out on action. Now this is something that they really need to address. They need to keep action alive. They need to have him in safe territories, because every single time we're seeing, you know, action right from the beginning, you know, he gets taken down. Especially just barring that heroic, you know, play that he made in Sandhawk, action has been pretty much off. And this is not the action that we are acquainted to watching. As now, just when we are done with another fight, there is one more for us. It is against Leo Esports for Miracle Vibes. Trying to make the push happen. हाइट दे दिया क्या या फिर इग्नोर cooking हो up रहा that हूं grenade and will नहीं भाई finally हाइट lob it क्यों देंगे over. आपको Has it made the distance? That's the big question. फाइट पे एंजॉय लो फाइट का आनंद उठाओ No, for now, no opening. It's a fight of the grenades. Whoever gets the first opening, they are going to make the rush, make the push. With Leo Esports not having the numbers in their favor, on the other side, 4MB, Doc, with the DEBS in his hands, is already charging in through the cover of the smokes, and Haidami could be the first one to be taken out, or maybe Doc needs to be a bit cautious, but right now he's resorting to those grenades. Perfect grenade. This guy, Doc, never fails to impress me with his grenade shots, and DBS finally coming into the action, and Leo Esports, they have been eliminated at the 14th spot with 2 elimination of their own, but 4MB Doc, how does this guy lobs those grenades every time to the perfection? I mean, that's just Doc, right? The mercenary. The messenger of death and destruction. And the wrath of DBS continues, annoying the players. And we know, sooner or later the nerf is coming. But Apex, having spotted out Sanchir from afar, from up top, tries to just burst down the lead, but eventually did not connect. But Akaza way out in the open, and will fall down to his demise there, getting picked off. And Doc realizes he needs to reload at Akaza. At this point, he's just accepted his fate. He's like, just get down with me. As Stalwart, a little bit of a pickle over there, as Sek deciding to engage against them, but it is eventually Tops who kind of says, thank you for Medical Vibes, for helping me out in what I was trying to do. So the threat under their necks has been dealt with. अपना PMPL हम कौन सा मैच देख सकते यार एक ऐसा जोन बना था अभी कुछ दिन पहले They have been eliminated at the same time. Stalwart Esports, like you pointed out, it was a blessing in disguise, but Sanchez important मैच है काफी वाइब्स के लिए क्योंकि आपको पता है इससे पहले वाले मैचेस इतने अच्छे गए नहीं है सो ये मैच में अब है एडवांटेज तो उठाओ फायदा एंड जहां से मिल सकते फिनिशेस उसको बटोरने का ट्राई trying to भाई ये कुछ कर ले नहीं करेगी ब्रो टेंशन क्यों ले रहे हो बाय द वे 4 टीमें एलिमिनेट स्टिल SITM single man HP double then IHC without dealing with CO 4-man T2 के DRS map well they are looking good to defeat points, but they need to be cautious of the grenades that are coming in, and with the Molotov he's looking for some opening onto Mamba, but perfect projectile is still missing. At the same time, Mamba is going to retaliate with a grenade of his own. Jane down to a sliver of HP, and Siyog down to 20 HP. That could have been a perfect grenade. DRS. It certainly could have been, but DRS. Well, brownie points to try. क्या एक और अच्छा मैच DRS का आने वाला है क्या guys? इस मैच के बाद क्या DRS once again #1 पे रहने वाली है? Their chances, but have been exposed multiple times to be, getting taken down. As Skylands Gaming take their chances against Stalwart, as I see he's been dealt with. And High Voltage, sadly, they could not escape the wrath of Miracle Vibes. I mean, considering Miracle Vibes did have that high ground advantage, just took it in their favor. And Miracle Vibes, they're starting to take over this map. They've accrued quite a lot of finishes to their name. To be precise, as now the push comes in by AJ, just going in, marching with that arm, and 2 of the players trying to hold on for as long as possible. Had to go for reload as AJ just ships his weapons and manages to get both the players down. As Stalwart again seem to have fallen down, as there is no trade potential coming in, and the last player has just got to escape from the situation. Nirse barely surviving with an inch of an HP, will eventually fall down to his knees as Delta gets the job done, and Stalwart Esports
get eliminated at the 11th position, and Skylights Gaming, things are not looking merry for them, as well as Mabitex decide to completely just smash them down, and they get those few frags to their names. Well, Maptex and Skylers, they both drop in towards the northern side, and Maptex are so very aware of the rotations that come from the side of Skylers Gaming. This time they were prepared, and Skylers left with only one player, that is AJ. And Leo, along with his teammate, is already marching towards him, at the same time keeping a close eye onto the backlines from where DRS can also chime in. And AJ, his days are numbered. Either it's going to be 4MV or maybe the plus of Maptex Esports that will rush towards him. टॉप का नेट गया था क्या भाई पता नहीं वो टॉप ही बताएगा. Let's see for how long can he survive. At the same time, the team on the southern end is going to be the plus of G2K. Yes, they do have the numbers, 3 players still alive. They have the complete southern control, southern eastern control under their hands, but it looks like Mama मान नहीं रहे भाई वाइब्स नहीं मान रही. 9th एलिमिनेशन उठा दिया भाई. 9 एलिमिनेशन डॉग भाई मान नहीं रहे. 7 एलिमिनेशन भाई नॉक पड़ा है एक और आ जाएगा शायद से. At the same time, यस आ गया. knock onto Mad Cat and TRZ. They were coming under heavy न्यू fire. TRZ भी एलिमिनेट हुई. Brought up, they have been eliminated at the 10th spot with very few 9 एलिमिनेशन टीम ने निकाल दिया भाई. Torture by for Miracle Vibes, and especially for Kunio TRZ. I kind of felt that was coming, right? Especially how open they were, how erratic they were in those fights. As DRS, they have prime control over the circle right now, have the best compounds, but for Miracle Vibes, they're just fighting their way through. And Jiggle, well, he was present over there, but it was Killer from DRS that manages to take one of the players of Miracle Vibes, where Apex has no other choice but needs to make a run to safety, to safe covers, trying to do so. Has to lob that smoke, but with all those leads being poured at his direction, how long can this player survive as Baron from Mabitex gets dealt with? Now Doc, just being that final player surviving for his team, he's doing whatever he can, whatever is possible at this moment to try and get as many finishes as possible, because trying to get those position points looks quite far-fetched, but considering the fact that for Miracle Vibes have already secured 10 finishes, this is really going to help them in their aspirations to try and make it to the top. But look at the position of DRS this time again. Exactly. Kudos to the IGL, that rotations that are coming in this time, they do have a prime spot, prime compound to go for the chicken dinner for themselves. 6 defeat points already in their favor. The way DRS they are playing in the grand finals is so fantastic and so very impressive. Different strategies are coming in right now. Killer is trying to find a knock onto the last player from the side of Maptex Esports, that is going to be Vivali. Maptex Esports, again, the problem is they are not able to keep up with numbers. Now they are left with only a single player. Had they had all the 4 players alive, they could have tried to breach into the compound of GRS. But Rules, with the mini tap-tap shots, finds a perfect knock onto Turulav, sir. Oh, it's kind of come down to the fact that how many frags can DRS get from over here? I mean, sublime control over the zone, and this is exactly how you need to play. There has to be that perfect balance between getting frags and getting those position points, and DRS seems to have a mastery over that. As Sitim also bite the dust as Sandesh sends a message that Dead Eyes did not really like, and just by the looks of it, high voltage, they've also bowed out from the game. Now T2K, they still have all 4 of their players surviving, but in a really dicey spot, because it's a 2-2 split and they're quite out in the open. And now they're just under the mercy of the smoke, saving them for a while. But if the circle kind of favors them, and if DRS have to make a move towards that eastern side, then maybe we could say this could be T2K's game. But for now, still favoring DRS heavily. With for Miracle Vibes, Doc still surviving, so you kind of have hopes on him that he can do something magical, do something out of ordinary. As now, finally, Delta manages to spot him out, but look at the amount of HP he survives on just by the whiskers. He manages to get into safety. But there you go. Doc 922, valiant effort, finally falls down, gets a few position points, but those 11 defeats are really going to help for Miracle Vibes rack up a few points on the board.
And now we are down to only 4 teams, make it 3 because Rules finds a perfect confirmation onto the last player of IHC, that was Demo. We have left with only 3 teams where DRS, they do have a complete control of the northern front, they have a good compound, they have the numbers, everything is working in their favor. On the southern end, we have the players of T2K, but they don't have too much real estate or breathing space to work around with. Then we have the players of Deadeyes. Deadeyes, I believe this is the first good game that is going in their favor. Otherwise, Deadeyes, they were not having the best of the time. But now, left with only 2 players. Let's see how much they can make out of the situation. Even the remaining 2 players, they don't have the best of the position right now. On top, sir, along with Turulov, sir, they have to deal with the players of T2K. At the same time, T2K, yes, they are busy engaging in fight with the players of DRS. They're checking the compound. They're trying to breach into the compound. They have to watch their 6 because from the back lines, Deadeye guys can chime in any moment. And looks like On top, sir, certainly do so as he takes Guys, okay, once again, And top 3 team last time Leo थी, but इस time एक ही team का change हुआ है. Considering they've got that numbers DRS, advantage T2K now and it's so DE. much Last easier time थी for DRS, to be T2K honest. and Leo. They're And kind of तीनों की well तीनों aware of नेपाल where the region की two team teams थी. are इस बार भी located and top they 3 can team अगर make the देखते हो next नेपाल moves region की team है. accordingly. तो And just धीरे like धीरे that, नेपाल Deadeyes region की guys, team they also bite dominate the करती dust हुई. now. A battle But the thing ensuing is, DRS between and two of T2K the once biggest again Nepali top teams 3 over पे आ here. चुकी It है. is And T2K जितना आप and consistent खेलने DRS, वाले हो ladies lobby and के अंदर gentlemen, उतने a अच्छे आप point perfect लेके जाने वाले हो. 4v4 DRS fight versus that we T2K really on your wanted to screen. see. Just that road separating Eighth between these सर्कल two यहाँ teams पर and होने you वाला could है see that क्लोज split coming इन. in, right? तो गाइस A क्या लग 2-2 रहा है split कौन for सी टीम T2K, चिकन लेके जाएगी? whereas you've got DRS और DRS well T2K. spread out. T2K And के one लिए of the ग्रीन players, हर्ट्स, you know, I DRS think के लिए still ब्लू at the हर्ट्स on the top chat. of the Let's building, go. trying to spot any sort of unwanted rotations that could, you know, cause them trouble. And now it's all about who makes that first mistake, who reveals himself, and then Hellhath breaks loose. Certainly, it's the grenades that can bring some opening for the players of T2K. Yes, the smokes are thrown to deny vision to the players of DRS. At the same time, have a little bit of the soft cover for yourself. But T2K, they don't have the majority, the real estate, and Rules already creating a flank angle onto the players of T2K, which T2K has no idea. Gyante and Delta are keeping the players of T2K busy, and Reg shows a bit भाई of 9 himself. elimination First DRS. भाई glimpse, DRS first बोल रही bullet है comes हैशटैग 1 ahead तो of हमको ही Rules, आना भाई. takes a bit of कंपटीशन HP तो है भाई. out of Reg, but T2K nothing बोले enough नहीं to take him हैशटैग down. 1 But हम आएंगे. Yog with that UMP45 is going Try to hard भाई. retaliate Full try as hard. he takes Full down try Rules. hard Gets the competition. confirmation. Full hard Now, वाला competition. DRS, Hard they वाली are down to lobby. only 3 PMPL players. South The Asia. numbers advantage has been taken away from them. Yeah, and seems like they did not have a lot of smokes also to walk with, especially Gante has just got that one first hit. And that little mistake, and now Suyog certainly being the star of his team. Now this is the time where T2K go in for the blow. Crucial knock है. Is now it's come down Finish भी to आया. Gante and Killer to try and save DRS from not getting that second spot. In fact, getting that chicken dinner. So difficult, easier said than done. And now T2K, Suyog just decides to march in. If they win this fight, then Suyog has to be the MVP. Certainly though, as Killer, look at his HP depleting over there. Forced to the mercy of the play zone as Gante decided to not give away. T2K GG, good game. बहुत बढ़िया. एंड इसके बाद जो आपके एंटी कर दो गाइस DRS के लिए मैच में काफी अच्छा DRS ने यहाँ पे निकाला है. एंड मैंने लास्ट टाइम देखा था वाइव्स के फिनिशेस काफी बढ़िया इस गेम पे आए हैं. सो गाइस जितने भी सारी टीम की रही थी सारी टीम्स के लिए एंटी कर दो ऑन द चैट. एंड सेकंडली इफ यू आर न्यू टू द स्ट्रीम मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. अभी हमारे 2 मैचेस और बचे हुए हैं. थैंक यू सो मच, लव यू टू एनके भाई. एंड गाइस एक बार जीजी कर दो T2K के लिए. एंड #2 पे ओवरऑल पे आ चुके हैं T2K. #1 पे DRS. #2 पे आ चुकी है आपकी T2K. #3 पे कौन है? कौन है #3 पे? कौन है #4 पे? गाइस हर एक मैच के बाद यहाँ पे रैंकिंग चेंज हो रही है. अगला मैच अगर T2 ने कंसिस्टेंट निकाल दिया तो वो #1 भी आ सकती है. एंड अगर आप देख सकते हो कंपटीशन लेवल जो है अभी बढ़ता हुआ धीरे धीरे अपनी पेटियां मतलब बांध के रखिएगा. इस आने वाला जो भी टाइम होने वाला है बाकी के 2 मैचेस और ज्यादा एक्साइटमेंट आप सभी लोगों की बढ़ने वाली है ड्यू टू द कंपटीशन वी आर वाचिंग. लाइक अब नेपाल रीजन की टीम ने भी बकल अप करना स्टार्ट कर दिया. लाइक ट्रा हार्ड वाला सीन जिसको बोलते हैं आप, टॉप रैंकिंग पे आ चुकी है. तो अब जैसे जैसे आप अच्छा मैच खेलोगे उतना आगे आप जाते रहोगे. सिंपल सा फंडा.
दिलहारा मैं ओ दिलहारा ला 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 ला। वेलकम टू पीएमए नेपाली इन फाइनल। अरे अरे अनूप भाई ऐसा है क्या भाई? मेरा भाई किलर वाइटी है, उनका पूरा नाम भंडारी। पता है इंडियन भाई, आपने बताया था कुछ कजन है, कुछ ऐसा कुछ बताया था आपने, मुझे याद आ रहा है। DRS 114, T2K 100, STE 100, 4MV 99। क्या कंपटीशन हो रहा है साउथ एशिया का भाई ये? व्हाट द हेल भाई, क्या कंपटीशन है ये साउथ एशिया का भाई साहब। आज तो वीडियो बंद गाइस, आज आफ्टर द स्ट्रीम एक वीडियो आने वाली है फॉर दिस कंपटीशन गाइस। जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल एंड वीडियो का वेट कर लेना, नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना प्लीज, हमारे टेलीग्राम स्पैम कर दो गाइस अगर आपके पास लिंक है मॉडरेटर्स। वीडियो आने वाली है गाइस आज डे 1 के रिगार्डिंग, तो भाई पक्का अब भी वीडियो आ रही है, बस कमेंट कर देना आप सारे लोग। मेरा भाई है किलर वाइट। यस भाई, सुन लिया इंडियन भाई, सुन लिया। लेट मी वेंच सम डमलिंग्स। प्लेइंग मंगोलिया फाइनल गोस टू नेपाल। फुल पीएल वाइब्स। ओ भाई 9 एलिमिनेशन डॉग भाई ने निकाले हैं, वाइब्स ने भी पॉइंट गिरे हैं, बट भाई ओवरऑल रैंकिंग तो और ज्यादा टफ बन गई भाई। हमारे भाई ने अभी एक ओवरऑल रैंकिंग के पॉइंट दिए, देख के फट गई भाई। 114 DRS, 100 T2K, 100 ST, 99 वाइब्स। मतलब आखिरी के 2 मैचेस देखने में और ज्यादा मजा आने वाला है। ओके ब्रो, ये ब्रा। भाई देख लो, मजा आने वाला अगले मैचेस में बहुत ज्यादा। ओवरऑल रैंकिंग कैसे बन रही है समझ नहीं आ रहा। बोनस पॉइंट्स प्लस जो आप अभी पॉइंट ले रहे हो वो ऐड ऑन हो रहे हैं हर एक रीजन पे भाई। बोनस पॉइंट सिस्टम चेंज हुआ है। हाँ, चिकन डिनर को 10 पॉइंट आते हैं, बट ये तो सबको ही पता है। फिर 18 पॉइंट लेके गई है T2K, 15 पॉइंट लेके गई है DRS, वाइब्स लेके गई 14 पॉइंट। प्लेसमेंट पॉइंट नहीं थे बट उन्होंने एलिमिनेशन ही 11 इतना उठा लिया। ये है गेम प्ले, वाइब्स का रियल गेम प्ले यही है। आखिरी के 2 मैचेस मत मिस करना गाइस। रॉ को पॉइंट निकालने पड़ेंगे अगर ऊपर आना है आज के दिन से ही भाई। फाइनल सर्कल पेम्पल नेपाल। अरे 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 आगू सर, चलो भाई बी रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। DRS 114 हम बता चुके हैं ऑलरेडी। T2K 100, स्टॉलवर्ड भी 100 है। 4 मिरेकल वाइव्स 99, ऑल 100 ले लो, एक पॉइंट से दूर है भाई। कंपटीशन देख रहे हो, जस्ट मैच नंबर 4। अभी आपके अगर हम देखते हैं अभी मैचेस बचे हुए आपके 14 मैचेस और बचे हुए टोटल। 4 मैचेस के बाद ये हाल है, तो 14 मैचेस के बाद क्या हाल होगा गाइस? समझ रहे हो कंपटीशन लेवल? अगर स्ट्रीम के अंदर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक के कर देना गाइस। बाकी देखो आगे क्या होता है। बाकी SITM, स्काईलाइट्स, लियो, हाई वोल्टेज, कुन्यो, सील, टैडाई गाइस एंड रॉ पॉइंट और निकालने पड़ेंगे अगर आपको फर्स्ट चार्ट पे आना है। अब जैसे जैसे ऊपर वाली टीम्स कंसिस्टेंट खेलते जा रही है तो नीचे वाली टीम का भी सीन है कि आपको भी कुछ ना कुछ पॉइंट लेके जाने हैं जो आपको बेनिफिट हो। नेक्स्ट 2 मैचेस आर गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग वन गाइस, मत मिस करना। नेक्स्ट 2 मैचेस बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। एंड यस यस दिलहारा ना 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 मारकंडे।
ओ मेहरबान। क्या जी? लो भाई, शैनॉक गाइस आपका नेक्स्ट अनप्रिडिक्टेबल मैच जो कि आपका स्टार्ट होने वाला है थोड़ी सी ही देर में। जस्ट वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच। क्या बात कर रहे हो? कौन? कैसे? ब्रो प्लेजर एचवी इज अ डिफाइंड चैंपियन। भाई एक बार किलर वाइटी का मॉन्टेज देखो ब्रो, अभी स्ट्रीम चल रही है, स्ट्रीम पे कैसे और दिन स्ट्रीम करेंगे तो करेंगे। विनर डीआरएस। ओके बाय। कहाँ गए सारे देने वाले वाइस के सपोर्ट जो डीआरएस वाले अरे 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 पापा भाई कोई दिक्कत नहीं ब्रो, चिल चिल चिल, टेंशन ना लो भाई। प्रिडिक्शन गाइस आ जाओ, प्रिडिक्शन करना आप भी स्टार्ट करो। अकरम भाई आ गया भाई, 18 अकरम। टीआरएस ने वाली टीम डोमिनेशन, यस टीआरएस आदित्य गुलाम भाई आज नेपाल का फेस्टिवल भी है। यस यस आई नो ब्रो, and all of you guys वेरी हैप्पी 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 न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। बहुत सारा प्यार सभी को। चलो भाई, लो जी, मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल मैच ऑन योर स्क्रीन। वॉइस हम उठा देते हैं, आ जाइए। ऐसे चैंपियनशिप प्लान का कोई सीन है? ऐसे चैंपियनशिप If प्लान it का ब्रो goes पता towards the नहीं, अगर southern कुछ होगा side, आपको maybe बता the देंगे, players of जब भी होगा सबसे DRS पहले are बता going to देंगे। be pretty ठीक happy है, because they ऐसे like रीजन to पे drop in टेंशन ना। towards the side of cave and the docks. For कौन AV सा again going फेस्टिवल for ब्रो? their हैप्पी न्यू ईयर, original हैप्पी drop न्यू ईयर, spot, हैप्पी न्यू that is ईयर। going to be Painan. But the main thing is towards the side of Campbell. For we have the plus of Sitim Esports and High Voltage. Last send off, they both didn't go against each other, but this time looks like High Voltage and Sitim, they both are looking for a drop collision and an early fight. So let's see who is going to win this one, because last time Sitim Esports, they annihilated the players of High Voltage, and looks like High Voltage, they are in no mood to pick this fight, as Malik is trying to make a quick escape and scuttle back to the safety. As one of player from the High Voltage, I can see down to a 40 or 50 HP something. All right. So last time I think it was a different affair where High Voltage had control over the shrine and Sitim had to sit down in the foothills, right? And this time it's a different case. So Found Sitim is Vishal taking control Sharma, over the leave it, shrine, and whole now world knows about the High Voltage are the ones who are the runners over here. They're running for their life. They're running for safety. They're running to find guns or any sort of weapon. हैप्पी न्यू that ईयर, they can हैप्पी न्यू ईयर get. भाई, But दिल से बहुत you सारा know, प्यार a आपको भी। fight on the higher altitude is never really suggested. But Sitim are kind of ambitious because, to be honest, these are those precious moments where you start looting because they also have to get inside the zone. But seems like they're in a mood for some hunting. And I kind of do not really like what they're doing over here. But well, नहीं to each होता, their वैसे own. पोकेमोन होता। Let's see if they can get something out of this, because
to be honest, Shadow, what happens? What happens if you get a knock? You're certainly not going to be able to finish the other person. And now they've decided to retreat. So they have successfully wasted 2 minutes of their life, which they could have rather utilized in getting some loot done. And high voltage, they'd be pretty happy with their choices. Oh, they are looting the compounds of this Camp Alpha island over there. But yes, Satem Esports, they also need to prioritize the resources, because QB, all he had was a level 2 vest, Happy no New Year helmet at 2018, all. One Nepal. bullet could have been enough to take him down. So rather than focusing at this point on depleting the resources of the enemy, Satem Esports, they need to focus on the rotations, the resources, because the circle this time is not in their favor. It's completely towards the eastern side, and they either have to go for a late rotation. In that case, they need the healings, they need the first aid, and if they're going for a very early rotation, well, they need the best weapon in their hands, because other teams like Stalwart Esports or IHC might try and stop them in their tracks. Now, for Miracle Vibes, getting back to this team, Doc did what was needed, right? Get them back, get their heads back into one piece. Now, this is where they need to kind of work like a well-oiled unit, right? They need to make sure their decisions do not go astray. But a little bit of a fight breaking down yet again. T2K. And T2K just had secured a chicken. And suddenly, they are one man down. And they've managed to get a trade, though. And this is something customary, right? We've seen T2K and NB just get into a battle every single time. And both these teams kind of face losses. So I do not know why they do it. Russell bhai मान नहीं रहे, मतलब Russell bhai बिल्कुल नहीं मान रहे भाई. Establish over here, but we kind of seeing a pattern, especially with the zones that are forming. Quite an eastern side. ST कहाँ jump कर रही है? Intention is being shown. ST कहाँ jump? The way the zone's been panning out, and Illuminate would just embrace it with open arms, right? Because again, this is one of those games quite repetitive. Quite a similar sort of a circle, and if I just play their cards right, they could get a second chicken dinner of the day. Or maybe the plus of Skylar's Gaming as well, because Skylars are already heading towards the side of Camp Bravo. They're already looking for a control toward the eastern side. It's just that Skylar's Gaming need to spread their wings, but looks like Esports made a perfect knock on the dog over there. Apex also down to a bit of HP, but Sandesh in a close frontal battle with the plus of I8. Wolfies takes him down, instant confirmation coming in, and what just happened? In a matter of few early seconds, elimination T2K, they have been नहीं होना eliminated चाहिए. as a 16th spot. They get a chicken dinner, and the next game they are अब the first ऊपर one to Vibes be के taken पास out और pretty early. ST के This पास is not the consistency अब we DRS के want पास मौका from है the side एक of गैप T2K, बढ़ाने का. but right now एक Apex, he's in a हल्का सा डाउन promising मैच एंड situation काफी as सारी two चीजें players ऊपर of नीचे SEA हो सकती Esports हैं. have from a Nepal, height thank you so much. advantage, Hellboy, and bye. Drop Thank is you so much. already Thank you so closing in the much. distance. Oh, already spotting out Apex over there, but the grenade lands right on his face, and he has to fall down. And for Miracle Vibes, yes, they are in the mood right थोड़ा सा now. late They're कर दिया. in the mood to destroy every single obstacle in their path, as Seal Esports seem to be their next target. As they kind of go on with the climb over the hills right now. Of course, Soulless, he wants that revive pretty early on, but Apex, he needs to find out where exactly Soulless just managed to get revived, and suddenly they're aware DBS है, ध्यान से, Seal ध्यान से, DBS है. Still takes those shots with his DBS, misses, but not for long, as another one falls down. It is going to be Becca, and now Sanchir, he's got a huge Dog भाई भी responsibility on like his shoulders. PMSL How बना long देंगे, can he सोचिए just ना bob होगी and Seal weave early and elimination. dodge those Back to bullets? back And guys the fights, answer is and not Seal so and long, T2K is as for eliminated Miracle on the earliest Vibes stage of starting to the groove match. to their vibes as By the they way, it's the get second last an match guys. easy काफी ज़्यादा seal chaos है. Hashtag top की to their ranking belt. में, hashtag 1 की ranking के लिए. And Match I काफी know important है. who DRS का doesn't like consistent निकालना DBS along for with me. That is the plus M of SEA Vibes. Esports. They just said For hello to Miracle the Vibes के लिए shotgun, points the निकालना है, DBS, and ST and के लिए goodbye points to the निकालना है, game. क्योंकि But talking hashtag about 1 the के लिए plus of काफी NB अच्छा Esports, they competition. do have a good compound to their D name, को but they दिक्कत don't हो have the सकती है. numbers. IHC, HV से yes, HV को they are दिक्कत हो looking सकती है. D से promising. They have the अंटक entire सर ने northern ऑलरेडी control आगे का in their कंट्रोल ले favor, रखा है. वंस and अगेन अगर major आप जोन rotations देखते हो are तो coming फिर के from the अंदर southern हो side, because जाएगा. that is where all the teams are trying to migrate जोन from. शिफ्ट नेक्स्ट At the देखना mercy of the इंटरेस्टिंग blue, we रहेगा. have कहाँ जाता है? Raw, क्या ये TRS, पैराडाइज की तरफ हमको एक TRZ. हार्ड They शिफ्ट might देखने को lock मिल horns सकता है? with each पैराडाइज other. कैटमॉक And मोमनी if की तरफ that को, happens, well, या for नहीं MV, they अभी are लगेगा placed पता, perfectly या to फिर ये do a शिफ्ट third जाएगा party and हमारा rank up हल्का those सा वाटर elimination शूज की points, तरफ. which they have been doing so. ऑडियंस आपको क्या लग रहा है? आप But भी एक look बार at नीचे चैट Harden करके in कमेंट the करके blue. जरूर We बताना. have Dead Eyes and High Voltage.
I mean, at this point, you know, this is not the fight that either of these teams would want to take, because especially Deadeyes, you would kind of feel sorry for them, especially with what happened to them last time around. I mean, Sitim was just sitting, waiting to just fish the players out of water and did not even let them breathe over there. But now, since the fight has broken down, I think Deadeyes aren't going to be happy either, because I can see one of their players again being knocked out. But the big question is, both these teams, High Voltage and Deadeyes, they need to figure out a way to get inside the zone. I mean, on top, sir, he's successfully managed to do so. But could fall prey to IHC, because they're right over there, present. And IHC also has been one of those teams that have kind of fizzled out, really haven't made their presence felt. And the same can be said for Demo and Godless. I mean, a few moments of glory. But apart from that, you know, one thing, they haven't been consistent enough. But look at for Miracle Vibes. Ever since that Miramar momentum, they're kind of cruising through, just, you know, barging, guys, यही गेम प्ले है वाइब्स का. door, अगर आपको नहीं पता है, वाइब्स sure इस they collect तरीके से every bit खेलती of है early utility stage. that they can, and position have a good मिलती है position बढ़िया, inside the नहीं तो फिर circle. like And edges से from here onwards, भागते हुए they चलो, would जो be रैंक kind है of बढ़िया. quite positive. ओवरऑल इनका try फिनिश and go मैनेज on कर to देता win है this थिंग्स. game. लाइक लास्ट मैच आपने नोटिस करा होगा, 11 They फिनिशेस, can certainly do so. पोजीशन They're 3 ही already पॉइंट having a लेके गई थी, very बट good head ओवरऑल start, डिसेंट 4 नंबर डबल defeat डिजिट points. उठा लिए थे. They're having तो the southern control, like but the problem 4 is, मिरेकल वाइब्स का यही सीन look है. at how busy the southern अभी देखते हैं area आगे is. लियो We have the लियो players of 4MV, Leo मैच काफी Esports, इंपॉर्टेंट DRS, रहेगा also लियो के Raw लिए भी. officials also ये मैच से joining the fray. निकालना. So it's not going to be so easy. Yes, 4MV, they can rank up those elimination points, but if they manage to survive as a 4-man army and keep the southern control to themselves, maybe they can get the winner chicken dinner for themselves. But the question is, I have been always asking this, do the Everything's players of temporary by 4MV chicken need dinner. the chicken dinner? Because the way इनके they बाद accumulate those elimination points, I don't think they need a chicken dinner specifically to be in the to be on the top in the leaderboard. I think this there is consistent team not in Nepal but throughout the world. Yes, Sogat bhai, ये इसमें कोई शक नहीं है या फिर दो राय नहीं है that कि ऐसा is है. something that we've really touched upon, Shadow, didn't we? You know, if they can replicate what they did in the last game, they've got to do it again and again. And considering they've got to do it again and again. And considering the new point standings, you know, this style of play has really been. But at the same time, you know, why wouldn't you like to get a chicken dinner to your name? I mean, those extra 10 points doesn't hurt, does it? So the second airdrop coming in, finally Grotza, we get to see. But I don't feel like any team's going to contest for that, or even any team is going to approach that. So it's just about the players playing around the center of the circle, and you know, an unpopular opinion, or maybe something that maybe people take with open arms, is the fact that I want एक दिन में कितने मैच है ब्रो? 6 मैचेस है पर डे, एंड अभी आपका 5वां मैच ऑनगोइंग है जो अभी चल रहा है. इट्स फिफ्थ मैच right now with the way things are, it looks ऑनगोइंग. इसके so बाद एक लास्ट मैच है broken. जो इरेंगल का रहेगा. And काफी we've इंपॉर्टेंट seen मैच है ये वाला मैच, DBS मैं ऑलरेडी every बता single चुका हूं. time, you know, एंड the आपको teams are not स्टार्टिंग में ही scared of even टीम्स making a है push. सी है Earlier, जो अर्ली it was स्टेज with जो the आपको you could have एलिमिनेट got, you होते हुए kind of दिखाई got दिए. that mobility, नॉट अ but गुड साइन you know, फॉर द with टीम्स it still कि used to अगर take a ये few बकलब moments कर to, गई you know, टीम्स get ना your knocks तो दिक्कत registered, हो right? सकती So है. लाइक with ये मैच DBS, एसटी के लिए it's just a इंपॉर्टेंट. tight मैं slap टॉप on की your बात face, करूं and तो before you वाइब्स could even काफी blink, you're क्लोज गैप down है on your एंड knees, डीआरएस just है. bleeding and 3 begging टीम्स for के लिए mercy. मैच काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने Or वाला है. maybe just nerf हाई the weapon. वोल्टेज I mean, एक I'm प्लेयर scared to यहाँ play the पर game बूम of PUBG Mobile. I'm worried that maybe Don't I'm minding my own business, looting, shift, grabbing those don't shift, resources, don't and there is a shift. player hiding with Okay. with that Finally, DBS, and my दो entire शिफ्ट, squad एक goes तरफ down. को एक I just आपका hate बिल्कुल that weapon. अपोजिट शिफ्ट. But right now, the players of High I8 Voltage, they are at the IHC mercy of the blue, SG and looks लियो like they for already lost MB. one more देखते हैं player. इस So पॉइंट High पे क्या Voltage, करती they है. are मैप हो surviving गई. with only DRS 2 काफी players. ज्यादा पीछे हैं. उनके From the आगे north, ऑलरेडी Western 3-4 front, टीम्स हैं. Deadeye देखते हैं guys इस are मोमेंट also पे making DRS the क्या rotation. करती They है. need to be cautious I about think the players they of will try IHC. कि But looks देखो like आगे this आपको time पता in लगेगा. Paradise, Stalwart Esports, they are Despite having going the for very late dominant rotation, control. DRS still They are the only team comfortable present over there, so that means they do have the Bro, resources, देखो the DRS weaponry, दो जोन है, everything काफी they लेट have रहती है. थर्ड in के their लिए वो hands. Yeah, quite interesting to be honest, like because थर्ड में अगर उनको कहीं भी I अर्ली really स्टेज need to पे कहीं confirm and double check if they dropped like it. hard Paradise we saw this time around. अगर आप देखोगे Usually लास्ट Bootcamp's मोमेंट been पे their go-to place, अगर आप देखते हो घुमा फिरा but this time थर्ड अगर आप they've देखो opted थर्ड के for something रिस्पेक्टिव में different. But आसपास look at
तो वो काफी सारी चीजें बाकी एजेस को really close to the players of SLATE Gaming, and finally somebody is मैच let नंबर loose 5 मेरे भाई of those bullets from the far of ब्रो play. हैट्स ऑफ यू योगी ब्रो And 3 से कंटिन्यू हार्ड वर्क SLATE Gaming, I 3 remember से what नहीं 2 happened. बजे से In हार्ड fact, वर्क अब भाई 2 से आज मेरे को लग रहा है बहुत this टाइम time, हो गया कोई दिक्कत however, की बात they नहीं sort of have भाई made अगर sure आपको that सही लग रहा है तो they're मेक in the श्योर mercy टू of the लाइक एंड zone. सब्सक्राइब टू द Not too चैनल far away, but this time it's going to be a battle against the players of Leo Esports. Liquid just trying to keep them at bay. Did launch a few trends at their direction, maybe maybe a Molotov. But this is one of the other things that I've seen players doing this quite often. They haven't really made those utilities really count, right? You have limited number of it. You need to make sure if you're lobbing one over, at least you clear that space. And if that is done, just take control over that area. And now Molotov's been thwarted by will flush him out of his safe covers, and Liquid making no mistake and gets that knock on AJ. And now instantly they want that finish. You're trying Will they get it? That's a big question. But on the other side, we've got a battle between High Voltage and Starwood, and NB also seems to be a part of it. So a trifecta of death being dealt upon, and High Voltage was too much for them to handle, and now they're eliminated as Nima, he runs for safety, he runs for safe cover, but won't escape the clutches of Mr. Smokey. Once again a great knock. Nima bhai bhi knocked again falling down to wrong decision making, and this has been biting them in, and constantly has been thwarting problems for them. And this time I do not know how do they get away from this, as yet a Uta from Raw officials, he decides to barge in and says hello. And looks like Leo, they are not going to be silent. They are going to retaliate and takes hefty HP out of Yoodo. But for now, Yoodo is safe because Slipknot, he has to be cautious about the plus of Skylights. I'm sorry. And Leo Esports looks like they're biting more than they can chew. They are engaging in a fight with the players of Skylights. They are engaging in a fight with the players of Raw officials as well. But right now, Nima is out in the open on a sliver of HP. He needs to patch himself up as soon as possible. On the uphill, we have the players of Mapex Esports as well. So there could be a chance of a third party. But right now, Slipknot, along with his teammates, is rushing towards the compound. And what's waiting on the other side is the DBS in the hands of Mafia Ninja along with his team. Oh, nice. But No Fear takes down Haidami. Liquid takes down No Fear. Perfect trades coming in, and Liquid also goes down. Mafia Ninja Astraf के भाई. Ninja, but Nima goes down. The trades are coming back and Shao forth. भाई 4M Shao. The only player surviving from the side of Scarlet's Gaming. Can he save the day? 4M Shao भाई. Leo eliminated. Eliminating the last player. बचाया टीम को भाई. Mafia Ninja भाई. Jot. DRS भाई. बैरन भाई को यहाँ पे नॉक दिया. एताउता ने यहाँ पे बैरन का फिनिश निकाल लिया. नॉक यहाँ पे दिया आपका DRS ने, and रॉ ने निकाला फिनिश. ठीक है भाई, वैली भाई. DRS could just be walking into the trap. हेलो कुनाली, कैसा है? होप सो यू आर गुड भाई. तेरी हेल्थ ठीक होगी क्योंकि बताया था तेरी हेल्थ over here. Still just amongst the bushes. He's hiding as now DRS. They're being fired at, and they successfully get any knock. Delta's been knocked out, of course, but the trades are there. Wally, he's fallen down. Baron is already out of the picture. Sort of comes down to Leo and Cassie, and now it's kind of getting really, really intense. With DRS, I think will not have any trouble in dealing with their aggressors, but now Kunio TRC, again a battle with Sit this time. Last time they picked a fight against Scarlet Gaming. good managed खेल रही है to take them out, but this time that grenade might just hurt them a lot. Situations भी strong रहेगी तो उतना ही बड़ा, those warning उतना ही shots बढ़िया. kind of instilling fear. एजिस पे है दोनों, जोन थोड़ी देर के अंदर now क्लोजिंग Sitten करना स्टार्ट need to करेगा. take their लो sweet भाई, time, need to वाइपर भाई ने readjust एंट्रीज themselves, निकाल and दिया just ऐसा when, टीम के लिए भाई. Sting स्टील Shot शॉट भाई, was trying to find a एंड ये different फिनिश भी हो angle. गया. स्टील शॉट का He gets फिनिश भी taken निकाल down. दिया. बहुत बढ़िया i8 वाइपर ने. He certainly goes down, and the numbers of TRZ are dwindling down as Matt and Mamba are only Mamba 2 भाई, plus remaining, but हीरो Mamba भाई को finds a बीटी. perfect knock onto SITM को यहाँ से Zero, फुल but बीटी होने both वाली these है. teams need to ऐसा realize SITM TRZ को तो ऑलरेडी हो चुकी है stage 4 स्टार्ट. circle, and they are at the mercy of the blue. On the other side, we have the players of Skylar's Gaming also going up against the players of 4MV, where East has been eliminated. Now City Esports QB, he has to deal with Mad Cat, and then later transition himself inside the circle. But from the backlines, Mamba is also coming in. Mamba has no idea where QB is, and those SMGs so potent and powerful in the close range. But now he has been taken down by the last player of TRZ. Sitim Esports, Dobu at the mercy of the blue with just only 3 first aids, and Deda is on top, sir, right in front of him. Oh yeah, and now Dobu, all he's gonna try and do is just
stay alive for as long as possible, as the numbers of teams are starting to fall down. Even if they get eliminated at the 11th position, they're not gonna get any position point at all. As आज बर्थडे कुनाली का, हैप्पी बर्थडे कुनाली गाइस। आज कुनाली का बर्थडे है हमारे यार, हैप्पी बर्थडे कुनाली कर दो चैट के अंदर, मैंने जस्ट स्टोरी देखा। बाय द वे सिचुएशन मैच की कुछ भी होगा इस बट कुनाली का बर्थडे है, वो चीज ज्यादा मैटर कर रही ब्रो। हैप्पी बर्थडे कुनाली ऑन द चैट, एक लाल दिल के साथ गाइस, प्लीज फास्ट। They've been dealt with. Too much for them to Let's go, boys. Dead Eyes was present, IHC was there, and then you've got the players of QEON, PRC, and even Starwood just looking out for them, just from the periphery of the zone. As Raw officials again taking a quick eliminations this time at the 10th position. But the big बहुत स्लो question पेस is, गेम है साउथ एशिया का कंपेयर टू वहां का जोन वाला सीन अलग है ब्रो। kind of taking that northern route, टीम but की अप्रोच NV Esports मेंटालिटी का तरीका थोड़ा सा अलग है, वहां पे एटलीस्ट on ज्यादा फाइट हो जाती है, Dead Eyes. स्लो पिच वहां भी हो जाता है बाद में जब Position कम टीम away. बचती है। And Wolfish, he's gonna enjoy माय himself. गॉड कुनाली के सबसे ज्यादा फैंस हैं, सारे बड़े हैप्पी बर्थडे कुनाली हो चुका है गाइस। कुनाली के फैंस देख रहे हो down by Leo, but DRS. कुनाली भाई were चलो really गिफ्ट दो quick. आप In सबको। fact, it's the players of IHC who managed to take down Leo down on his knees. And Valley all by himself, he has to move inside the circle, and Deadeye guys from the backlines can join in, but on top, sir, he's at the mercy of the blue. The minute he's going to show himself, Fist Boy is कुनाली भाई ready पार्टी with his दीजिए जल्दी से 416 प्लीज, to eliminate him. फास्ट। It's ओ माय गॉड a कुनाली story भाई for बर्थडे on top, विशेस sir. सारे Either he's जाग going गए to बे go down ऑडियंस, by the blue, जो or टाइप they नहीं had कर such रही an थी, जो सो Esports, गई but थी, वो Mapex सब Valley, जाग he's चुकी है still कुनाली को fighting बर्थडे as गिफ्ट he बर्थडे brings देने down के the लिए numbers of विशेस। BRS, gets ओ the माय permission गॉड point हैप्पी as बर्थडे well. कुनाली। BRS also surviving with only a इतना single को थैंक्स player. बोलेगा कुनाली। That too in the blue. Gyante not भाई looking so एनवी very पैरा promising, बॉयज, and स्टिंज finally the वाइट, play ऑल zone इन takes down पीके, Dead Guys, शिफा last player पी, with 2 elimination on the 8th बदनाम spot. गबरू, Not too many ओनली points in टॉप their फैन hands, भाई, but in सब the circle सब with सब 3 teams that are looking so very गाइस promising. कुनाली का ना Are एक the players of फेवरेट इमोजी I8 है, having their own compound, then the रॉक players of पेंडेक्स NV स्पैम Esports कर and दो, SLATE Esports as well. पुश कर Yeah, दो I आज mean, NV मंडे को Esports पुश seem to be in a दे really भाई का। promising ये position. तो Now पता ही the ना, big मैंने तो question स्टोरी अभी is, जस्ट दी, how do Stalwart बेचारा carry बीमार हुआ forth? पर। How do they rotate inside the zone? Still on the edges, but the next one's gonna hurt them a little bit. So they've got to चलो make इस some मैच एक तरफ कुनाली का बर्थडे एक तरफ maneuvers, ये right? चीज They've got to do मानना पड़ेगा, something. They've got सॉरी to फॉर pick a दैट fight, बट and I think कुनाली का बर्थडे इज the ग्रेटर देन rather easier bunch would be try and अभी take a मैच से fight थोड़ा सा against बट NB, because रियली against I8, I really do not fancy their chances, especially with that high ground advantage that I8 are enjoying right now. And in this moment, it's going to be really interesting. What do they opt for? कुनाल खुश हो Right at this point, already 9 तो हमें eliminations नहीं to मिली their यार name. कुनाली, They're तेरे को पता है swiftly कुनाली तो बड़ा बंदा बन climbing गया। their way up the ladder. भाई तो चलो And मैच पे certainly फोकस are करते हैं। racking up quite a lot of points for themselves. ये टीम है भाई। But a little bit of an eerie silence has taken over the lobby, because everybody is just enjoying the vacation in those compounds. But the moment the 6th circle starts shrinking and we get the 7th, that Tough is when situation. teams like Starwood, they've got to make some noise, got to make some movements. And I8, they're not letting anyone get ST agree, close fine. to them, right? Just They're to just David. Just to hovering David. around, scouting Wait and outside watch. their bases, and making sure if they can find any single bodies, just somebody aloof, or maybe some solo survivors from the squad, something, someone like that one player from Mapex, and deal with it, then they're going to be happy. So Wally is the last player surviving, but for how long? That's the big question, as Sek manages to take down action yet again. And Godless takes on Viper. This is when the numbers of I8 are not supporting their case. At the same time, we have the players of I8C in the close proximity. So I8, they need to be so very cautious. 4 teams, 14 players remaining. Bro, the numbers finally, advantage IHC. are with the players of Finally, I8. finally. So this is going to be so very important We have to seen revive IHC fallen too. comrade in this situation. We are But watching IHC. they're in a mood for a fight. Last They're already circles. ingressing towards I8 Murphy's over there. सामने. Viper is back on his feet. IHC के And the 3-man Wolf is IHC approaching already this है। fight so very cautiously. But एक्शन NV प्ले Esports जोन and से Starwood, गया, they're locking आईसी horns को with यहाँ each पे other, एनबी and ने looks फिनिश like निकाला, जो Starwood उनके Esports, सामने they have कंपाउंड्स been पे होल्ड कर eliminated रही थी, with एंड just a यहाँ पे single 3 टीम elimination आपकी to बची their है, I8, Yeah, IHC little bit of and those NB. position points just coming. I8, but I8, Sky, an निकाल दो important भाई। crucial knock on Godless. ये मैच This is शैनॉक gonna का take भाई, affect I8 things ने a अलग ही lot रिकॉर्ड right बना now दिया, for इससे I8. पहले भी I8 का Wolfish चिकन है गाइस। is क्या gonna लग रहा है? ये one-sided मैच भी I8 यहाँ पे cut चिकन off लेके cover जाने of वाली है, Smoke इम्प्रूव also, करने but वाली he है। needs some शैनॉक है तो assistance. I8 का ही है। Nova really needs to come in and ऐसा क्या? help him out over there. नोवा भाई पिंग कर दो NV एनबी Esports को। for now, they're just gonna enjoy themselves in those compounds, are not kind of showing any intent of coming out. They want the battle between
I8 and I8C to sort of ensue, and that is where they make the move, and that is where they strike. And now they feel like this is the perfect time. Have gotten those smokes around, and now deciding to make the move. So NB Esports wanting to My be God, ये भी सही है the पार्टी ones से trying बचने to के लिए take ऐसा बोल दो advantage इंग्लिश के because दो वर्ड सीख लो. they're kind of getting knocked Oh, down. And now that was a good knock coming ठीक in है from भाई. this boy. And Sky 25 ठीक है भाई, could be ठीक है. next. Indeed, he is. Some crispy shots being connected. And suddenly NB Esports are in prime position of dominating and Viper भाई maybe बढ़िया. winning this game. Maybe I spoke too soon because Viper responds back. Oh, certainly. Fist Boy made the mistake of coming out in the open. He was being little too over-aggressive. But IHC Demo takes down Viper over there. This third party that IHC is doing right now looks like I8, they won't be able to survive this one. 2 players already down, and Demo is deploying the perfect smoke to make a little bit of a soft cover for himself and close in the distance towards the side of I8. NB Esports, this is going to help Demo them भाई as solo they solo have the child. chance to go for the crucial revival onto the fallen teammate at this point. I8, all the players are again back on the feet. The numbers advantage are still with the players of I8, but the way I8 players are joined at the hip, one grenade can bring down their numbers, can take down Nova X and Sky down at the same time. You know, they bought enough time enough that they could get themselves back to stability. But Demo, he's just playing with their minds in it. And this is exactly what NB at this point needed. A Kaza, that important knock. And look at Nova's HP, barely surviving. Has to be the one who gets the revive onto its Wolf, but Sky just creeps out of the smoke. And now it is a 1v2 situation. चलो भाई एंटी IHC एंड यहाँ पे प्रूव कर दिया I8 ने once again कि भाई शैनॉक तो है वो I8 का ही है भाई. 2 चिकन डिनर दोनों शैनॉक के अंदर. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. GG I8 on the chat and NT to NB and IHC on the chat guys. Let's go. सोलो चिकन नहीं कुनाली, चिकन नहीं है, नहीं आया कुछ, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है. चिल बाबा चिल. भाई तो गाइस हमारा इसके बाद एक लास्ट मैच जो है ऑनगोइंग बचा हुआ है. बाकी रैंकिंग्स देखते हैं. I8 कौन से रैंक पे आ चुकी है इस मैच के बाद ओवरऑल सिनारियोस पे. I8 आ चुकी है #8 पे. लास्ट टाइम भी जब उन्होंने चिकन निकाला था #8 पे थे, अभी भी चिकन निकालने के बाद #8. दोनों एक शैनॉक की एक सेम बात ये रही है, दोनों चिकन आए हैं यहाँ पे I8 के एंड दोनों टाइम ओवरऑल रैंकिंग पे #8 के ऊपर ही आई है. चलो ठीक है. नेपाली डोमिनेशन इन टॉप 16. यस ब्रो कुशांत भाई, चल तो रहा है कंपटीशन. बैक टू बैक नेपाल रीजन के चिकन आपको देखने को मिले आफ्टर द फर्स्ट मैच. आई एम नॉट रॉन्ग, बैक टू बैक चिकन देखते हो. बाकी यस लास्ट मैच अभी भी बचा हुआ है. सो मेरे को कंपटीशन देखना है ओवरऑल रैंकिंग में कि कौन सी टीम टॉप पे है, कौन सी टीम टॉप पे है, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे कौन है, तो गैप कितना हो चुका है इस मैच से, कितना गैप टीम लेके जा चुकी है. नेपाल इनसे बहुत बढ़िया परफॉर्म. Just guys, wait and watch. Please share insights. Link. PMWI कितनी टीम जाएगी ब्रो? #1 टीम जानी है. #1 ही जाएगी ब्रो. #रीजनल में ऐसा क्या है जो इतना अच्छा खेल रही है? भाई ये क्या पूछने की बात है रिन भाई? दे आर गुड. आएगी भाई. कैन DRS फिनिश #1 टुडे? यस मिल्की बॉय, क्यों नहीं. बिलीव इज द की ब्रो, बिलीव इज द की. 4 चिकन डिनर यस. अब वर्स भाई मेरा बर्थडे है, सबको विश करने के लिए बोल दीजिए. मुन्ना मुश्ताक भाई, विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे यार. मुन्ना भाई को भी एक बार हैप्पी बर्थडे मुन्ना. मुन्नुआ ऑन द चैट. ब्रो PMWI में #1 भाई टीम जाएगी. SA से वोटिंग होगी फॉर PMWI. होनी तो चाहिए ब्रो, लास्ट ईयर की तरह, प्रीवियस ईयर होनी चाहिए. बाकी देखो आगे क्या होता है. DRS जाएगी, देखो आगे सीन क्या होता है. बाकी अगर आपको कुछ पूछना है चैट के अंदर, अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो, सो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल गाइस. 6 एलिमिनेशंस बाय द भाई वुफ. भाई क्या खेल रहा है भाई ये लौंडा. मैंने इसको पहले भी देखा, अभी भी देखा है. वुफ का जो एक कंट्रीब्यूशन रहा है टीम
बहुत ज्यादा बढ़िया। चलो भाई भाई अब लास्ट वाला मैच है। इट्स गोना बी फन टू वॉच द लास्ट मैच ऑफ PMPL साउथ एशिया। तो सारे लोग एक साथ आ जाना, सारे लोग एक साथ आ जाना, एक साथ देखेंगे लास्ट मैच गाइस। ओके लास्ट मैच साथ में देखेंगे। मैं तो ओवरऑल रैंकिंग देखने के लिए एक्साइटेड हूँ भाई। व्हाट इज द ओवरऑल रैंकिंग राइट नाउ? हाँ जी मिशन टू हिंदू पॉइंट्स टेबल मिशन टॉप, कोई टेबल टॉप है अभी तक? वो टेबल टॉप है, रुको रुको ब्रो अभी आएगा टेबल टॉप आएगा। अभी ओवरऑल रैंकिंग आएगी सबसे पहले मैच की, मैच समरी बताएंगे, फिर ओवरऑल रैंकिंग, देन ओवरऑल मैच पॉइंट, देन ओवरऑल रैंकिंग। तू ही तू जन्नत मेरी, तू ही दिल का सुकून। DRS विल बी द विनर। चलो भाई देखते हैं। I8 25 पॉइंट यार, बहुत ज्यादा पॉइंट। 25 पॉइंट बहुत होते हैं भाई अभी के टाइम पे। NB स्पोर्ट्स 11 डिसेंट, बहुत अच्छे, डबल डिजिट उठा रहे हो, ऑलमोस्ट डबल डिजिट क्रॉस कर सकती है। IHC 9 पॉइंट। फोर मिरेकल अगेन अ कंसिस्टेंट पॉइंट मैच से लेके गई है। इसका मतलब है फोर मिरेकल के 99 पॉइंट से लास्ट मैच में, इस मैच उनके बाद होंगे 107 पॉइंट। तो लेट्स सी क्या रैंकिंग चल रही है अभी के अकॉर्डिंगली। then Maptex, then Skyless Gaming, Stalwart Esports, DRS, इसके बाद next table chart and हमको देखनी और standing. Then guys है Raw Officials, SITM, Dead Eye Guys, Kunyu KRZ, Leo Sports, T2 Sports, High Voltage, NC Sports. लो भाई ओवरऑल रैंकिंग में टॉप पे DRS ही है, एंड लीड भी है 18 पॉइंट। बहुत होते हैं अगर आप देखते हो 118, ऑलमोस्ट 8 9 10 11 पॉइंट की लीड है, जो कि बहुत ज्यादा है। मतलब बहुत ज्यादा क्या, एक मैच का बोल सकते हो गैप कवर हो सकता है अगर वाइब्स एंड स्टॉलवर्ड का अच्छा मैच ना जाए। इवन दो वाइब्स 107 105 पे स्टॉलवर्ड है, 101 पे T2 के मैप 92, IHC 92, NB 91। भाई क्या चल रहा है ये? हेलो भाई क्या है ये रैंकिंग? हेलो मजाक हो रह गया यहाँ पे भाई। एक से 8th रैंक भाई, सच बता रहा हूँ, एक अच्छा मैच, एक अच्छा मैच। ये जो 8th रैंक की टीम आपको दिख रही है ना, ये टॉप 3 के अंदर आ सकती है एक अच्छे मैच। एंड ऐसा तो जरूर होगा कि 2 या 3 टीम ऐसी होगी जो डबल डिजिट पॉइंट उठा के ले जाएगी, 3 4। इमेजिन करो 8 7 6 की वो टीम और वो ऊपर आ जाए। ओ भाई लेवल भाई, लेवल 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 कंपटीशन का अलग है भाई। द लेवल ब्रो, दिस इज द लेवल। बाय द वे यस, सेकंड चार्ट SITM बहुत ज्यादा पॉइंट निकालने पड़ेंगे और स्काइलेस गेमिंग को बहुत पॉइंट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जितना अभी सीन क्या हो रहा है, जितना अगर आप पॉइंट नहीं निकाल रहे हो तो ऊपर वाली टीम पॉइंट निकाल रही है, तो वो गैप धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है। एंड डे के लिए बहुत ह्यूज हो जाएगा अगर PMW
एंड एटलीस्ट आपको टॉप 12 के अंदर रहना है. दैट इज द मेन थिंग गाइस. जो 12 रैंक की टीम होगी वो SAC साउथ एशिया चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई होने वाली है. तो आपको टॉप 12 के अंदर भी रहना है. दैट इज द गोल ऑफ द टीम्स होना चाहिए जो अभी के टाइम पे होगा भी. बाकी आगे देखो, लास्ट मैच हमारा बचा हुआ है. तो गाइस सबको बुला लीजिए, लिंक शेयर कर दीजिए. दिस विल बी द लास्ट मैच. क्या यहाँ पे DRS #1 खत्म करेगी? क्या वाइब्स ऊपर आएगी? क्या ST ऊपर आएगी? क्या यहाँ पे अनदर टीम जो आपकी लाइक टिल I8 है वो यहाँ पे कमबैक करने वाली है? इट्स अ बिग क्वेश्चन गाइस. बाकी आप कमेंट करके बताओ नंबर 1 पे कौन होगा इस मैच के बाद. कमेंट करके फास्ट जल्दी से बताओ. लेट्स गो. कौन नंबर 1 पे होगा? वी आर लाइव ऑन चैट. आपकी चैट पढ़ना स्टार्ट कर देंगे. लास्ट मैच को मत मिस करना. फुल एनर्जी और इंटेंसिटी के साथ वी आर गोइंग. here. कंसिस्टेंट टीम DRS STE. काफी लोगों के कमेंट आना चालू हो चुके हैं. DRS STE DRS. ठीक है भाई. काफी लोग बोल रहे DRS, काफी लोग बोल रहे ST. ओके बॉयज. Let's go boys, the last match of the day on your screen. Let's go. चलो भाई आने दो. अब मैच नंबर लास्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है. अब चलो आने दो लास्ट मैच. So, with that being said, folks, let's just head into Wrangell so we can see quite a different flight path trajectory. In fact, from Siverny towards Pmwi. So, you're going to see so much of that traffic happening towards that side, aren't we? Oh, certainly. Sitem Esports towards Yasnia. Then we have few teams going towards the side of Pochinki, DRS towards the side of Milta. All those rotations are not going to be so very easy. And maybe we can see some vehicle contestation as well. And you know what happens when there is a vehicle contestation? Few only casualties come in for few teams. And that is always so very sad to see. But T2K, well, they are going to enjoy this flight path. They are going to drop in their home ground. That is going to be the city of Siverny. SkyLet's also going towards northeastern side in the split position towards Kameshki. But what is happening? Even Maprex Esports, this time they are heading somewhere towards northeastern front. And are the players of SkyLet's Gaming prepared for this? We'll find out. Sitem again towards the side of Let's go boys. फ्लाइट पाथ स्क्रीन के सामने 118 पॉइंट कैसे DRS के प्लेसमेंट और किल. ब्रो बोनस पॉइंट नाम की बोनस पॉइंट की वजह से टीम की रैंकिंग है. No worries for them, but I'm worried about the players of Leo Esports because Leo. Okay, zone काफी इंटरेस्टिंग जोन है. This time we have again a northeastern circle. So the players of Sitem Esports okay, Mab and SG on early stage. But right now the team that is not happy are the players of SkyLet's Maprex Esports, especially AJ, who lose hefty HP because of that grenade from Baron. Oh yeah, I mean that's not the kind of a start that SkyLet's anticipated. Okay, SG. Baron lobs one more grenade and guys ये कंपाउंड याद है आपको? बताओ अभी कुछ दिन पहले इस कंपाउंड में क्या हुआ? SG जोन. Are the players of भाई उससे पहले आप कुछ और देख लो स्क्रीन के सामने. And in fact Leo has made sure that he gets in close and personal. And SkyLet's Gaming, I really do not know if they have the best of loot to deal against the threat. AJ भाई knock है. Still lying down on his knees as Nima also falls down. And this is looking really disastrous. Action भाई meanwhile Raw के साथ क्या बात है? Multiple fights चल रही है. First elimination by New Z. Let's see what happens. As there you can see the fight breaking down. Leo gets the one. As Mafia Ninja, the solo survivor over there. Can
he get anything for himself? Because Mabatex, they seem to stop at nothing. But a nice head connected on Leo. And Mafia Ninja is what lies between them and Mabatex. Maptex, they don't have the perfect resources right now. They don't have the perfect armor. Even बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Just 15 bullets in his AKM. फील वाला जोन यस मेरे भाई पहचान गए. Yes, Baron is providing the necessary cover required. SKSA is going for the revival onto Leo, and Mafia Ninja knows exactly what is happening. Oh, SG eliminated by map. 4-man standing, bro. 4 point early stage पे. एक team eliminate हो गई है. And Skylights, this time the change of drop location that came from the side of Maptex Esports, well, they are not going to be happy. Oh yeah, they're definitely not going to be, especially with what Skylights Gaming really thought. And I think it has got to do something with how the flight path trajectory really में मसड़ हुआ panned था out, भाई, right? but ये समझ नहीं आया. Skylights Gaming, they were not at the best of the places, kind of out of options, and Maptex off to such a good start. And right now, you know, they would be really happy with this. And Maptex, they've been taking the harder route and have been dealing with a lot of fights. But now, NB Esports decide to fight it out against DRS. This is something that was again widely anticipated, right? then DRS, a team that SG, kind of हर tends एक to go जगह towards पे कहीं ना meta. कहीं किसी They ना were किसी trying to प्लेयर का traverse, but ऑफ while गार्ड doing प्लेयर so, पकड़ा जा रहा they है were कहीं ना caught. कहीं. And now, अर्लियर स्टेज पे unfortunately, 4 have 5 had to 6 lose a प्लेयर्स few एलिमिनेट हो numbers. चुके. एक DRS, एक I8 एंड एक रॉका. We have the players of I8 अभी also मैच in the स्टार्ट close हुए कुछ proximity. मिनट्स हुए हैं. So NB Esports, 2 defeat points to their name. They are going to be pretty happy. The good thing is they are not over aggressing in this particular fight. 2 defeat points, they're already happy. Now they're going for the basic resources, basic loot. DRS not looking too good in terms of the resources. Killer YT just having a car 98, just a level 1 vest, no armor, no healings, nothing at all. So DRS do need to go and have those resources in their hands. Yes, एसिन going चिकन towards निकाला the था side of RSG को Milta वाइप is not करके. going यस to be यस so ब्रो. easy, Exactly, especially when you you got it. You got they it, don't bro. You have the got it. vehicles in the nearby Same. vicinity. At the same time, Delta is keeping a close eye onto Mondo, as Mondo with the vehicle is already closing in the distance and showing on the doorstep of Killer YT. At this point, you know, especially when you kind of lose out on your IGL for DRS, it kind of feels like their head has been cut off, to be honest. And I'm kind of skeptical what happens to them from here onwards. But whatever happens, well, it's not on us, Shadow, is it? We did not make any predictions. I'm really happy. I want to see the mystery unfold. I want to see some of these teams, you know, kind of get back at them. I do not want to see DRS, just a team that you know, goes on to win the Pmpl SEA without any competition so far. I want to see maybe for medical vibes, giving them a little bit of a competition. I want to see that battle in the top 3. We did see T2K also crumbling apart in that previous game. I want to see them maybe get another chicken dinner over here. Or maybe it could be the point where Stalwart sort of redeem themselves. But we're kind of seeing those repetitive circles, right? ST को एक we decent haven't match seen निकालना anything पड़ेगा. happen towards the western side. match It's been निकालना kind of, पड़ेगा ST को अगर top में आना है. around those northeastern side. पॉइंट Now, the निकालने last पड़ेंगे इस time मैच we से. had a अगर zone, हैशटैग we 1 पे kind of कौन हो was आज around, देखते हैं. मुझे that फुल mansion वाइब आ area. रही है But this कि time, आज के this time, मैच where do you में think this हैशटैग circle 1 ends? जो है. Or has this been a trend? आपको क्या वाइब आ रही है throughout पहले the आप league बताओ. stages? मैं आपको बताऊंगा कौन रहेगा. आ जाओ. Yes, this time we Chat are के अंदर seeing too many northern and eastern circles as compared to the southern circles like previous PMPL season. This time it's more of a northern and eastern circles. So all these teams, they have adapted themselves to these kind of circles, the curveballs that circles throw in. But still, we have few collisions that might be happening around the Georgiapol Bridge area, where we have the players of I8C and Leo Esports, at the same time Seal Esports. So there is a potential close fight that might happen very soon. But Sitem, well, they are so very happy. They always drop in towards the city of Yasna. This time the circle is favoring them. But we do know that even if the final circle is towards the side of Yasna, there comes a curveball where the circle shifts away from the urban city of Yasna, and that is exactly where I want the circle to go. ऐसे Towards the न्यूज़ southern बहुत side of पैसिव Yasna, खेल in रहे the हैं open आज तो. fields where you have no नहीं cover आया at all, action. and it is going to bring in a lot of chaos. टॉप तो So टॉप है. that will be है. something interesting to see. Quite a sadist you are, Shadow. Waiting for the That क्या करवट है evil, एंड जोन क्या शिफ्ट्स आते the हैं. lady बस उसी का वेट कर रहा हूँ. in front बाकी of that, देखो. you know, very sweet, charming face. So
You want those fights to break out. You want these teams to face all that pain. Yoli skin मेरे पास भी. That you know, at this point, yeah, I think Yasnaya, the southern side, is something that we would all love, right? Because it's been a while. I have seen one, and we've had so many of those highlight clips. For all fans across the globe, there have been so many of those legendary battles being fought over there. भाई भाई खाना हो गया आपका इतने टाइम से कर रहे नहीं भाई अभी तो खाना स्ट्रीम के बाद होगा. Different buildings pop up. No, it's not as open as earlier. Teams might seek some cover around that, but for now it's gone way towards that northern side, towards Stalber. And all right, now this is one of those games where Mabitex can really benefit from a circle like this. Now Steel, they're making no further delays. They're just instantly ramming. They want the control over the hills, but the same thing is definitely reeling in the minds of the players of T2K as they're off to something similar. But for Miracle Vibes and Starwood, they decide to make a move, and so have DRS, or have they just made it right now to Melta? Because I could see them go through a lot of pain and trouble. But for now, as things stand, I mean, Mabitex, they will enjoy a sweet spot. T2K also, if they take over those two warehouses that we have, right? If they get that spot, then they could defend that with all their life, and maybe could have a really positive result out of this game. But in the previous games, we have seen T2K how good they are in defending their compounds. They do tend to lose out on their players, and again we have the players of Dead Eyes and T2K going up against each other as one player already down, and Seok also hits the ground. Dead Eye guys, this can be an opening, this can be a good game because the numbers of T2K are not favoring their case. Precious with the AK might want to close in the distance as Jane is waiting on the other side of the warehouse, and in the close frontal battle, finally Jane goes down. Drop shot coming in. Precious along with his teammates. So Reg is the only man standing from the side of T2K. But looks like one player, Sandesh, has already went in for the revival. Yeah, and this is where, I kind of felt like I would expect to see some cover coming out of Brig. Finally does manage to do so, and in turn not just gets one but gets two. And suddenly, just like that, in the blink of an eye, on top, and Dead Eyes guys, they're on the verge of extinction from the server. And Rig, he's gonna ensure that he unleashes all that wrath, puts them into suffering, into their misery, their agony. T2K has done a really good job. And on top, just scouting through the lands, trying to get his players back online. But seems like that's going to be really hard for T2K finals में playoff वाला momentum continue करेगा competition में मजा आएगा. Yes. Kind of trying to close in. और देखो PMWI का slot तो कोई नहीं छोड़ने वाला. अपना try hard दे रहे हैं, and अब जैसे यहाँ पे आपको try hard दिख रहा है, competition दिख रहा है, वैसा हर एक region पे competition है. PMWI कौन छोड़ेगा भाई? अब ये मत बोलना end पे आके कि जानबूझ के हारे कि उनको PMGC खेलना था, ऐसा कुछ नहीं. $3 million की बात है. More than PMGC का prize pool यहाँ से earn कर सकते हो PMWI. Kept their calm and composure, कोई इतना कोई पागल नहीं होता crucial revivals, कि कोई जानबूझ के बोलेगा हमको PMWI नहीं जाना, तो ये चीज को याद रखना. Now Dead guys, they are on the back foot situation. On the other side of the map, we have few fights happening 7 here hours and there with मेरे trains भाई coming in, but no confirmation. थक चुका हूं guys, थक चुका Up until now. But Invite T2K, they are still eyeing for this compound. On the other side, Seal also joins in the fray भाई as they take down Sandesh over there. But कोई दिक्कत नहीं. Sandesh all by himself. There is no chance that the revival can come in as Soulless with his buggy is going for the confirmation point. But he needs to be a bit cautious of 1+ position from the side of Dead Eye guys. I believe it is on top Sir who went in for the flank angle, having an upper hill advantage on the players of Esports. Oh, there you go. Soulless, Team Seal, they just kind of joined the party and managed to get a few knocks to their own. And this is where T2K, they might be hurting over here. This is something they did not anticipate, which they should have, as T2K, they've got no other options rather than just tucking their tails and running into safe covers, because a lot of teams are contesting for this hilly areas. And Sanchir also joins the fray, as it is Seal now having to deal against Team Sitem, and look at them just marching through
and trying to just PMWI run में over ज़्यादा somebody. पैसा है. Yes मेरे But भाई, Dobu exactly and भाई, वही Geo मैं चीज़ getting आपको समझाने themselves की into a little bit of cover. एक बार Kudi has love that you बोल दो, beautiful love you flank गोकू भाई, angle, love you which मेरी he will जान, try to love get you. into his favor, but it is Desert who puts Sanchir down, and he's down to his misery as Becca wanting to just run away Nice, from here. nice, Does nice. not get the chance, but Dobu, he's been traded off. It has all come down to Aero and Soulless. Soulless not having the best of HPs, needs to administer the first aid quickly because now they need to get away from here. And big question is Sitim gonna let them do that? Because Desert seems to be on the chase as Soulless, he spots him out, takes a few shots at his direction, just wards him off. But Desert in turn just steps out of his vehicle and wants to fight this one out. It's like a deja vu moment for like the previous Erangel where 5 teams were contesting for the same spot. This time it's 4 teams where Data Guys was a smarter one. They already made a quick escape. Now Sitim and Seal Esports, they are trying to lock arms with each other. Seal do realize this is not the position to fight in, but Aero, perfect cover fire coming in from the tight advantage, takes on one player from the side of Sitim Esports, giving the chance to his teammate on a sliver of HP to make a quick escape and scuttle back to the safety. 3 defeat points already in the favor of Seal, but the numbers are not in their favor. Already 14 teams in the lobby. Seal Esports, they need to approach the game so very cautiously. At the same time, we have the players of Raw Officials and Dio Esports also lurking nearby, and Seal Aero, he has no idea that he's already heading in the direction of Dio Esports. But somewhere else on the map, we have Stalwart Esports also going up against the players of DRS, where Delta has been knocked out. Huh. Delta, I mean, DRS haven't had a bed of feathers, have they? So far, you know, the way they've been, it had to do with how the flight path trajectory was. But now, you find the players of Seal, and one of them is going to get taken down over here. Now, considering this shift, you know, this is going to favor the boys from NB a lot. And this is one of those games where I really feel that they need to get a victory, especially even after Mondo's failure. I think Fistboy has been doing so well, and Mondo, this is a perfect chance to redeem himself. I mean, we've seen this player do wonders during the league stages, but has sort of been absent today, hasn't he? He is. So many players who are performing really good in the league stage, they are missing in the grand finals. Maybe it's the pressure, I don't know, but maybe from day number 2 they will start stepping up. But right now, Yeta Uta in close frontal battle with the players of IFC. Demo over there with a UMP-45. The vehicle blows up and Demo goes down. And Yeta Uta, he might be looking for a confirmation with that Molotov. He's be coming in. The smokes are there, providing necessary cover to Zoil. The DBS, he takes on Yeta Uta. Thank you so much, Mr. Goku Bhai, for the Google Pay 50 rupees. Love you, bye. ऐसे हमें इंटरनेट करते रहिए. Love from Manisha. Thank you so much, Goku Bhai. Thank you so much, very much for the support. बाकी 303 लोग देख रहे हो guys. अगर आपको हमारा थोड़ा सा भी effort पसंद आ रहा है, make sure to hit the like and subscribe to the channel. बहुत ज़्यादा मजा आएगा. एक बार like and subscribe कर देना चैनल को. लैग हो रहा है, हो ही नहीं सकता ब्रो. मेरा लैग नहीं है यार, ये पता नहीं यार, बीच बीच में लैग आता है, होता रहता है. Kind of feels bad for them as they kind of went to fight against the Titans, and was just too hard or too hot for them to handle in this situation. Alex would be hoping to get that rest back up, and in the meanwhile, Leo wants to capitalize on this opportunity. They do not want to let IHC breathe for much longer. But they're just kind of scoundering around the place, looking for places where they could strike from. But IHC, they're not giving them that much room and space. In turn, have lost out on one of their players. And Game for Peace के लिए कौन सा मेरे को इसके बारे में bro कोई भी knowledge नहीं है. At this point, you know, IHC have to reconsider their plans, their ideas over here. As Slipknot has really found himself a really good place over here. Zyol not having the best of angles, Godless might just be in a whole world of trouble as his position has been relayed
to his teammate Smokey and Godless out in the open. Haidami wanting to just drive him over. Godless completely flabbergasted with that push coming in. And just like that, IHC, it is Yol who has to shoulder all the responsibilities, but maybe a little too difficult. But before he goes down, he ensures that he gets those finishes as Yol still fighting on, but not for so long. As well, before going down, made sure that he reduced the numbers on Leo. But there you see, finally the mercenaries of death arrive for Medical Vibes. Certainly showing interest, and you cannot escape the clutches of Haidami. And another, the last player, Smokey, also follows suit. As team Leo Esports, they also get eliminated. And kudos to Deadeye guys as well, because they did a perfect third party, got 1 defeat point. Now they have grabbed the attention of the plus of 4MV, as East from the height advantage is trying to pepper a few bullets, but in return he received hefty damage. Now East needs to be a bit cautious, because we have other team like the plus of Maptex Esports also inside the circle. So 4MV, yes, the segregation, the split that is coming. Thank you भाई, जी पे चेक करो, कर दिया गोकू भाई, मैंने बता भी दिया. Thank you so much for the love and support मेरे भाई. कर लिया मैंने check. They do have a very good position inside the circle, and with the next circle shift, if it comes in their favor, NB Esports, this might be their game to lose. But right now, 4MV, they are keeping an eye on the plus of Sitem Esports, and Sitem, they have no idea that Refuse is keeping a close eye onto them. You know, at this point, like you said, I kind of really like the pointer that you made, that 4MV kind of holding on to it at northern area, right? भाई आज 100 लगने वाली है भाई. आज 100 लगने. I've got a little, you know, advantage. You've got a few ridges around to play with. It's not going to be an easy task to make a push. Clearly, they thought that they were in a good position, and they realized the next moment that they weren't. And as a result of which, they will have to reconsider their ideas. But you know, to NB's mercy, now they have got a lot of information just to work around with. As Stalwart, finally, they've managed to keep 4 of the players alive. 3 eliminations already in order. As now, the next target just could be the players of Maptex. But it's going to be a little ambitious if they even get a few knocks. I'm going to start and ponder if they would be ballsy enough to go for a push. That would not be the wisest of choices. But just trying to, you know, deplete the resources, just trying to utilize or just kind of degrade their armors. I think that is what their intention would be, as Precious is hiding in that murky smoke. Once it kind of fades out, that's where Precious, he's got to make a move. And against a team like for Medical Vibes, where they've kind of got him cornered from all possible directions, what could poor Precious do but fall to his own death? Certainly he does, and 4MV, they have managed to keep the entire northern control under their favor. Maptex Esports, well, they are already ranking up those elimination points, 8 points already in their favor. They do have the complete eastern circle control. At the same time, they have a very good position inside the circle. But the split that is coming from their side, Valley all by himself, well, he needs to regroup with his teammates. On the other side, NB Esports, again, they do have a very good compound to their name, but DRS, I'm a little worried about the position of DRS, because on one side, we have Stalwart Esports, Maptex Esports, and NB Esports. So it's not just 1 or 2 player or one team, it's 3 teams pointing their crosses towards the side of DRS. They will be grabbing a lot of attention of all the teams in the lobby. So with numbers disadvantage, DRS, they have to be so very cautious. At the same time, Sitem, well, they still have to migrate inside the circle from the western front. I don't think anyone can trouble them. Maybe the plus of NB Esports can be that ugly thorn for Sitem. I mean, they can at this point, but they're not showing any real intentions, right? It's what they're trying to do is just deal with the teams from the edges. And DRS, they've gone into hiding. They've gone into a deep slumber. They have no intentions to come out. Killer, if his a little bit of that helmet is even visible, then Kaza is gonna say thank you and take over. Finally, we get to see Mondo in action. Has managed to survive for so long. That's good for starters, and he's managed to rack up 2 finishes also to his name. Where Sitem is just trying to rotate around him, and maybe we could see NB Esports finally getting challenged. And there you go, the battle about to ensue as Desert.
He's taken quite a hefty amount of damage as he cooks up his grenade. And No right way. in front of him, he lies as Fist Boy. He's going to burn, but still make sure that he gets the job done, at least gets that knock, and suddenly Sitim, they've got to get on the back foot. Oh, they are already down to only 2 players with 1 player knocked out. If they can manage to go for the revival, but right now we have DRS and Stalwart Esports, in a matter of few seconds through those molotovs and the firepower, they have managed to annihilate the remaining players of DRS. At the same time, have the control of that very compound which the players of DRS were having under them. But right now, NB Esports still they are looking promising. Stalwart Esports 3 players, 5 defeat points, but Maptex being the silent assassin in this game, 9 defeat points. All the 4 players alive, they're looking super strong. No, I really cannot understand why, Sitim are doing this. Constantly just trying to come one by one. It's so difficult, right? Especially, I was talking about this. It's so difficult to engage such a compound. SR team 2 मैन ना टिक जाओ The challenge lies ahead and भाई इस मैच के बाद ST हो सकता है #1 पे आ जाए ST इस मैच के बाद #1 that small compound instead have taken over the squad houses, so it's going to be even making things more difficult for the other teams to try and contest for. But for Miracle Vibes, they've kind of put a stop onto their aggression. They just do not want to roam around like headless chickens, just trying to spot around and take everybody and anybody down, whoever they spot. So instead, they're kind of going off for the cleanup from the edges. Now, one of the players of Nabatex has been dealt with. So this gives Refuse that little bit of a room and space to go in for the push. And just as the revive has come in, he's making quite a ballsy move over there. Cassie needs to be aware. In fact, all their teammates need to know what they're up to. And Doc922, he's taking a fight in a different direction. And Refuse, he's closing in on the gap. Other players of Mabitex are where finally they are as the shots are being poured over at their direction. Fires the lead and instantly retreats. He knows that he's had his chance. He had his opportunity, but he missed out on that. Had he connected a few grenades over there, or maybe even a single knock, then for Miracle Vibes could have thought of cleaning them out. But now they've had to shift their attention to a different spot, and Fist Boy succeeds yet again. Doc has been taken down at the same time. Refuse also goes down, and for MV, they were trying to keep an eye onto Maptex and NB Esports. भाई he like back to back 3 continuous Nepal domination देख लिया था, so अभी वाला domination भी देख लो. Still, Doc can be saved in the situation as long as NB Esports they don't do a third party onto the plus of 4MV, because like you said, they are on the foothill. They are not in the best of the best position right now. East is still making sure that the players of NB Esports don't pepper any kind of bullets in their direction so that Apex can go for the crucial revival onto Dog. But Maptex with his vehicles ready are already rushing in. This is the moment to strike, and they are already pushing in. Direct on Apex, Dog goes down. At the same time, East also falls down, and for MV, after getting 3 elimination on the 5th spot, they have been eliminated, and Maptex Esports 13 elimination. They are running death and destruction. Quite disorganized play coming in from Miracle Vibes, and sort of is the reason why they're eliminated like that. Taking fights on multiple fronts. Close, guys. आज का दिन बहुत close हो गया. #1 की race पे. कभी कौन आगे, कभी कौन आगे, कभी कौन आगे, कभी कौन आगे. Now Sitim also have 2 of their players alive, and कभी DRS आगे, कभी T2 आगे, कभी Vibes आगे, ST आगे. ठीक है भाई. What can they do from this situation, right? They're the team that are kind of on the receiving end from shots from. भाई मैप भी काफी क्लोज है. सबसे बड़ी बात है मैप को पीछे मत रखना भाई. मैप की टीम के काफी बढ़िया पॉइंट है, एनबी की टीम के काफी बढ़िया पॉइंट है. Let go of that compound and take a fight against Sitim. One of the players, Yoodo, has been dealt with. It's the final man standing QB against the world. He's got a fight to stay alive in the game. This is the perfect time for Starboard to make a move. Maybe try and punish somebody. Mundu bhai, thoda sa dekh ke. Mundu bhai. He finally finds out who is on a sliver NB ko ek aur finish. 7 elimination. NB ke paas. 3 man strong. STE, NB and MAP. तीनों के लिए काफी इंटरेस्टिंग है गाइस ये मैच. तीनों के मींस तीनों की टीम काफी अच्छी रैंकिंग पे है, टॉप 10 के अंदर, टॉप 8 के अंदर. तो अपने आप को कंपटीशन दे रहे हैं, तो रैंकिंग को अच्छा कर रहे हैं. मतलब कल जब आएंगे एक न्यू स्टार्ट करेंगे कल के दिन पे, तो एक बेनिफिट रहेगा टीम्स पर. ओवरऑल रैंकिंग इस मैच के बाद काफी ज्यादा टफ होने वाली है. तीनों टीम्स मंगोलियन रीजन की. who have a very good compound to their name.
But it's not just one I team want to they see have to God deal with, solo it's two teams. to Akaze keeping a lower potential bro, flank check okay. from the side of Stalwart Esports. At the same time, having a very good angle onto tops over there. And Stalwart Esports, they need to be a bit cautious of the flank that might come in from the side of Maptex Esports. It's kind of a stalemate situation where no teams wants to, where none of the player wants to commit any kind of a mistake. But tops, yes, the smokes were there, but not enough to save him. Sliver of HP, he finally made it to the safety. But now his position has been given away, and Leo with that vehicle might be looking for a flank angle. But NB Esports, they're still looking so very promising. One grenade could result in the demise of multiple players from the side of Stalwart. Leo was OG's used Leo. No, it's last one. He's Okay. been spotted out. Mondo will just launch that grenade. Has it made its mark? No is going to be the answer. And Mabitex constantly posing a threat, and Stalwart again in a really bad position. Just being pressed in from two different By the way, sides. 400 लोग देख रहे हो अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो, so make sure to hit the like and subscribe to the channel. And what do you think इसका चिकन आने वाला है ये वाले मैच पे? He's finally been flushed out. Does have that Molotov to, you know, work around with. Mab hashtag bro इस मैच के बाद Mab hashtag 4-5 भी आ सकती है. He's cooked the grenade. देखो क्या होता है, but not in good situation. STE अभी के टाइम पे मोंडो वाई ने स्पॉट कर लिए सारे सीन. एक अच्छा नेड and multiple knocks. Maybe would have made its distance, made its mark. एक knock तो आ गया, finish भी निकाल दिया IC का. You know, just hitting Top also knocked. the nail, and now Stalwart are just survived by action. And Mabitex are NB ने ये मैच से काफी अच्छे पॉइंट निकाल दिए. मतलब मुझे वाइब आ रही है NB ऊपर आ रही भाई. as far as they possibly could NB have. ऊपर आ रही है इस मैच के बाद. And competition level का तिगड़म होने वाला है ऊपर level. तिगड़म. And NB Esports, yes, definitely they can be that ugly thorn for the players of Maptex who can stop Maptex in getting that chicken dinner. At the same time, the player holding on to the real life was action, and now Mondo deals with him. को भी स्पॉट करा, बहुत प्यारा नॉक, पूरा पोजीशन को यूटिलाइज करा भाई NB ने. एंड तक. NB Esports still looking very strong, and Akaze with that UP45 is already going for a low flank angle. Can he get the confirmation? And if he does so, oh, angles है भाई, angles है. not supporting the case, and Valley also goes down. Yeah, and this is where the final location revealed, and here we go. The chicken dinner goes to team NB Esports, and I am pretty sure इस मैच के बाद NB की जो रैंकिंग है वो बहुत ही ज्यादा OP होने वाली है. I'm not joking, I'm not kidding. अगर आप देखना होगा आप खुद देख लेना. अभी आपकी स्क्रीन के सामने इनकी ओवरऑल रैंकिंग आएगी. अभी मैं दिखा देता हूँ. गाइस 429 लोग देख रहे हो. अगर आप स्ट्रीम के अंदर नए हो, सो मेक श्योर टू हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. मजा आ जाएगा, सपोर्ट कर दो थोड़ा सा. अगर आपको हमारा हार्ड वर्क थोड़ा सा भी पसंद आता है, दिल से अच्छा लगेगा, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को. 1000 लाइक नहीं हो तो 1000 लाइक कंप्लीट करवा देना. आई थिंक हो गए होंगे मोस्टली. #3 के अंदर मैंने क्या बोला था आपको, ये टीम काफी ज्यादा क्लोज है. एंड मैं इसी चीज की बात कर रहा था, जो 1 रैंक से लेके 8th रैंक है ना, 8th रैंक है, 1 to 8th रैंक, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है. कोई भी विनर बन सकता है, भी गारंटेड लिख के ले लो. एक अच्छा मैच आप डायरेक्टली ऊपर आ रहे हो, क्योंकि गैप ही इतना कम है 1 से 8 के बीच में. बहुत कम गैप है भाई. #3 आ गई NB. बहुत सारी डार्क हॉर्सेस आपको और देखने को मिलने वाले हैं. अभी तो गाइस जर्नी आपकी पता है अभी कुछ हुई नहीं है खत्म. 33% जर्नी खत्म हुई है. अभी आपकी जर्नी बची हुई है आधे से ज्यादा. आधी जर्नी आपकी कल खत्म होने वाली है, और लास्ट डे आपको पता है केओस प्रेशर कितना रहता है. मजा आने वाला है आगे आने वाले टाइम पे भी साउथ एशिया पे. एंड कल भी हम वॉच पार्टी करेंगे, तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे दबा लेना कि आपको नोटिफिकेशंस भी आते रहे. एंड कल फिर से हम वॉच पार्टी करने वाले हैं, सो आपको फिर से हमको फन देखने को मिलेगा आपके साथ. ऐसे एसी फॉर्मेट मोस्टली ब्रो 20 टीम खेल रही है, तो मोस्टली मेरे को जितना सुनने में आया था 2 हफ्ते का ही सीन था शायद, मैचेस वगैरह. तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो 1 हफ्ते लीग स्टेज जहाँ से 16 टीम्स आगे जाएगी, एंड ग्रैंड फाइनल्स 1 वीक में. मोस्ट प्रोबेबली यही फॉर्मेट होना है, मोस्ट प्रोबेबली. बाकी आई डोंट नो क्या सीन है क्या नहीं है, क्या कैसा जो, तो जो भी है जैसा भी है ठीक है.
लेट्स गो बॉयज, थोड़ी देर में ओवरऑल रैंकिंग आ जाएगी, देन एक बार ओवरऑल रैंकिंग डिस्कस कर लेंगे, देन आगे को। गाइस एलिमिनेशन लीडर बोर्ड आपकी स्क्रीन के सामने। लेट्स गो भाई, जाएगी व्यूज ऑन स्प्रे गॉड भाई, जॉट प्लेयर, व्हाट इज जॉट प्लेयर ब्रो, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा। ये साउथ एशिया डिजर्व 2 स्लॉट फॉर पीएमडब्ल्यू भाई, कंपटीशन इतना है, मैं तो ओवरऑल रेस्ट रैंकिंग का वेट कर रहा हूँ 246 लोगों के साथ विद 246 अदर्स। तुम मन्नत मेरी, तू ही दिल का सुख, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की, और कितना जानू, बट यू थिंक अबाउट मी। देखो खेलेंगी तो पता लगेगा, 12 वर्सेस 8 टीम्स है, 16 टीम्स ही फाइनल्स खेलेगी, लॉबी जो बनती है। बाकी लेट्स सी ब्रो की हुंदा सी। लो भाई, here we go, the competition for South Asia region, like PMWI में जाने के लिए अगर आप टॉप अभी देखते हो, #1 पे DRS गेमिंग का कमबैक हुआ है आज के दिन पे, ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है 121 पॉइंट के साथ। स्टॉलवर्ड का लास्ट मैच काफी अच्छे पॉइंट्स निकाले हैं उन्होंने, जिससे कि ओवरऑल सिचुएशंस मैनेजेबल है, बट डिफरेंसेस अगर आप देखोगे 4 और 5 पॉइंट का गैप है, जो कि एक मैच में कवर किया जा सकता है, एक अच्छा मैच, एंड डायरेक्टली आप #1 आ सकते हो। सेकेंडली गाइस, एनबी स्पोर्ट्स का व्हाट अ कमबैक वाला मैच, जो लास्ट मैच था जहां पे उन्होंने और अच्छे पॉइंट्स निकाले और टीम के कंपैरेटिवली, जहां पे 114 पॉइंट एंड डिफरेंस सिर्फ 7 पॉइंट का है, 8 पॉइंट का डिफरेंस है 4 मिरेकल वाइब्स का, एंड यहाँ पे 10 पॉइंट का डिफरेंस है मैप का। A1 #1 to #5 की बात करें, सिर्फ 10 पॉइंट का गैप है, अगर आप अपनी स्क्रीन के सामने भी देख पा रहे होंगे। सो ये अपने आप में गाइस एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, T2K के कुछ मैचेस अच्छे नहीं गए, इवन दो आपने भी चीजें नोटिस करी होगी, लास्ट के मैच में थोड़ी ऊपर नीचे चीजें हुई, अर्ली एलिमिनेशन, बट कल का जो दिन है काफी इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि गाइस एक अच्छा मैच बैक टू बैक, अगर आपके 2 अच्छे मैच जाते हैं, आप सबसे पहले तो वो गैप कम करोगे, क्लोज आओगे टॉप 3 टीम्स के। एक और अच्छा मैच तो इवन दो आप #1 भी आ सकते हो, केस प्रोबेबिलिटी ये कि DRS टॉलवर्ड एडमिन के जो पॉइंट्स है थोड़े से डाउन रहे, बाकी इसमें आप अपने व्यूज नीचे कमेंट करके बताना। देन IHC Esports, देन I8 92, इवन दो मैं I8 तक लेके चल रहा हूँ, कल के दिन पे कुछ भी हो सकता है। ऐसे SITM 74 कल के दिन पे अच्छा खेलना पड़ेगा, लाइक 6 मैचेस है, 6 में से 4 मैचेस अच्छा खेलना पड़ेगा सीन। देन स्काईलाइट्स गेमिंग, लियो, हाई वोल्टेज, कुन्यो TRZ, स्टील स्पोर्ट्स, डेड आई गाइस, रॉ ऑफिशियल्स, तो गाइस इनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, गैप #1 के लिए आप देख रहे हो ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल होता जा रहा है। एंड सेकेंडली #12 इज द एम, जो हर एक टीम का एम रहने वाला है कि एटलीस्ट हमको #12। बाकी गाइज आपके जो भी व्यूज हो नीचे एक बार कमेंट बॉक्स पे बता देना, जो भी आपकी चीज है, क्या लग रहा है कल के दिन पे कौन यहाँ पे #1 पे रहेगा, क्या सिनारियो आपको लगता है आगे होने वाले हैं, कौन सी टीम ने आज के दिन पे आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करा है अपनी परफॉर्मेंस से, वो भी एक बार कमेंट करके बताना। कौन सी टीम ऐसी है जिसने आपको बहुत ज्यादा इंप्रेस करा है, मतलब आप बोलोगे भाई क्या खेल दिया भाई इस टीम ने, तो आप ऐसा बोलोगे मतलब टीम के लिए, तो वो भी एक बार कमेंट करके जरूर से बताइएगा हमें। Today show tomorrow #2 or #1, yes go bro, that's the spirit, that guy is disappointed, कोई दिक्कत नहीं यार, इन भाई, part of a game, part of a life।
डाउन फेज अप फेज होता रहता है, ऊपर नीचे आगे पीछे। और कल वैसे भी डरा गाइस, हैव अ गुड एक्सपीरियंस, दे नो इस सिचुएशंस को कैसे बकल अप करना है, फर्स्ट डे का डाउनफॉल आता है कैसे जाना है, एक्सपीरियंस टीम है, कर लेगी, टेंशन ना लो यार। लेट्स गो बॉयज, कमेंट करके बता दो। बाकी 224 लोग देख रहे गाइस, अगर आप नए हो अभी तक, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा देना। एंड हमारी वीडियो कल मॉर्निंग पे आएगी गाइस, अभी तो नहीं मैं सोच रहा, बट मैं मॉर्निंग पे फॉर श्योर सोच रहा हूँ कि आ सकती है हमारी वीडियो। एंड देखते हैं क्या सीन बनता है यार, फॉर श्योर। यस 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 मेरे भाई यार। ला 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 ला। गाइस आज का ओवरऑल डे वाज इंटरेस्टिंग, गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ज्यादा प्यारा, मजा आ गया आज के दिन पे। तो गाइस जियो सिनेमा ही क्रैश हो गया क्या? तुम्हारा भी क्रैश हो गया जियो सिनेमा गाइस, कि मेरा ही क्रैश हो रहा है? थिंग वेंट रॉन्ग, मेरा ही क्रैश हो रहा है भाई। तो चलो चलो व्हाट डू यू थिंक एंड सी लोग कर सकते हैं ब्रो, अभी देखो आगे जब खेलेंगे पता लगेगा। बट टीम कार्ड आज के दिन का आपके स्क्रीन के सामने गाइस, रूल्स भाई, किलर भाई, गेंट भाई, डेल्टा भाई आज के दिन पे काफी अच्छे पॉइंट्स निकाले एंड हैशटैग वन में एंट्री डाली गाइस, और इससे बड़ी बात क्या ही होगी। ये हैशटैग वन में एंट्री डाली, इट आल्सो प्ले, बहुत बहुत प्यारा, बहुत प्यारा, यही चाहिए था इट से। जब हम आईएट की बात करते हैं सो यही चीज। फाइनली जियो सिनेमा बीइंग जियो सिनेमा ब्रो, है पता नहीं, तो मेरा ही इशू है, आप लोगों का भी किसी करके पता, कमेंट करके जरूर जरूर बताना। क्या नहीं खुल रहा है यहाँ जी, आपको खुल, यहाँ कुछ जी आपको नहीं दिखाना है, बहुत बढ़िया। रुक भाई ने 100 मार दिया, बहुत ज्यादा बढ़िया, मेरे को मूवमेंट देखना, बहुत बढ़िया। 228 रन का भाई, पिल दी, कब पिल दिया? गाइज ये था ओवरऑल सिनारियो आज के दिन का। अगर आपको आज गाइज, बाकी यस स्ट्रीम के लिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। बाकी यस अगर आपको पसंद आया होगा तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अभी ऑफ करते हैं, काफ़ी थक चुका हूँ। बाकी एक बार जाने से पहले हर्ट स्पैम कर देना सारे के सारे लोग। थैंक्स फॉर द वॉचिंग गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिल देन रिस्पेक्ट एवरी जन, रिस्पेक्ट एवरी टीम, रिस्पेक्ट एवरी प्लेयर। सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज के दिन के लिए। बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर रख लेना चैनल को। 179 सब्सक्राइबर्स हमारे हो चुके हैं। लाइक आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आप पे डिपेंड करता है। बाकी आज की वीडियो को इतने करते गए, थक चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू सो मच सभी का, तो बहुत बहुत शुक्रिया। बाय, कल मिलते हैं इसी टाइम पे, 3 साढ़े 3 बजे आ जाएंगे, 2:30 बजे आ जाएंगे, सॉरी। बाय, टेक केयर।